situation. If we talk about the political ramification of the same, yes, we are continuously seeing attack and a counter-attack. But apart from the politics, this is going to be very an important meeting as the condition is getting more than worse. And this is severe at this point in time as if we talk about the air quality. And this is going to be an important meeting which will be chaired by none other but the Chief Minister himself. Arvind Kejriwal, along with the top officials and the Minister, will be chairing this meeting at 12 in the National Capital itself. Many thanks, Sandeep, for Anuj, I beg your pardon, for joining us with that update. So all eyes on that meeting scheduled for 12 noon today. Delhi Chief Minister calling an emergency meeting to discuss the pollution situation that is spiraling. Even now, the BCCI also holding meetings in view of the high-profile ICC World Cup matches that are scheduled. And even as various steps are taken, this seems to be a story that's repeating every year. In other news, Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav continues his attacks on the Congress amid tensions between the India alliance partners over seat distribution in the approaching state elections. Here's a detailed report. The India alliance is now facing a fresh challenge. 3 days after Nitish Kumar launched a scathing attack on the Congress, कांग्रेस पार्टी तो उसी में ज्यादा इंटरेस्टेड है, तो अभी तो जिसको हम लोग कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग सब एकजुट होकर काम कर रहे थे, लेकिन अभी उनको कोई इस सब चीज की चिंता है नहीं। अभी तो लगे हुए हैं 5 राज्य के चुनाव, इसलिए 5 राज्य का चुनाव होगा, उसके बाद अपने सबको बुलावेंगे। आजकल कभी कोई चर्चा नहीं हो रही। Yet another key India alliance partner, Akhilesh Yadav, has now called the Congress a chalu party. कांग्रेस को भी वोट मत देना, बहुत चालू पार्टी है कांग्रेस। सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे? बंसल जी बेबंदे में दुखी थे, कांग्रेस ने धोखा दे दिया। अरे जब हमें धोखा दे दिया तो तुम कहां के बंसल हो? And this is not the first time. मुझे ये भरोसा होता कि कांग्रेस पार्टी के लोग धोखा देंगे, तो मैं उनकी बात पे भरोसा नहीं करता। मैं आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूं, अपने चिरकुट नेताओं से हमारी पार्टी के बारे में न बुलवाएं। लेकिन ये सवाल ये है, क्रेडिबिलिटी का है कि अगर कांग्रेस इसी तरह का व्यवहार करेगी तो कौन उनके साथ खड़ा होगा। अगर कंफ्यूजन के साथ आप चुनाव लड़ोगे बीजेपी से तो आप कामयाब नहीं होगे। मुझे कांग्रेस के लोग बोल दें कि समाजवादी पार्टी से हमें गठबंधन नहीं करना है, हमसे साजिश और षड्यंत्र न करें, हमें धोखा न दें। उन्हें अगर इच्छा है गठबंधन करना है तो करें, नहीं गठबंधन करना है तो हमें साफ बता दें। The BJP has questioned the India alliance and its claims of unity. ये जो इंडिया अलायंस है, उनका एक ही एजेंडा है, नरेंद्र मोदी का विरोध करना। इन्होंने जब इनको शासन मिला तब 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले करे थे और भ्रष्टाचार का विरोध करने वाले नीतीश बाबू आज चार्जशीटेड लोगों के साथ सत्ता का सुख भोग रहे हैं। नीतीश जी शर्म करो, शर्म करो। लालू की खिलाफत कर कर राजनीति की थी, आज लालू की गोदी में बैठे हो। ये परिवार की दुकान चलाने वाले लोग हैं, एक को प्रधानमंत्री बनना है और दूसरे को बेटे को मुख्यमंत्री बनाना है। मैं दोनों को कहने आया हूं, नीतीश बाबू प्रधानमंत्री छोड़ दो, इंडिया अलायंस ने तो आपको संयोजक भी नहीं बनाया, आप कहीं के नहीं रहे। Even as the rift within India alliance continues to widen further, the big question is, can the alliance weather the storm ahead of 2024 elections? Bureau Report, Republic TV. In other news, U.S. Secretary of State Antony Blinken made an unannounced stopover at Iraq on Sunday and held discussions with Iraqi Prime Minister Mohammed Shia al-Sudani in order to prevent, as the United States said, a wider regional conflict in the Middle East. The United States has stepped up diplomatic parleys with countries. Here, a report.
As part of US diplomatic outreach, US Secretary of State Antony Blinken made a stop in Iraq in order to prevent spillover of Israel-Hamas war. Blinken met Iraqi Prime Minister Mohammad Shia Sudani to discuss the Israel-Hamas war and attacks on US troops by Iran-linked groups. Blinken said that the security of embassy personnel was a high priority following a series of attacks aimed at the US embassy team in Baghdad. We just finished meetings here in Baghdad. We started with a briefing from Ambassador Romanowski and our entire team at the embassy about the security situation. As you know, there have been a series of attacks conducted by militia directed at our personnel, both in Iraq as well as in Syria. Job number one for me is to ensure the security of our people, and so I got an update on everything we're doing to make sure that our personnel are safe and secure. The deteriorating humanitarian situation in Gaza was also addressed, highlighting the importance of coordinating efforts to deliver essential supplies. We're working very hard to make sure that the conflict in Gaza does not escalate, does not spread to other places, whether it's here, whether it's elsewhere in the region. This is the very vital and urgent work of American diplomacy, and that's what we've been engaged in as well throughout this trip. Prior to the meet with the Iraqi Prime Minister, US Secretary of State Antony Blinken also met with US embassy staff in Baghdad. Agency report, Republic TV. Time for a short break. On the other side, Mahadev betting app controversy snowballs as Republic airs bombshell tape. Refusing to answer direct and specific questions, Chief Minister Bhupesh Baghel calls the case an attempt to defame him. Hello, Moto. Motorola, India's best 5G smartphone brand. Powered by Century Ply Club Prime. रहो बेफिक्र। बंद करो कान बंद करो कभी भी फट सकता हूँ पटाखा जो लग रहा हूँ दिवाली है तैयार होकर आइए। In the global employability rankings by Times Higher Education UK, only the following 6 institutions from India are ranked amongst the top 230 in the world for having the most employable graduates. IIT Delhi, IISc Bangalore, IIT Bombay, IIM Ahmedabad, IIT Kharagpur and Amity University. जब भरोसे की हो बैकिंग तो निवेश का हर फैसला बन जाता है बुलंद। इसीलिए हम खड़े हैं हर निवेश के लिए, हर निवेशक के साथ। SBI Securities. Investment in securities market is subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. ये किचन नया तो कुक भी नया। 1 minute हाँ। या नमक कम है तो डाल दो। यार ये नमक नकली है क्या? नमक नहीं, कुक नकली है। अब किचन इतना इनवाइटिंग होगा तो कुछ नया बनाना एक्साइटिंग होगा। कुक अप द न्यू कुचीना, द किचन एक्सपर्ट्स। मेहमान आ गए, इनका फैशन जो है खत्म नहीं हो रहा। मिश्रा जी, कुर्ता जच रहा है। थैंक यू मैडम सर। 42 की फिटिंग, 42? वो भी सिर्फ 599 में। आपको कैसे पता? पता तो ये भी है कि स्मार्ट बाजार से खरीदा है। खाना खा लें? चलिए। आ गया फेस्टिवल सेल 1 से 15 नवंबर। दिवाली फैशन सबसे अच्छे दाम में चाहिए? स्मार्ट बाजार चलिए। Hey Alexa, start the robo. Introducing Forbes Robo Vacuum Cleaner. Daily cleaning as easy as 1, 2, 3. It dry vacuums, even wet mops, and recharges automatically. Get the Forbes Robo Vacuum Cleaner from Eureka Forbes. ये वाला तो गूगली है। वो वाला?
ये वाला तो सिक्सर है। कौन सा फ्लेवर बिजनेस बढ़ाएगा? ये खूबसूरत चिंता आप करिए। बिजनेस लोन की चिंता हम संभाल लेंगे विद ओवरड्राफ्ट लाइक बेनिफिट्स एंड नो कोलैटरल अप टू 75 lakhs। टिप चाहिए? पैसा लगाना है तो सेंचुरी प्लाई क्लब प्राइम पे लगाओ। डूबेगा नहीं, जलेगा भी नहीं, कोई खा नहीं जाएगा और मिनिमम 30 साल का रिटर्न देगा। अब इससे बेटर इन्वेस्टमेंट है तो बताओ? सेंचुरी प्लाई क्लब प्राइम, रहो बेफिक्र। With 49 studios, Woodfill has revolutionized the Indian modular kitchen industry by bringing the best of Europe for Indian homes. Visit the nearest store for a new design and a quote. Hello, Moto. Motorola, India's best 5G smartphone brand. Good morning to Live and Breaking. A quick recap of our top headlines. Mahadev betting scam controversy snowballs as Republic TV airs the bombshell tape. Refuses to answer direct and specific questions, but Bhupesh Baghel calls the case an attempt to defame him. In a massive impact, the government issues blocking orders against 22 illegal betting apps and websites. The BJP escalates its attack on Chhattisgarh Congress government over the Mahadev betting app scandal. And as the Israel-Hamas war enters its second month, the IDF again asks civilians in northern Gaza to move south. Now, after the release of a video by the BJP in which Subham Soni, an accused in the Mahadev book betting app case, claims that he had proof of paying 508 crore rupees to the Chhattisgarh Chief Minister Bhupesh Baghel, Baghel has called it an attempt to spoil his image just before the assembly elections. Now, the Chhattisgarh Chief Minister in a post on X alleged that the BJP is employing central agencies to tarnish the image of people-friendly Congress government in the state. Bhupesh Baghel, of course, has said that he believes that the Enforcement Directorate, which was essentially investigating the case for months, according to him, did not choose to shut down these apps despite repeated warnings by the Chhattisgarh government. Also going on to say, we've seen Bhupesh Baghel also suggests that the timing of this is questionable. The Congress party at this point in time, of course, is defending its leader. ये सब पूरी तरीके से भाजपा का षड्यंत्र है। भाजपा जहां चुनाव हो रहा है, राजस्थान में भी ईडी के छापे पड़ रहे हैं, छत्तीसगढ़ में भी छापे पड़ रहे हैं, अन्य जगह भी छापे पड़ रहे हैं, तो चुनाव में उनको ईडी याद आती है और छापा याद आता है, महादेव ऐप आता है, उसके पहले क्यों नहीं किया? अगर जानकारी थी तो चुनाव के पहले करना चाहिए था। तो चुनाव के केवल दृष्टिकोण से चुनाव में फ़ायदा लेने के लिए वो ईडी का, सीबीआई का और इनकम टैक्स का दुरुपयोग कर रहे हैं। Now, the Congress party, of course, is questioning the government on what took it so long to ban these apps. We have seen, of course, a video also come out from a person connected to the app who says that he's the owner of the app, suggesting that he was asked by Baghel to actually move to Dubai. Not just that, he also alleges that he sent about 5 crore rupees to the chief minister. These are allegations that have been denied by the Congress party, but serious questions do remain. Now, in this video message, the key accused in the Mahadev betting app scam made sensational claims and alleged that the Chhattisgarh Chief Minister had in fact suggested and encouraged him to set up his gambling business in Dubai. Let's listen in once again to what the Congress is saying. ये सब पूरी तरीके से भाजपा का षड्यंत्र है। भाजपा जहां चुनाव हो रहा है, राजस्थान में भी ईडी के छापे पड़ रहे हैं, छत्तीसगढ़ में भी छापे पड़ रहे हैं, अन्य जगह भी छापे पड़ रहे हैं, तो चुनाव में उनको ईडी याद आती है और छापा याद आता है, महादेव ऐप आता है, उसके पहले क्यों नहीं किया? अगर जानकारी थी तो चुनाव के पहले करना चाहिए था। तो चुनाव के केवल दृष्टिकोण से चुनाव में फ़ायदा लेने के लिए वो ईडी का, सीबीआई का और इनकम टैक्स का दुरुपयोग कर रहे हैं।
All right, now a soldier was brutally attacked while he had come to Karnataka's Belgavi to meet his friends. Parshuram Patil was attacked at a bar in Ganeshpur. The incident took place 3 days ago and CCTV footage has now emerged. There you have it on tape, the soldier being brutally attacked by certain people outside a bar. What we are given to understand is that the Jawan was attacked when he was in Belgavi to meet his friends. Let's go across to Prajwal, who's reporting on this and has more details. Prajwal, tell us more about the incident and have any arrests been made so far? Nupur, so far there has been no sort of arrest which has been made by the camp police station under whose limits this particular incident had taken place as well. And the Jawan, who has now been identified as Parshuram Patil, is a resident of Maharashtra in the Chandragarh area as well. And he had come 3 days ago to Belgavi to go ahead and meet his friends, at which point of time this ruckus is broken out. The details are yet to emerge as to why the fight took between two parties as well. But initially it started off with a heated conversation between the Jawan as well as the group of miscreants as well. And now we can see that a group of around 5 to 7 miscreants are going ahead and beating the Jawan despite repeated requests by the local residents there. And as soon as the residents got to know that things were going out of hand, they immediately informed the cops as well. But the cops did not arrive, and they came only around 10 to 15 minutes later, because at the end of the video we can clearly see that the Jawan is bleeding from head to toe, and he was seen walking around. He's currently being posted in Jammu is what we get to learn at this point of time, and a case has also been registered at the camp police station. But until now there has been no sort of update regarding whether there has been any action taken against the miscreants, and even an official case, that is an FIR, has been filed so far. It is being understood that a non-cognizable report has been filed, but there has been no sort of FIR is what sources are stating. And whether the cops have taken this incident into consideration and have arrested the accused is still not known as well. But this video has definitely caused a lot of outrage in Karnataka, stating that the government should definitely go ahead and take action because a soldier is being insulted, a serving soldier of the Indian Army is being insulted. So therefore, now all these people who are being seen in this video, it is being scrutinized now by the cops, and all of them will be taken into custody is what officials are stating. But why did they take over 72 hours to go ahead and arrest the accused? There's a question that is now being posed by the people as well, and this has created quite a raise in social media. All right. So as you're pointing out, of course, action, is going to be taken. But, these obviously do raise questions of the kind of law and order in Belgavi, because this incident is happening in broad daylight. Absolutely. We have seen such instances happen as well, not only in Karnataka, but also in Tamil Nadu, where we saw the lynching of Colonel Lance Nayak Prabhu too. And now in the latest, we are seeing that the soldier has suffered, brutal injuries as well. So questions need to be raised about the law and order in Belgavi. The superintendent of police as well as the DC will have to take cognizance of this entire thing that is going on. And at the same point of time, he's a serving soldier of the Indian Army. So it should be made sure that, such incidents will not happen to soldiers in the future as well. And from what we get to understand, even though the police have gone ahead and registered a complaint now, why has action not been taken? Because Belgavi, if we are looking at a city from a city perspective as well, they should be going ahead and nabbing these miscreants as well, and it is being understood. Sources are pointing out that these people are regular customers out there to this particular bar in front of where this particular incident has happened. So why have they not been taken into custody? Was there any sort of clout that was used? All these questions are coming in, but the police have stated that they will go ahead and nab the miscreants as of now, Nupur. All right. Thank you very much for joining us, Prajwal, for the moment. So Prajwal bringing us the details of this incident and the CCTV footage that has now emerged. Hello, Motorola, India's best 5G smartphone brand. On the last day of nominations, the Congress party has released its 7th list, naming 23 candidates. The Congress has denied a ticket to the Chief Minister Ashok Gehlot's loyalist, Minister Mahesh Joshi from the Hawa Mahal constituency. With a few weeks to go for the Rajasthan Assembly elections, the BJP has released a list of 26 candidates for the upcoming elections. The BJP has expelled its party leader Sandeep Dema from the primary membership of the party for his remarks on gurdwaras and mosques during an election rally in Rajasthan's Tijara.
PDP President Mehbooba Mufti has said that the statement of the former Director General of Police, Dilbag Singh, that the situation is normal in the Union Territory of Jammu and Kashmir and there are no collateral damage in the last 4 years is regretful. The AIADMK senior leader and former Tamil Nadu Minister D. Jayakumar rode a bullock cart in Vanarapettai to condemn the DMK government's delay in fulfilling poll promises. Veteran NCP leader Eknath Khadse has suffered a heart attack in Jalgaon. This has been confirmed by the MP Supriya Sule. She further said that Khadse had been admitted to a hospital and is currently undergoing treatment. A parliamentary committee responsible for reviewing 3 bills intended to replace the existing criminal laws is scheduled to convene today to finalize its draft reports. Vice President Jagdeep Dhankar will visit Mumbai today. During his day-long tour, the Vice President is scheduled to visit the IIT Bombay, where he will interact with students and faculty members. 4 people have died and several others have been injured after a bus lost its control and fell on the railway track near Dosa Collectorate Circle. All the injured have been taken to hospital. The Delhi NCR region continues to battle toxic air and has been enveloped under a thick layer of smog with visibility dropping as the air quality index remains in the severe category. Now, even as Delhi, of course, is battling with heavy pollution levels, we are given to understand that the Chief Minister of Delhi, Arvind Kejriwal, has called for a high-level meeting at the Delhi Secretariat on the issue of battling this pollution. The Environment Minister Gopal Rai and other officials of the concerned departments will also be attending this meeting. Now, AQI levels in New Delhi, of course, have dipped further, and there is a meeting that is scheduled by the Delhi Chief Minister today to be able to battle the situation. Now, primary schools, of course, have been shut till the 10th of November as Delhi is seeing unprecedented levels of dangerous particulate matter in the air. इस साल दिल्ली में 8 सालों में सबसे बेहतर हवा थी। आंकड़े बताते हैं कि दिल्ली में इस बार 31% पोल्यूशन कम हुआ। केंद्र सरकार को भी ये स्वीकारना पड़ा अपने इकोनॉमिक सर्वे जो पार्लियामेंट में टेबल किया था 2022-2023 का, कि दिल्ली में इस बार 8 सालों में सबसे बेहतर हवा थी। CAQM के आंकड़े भी दिखाते हैं कि पंजाब में इस बार अभी तक पिछले साल के मुकाबले 50 to 67% पराली कम जली है। जो पराली पंजाब में अभी जल रही है वो यहां से 500 किलोमीटर दूर है और जो पराली हरियाणा में जल रही है वो यहां से करीब 100 किलोमीटर दूर है। दिल्ली के सबसे करीब राज्य हरियाणा है, तो जरूरी है कि समीक्षा की जानी चाहिए कि 2014 से खट्टर सरकार ने प्रदूषण को लेकर हरियाणा में क्या स्टेप्स उठाए। You're watching Republic TV, and on the other side, the Mahadev betting scam controversy snowballs as Republic TV airs bombshell tape. And Bhupesh Baghel refuses to answer direct and specific questions. बंद करो कान बंद करो, कभी भी फट सकता हूँ, पटाखा जो लग रहा हूँ। दिवाली है, तैयार होकर आइए। मन चाहे 65 इंच 4K। देख मन, फिसल मत, यही चाहिए, यही लूंगा, यही चाहिए। तो देख, तू इस बार भी नहीं लेगा ना? लूंगा ना, अगली दिवाली
अपने मन की विश को मत टालो। SBI कार्ड के फेस्टिव EMI ऑफर्स के साथ जो मन चाहे ले डालो। हर खरीदारी के साथ एक गोल्ड कॉइन मुफ्त। हैप्पी दिवाली! कल्याण ज्वेलर्स। You are the one. Unmatched, unequaled, unbeatable. LG OLED Evo, the one and only. The boldly stylish and comfortable Honda Elevate. You're the chase. India's first certified sustainable hard trolleys, made for nature and tested by nature. Uppercase, never ordinary. Hi, what's that? That's a Manish Malhotra. Not your dress. The cupboard. The laminate is a Manish Malhotra design. Century Laminates by Manish Malhotra. Fashion for your furniture. Live it up, live it up. Hello, Moto. Motorola, India's best 5G smartphone brand, brings you the latest breaking news update from across the country, only on Republic TV. Now, the US Secretary of State Antony Blinken made an unannounced visit to Iraq on Sunday and held discussions with the Iraqi Prime Minister Mohammad Shia al-Sudani in order to prevent a wider regional conflict. The US has stepped up diplomacy with countries in the Middle East. As part of US diplomatic outreach, US Secretary of State Antony Blinken made a stop in Iraq in order to prevent spillover of Israel-Hamas war. Blinken met Iraqi Prime Minister Mohammad Shia Sudani to discuss the Israel-Hamas war and attacks on US troops by Iran-linked groups. Blinken said that the security of embassy personnel was a high priority following a series of attacks aimed at the US embassy team in Baghdad. We just finished meetings here in Baghdad. We started with a briefing from Ambassador Romanowski and our entire team at the embassy about the security situation. As you know, there have been a series of attacks conducted by militia directed at our personnel, both in Iraq as well as in Syria. Job number one for me is to ensure the security of our people, and so I got an update on everything we're doing to make sure that our personnel are safe and secure. The deteriorating humanitarian situation in Gaza was also addressed, highlighting the importance of coordinating efforts to deliver essential supplies. We're working very hard to make sure that the conflict in Gaza does not escalate, does not spread to other places, whether it's here, whether it's elsewhere in the region. This is the very vital and urgent work of American diplomacy, and that's what we've been engaged in as well throughout this trip. Prior to the meet with the Iraqi Prime Minister, US Secretary of State Antony Blinken also met with US Embassy staff in Baghdad. Agency report, Republic TV. And coming up next, in a massive impact, the government issues blocking orders against 22 illegal betting apps and websites.
And the BJP escalates its attack on the Chhattisgarh Congress government over the Mahadev scam. Hello, Motorola, India's best 5G smartphone brand. बंद करो कान बंद करो कभी भी फट सकता हूँ पटाखा जो लग रहा हूँ दिवाली है तैयार होकर आइए In the global employability rankings by Times Higher Education UK, only the following 6 institutions from India are ranked amongst the top 230 in the world for having the most employable graduates. IIT Delhi, IISc Bangalore, IIT Bombay, IIM Ahmedabad, IIT Kharagpur and Amity University. खुद की हिम्मत में आसमां को धरती पे लाचे था जब भरोसे की हो बैकिंग तो निवेश का हर फैसला बन जाता है बुलंद इसीलिए हम खड़े हैं हर निवेश के लिए हर निवेशक के साथ SBI Securities. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. PC Chandra Jewelers presents Dhanteras Dhan Varsha offer. 25% off on jewelry making charges, 10% off on the value of diamonds and precious stones, 100 rupees off per gram of gold jewelry. Win attractive mega prizes. Offer valid till 11th November. Terms and conditions apply. Visit us today. PC Chandra Jewelers, a jewel of jewels. This Diwali New Hawkins, good old friends, fun times again. मैडम सर छुट्टी चाहिए थी क्यों? दिवाली की गिफ्ट्स खरीदने अब सबकी पसंद अलग अलग तो 10 जगह घूमना पड़ेगा ना मिश्रा जी बताइए स्मार्ट बाजार फेस्टिवल सेल में हर गिफ्टिंग आइटम एक ही जगह मिल जाएगा वो भी सबसे कम दाम में तो अब छुट्टी का क्या करोगे सोच के आई है चलिए आ गया फेस्टिवल सेल 1 से 15 नवंबर इस दिवाली सारी गिफ्ट आइटम सबसे कम दाम पे चाहिए स्मार्ट बाजार चलिए लेकिन हमने तो एकदम सॉलिड टीएमटी बार लगाया है मतलब रुंगटा स्टील टीएमटी बार जंग से न माने हार और मजबूती बेशुमार रुंगटा स्टील टीएमटी बार है बिल्कुल रेडी मैडम को पैसे से प्यार नहीं है भाई साहब पैसे से प्यार है तभी तो एयू से करार है ऐसा क्यों? आपका बैंक सेविंग्स अकाउंट पे इंटरेस्ट देता है 3 महीने में एक बार मेरा एयू हर महीने सोच बदलो और बैंक भी एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक बदलाव हमसे है वोल्टास बैको ये 30 दिन तक फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को फ्रेश रखता है और तुमने मान लिया वैसे भी 30 दिन की सब्जियां कौन खाता है तू वोल्टास बेको डुअल कूलिंग रेफ्रिजरेटर की स्टोर फ्रेश टेक्नोलॉजी से सब्जियां 30 दिन तक फ्रेश रह सकती हैं। Voltas Beko, tested by real moms. In a journey that defines our dynamic future, Bharat embarks on a mission of shaping a new and determined nation. Witness a journey towards development where turning dreams into reality is not just a possibility but a certainty. Join us on Bharat 2050, where unwavering commitment and self-reliance meet economically brilliant tomorrow. Well, the India alliance seems to be heading for more trouble, and in fact, we're seeing a face-off between the Aam Aadmi Party and the Congress on Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal's reported statement that both the Congress and the BJP are working in the same way. The UP Congress President Ajay Rai has now said that I know that the Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal is with the BJP. When he came to contest elections in Varanasi in 2014, there were some arrangements. He also went on to make a statement saying that Kejriwal is working as the team B of the BJP. So,
Obviously, this is going to put more strain on the India alliance already. There has been news of a lot of infighting over not just seat distribution but also other issues. Now, we are given to understand that even as the Aam Aadmi Party and the Congress Party don't see eye to eye over various issues, allegations are now being made by the Congress which seem to suggest that Arvind Kejriwal is the team B of the BJP. Now, there have, of course, been several cracks that we've witnessed in the India alliance over the past few months. In fact, what we have seen is that various constituents of the India alliance have made allegations against the Congress party. Samajwadi Party chief, of course, Akhilesh Yadav said that he was very unhappy with the alliance at this point in time, and now new comments that are coming in from the BJP and, I beg your pardon, from the Congress and the Aam Aadmi Party against each other, which would obviously put these ties under a huge amount of strain. Now, what we are given to understand as of now is that Ajay Rai, the Uttar Pradesh Congress president, has said that the Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal, he believes, is working with the BJP. Let's listen in. अरविंद केजरीवाल ने भी कल एक बात की, उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस और जो भारतीय जनता पार्टी है वो एक ही तरह से काम कर रहे हैं दोनों। अब वो देखिए, अरविंद केजरीवाल तो मैं जानता हूँ पहले से भी वो पूरी तरीके से भाजपा से मिले हुए थे। जब 2014 में बनारस चुनाव लड़ने आए तो भी वो सेटिंग गेटिंग के तहत ही आए थे। तो वो भी, मैं जहाँ तक मेरी जानकारी है, मेरी व्यक्तिगत जो राय है कि वो भी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने भी कल एक बात की, उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस और जो भारतीय जनता पार्टी है वो एक ही तरह से काम कर रहे हैं दोनों। अब वो देखिए, अरविंद केजरीवाल तो मैं जानता हूँ पहले से भी वो पूरी तरीके से भाजपा से मिले हुए थे। जब 2014 में बनारस चुनाव लड़ने आए तो भी वो सेटिंग गेटिंग के तहत ही आए थे। तो वो भी, मैं जहाँ तक मेरी जानकारी है, मेरी व्यक्तिगत जो राय है कि वो भी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं। Hello, Moto. Motorola, India's best 5G smartphone brand. On the last day of nominations, with only 3 weeks to go for the Rajasthan Assembly elections, the Congress Party has released its 7th list, naming 23 candidates. Now, the Congress has denied a ticket to Chief Minister Ashok Gehlot's loyalist and Minister Mahesh Joshi from Hawa Mahal constituency. With a few weeks to go for the Rajasthan Assembly elections, the BSP has released a list of 26 candidates for the upcoming Rajasthan elections. The BJP has expelled party leader Sandeep Dema from the primary membership of the party for his remarks on gurudwaras and mosques during an election rally in Rajasthan's Tijara. The PDP President Mehbooba Mufti has said that the statement of the former Director General of Police Dilbag Singh that the situation is normal in the Union Territory and that there has been no collateral damage in the past 4 years is regretful. AIADMK senior leader and former Tamil Nadu Minister D. Jayakumar rode a bullock cart in Vanarpettai to condemn the DMK government's delay in fulfilling poll promises over fuel subsidies. The veteran NCP leader Eknath Khadse has suffered a heart attack in Jalgaon, as confirmed by the MP Supriya Sule. She further said that Khadse had been admitted to a hospital and is currently undergoing treatment. A parliamentary committee responsible for reviewing 3 bills intended to replace existing criminal laws is scheduled to convene today to finalize draft reports. Vice President Jagdeep Dhamkar will visit Mumbai today. During his day-long tour, the Vice President is scheduled to visit the IIT Powai, where he will interact with students and faculty members of the institute. Up next, the Mahadev betting scam controversy explodes.
Powered by Century Ply Club Prime. रहो बेफिक्र। बंद करो कान बंद करो कभी भी फट सकता हूँ पटाखा जो लग रहा हूँ दिवाली है तैयार होकर आइए मन चाहे 65 इंच 4K देख मन फिसल मत यही चाहिए यही लूंगा यही चाहिए तो देख तू इस बार भी नहीं लेगा ना लूंगा ना अगली दिवाली अपने मन की विश को मत टालो SBI कार्ड के फेस्टिव EMI ऑफर्स के साथ जो मन चाहे ले डालो हर खरीदारी के साथ एक गोल्ड कॉइन मुफ्त हैप्पी दिवाली कल्याण ज्वेलर्स Whenever I had ice cream or cold water, I would experience a sharp shooting sensation. So I just kept ignoring it. Even my hot chai was giving me the same amount of discomfort. My dentist recommended Sensodyne. So now I can be completely carefree and sip my hot cup of tea. It really works. जब मां सरयू के घाटों को दिव्य दीपमालाओं से सजाया जाए वो दीपोत्सव है दीपों की असंख्य ज्योतियां जब अवधपुरी सजाए वो दीपोत्सव है जब श्री राम की जय जयकार से संपूर्ण अयोध्या धाम गूंजित हो उठे और हर मन मंत्रमुग्ध हो जाए वो दीपोत्सव है 2017 से शुरू हुआ दीपोत्सव हर साल एक नया कीर्तिमान गढ़ रहा है विकास पथ पर अग्रसर योगी सरकार जहां एक तरफ अयोध्या को आधुनिक बना रही है वहीं दूसरी तरफ सनातन परंपराओं को संजोने का कार्य कर रही है दिव्य दीपोत्सव से दैदीप्यमान है श्री राम जन्मभूमि विकास के प्रकाश से प्रकाशमान है श्री राम जन्मभूमि आइए आस्था के असंख्य दीपों से सुसज्जित इस दीपोत्सव के साक्षी बने और प्रभु श्री राम का अभिनंदन करें श्री राम को नमन है श्री राम का वंदन है टिप चाहिए पैसा लगाना है तो सेंचुरी प्लाई क्लब प्राइम पे लगाओ डूबेगा नहीं जलेगा भी नहीं कोई खा नहीं जाएगा और मिनिमम 30 साल का रिटर्न देगा अब इससे बेटर इन्वेस्टमेंट है तो बताओ सेंचुरी प्लाई क्लब प्राइम रहो बेफिक्र Just another Virtus on a long drive to get coffee. Spreading goosebumps, taking on turns, and what's around the turn. No drive is just another drive when you're in a Virtus. Volkswagen. Hello, Moto. Motorola, India's best 5G smartphone brand. The headlines at 10 o'clock this morning. Mahadev betting scam controversy snowballs as Republic airs bombshell tapes. Refuses to answer direct questions, but Bhupesh Baghel calls the case an attempt to defame him ahead of the elections. In a massive impact, the government issues blocking orders against 22 illegal betting apps and websites. The BJP escalates its attack on the Chhattisgarh Congress government over the Mahadev betting app scandal. And as Israel-Hamas war enters its second month, the IDF again asks civilians in northern Gaza to move south. Now, after the release of a video by the BJP in which Shubham Soni, an accused in the Mahadev betting app case, claims that he had proof of paying about 508 crore rupees to the Chhattisgarh Chief Minister Bhupesh Baghel, the latter has called it an attempt to spoil his image just before the assembly elections. Now, the Chhattisgarh Chief Minister in a post to X alleged that the BJP is employing central agencies to tarnish the image of people-friendly Congress government of the state. Meanwhile, even as the bombshell video has exploded, the Congress party is now on the defensive.
ये सब पूरी तरीके से भाजपा का षड्यंत्र है। भाजपा जहां चुनाव हो रहा है, राजस्थान में भी ईडी के छापे पड़ रहे हैं, छत्तीसगढ़ में भी छापे पड़ रहे हैं, अन्य जगह भी छापे पड़ रहे हैं, तो चुनाव में उनको ईडी याद आती है और छापा याद आता, महादेव ऐप आता है, उसके पहले क्यों नहीं किया? अगर जानकारी थी तो चुनाव के पहले करना चाहिए था। तो चुनाव के केवल दृष्टिकोण से चुनाव में फ़ायदा लेने के लिए वो ईडी का, सीबीआई का और इनकम टैक्स का दुरुपयोग कर रहे हैं। ये सब पूरी तरीके से भाजपा का षड्यंत्र है। भाजपा जहां चुनाव हो रहा है, राजस्थान में भी ईडी के छापे पड़ रहे हैं, छत्तीसगढ़ में भी छापे पड़ रहे हैं, अन्य जगह भी छापे पड़ रहे हैं, तो चुनाव में उनको ईडी याद आती है और छापा याद आता, महादेव ऐप आता है, उसके पहले क्यों नहीं किया? अगर जानकारी थी तो चुनाव के पहले करना चाहिए था। तो चुनाव के केवल दृष्टिकोण से चुनाव में फ़ायदा लेने के लिए वो ईडी का, सीबीआई का और इनकम टैक्स का दुरुपयोग कर रहे हैं। Now, the Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal has called for an emergency meeting over the rising pollution levels in the national capital. Do remember that the overall air quality index of Delhi and NCR region remains in the very poor category. In fact, this morning we are given to understand that the air quality is in the range of 400 at several locations in and around Delhi. Now, what we are given also to understand is that today the Delhi government has called for an emergency meeting which will be attended by various ministries of the Delhi government, and under the final stage of the pollution control plan, the state government has announced a work from home policy for about 50% of government staff until its next orders. Do remember that primary schools in the National Capital Region and Delhi have already been shut for the next week at least. Now, according to data that has come in from the Central Pollution Control Board, Delhi's air quality index has increased by over 200 points since the 27th of October. इस साल दिल्ली में 8 सालों में सबसे बेहतर हवा थी। आंकड़े बताते हैं कि दिल्ली में इस बार 31% पोल्यूशन कम हुआ। केंद्र सरकार को भी ये स्वीकारना पड़ा। अपने इकोनॉमिक सर्वे जो पार्लियामेंट में टेबल किया था 2022-2023 का, कि दिल्ली में इस बार 8 सालों में सबसे बेहतर हवा थी। CAQM को पंजाब में पराली की समस्या को समाप्त कर देंगे। अब उनकी सरकार को काफी समय होने के बाद भी पंजाब में पराली की समस्या खत्म होने के बदले बढ़ती जा रही है। कल ही 3000 से ज्यादा घटनाएं पंजाब में पराली जलाने की सामने आई हैं। जिस प्रकार से वहां पर पराली के लगातार जलने के इंसिडेंट्स हो रहे हैं, सवाल तो ये बनता है कि अरविंद केजरीवाल जी, उस घोल का क्या हुआ? जो घोल आप पंजाब में छिड़कने वाले थे और सारी पराली की समस्या को समाप्त करने वाले थे, उस पर 23 करोड़ रुपए विज्ञापन पर खर्च हुए। क्या हुआ उस बायोडिकम्पोजर का? क्या हुआ उन मशीनों का जो खरीद कर किसानों को 1 महीने पहले दी जाने वाली थी? पहले भी हमने देखा है कि 11,000 ऐसी मशीनें गायब हो गई थी पिछले वर्ष। आज 24,000 मशीनें देने वाले थे, ये दावे कर रहे थे। कितनी मशीनें किसानों को दी गई? और आज जो प्रदूषण की स्थिति दिल्ली में बनी हुई है, उसके लिए जो मुख्य कारण है वो प्रदूषण के दिल्ली के भीतर ही है। रोड डस्ट जो लगातार बढ़ता जा रहा है, उसको कर्व करने के लिए आज अरविंद केजरीवाल जी ने वैक्यूम क्लीनिंग करवाई, सड़कों की स्वीपिंग करवाई, मैकेनाइज स्वीपिंग करवाई। कौन रोक रहा था उन्हें मैकेनाइज स्वीपिंग कराने से? एमसीडी तो आज उनके पास है। जो दिल्ली में व्हीक्यूलर पोल्यूशन लगातार बढ़ता जा रहा है, उसको कर्व करने के लिए क्या अरविंद केजरीवाल ने 11,000 डीटीसी बसेस खरीदी? कौन रोक रहा था उन्हें? भ्रष्टाचार कर दिया उसमें। आज जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल ने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन जो पोल्यूशन होता है, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन होता है, बायोमास बर्निंग से पोल्यूशन होता है, उस पर क्या कार्रवाई की और लॉन्ग टर्म क्या उस पर सोल्यूशन दिया? कोई उसका जवाब नहीं है। केवल दोष लगाना, कभी उत्तर प्रदेश पर दोष लगाना, कभी हरियाणा पर दोष लगाना, जबकि उन्होंने स्टबल बर्निंग की घटनाएं 30, 40, 45% कम की है। कभी दिवाली और फटाकों पर दोष डाल देना, कभी केंद्र पर दोष डाल देना, उस केंद्र पर, उस सेंटर पर जिसने ईस्टर्न वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे दिया है, जिसने मेट्रो दी है, उन पर दोष डालना, पर अपनी जिम्मेदारी से हाथ धो देना। आज सवाल सिर्फ इतना बनता है कि यदि पंजाब में 3000 से ज्यादा घटनाएं पंजाब में पराली जलाने की हो रही है, मतलब कि आम आदमी पार्टी की सरकार पराली मैनेजमेंट में पूरी तरह से फेल हो चुकी है। और जो आम आदमी पार्टी की सरकार यहां पर बड़े बड़े दावे कर रही थी, स्मोक टावर बंद है, 8 महीनों से बंद है, 23 करोड़ रुपए खर्च हुए,
जब स्मॉग टावर के बारे में बताया गया तब उनकी नींद खुली। जो रियल टाइम मॉनिटरिंग होने वाला था जिससे कि सोर्स ऑफ पोल्यूशन पता चलेगा, वो सेंटर भी बंद है। अब बताते हैं कि उनके पास डेटा ही नहीं बताने के लिए कि कहां से प्रदूषण आ रहा है और कैसे प्रदूषित हो रहा है, परंतु दोष डालने के लिए कभी उत्तर प्रदेश, कभी हरियाणा, कभी केंद्र, इन सब पर दोष डालना है, अपनी जिम्मेदारी से भागना है। यही अरविंद केजरीवाल की सियासत है, प्रदूषित सियासत है। दिल्ली की आबो हवा आज फिर से जहरीली है। फिर से एक बार लगातार दिल्ली का AQI सीवियर कैटेगरी में है। फिर से एक बार दिल्ली का AQI कहीं 500, कहीं 600, कहीं 700 पार हो चुका है और कहीं पर तो 999 तक जा रहा है। उसके आगे तो मीटर बढ़ता भी नहीं है। दिल्ली का AQI जो है वो 5 सालों में सबसे खराब स्थिति में आ पहुंचा है। ये इसलिए हुआ है, दिल्ली आज गैस चेंबर इसलिए बनी है क्योंकि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने पिछले 8 Now let's go across to Simran, who's reporting live on this. Simran, to begin with, give us a sense of how bad the situation is, where you're reporting from. And we are told that the Delhi government is going to be holding an emergency meeting. What are the next steps that they're looking at now? Well, yes, the situation that can be seen, if we talk about bad to worse, this you can see right now the people of Delhi are actually gasping for breath. It's for the 5th consecutive day in the national capital that the people of Delhi have been looking at the AQI levels severely in the severely polluted category. And right now I'm standing at the India Gate, which is the iconic monument in the national capital. You can see behind me, this is the thick layer of smog, and the air emergency in the national capital has continued its assault on the people of Delhi. While there has been enough talk and enough noise over the implementation of the measures in the national capital to curb the air pollution, but right now nothing seems to be actually faring well for the people of Delhi, because it is for the 5th day in a row that this has been the situation. People are gasping for breath. The air pollution has been continuously increasing ever since the stage 4 by the CAQM, which is a Commission for Air Quality Management in the national capital, was put in place yesterday. Schools have been ordered to be shut till the class 5th from pre-primary by the government, and of course, as you rightly mentioned, an emergency meeting is also likely to be held by Delhi Chief Minister with the concerned authorities in this matter to take up the steps to curb the menace of air pollution. While this has been another front where deliberations have been going on, politics have been also bickering continuously with the neighboring government in the states, taking pot shots at each other and blaming each other, and going into a war of words over who should be blamed for the continuing assault of air emergency on the people of Delhi. And if we talk about the measures that the government has taken yesterday, they have also implemented 8-point action plan specifically, which also bans the entry of trucks carrying non-essential items in the national capital, and also light vehicles which are registered not in Delhi to not come into the national capital. But so much so has been thought and now implemented when already the condition in the national capital is becoming uninhabitable. And the forecast actually also predicts that the condition of the AQI levels and the mounting AQI levels in the national capital is predicted to be worsening in the days to come, or at least till November. Back to you. All right. Thank you for the moment, for joining us, Simran, and giving us those details. So the emergency meeting, of course, has been scheduled for about 12 o'clock this afternoon. वो निश्चित रूप से उसका असर होता है। मेरे ख्याल से सभी लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है, जो सोर्सेज हैं उनको कंट्रोल किया जाए, स्थिति सामान्य हो, इससे सब चीज़ें सामान्य हों। लेकिन अभी तो लोगों की कोशिश हमारी यही है कि कम से कम इस जो सोर्सेज हैं उनको कंट्रोल किया जाए, और जो लोगों के सांसों पे इसका असर हो रहा है उसको कम किया जाए। तो मुझे लगता है कि अभी सबको उसमें सहयोग करने की जरूरत है। सवाल सर, दिल्ली में क्रिकेट मैच होना है
और उसे लेकर हालांकि बीसीसीआई आईसीसी की तरफ से कहा गया कि आतिशबाजी यहाँ पे नहीं होगी, लेकिन आप लोगों की तरफ से कोई इन्फोर्समेंट, कोई दिशा निर्देश इसके लिए जारी किया जा रहा है? नहीं, उसके लिए तो केंद्र सरकार ही जारी करेगी। All right. So that meeting, of course, will be looking at more steps that Delhi government hopes to put in place to curb pollution levels in the national capital. Now, India has won the Hockey Women's Asia Champions Trophy by beating Japan 4-0 in the finals. Hockey India has announced a reward of 3 lakh rupees each for all the players and 1.5 lakh rupees each for all the support staff for winning the title. It's a stunning win for India's women hockey team. Indian women's team crushed title holders Japan by 4-0 to win its second Asian Champions Trophy title in Ranchi. India overcame the two-time champions through goals from Sangeeta Kumari, Neha Larimsiami and Vandana Kataria. फिलहाल बहुत अच्छा लग रहा था। आए थे तब थोड़े टेंस भी थे क्योंकि पता था जापान अच्छी टीम है, बट हमें खुद के ऊपर था कि हमें कैसे स्टार्ट करना है, हम उस चीज़ में बिजी थे। बट जापान ने बहुत अच्छी फाइट दी 3 क्वार्टर तक और टीम ने बहुत अच्छा एफर्ट्स किया, अच्छा खेली टीम काफ़ी। बिल्कुल यही था, हमारी हॉकी अटैकिंग हॉकी हमारी स्ट्रेंथ है और फर्स्ट क्वार्टर में 1 गोल के बाद हम थोड़े से डिफेंसिव हो गए थे। हाफ टाइम में यही बात की थी कि अगेन हमें अटैकिंग हॉकी खेलना है। Hockey India has announced a reward of rupees 3 lakh each for all the players and rupees 1.5 lakh each for all the support staff of the women team of the Jharkhand Women's Asian Champions Trophy Ranchi 2023. Agency report, Republic TV. Now, a soldier was brutally attacked while he had come to Karnataka's Belgavi to meet his friends. Parshuram Patil was attacked in front of a bar in Ganeshpur. Now, the incident took place about 3 days ago and CCTV footage of the incident has now emerged. The soldier was injured in this attack. Let's go across to Prajwal. Prajwal, pictures that have now been accessed by Republic TV do show this to be a shocking incident, obviously, because it happened in broad daylight. In fact, happened in broad daylight, and now questions are still arising as to why did the police not go ahead and register a complaint. But now more details are trickling in that there has already been a social media campaign demanding justice for the soldier as well, and it is also being stated that the police, even if the party has not registered any complaint, can go ahead and take a suo moto action and they can go ahead and register a complaint too. So far, the police have stated that they are going through these visuals and they will be nabbing the miscreants as well. But this apathy is absolutely shocking that a soldier was attacked in broad daylight as well. And thanks to the residents who have arrived immediately, after which now a social media campaign is raging on, stating that they demand justice for the soldier Parshuram Patil. All right. Prajwal, thank you for joining us with those details. Hello, Moto. Motorola, India's best 5G smartphone brand. On the last day of filing nominations, just 3 weeks to go for the Rajasthan Assembly elections, the Congress party has released its 7th list, naming 23 candidates. The Congress has denied a ticket to Chief Minister Ashok Gehlot's loyalist and Minister Mahesh Joshi from the Hawa Mahal constituency. With a few weeks to go for the Rajasthan Assembly elections, the BSP has released a list of 26 candidates for the upcoming Rajasthan elections. The BJP has expelled party leader Sandeep Dema from the primary membership of the party for his remarks on gurudwaras and mosques during an election rally in Rajasthan's Tijara. The PDP President Mehbooba Mufti has said that the statement of the former Director General of Police Dilbag Singh that the situation is normal in the Union Territory and that there has been no collateral damage in the last 4 years is regretful. The AIADMK senior leader and former Tamil Nadu Minister D. Jayakumar has ridden a bullock cart in
Vannarpettai to condemn the DMK government's delay in fulfilling poll promise to give fuel subsidies. Veteran NCP leader Eknath Khadse has suffered a heart attack in Jalgaon, as confirmed by the MP Supriya Sule. She further has said that Khadse has been admitted to a hospital and is currently undergoing treatment. A parliamentary committee responsible for reviewing 3 bills intended to replace existing criminal laws is scheduled to convene today to finalize draft reports. Vice President Jagdeep Dhankar will visit Mumbai today. During his day-long tour, the Vice President is scheduled to visit Indian Institute of Technology in Mumbai, where he will interact with students and faculty members. 4 people have died and several were injured after a bus lost its control and fell onto a railway track near Dausa Collectorate Circle. All the injured have been taken to hospital. And the Delhi NCR region continues to battle toxic air and is enveloped under a thick layer of smog, with visibility dropping as the air quality index remains under the severe category. Coming up next, the Israel-Hamas war continues to rage on, enters its 2nd month. Hours after an unannounced stop in Iraq, the U.S. Secretary of State Antony Blinken arrives in Turkey to hold key diplomatic talks. Hello, Moto. Motorola, India's best 5G smartphone brand. Powered by Uppercase Never Ordinary, A.O. Smith Water Purifiers, co-powered by Hyundai. It is safe if it's 6. Levi's for now, for a lifetime. बंद करो कान बंद करो कभी भी फट सकता हूँ पटाखा जो लग रहा हूँ दिवाली है तैयार होकर आइए कर निवेश खुद की हिम्मत में आसमां को धरती पे लाचे ठा जब भरोसे की हो बैकिंग तो निवेश का हर फैसला बन जाता है बुलंद इसीलिए हम खड़े हैं हर निवेश के लिए हर निवेशक के साथ SBI Securities. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. PC Chandra Jewelers presents Dhanteras Dhan Varsha offer. 25% off on jewelry making charges, 10% off on the value of diamonds and precious stones, 100 rupees off per gram of gold jewelry. Win attractive mega prizes. Offer valid till 11th November. Terms and conditions apply. Visit us today. PC Chandra Jewelers, a jewel of jewels. You are the one. Unmatched. Unequaled. Unbeatable. LG OLED Evo. The one and only. This Diwali, New Hawkins, good old friends, fun times again. It don't matter where it takes you, 'cause it's never gonna break you. Yeah, all you need to do is fly. The boldly stylish and comfortable Honda Elevate. You're the chase. लेकिन हमने तो एकदम सॉलिड टीएमटी बार लगाया है। मतलब लुंगटा स्टील टीएमटी बार जंग से न माने हार और मजबूती बेशुमार। लुंगटा स्टील टीएमटी बार है बिल्कुल रेडी। एक कटिंग देना। What happened to the test bag? Already tested by nature, sir. India's first certified sustainable heart trolleys, made for nature and tested by nature. Uppercase, never ordinary.
confident about the Israeli forces has it, and they are on their way. रॉकेट जो है वो यहाँ पर दागे जा रहे हैं और वो देखिए आप हमारे सिर के ऊपर से पास में जो है वो यहाँ पे मिसाइल्स गिरी है। इजराइल अब ये इंतजार कर रहा है कि जैसे ही सभी लोगों को बाहर लेकर आया जाएगा, आतंकी को खत्म करने को लेकर जो स्ट्रैटेजी इजराइल ने बनाई है उसकी तैयारी भी की जाएगी। ಇಸ್ರೇಲ್ ಹಾಗೂ ಹಮಾಸ್ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷ 12ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದೆ. ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ ದಿಟ್ಟ ವರದಿಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು, गोलियों की बौछार हमास के आतंकियों द्वारा कर दी गई। So there is an alert. There is an alert which has been given. Over 250 Music Fest attendees were massacred during the Nova Music Festival, which was one of the Hamas's first targets. Now, drone footage released by Israel's military shows the aftermath of the festival. Watch this drone footage released by the Israeli military. Over 250 people were massacred in Music Festival on 7th of October. The drone footage shows hundreds of scorched and destroyed cars moved from the Nova Music Festival. The attack on the Nova Music Festival, just 5 kilometers from the Gaza Strip, was one of the Hamas' first targets. The conflict started after Hamas terrorists from the Gaza Strip blew through Israel's highly fortified separation wall on 7th of October and attacked an open-air music festival and Israeli border communities. Scores of people were killed and men and women as well as children, including the elderly, were abducted by the Hamas terrorists. Agency report, Republic TV. Hello, Moto. Motorola, India's best 5G smartphone brand. The US Secretary of State Antony Blinken made an announced visit to Iraq and held discussions with Iraqi Prime Minister Mohammad Shia al-Sudani about the need to prevent the Israel-Hamas conflict from spreading. Hours after an unannounced stop in Iraq, the US Secretary of State arrived in Turkey in the early hours of Monday to hold a key diplomatic meeting. The number of IDF soldiers killed in the ground operation has now reached 34. The UAE Ministry of Foreign Affairs has expressed its deep concern over remarks made by the Israeli Heritage Minister, which suggested the use of a nuclear weapon in Gaza. The Israeli army has said that significant strikes have been carried out and the Gaza Strip has been cut into two. The army spokesperson Daniel Hagari said that the Israeli forces have encircled Gaza City and now there exists a South and North Gaza. Several rockets flying directly over Tel Aviv were seen intercepted by Israel's Iron Dome missile defense system just 2 hours after another barrage of rockets flew over the city. Flares and explosions have been seen in the sky above Gaza amidst Israel's increased bombardment of the enclave. Earlier, Israeli airstrikes hit 2 refugee camps in central Gaza Strip, killing scores of people. The Palestinian death toll in the war has now reached 9,700. The Mahadev betting app scam controversy snowballs. And also coming up next, Bhupesh Baghel refuses to answer specific questions, however, calls this an attempt to defame him. बंद करो कान बंद करो कभी भी फट सकता हूँ पटाखा जो लग रहा हूँ दिवाली है तैयार होकर आइए
मन चाहे 65 इंच 4K। देख मन, फिसल मत। यही चाहिए, यही लूंगा, यही चाहिए। प्राइस तो देख। तू इस बार भी नहीं लेगा ना? लूंगा ना, अगली दिवाली। अपने मन की विश को मत टालो। SBI कार्ड के फेस्टिव EMI ऑफर्स के साथ जो मन चाहे ले डालो। क्या देख लिया? कितनी सुंदर ज्वेलरी है। तो ले ले फिर। ऑनलाइन? ट्रस्टेड ब्रांड है, बिंदास ले ले। इतनी महंगी ज्वेलरी ऑनलाइन? अरे सिक्योर पेमेंट है, टेंशन की कोई बात नहीं। पक्का ना? एकदम पक्का, खूब जचेगी। WHPjewelers.com, something special for everyone. जब एक दिया जलता है पूरा घर रोशन हो जाता है। सोचिए जब आस्था के दीप जगमगाएंगे और प्रभु श्री राम के अयोध्या आगमन का उत्सव मनाएंगे तो कैसा अलौकिक दृश्य होगा जो अपने आप में एक कीर्तिमान होगा और पूरी राम नगरी डूब जाएगी दिव्य अलौकिक दीपोत्सव की जगमगाहट में। आप भी सपरिवार इस विश्व कीर्तिमान का हिस्सा बने और अपनी अयोध्या नगरी को विश्व मानचित्र पर आने का उत्सव मनाइए। भव्य दीपोत्सव उत्सव त्योहार है, ज्योतिर्मय तेज है, ये रोशनी की धार है, पाप पर प्रहार है, सच की जीत की हुंकार है, दिए से दिया जलाए, राम राज सरकार है, राम 11 नवंबर सरयू घाट पर आइए और प्रभु श्री राम की महिमा गुनगुनाइए। आपका बैंक सेविंग्स अकाउंट पे इंटरेस्ट देता है 3 महीने में एक बार। मेरा AU हर महीने। सोच बदलो और बैंक भी। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, बदलाव हमसे है। इस दिवाली पूरे मोहल्ले का मुंह मीठा होगा जब इंडियन स्वीट्स पे बाय 1 गेट 1 फ्री मिलेगा। आ गया स्मार्ट बाजार फेस्टिवल सेल 1 से 15 नवंबर। फेस्टिवल को बेस्टिवल बनाइए, स्मार्ट बाजार चलिए। हेलो मोटो। Motorola, India's best 5G smartphone brand, brings you the latest breaking news updates from across the country, only on Republic TV. Hello Moto. Motorola, India's best 5G smartphone brand. Mahadev betting scam controversy snowballs as Republic airs bombshell tape. Refuses to answer direct and specific questions, Baghel calls the case an attempt to defame. In a massive impact, government issues blocking orders against 22 illegal betting apps and websites. BJP escalates attack on Chhattisgarh Congress government over Mahadev betting app scam. As the Israel-Hamas war continues to rage on its 30th day, the IDF again asked civilians in northern Gaza to move south as they announced, says hostages are top priority. Hours after an unannounced stop in Iraq, US Secretary of State Antony Blinken arrived in Turkey in the early hours this morning to hold a key diplomatic meeting. Turkey happens to be his last stop in the region before heading to Asia. Finished meetings here in Baghdad. We started with a briefing from Ambassador Romanowski and our entire team at the embassy about the security situation. As you know, there have been a series of attacks conducted by militia directed at our personnel, both in Iraq as well as in Syria. Job number one for me is to ensure the security of our people, and so I got an update on everything we're doing to make sure that our personnel are safe and secure. I had a good, productive, candid meeting with Prime Minister al-Sudani. And there were really two areas of focus for me in that meeting. The first was to reaffirm our commitment to our partnership with Iraq. We've made tremendous progress with Iraq in recent years, particularly working with the Iraqi government
on everything from economic reform to energy independence to helping to strengthen its institutions, building respect for human rights, and not only the security aspect of the relationship, all of these different aspects. We call it 360 degrees, and we're committed to it. Now, Israel continued to launch heavy attacks on Gaza as the war with Hamas entered its 30th day on Monday. Large explosions were reported from many parts of the Gaza Strip, especially in the north. The Israel Defense Forces have indicated that they plan to send more troops to the besieged enclave in the coming hours. In a fresh video message, the IDF again asked civilians in northern Gaza to move south as they announced, "We are going to defeat Hamas." Listen in. Today marks 30 days of holding of a 9-month-old baby hostage, Kfir Bivas. My young boy just turned a year a couple of days ago. We're going to defeat Hamas. We're going to free our hostages, 240. Some of them are from all over around the world. We're going to free our hostages. It's a top priority. And we are dealing with a murderous organization that did a massacre on the 7th of October. We will not forget the massacre. I hope the world will not forget the massacre of the 7th of October. We came up in the morning, waking up, and babies were killed in their beds. And young women were burnt alive in a music festival. We will not let the world forget that. And we will not let the world forget Kfir Bivas, a baby after 30 days being held in Gaza. It's unimaginable. It's a crime against humanity. It's a war we did not start and did not seek. And now we're fighting. We're fighting to defeat Hamas, to free our hostages, and to free Gaza from Hamas. For more on this, we have our colleague Gulsim reporting live from Sderot, and to give us a situation's whole reading, what is happening right now, what the IDF is saying, and how they are planning to rescue the hostages. The current situation yesterday when the president of the Israel, Isaac Herzog, met the U.S. ambassador to Israel, he has made it amply clear that the efforts are being made to get back the hostages that are still in the captivity of terrorists of Hamas. He said that the operations will continue, but it is for the international community to ensure that those who have been abducted by the terrorists of Hamas, they are released securely, and that remains to be their prime motive, along with operations that are being carried out that will continue. And he said that the United States and the Israel will continue to work together in this war against terror, and whatever is needed will be given by the side of U.S., said the U.S. ambassador to the Israel, who joined his office yesterday only after presenting his credentials to the president of Israel. Now coming to the situation that is in the Gaza has become the war zone now, as the Israel Defense Forces are operating from there only. And yesterday, what we are getting to know, that many of the tunnel shafts and the underground infrastructure of Hamas has been decimated by the Israel Defense Forces. Also, the total count of the Israel Defense Forces soldiers who have lost their life in the ongoing war against Hamas has now risen to 348, and this increasing number is something really very concerning for the Israel Defense Forces, as the number is increasing with each passing day. Almost the casualty count is in the double digits. That is something forcing the Israel side to rethink on its strategy, because the strategy earlier was to hit via air power and the artillery and then to carry out the ground operations. But now, as they are approaching the Gaza city, the situation is becoming concerning. More and more casualties are coming to the Israel side, as the terrorists of Hamas are using their underground tunnel infrastructure, and also they are very much known to the every place of the Gaza Strip, and that's why they are giving a tough time to the Israel Defense Forces. Also, the source of Hamas supplies, it seems that they are having a bulk of supplies with them, and that's why they are giving after 30 days of the war. We are on to 31st day, and they are still targeting the Israel Defense Forces despite being cut off from the rest of the world, be it from the seaside or it from the other two sides. And also in the Rafah crossing, there is a key checks that the US and the Israel side is keeping on the supplies that are being given to the south of Hamas. So now the terrorists of Hamas, what they are trying to do is to inflict maximum damage in the one of the most densely populated areas in the world, that is in the Gaza city. And the forces are now trying to make sure
that there is no collateral damage while operating. And apart from that, also what we are getting to know yesterday, there was a statement from the Israel Defense Forces that how the hospitals are being used as the terror hub by the terrorists of Hamas. And some videos were also released by the Israel Defense Forces, and they have said that they will be acting on the terror infrastructure. So now it has to be seen how things actually pan out on the southern front of Israel. And when it speaks of the northern front, there also the Hezbollah group is trying to mount pressure. They are continuously carrying out the anti-tank guided missile attacks as well as the artillery shells into the territory of Israel, so that they can put the Israel side on the challenge of a two-front war. The Yemen side has been quiet for almost a couple of days, and now it has to be seen that how things pan out, because the US has made it amply clear that they stand with the Israel in their every thick and thin, and they remain to be key partners. So how the things will actually pan out from here, it has to be seen. But one thing that is very, very sure, that this is going to be a long, long war. Yes, absolutely. Gursimran, could you please tell us that it looks very complicated right now, because Israel is absolutely focusing on saving the hostages who have been with Hamas, who are held hostage, who have been held hostages since the 7th of October. But also at the same time, IDF is saying that they are going to destroy Hamas. Do you have any information if the IDF is planning on getting into different war tactics, maybe into close quarter battle combat action, where they can safely save the hostages? Because Israel has also said that the Hamas is being very immoralistic, as it is taking all these religious places and hospitals, and they're hiding over there. So how is actually IDF planning on extricating the hostages from these different locations? See, with the statements that are coming, be it from the Benjamin Netanyahu or the president of the Israel, Isaac Herzog, it is very clear that the Israel side is not much closer to the hostages, and they are totally relying on the negotiations and the international community pressure that we build upon the terrorists of Hamas to release the hostages. Had there been any clue or the operations underway, because yesterday there was a specific mention of a key operation that is underway. The details of that has not been shared by the Israel Defense Forces, but we were told that there is a key operation that is underway. So we expect that that is for some of the senior commanders of the Hamas that is on the target of the Israel Defense Forces, and they must have got some clues. But when it comes to the hostage situation, the Israel side is totally relying on the negotiations and the international pressure that will be mounted on the Hamas terrorists to get the hostages released. Because yesterday also President Isaac Herzog has made it amply clear that it is for the international community to put pressure on the Hamas to release the hostages, as this is the heinous of the war crimes that the Hamas terrorists are committing on the citizens of Israel, as well as many of the foreign nationals. So it seems that for now there is nothing concrete when it comes to the information or getting back the hostages. The Israel side managed to get back one hostages, that is their soldier Ori, but since then there has not been any development that has taken place on this front. The Hamas side has made it clear that there will be releasing some of the foreign nationals. And yesterday, the statement that has come from the Benjamin Netanyahu is something to watch on, because what he has said in a written statement that was issued by the Prime Minister's office, that there will be no ceasefire till the hostages are released. So you can make out that how the things are changing. This war is dynamic. This is purely a dynamic war that is not between the terrorists of Hamas and the Israel, but also the international diplomacy and the foreign policy of many countries is going to decide the fate of this war. So how things will pan out from here, that has to be seen. But yes, there has been no development for the Israel side when it comes to release of the hostages so far from the captivity of Hamas. Thank you so much, Gursimran, for such an in-depth and detailed analysis of the whole current situation which is taking place in the Israel versus Hamas war as it enters its 31st day today. We are yet to see how this whole complicated situation of extricating the hostages will happen, as Israel is again and again saying that they first want to take care of the hostages, but also want to destroy Hamas. Let's move on to our next story. After the release of a video by the BJP in which Shubham Soni, an accused in the Mahadev book betting app case, claims that he had the proof of paying rupees
508 crores to Chhattisgarh Chief Minister Bhupesh Baghel. The latter called it an attempt to spoil his image just before the assembly elections. The Chhattisgarh Chief Minister, in a post on X, formerly Twitter, alleged that BJP is employing central agencies to tarnish the image of the people-friendly Congress government of the state. Meanwhile, as the bombshell video explodes, the Congress party is now on the defensive. Listen in. ये सब पूरी तरीके से भाजपा का षड्यंत्र है। भाजपा जहां चुनाव हो रहा है, राजस्थान में भी ईडी के छापे पड़ रहे हैं, छत्तीसगढ़ में भी छापे पड़ रहे हैं, अन्य जगह भी छापे पड़ रहे हैं, तो चुनाव में उनको ईडी याद आती है और छापा याद आता है, महादेव ऐप आता है। उसके पहले क्यों नहीं किया? अगर जानकारी थी तो चुनाव के पहले करना चाहिए था। तो चुनाव के केवल दृष्टिकोण से चुनाव में फ़ायदा लेने के लिए वो ईडी का, सीबीआई का और इनकम टैक्स का दुरुपयोग कर रहे हैं। कहा कि पहले भी बहुत सारे इस तरह के साइबर क्राइम हुए हैं और सरकार ने प्रतिबंध भी लगाया, टिकटॉक का जैसे लगाया था, लेकिन यह बंदी क्यों छत्तीसगढ़ तक के लिए ही हो, पूरे देश से क्यों नहीं होनी चाहिए? एक दूसरी बात है कि इसकी पूरी जिम्मेदारी आईटी मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री की है कि कर क्या रहे थे अभी तक। जब घटना हो जाती है तब एक्शन लेते हैं, तो इसके मतलब इनकी असफलता है और कई असफलताएं इनकी हो चुकी हैं। तो अब बयान करने से क्या फ़ायदा है? क्या इनको पहले से नहीं पता था? यह मंत्रालय कर क्या रहा है आखिर में? तो घटनाएं जब हो जाती हैं, हत्याएं जब श्रीनगर में हो जाती हैं, या जो साइबर ऑनलाइन जो बहुत बड़े स्कैंडल हो जाते हैं, तब ये सरकार जगती है। तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है, कल दूसरा ऐप चालू हो जाएगा। Now, as the Mahadev betting scam continues to explode, Republic exclusively spoke to former Chhattisgarh Chief Minister Raman Singh, who has responded to the Republic sting operation, saying that the sting and the Enforcement Directorate documents prove that there are links of Bhupesh Baghel in this scam. Listen in. ये आरोप ही नहीं है, प्रमाणित दस्तावेज के साथ उनके सामने साक्ष्य पेश किए गए। 509 करोड़ का लेन देन का प्रमाण हुआ, ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड मिले हैं, 5 करोड़ का राशि और 7 करोड़ की राशि जब्त किए गए हैं। दुबई से कनेक्शन मिला है, दुबई के कनेक्शन के साथ इनके सचिवालय के 3 अधिकारियों का सीधा महादेव ऐप के जो संचालक हैं उनके साथ पैसे का ट्रांजैक्शन का प्रमाण ईडी ने प्रस्तुत किया है। इसके बाद क्या बचता है मुझे समझ में नहीं आता भूपेश बघेल का। ये अब कोई उसको रंगे हाथ कोई उसके घर में पकड़ेगा क्या? इससे ज़्यादा प्रमाण। लेकिन देखिए, मुख्यमंत्री जी तो ये कह रहे हैं कि ये सब आरोप है, इनको उनकी छवि धूमिल करने के लिए ये सब आरोप है भारतीय जनता पार्टी द्वारा। बताइए, महादेव ऐप में इतना बड़ा खुलासा पीएमएलए में, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में हुआ है, तो क्या आसमान खा गया पैसा? पूरा संरक्षण प्राप्त है छत्तीसगढ़ में ऐसे अपराधी गतिविधियों का। सट्टा, जुआ और इस अपराध में इलेक्शन के लिए फंडिंग कर रहे हैं। 509 करोड़ चुनाव के लिए भेजा है भूपेश बघेल के लिए। बल्कि आपको पता ही होगा कि हमने भी सर एक स्टिंग किया जिसमें हमें पता चला है कि काफ़ी पुलिस वाले भी शायद सम्मिलित थे, उसमें ईडी ने भी अरेस्ट किया उसके बाद, और उसके जो लिंक्स है वो मुख्यमंत्री के ऑफिस तक मतलब जा रहे हैं। ऑफिस तक मिले हैं, 3 नाम प्रकट रूप से आए हैं और तीनों लोगों की संलिप्तता साफ दिख रही है और ये अकेला एक प्रकार का महादेव ऐप की बात नहीं है। हिंदुस्तान में और कहीं ऐसा हो सकता है क्या? सरकारी खजाना का लूट इतना खुलेआम हो कि बिना हॉलमार्क के 40% शराब को बिना टैक्स पटाए सरकारी शराब दुकान से बेची जाए। क्या कोयले में इससे ज़्यादा भ्रष्टाचार दुनिया में कहीं हो सकता है? लेकिन सर मैं महादेव में ही ज़रा फोकस रखूँगा सर। एक और मतलब अब खुलासा आया है, ये ईडी की रिमांड कॉपी में भी आया है और अब एक वीडियो भी इमर्ज आ रही है कि जिसमें एक इंसान है शुभम सोनी, वो अपने आप को महादेव का ओनर बुलाता है, अपने आप को महादेव का ओनर बोलता है, और वो बोलता था कि वो असीम दास के द्वारा चीफ मिनिस्टर ऑफिस में कोई वर्मा जी है उनके द्वारा पैसे भेजता था। अब ये कितनी सच्चाई है? ये असीम के पास ही तो 5.37 करोड़ रुपए के पैसे जब्त हुए।
वही असीम दास है जिसने स्वीकार किया बघेल नामक व्यक्ति को मैं पैसा देता हूँ। वही असीम दास है जिसके दुबई के कनेक्शन मिले हैं। ये सारे प्रमाण के लिंक मिलते जा रहे हैं और प्रमाण के साथ ईडी ने ऐसी कार्रवाई नहीं की, पूरे पुख्ता जानकारी के साथ, पूरे दस्तावेज के साथ किया है और उसके बाद भी बेशर्मी की हद भूपेश बघेल ईडी पे आरोप लगा रहे हैं। इसका अंत आप कहाँ तक देखते हैं? अंत होगा, न्यायालय में जाएंगे और न्यायालय में कार्रवाई होगी और सजा होगी। A major political furor has broken out over the Mahadev betting scam, and also Republic's Sting has brought out a lot of facts where it has been allegedly said by the Enforcement Directorate that Chief Minister of Chhattisgarh, Bhupesh Baghel, was transferred an amount of 508 crores over a period of time. And as the assembly elections are slated to start tomorrow, it is to be seen how the story is going to further unfold. Let's move on to our next big breaking. Hello, Moto. Motorola, India's best 5G smartphone brand. At least 4 people died and several injured after a bus lost control and fell on railway tracks from an overbridge in Rajasthan's Dausa district. The bus was carrying more than 70 to 80 passengers. The incident took place at around 2:15 a.m. in the wee hours of the morning. The Kotwali police took all those people to the hospitals. Stay with us as we'll be back with, as the Israel-Hamas war continues to rage on its 30th day, the IDF again asked civilians in northern Gaza to move south as they announced, says hostages are top priority. Hours after an unannounced stop in Iraq, US Secretary of State Blinken arrives in Turkey to hold a key diplomatic meeting. Hello, Moto. Motorola, India's best 5G smartphone brand. बंद करो कान बंद करो, कभी भी फट सकता हूँ। पटाखा जो लग रहा हूँ। दिवाली है, तैयार होकर आइए। कर निवेश खुद की हिम्मत में आसमां को धरती पे लाचे। जब भरोसे की हो बैकिंग तो निवेश का हर फैसला बन जाता है बुलंद। इसीलिए हम खड़े हैं हर निवेश के लिए, हर निवेशक के साथ। SBI Securities. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Hi guys, happy Diwali. हर खरीदारी के साथ एक गोल्ड कॉइन मुफ्त। कल्याण ज्वेलर्स। Poems, not my thing. Are short stories your thing? Yeah. I actually have some other app. PhonePe accepts money from any app, whatever's your thing. Actually, I'll take this thing also. Yeah. Helps beat sensitivity fast. Sensodyne Rapid Relief. New Hawkins Tri-Ply Pressure Cooker. Spices don't stick. Food doesn't burn. New Hawkins Stainless Steel. Hey Alexa, start the robo. Introducing Forbes Robo Vacuum Cleaner. Daily cleaning as easy as 1, 2, 3. It dry vacuums, even wet mops, and recharges automatically. Get the Forbes Robo Vacuum Cleaner from Eureka Forbes.
And we have a big breaking news in the Punjab government has now issued an advisory to wear masks to save themselves from air pollution from farm fires. The health department has asked children, the elderly and those with health issues to stay indoors as much as possible, especially in crowded areas and markets. They have also been advised to avoid early morning walks and exercises in the smog. The AQI, the Air Quality Index of Delhi and surrounding areas, has become a major cause for concern as it has been at least 4 to 5 days since the AQI entered in the severe category as defined by GRAP. These categories are generally defined by the GRAP and as of now we are currently in the severe category of air in Delhi and in surrounding areas. Reportedly, Punjab also, the stubble burning is one of the major causes of this bad quality of AQI. For more on this, we have our colleague Amandeep from Punjab who is going to tell us more about the AQI situation and also the government's decision. Amandeep, could you please tell me is it true that at least more than 3,000 fires, stubble burning cases had taken place in a single day, and now the government of Punjab has issued these basic guidelines to how to survive this very bad air quality that has resulted? Well, absolutely, Nitika. This is the reality that Punjab is facing this way from the stubble burning cases. In last 24 hours, 3,230 cases has been reported in the entire Punjab, and the total tally has been climbed to more than 17,000 cases in the entire season. And though this is a very less as compared to the last year, but yes, this is contributing in a huge amount, impacting the air quality in Delhi and even in Punjab itself. And that is the reason Punjab government has issued the guidelines and advisories to the normal people to avoid certain kind of circumstances. They have asked to wear the mask, and in fact the children and even elderly people and also the people who are suffering from the diabetes and other diseases, they are asked to stay inside their houses and in fact avoid to going in the crowded markets and even wear the mask and close the doors and the windows of their houses so that at least the smog should not enter. And apart from that, a very sensitive advisory has also been issued that the morning walkers should avoid morning walk early in the morning, and even the walk can be done after the sunrise as well. So this is the advisory in the wake of stubble burning cases and the dipping of air quality index in Punjab itself. That is also impacting to the Delhi air pollution also, and even the Punjab government is also trying to control the farm fire cases in the entire Punjab. Several teams has been dispatched on the field to verify the stubble burning cases and also to take the action against the farmers who are actually involved into the stubble burning cases. Yes. Amandeep, thank you so much. In fact, it's concerning to see that you are there without wearing a mask as the air quality dips to a new low after all the stubble burning that has taken place recently, despite all the warnings. Stay with us as we will be back with Israel-Hamas war continues to rage on its 30th day. The IDF again asked civilians in northern Gaza to move south as they announced, says hostages are top priority. Powered by Uppercase Never Ordinary, A.O. Smith Water Purifiers, co-powered by Hyundai. It is safe if it's 6. Levi's for now, for a lifetime. बंद करो कान बंद करो कभी भी फट सकता हूँ पटाखा जो लग रहा हूँ दिवाली है तैयार होकर आइए मन चाहे 65 इंच 4K देख मन फिसल मत यही चाहिए यही लूंगा यही चाहिए तो देख तू इस बार भी नहीं लेगा ना लूंगा ना
अगली दिवाली। अपने मन की विश को मत टालो। SBI कार्ड के फेस्टिव EMI ऑफर्स के साथ जो मन चाहे ले डालो। You are the one. Unmatched, unequaled, unbeatable. LG OLED Evo, the one and only. RP Sanjeev Goenka Group, growing legacies over 200 years. Just another Virtus on a long drive to get coffee. Spreading goosebumps, taking on turns, and what's around the turn. No drive is just another drive when you're in a Virtus. Volkswagen. वेलकम टू AU वीडियो बैंकिंग। यहाँ बैंक के सारे काम हो सकते हैं। सोच बदलो और बैंक भी। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, बदलाव हमसे है। Hello, Moto. Motorola, India's best 5G smartphone brand, brings you the latest breaking news update from across the country only on Republic TV. पतंगे रस्सी दूसरे खा रहे हो रहा हूँ ना, इसके साथ बड़े बड़े लोग हैं, यहाँ तक कि यहाँ के कोई नेता नहीं छुड़ा, बड़े बड़े लोग भाई, यहाँ कितने पुलिस वाले सस्पेंड हो गए इस चक्कर में। एक विधायक भी पैसा मांग रहे सीधा। मुँह खोल गया। पैसे की डिमांड किसके थ्रू करते हैं ये लोग? और कुछ जैसे कि यहाँ जो पकड़ाए हैं सतीश चंद्राकर और हाँ ASI क्या वर्मा उससे विनोद वर्मा का नाम ले दिया कि यहाँ कभी बारीक नाम लिया था नहीं हो रहे हैं। Hello, Moto. Motorola, India's best 5G smartphone brand. Good morning and welcome. And here's a quick recap of our top headlines. The Mahadev betting scam controversy snowballs as Republic TV airs bombshell tapes. Refuses to answer direct questions and specific ones. Baghel, however, says the case is an attempt to defame him. In a massive impact, the government issues blocking orders against 22 illegal betting apps and websites. The BJP escalates its attack on the Chhattisgarh Congress government over the Mahadev app. And as the Israel-Hamas war continues to rage on and enters its second month, the IDF asks against civilians to move towards South Gaza. Now, in the Mahua Moitra cash for query case, the Ethics Committee of the Lok Sabha will be meeting on the 9th of November to consider and adopt its draft report in connection with the alleged cash for query case that has been levelled against the TMC MP Mahua Moitra by the BJP's Nishikant Dubey. So, we are given to understand that Mahua Moitra's case, the Ethics Committee is likely to come out with a draft report. Do remember that the last meeting of the Ethics Committee had ended with Moitra as well as other opposition leaders essentially storming out of the meeting room. Mahua Moitra had said that there were several questions that were asked of her that seemed to be extremely personal in nature. This, of course, has been
has been refuted by the BJP's members who were also on the committee, saying that all the questions that were asked of Moitro were with regards to the case that is being investigated. So the ethics panel, of course, is now expected to come out and give out its interim report at least on the 9th of November. Earlier on, the ethics panel had, of course, examined the allegations that have been made by Nishikant Dubey in what is now being called the bribe for questions scandal, where Nishikant Dubey has alleged that Mahua Moitro was paid by the Hiranandani group to ask certain questions in Parliament, and that she had given illegal access to her account to the Hiranandani group in Dubai, and this access was given about 47 times is what the allegation is by Nishikant Dubey. Anuj joins us on the phone line right now and has more details on this. Anuj, good morning. Anuj, we are learning that it's on the 10th of November that the Ethics Committee is likely to come out at least with a draft report. Tell us more, please. Well, this is going to be on 9th of November now, let me tell you, and this is going to happen at 12. At 12 p.m., this is going to be the meeting when Ethics Committee will be meeting again. As of till now, we have seen the war of words. We have seen how Mahua was criticizing the chairman of the Ethics Committee and whatsoever has happened till now. But now this is going to be more important that if something is going to happen, if the action is going to be taken, then this is going to be decided in that very meeting, which is going to happen on 9th at 12 p.m. here in the National Capital itself. Earlier, we have seen the meeting, but there were allegations which was put in by Mahua herself. And now this is going to be important when the chairman and the other members of the Ethics Committee will be chairing this meeting. And again, Mahua will be summoned. She will be questioned. So we are just waiting and we'll watch what exactly is going to come out from that very meeting. But this is going to happen on 9th now. Earlier this was scheduled on 7th, but now this is going to happen on 9th of November. On 9th of November at 12 p.m. in the Parliament itself, the Ethics Committee will be meeting and further things will be taken ahead. The investigation, and as of till now, if you talk about that very letter which was written by Nishikant Dubey and the lawyer himself, they were earlier questioned, let me remind you, and later it was none other but Mahua Mitra. Mahua Mitra herself, who was summoned, who was called by Ethics Committee, and now this is going to be another meeting where it is going to be decided what exactly is going to be the next course of action. Yes. Now, Anuj, just to clarify, so this meeting on the 9th, are they going to examine Mahua Moitro again? Because what we were being told earlier was that she was questioned in the last meeting, and it's only, as in she gave her deposition first, and when she was questioned that she stormed out of the meeting. So is she going to be questioned again, or is the ethics panel just going to come out with its own report? Well, that is something what we are waiting for from the Ethics Committee to get it confirmed. But yes, the meeting is going to happen. This is most likely that Mahua will be summoned, and she can also be asked again, as we have seen it last time. Earlier it was a letter which was given. She did not attend it, but later when she attended, after that we have seen the reaction. But now this is not confirmed yet whether Mahua is going to be part of that meeting. But that meeting is going to discuss the outcome of the same. Till now the investigation has been done, the questioning has been done. It was none other but I beg your pardon, the MP of Bharatiya Janata Party, Nishikant Dubey, who was earlier called in. The lawyer was first there. Later, this was on the very same day, this was Nishikant Dubey who was questioned. So the questioning and the investigation by the Ethics Committee has been already done. So this is also expected that something may come out from that very meeting, which was earlier scheduled on 7th, and now it is going to happen on 9th of November at 12 p.m. So the investigation, the discussion till now has been done, and if we talk about the ramification of the same, we have seen Mahua, how she came out with the allegation, and she targeted the chairman of the Ethics Committee, coming out with the allegations also. So that is something what we are waiting for, that what exactly is going to be the result, or if anything is going to come out, like the outcome, the final outcome, if any action is going to be taken by the Ethics Committee, or there will be more questioning. That is something what we are waiting for, the update, if Mahua is going to be there, or Nishikant Dubey or the lawyer, or they are going to
be questioned again by the ethics committee, or someone else is going to be questioned. That is something what we are waiting for. But the meeting which was scheduled on 7th is now going to happen on 9th. This is going to happen in the national capital, in the parliament itself. The ethics committee will be meeting at 12 p.m. Yes. All right. So Anuj bringing us those details, reporting on the ethics panel's next meeting that is slated for the 9th of November. Thank you, Anuj, for joining us. Now, what we are still yet to gain more clarification on is whether Mahua Moitra is going to be given another chance to answer questions posed by the ethics committee. Do remember, during the last meeting, she and several other opposition leaders had stormed out of the meeting, alleging that inappropriate questions were being asked of Mahua Moitra. Now, at least 4 people have died and several have been injured after a bus lost control and fell on the railway tracks from an overbridge in Rajasthan's Dausa district. The bus was carrying more than 80 passengers. The incident took place at 2:15 last morning. Here's more. Four people were killed and at least 34 others were injured after a bus carrying more than 70 passengers lost control and fell on a railway track near Dausa Collectorate Circle in Rajasthan. The bus was going from Haridwar to Jaipur when it overturned near the Collectorate intersection in Dausa. There were around 70 to 80 passengers in the bus. The incident took place on Sunday night and all the injured were taken to the hospital by the police in about a dozen ambulances. Due to critical conditions, 9 passengers were referred to Jaipur. Railway operations were also affected for some time as a result of accident, and train services also remained halted for several hours. The train going from Jaipur to Delhi was stopped from some time as a bus was being carried off the tracks with the help of a crane. A case has been registered and further investigation is underway. Agency report, Republic TV. Now, even as air pollution in Delhi remains a grave concern, the Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal has called for a high-level meeting at the Delhi Secretariat this afternoon. This even as the matter has now reached the top court. Do remember that in several places, Delhi's AQI remains in the very severe category, and the CJI, we are told, has said that this the pollution control is a policy matter. In the past years also, we have seen the matter reach the Delhi High Court and the Apex Court, but no permanent solutions have come out. The overall air quality in Delhi, of course, continues to remain in the critical category. Monday morning, pollution levels in Delhi are ranging at about 400 in several locations in Delhi. Today, the Delhi government has called for a meeting at 12 o'clock this afternoon. That will be attended by the Chief Minister as well as the Environment Minister. And the state government is likely to unveil a host of new measures. Right now, primary schools in the National Capital region have been shut for the next 1 week. And work from home has been recommended to several private companies and also to government employees. Now, this afternoon, the meeting, of course, will look at more measures. Under the final stage of the pollution control plan, the state government has suggested a work-from-home policy for about 50% of the government staff till the next orders come out. Delhi is continuing to record AQI of about 400 in several locations in and around the National Capital region. Pollution levels in Noida also remain around 400. And there is concern over this, and construction, of course, has been halted in several areas. इस साल दिल्ली में 8 सालों में सबसे बेहतर हवा थी। आंकड़े बताते हैं कि दिल्ली में इस बार 31% पोल्यूशन कम हुआ।
केंद्र सरकार को भी ये स्वीकारना पड़ा अपने इकोनॉमिक सर्वे जो पार्लियामेंट में टेबल किया था 2022-2023 का, कि दिल्ली में इस बार 8 सालों में सबसे बेहतर हवा थी। सीएक्यूएम के आंकड़े भी दिखाते हैं कि पंजाब में इस बार अभी तक पिछले साल के मुकाबले 50 to 67% पराली कम जली है। जो पराली पंजाब में अभी जल रही है वो यहां से 500 किलोमीटर दूर है, और जो पराली हरियाणा में जल रही है वो यहां से करीब 100 किलोमीटर दूर है। दिल्ली के सबसे करीब राज्य हरियाणा है, तो जरूरी है कि समीक्षा की जानी चाहिए कि 2014 से खट्टर सरकार ने प्रदूषण को लेकर हरियाणा में क्या स्टेप्स उठाए। कि अभी जो ठहराव दिल्ली में पिछले 4-5 दिनों से देखा जा रहा है मौसम का, हवा की गति का, वो ठहराव अभी भी बना हुआ है, थोड़ा 19-20 हो रहा है। अगर कल की तुलना में देखें तो आज थोड़ा सा एक्यूआई में सुधार देखा जा रहा है, लेकिन अभी भी गंभीर श्रेणी में ही जो है स्थिति बनी हुई है। उसको देखते हुए दिल्ली के अंदर जो सोर्सेज हैं खासतौर से जिससे प्रदूषण पैदा हो रहा है, गाड़ियों का प्रदूषण, डस्ट का पोल्यूशन, बायोमास बर्निंग का पोल्यूशन, उसको लेकर के सरकार जो है आज 12 बजे मुख्यमंत्री जी ने बैठक बुलाई है, जिसमें और जो है कैसे सख्ती के साथ प्रदूषण के जो बढ़ने वाले जो सोर्स हैं उन पर कंट्रोल किया जाए, उसका आज निर्णय लिया जाएगा, जिससे दिल्ली के इस प्रदूषण को जो विपरीत मौसम में भी कंट्रोल किया जा सके। दिल्ली की आबो हवा आज फिर से जहरीली है। फिर से एक बार लगातार दिल्ली का एक्यूआई सीवियर कैटेगरी में है। फिर से एक बार दिल्ली का एक्यूआई कहीं 500, कहीं 600, कहीं 700 पार हो चुका है, और कहीं पर तो 999 तक जा रहा है। उसके आगे तो मीटर बढ़ता भी नहीं है। दिल्ली का एक्यूआई जो है वो 5 सालों में सबसे खराब स्थिति में आप पहुंचा है। ये इसलिए हुआ है, दिल्ली आज गैस चेंबर इसलिए बनी है क्योंकि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने पिछले 8-9 वर्षों में केवल प्रदूषित राजनीति की है, दोषारोपण की राजनीति की है। सत्ता में आने से पहले पंजाब में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कहते थे कि दिल्ली की प्रदूषण का मुख्य कारण, और आज जो प्रदूषण की स्थिति दिल्ली में बनी हुई है उसके लिए जो मुख्य कारण है वो प्रदूषण के दिल्ली के भीतर ही है। रोड डस्ट जो लगातार बढ़ता जा रहा है उसको कर्व करने के लिए आज अरविंद केजरीवाल जी ने वैक्यूम क्लीनिंग करवाई, सड़कों की स्वीपिंग करवाई, मैकेनाइज स्वीपिंग करवाई। कौन रोक रहा था उन्हें मैकेनाइज स्वीपिंग कराने से? एमसीडी तो आज उनके पास है। जो दिल्ली में व्हीक्यूलर पोल्यूशन लगातार बढ़ता जा रहा है उसको कर्व करने के लिए क्या अरविंद केजरीवाल ने 11,000 डीटीसी बसेस खरीदी? कौन रोक रहा था उन्हें? भ्रष्टाचार कर दिया उसमें। आज जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल ने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन जो पोल्यूशन होता है, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन होता है, बायोमास बर्निंग से पोल्यूशन होता है, उस पर क्या कार्रवाई की और लॉन्ग टर्म क्या उस पर सोल्यूशन दिया, कोई उसका जवाब नहीं है। केवल दोष लगाना कभी। Hello, Moto. Motorola, India's best 5G smartphone brand. On the last day of filing nomination papers, the Congress party has released its 7th list for Rajasthan, naming 23 candidates. The Congress has denied a ticket to the Chief Minister Ashok Gehlot's loyalist and Minister Mahesh Joshi from the Hawa Mahal constituency. With just a few weeks left to go for the Rajasthan Assembly elections, the BSP has released a list of 26 candidates for the upcoming Rajasthan elections. The BJP has expelled party leader Sandeep Dema from the primary membership of the party for his remarks on gurudwaras and mosques during an election rally in Rajasthan's Tijara. The PDP President Mehbooba Mufti has said that the statement of the former Director General of Police Dilbag Singh that the situation is normal in the Union Territory and that there has been no collateral damage in the last 4 years is regretful. AIADMK's senior leader and former Tamil Nadu Minister D. Jayakumar rode a bullock cart in Vanerapettai to condemn the DMK government's delay in fulfilling poll promises to give fuel subsidies. Veteran NCP leader Eknath Khadse has suffered a heart attack in Jalgaon, as confirmed by Supriya Sule. She said that Khadse has been admitted to a hospital and is currently undergoing treatment. A
A parliamentary committee responsible for reviewing 3 bills intended to replace existing criminal laws is scheduled to convene today to finalize draft reports. Vice President Jagdeep Dhankar will visit Mumbai. During his day-long visit, he's scheduled to visit the IIT Bombay, where he will interact with students and faculty members. Now, Israel's army has said that Hamas is using hospitals in Gaza as bases to launch its operations in a systematic attempt to conceal its activities. As Israel steps up attack on Hamas infrastructure, it is using its Apache fighter jets. Gursimran Singh sent us this report. The operations have been intensified near the Israel-Gaza border, and now the Apache attack helicopters have been swung into the action. I will request Vijay Surendra Rawat if we can zoom and we can show you that how the aerial recce is being conducted at the point targets of the Israel Defense Forces. This is the same area from where the terrorists of Hamas barged into the territory of Israel via sea route. This is the Zikkim beach from where the terrorists barged into the territory, very close to the Ashkelon, and now the security has been beefed up here on the highways. The Apache attack helicopters were first used in action in the past 48 hours due to the situation that rose, especially reason being that there were the casualties. The number was crossing the double digit for the first time in a single day, as the terrorists of Hamas, using the forts that they have built, were trying to mount the pressure, and now multiple attack helicopters Apache have been pressed into the action. The reason being that the Israel Defense Forces have made it amply clear that there won't be any collateral damage anymore. They want to make it very sure that there is no collateral damage and they can secure their areas as well as the places where the terror hideouts are. First with the airstrikes, and then followed by it will remain the ground operations. There have been more than 3,500 reserve forces that have been pushed into action, and I'll request Vijay Surendra Rawat to kindly focus on the Apache attack helicopters that have now been pushed into the attacks. They are carrying out the surveillance very close to the border of Israel and the Hamas territory. The recce first being conducted, and then it will be the aerial strikes. It was 48 hours prior to this that attack that the helicopters were used to carry out the attack in the territory of Hamas, and now they are carrying out the aerial recce before carrying out the attacks on the areas of Hamas. We continue to report from the ground zero as Israel's attack on the terror infrastructure of Hamas continues inside the Gaza Strip. Coming up next, we get you the latest on the Mahadev betting app scam controversy. And Bhupesh Baghel refuses to answer direct and specific questions, however, calls it an attempt to defame him. Hello, Moto. Motorola, India's best 5G smartphone brand. बंद करो कान बंद करो कभी भी फट सकता हूँ पटाखा जो लग रहा हूँ दिवाली है तैयार होकर आइए मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। लेकिन हमने तो एकदम सॉलिड टीएमटी बार लगाया है। मतलब रुंगटा स्टील टीएमटी बार, जंग से न माने हार और मजबूती बेशुमार। रुंगटा स्टील टीएमटी बार है बिल्कुल रेडी। Helps beat sensitivity fast. Sensodyne Rapid Relief. Hi guys, happy Diwali.
खरीदारी के साथ एक गोल्ड कॉइन मुफ्त। कल्याण ज्वेलर्स। Motorola has been recognized as the best 5G smartphone brand in India in 2023 for its wide portfolio of industry-leading 5G smartphones cutting across affordable as well as premium price points. Motorola 5G smartphones are equipped with up to 13 5G bands covering all Indian and global bands for seamless connectivity. They also support super fast speeds with Motorola's advanced 5G technology and come with the best-in-class features and security that enables them to give the perfect 5G experience. So if you're thinking of buying a 5G smartphone, buy a Motorola smartphone. With 49 studios, Woodville has revolutionized the Indian modular kitchen industry by bringing the best of Europe for Indian homes. Visit the nearest store for a new design and a quote. Hello, Moto. Motorola, India's best 5G smartphone brand. And here's a quick alert coming in. According to the Central Pollution Control Board, the air quality in Delhi, remains in the very severe category. AQI readings include 466 from RK Puram, 402 from the ITO area, 471 from Patparganj, 488 from New Moti Bagh. Speaking on this, the medical director of the LNJP hospital, Dr. Suresh Kumar, has said that this is a medical emergency and that the hospital is receiving 25 to 30 patients per day. He's also urged people to wear masks. देखिए, एयर क्वालिटी इंडेक्स न केवल दिल्ली का बल्कि पूरे एनसीआर रीजन का बहुत ज़्यादा ख़राब है, सीवियर कैटेगरी में आ गया है। और सही मायने में देखें तो ये एक मेडिकल इमरजेंसी है जिसमें काफ़ी लोगों को सांस में तकलीफ़ हो रही है, आंखों में जलन हो रहा है। वो पेशेंट जिनको कि पहले से बीमारियां हैं, तो 25 से 30 मरीज़ सांस की तकलीफ़ के साथ पिछले 24 घंटे में आए हैं। और उसमें कुछ बच्चे भी हैं, गर्भवती महिलाएं हैं और बुज़ुर्ग हैं 60 साल से ऊपर की उम्र के जिनको कि सांस में तकलीफ़ हो रही है और वो हमारे यहाँ पे एडमिट है। Time for a short break. On the other side, we get you details of the Mahadev betting app controversy. And Bhupesh Baghel refuses to answer direct and specific questions. बंद करो, कान बंद करो, कभी भी फट सकता हूँ। पटाखा जो लग रहा हूँ। दिवाली है, तैयार होकर आइए। मन चाहे 65 इंच 4K। देख मन, फिसल मत। यही चाहिए, यही लूंगा, यही चाहिए। तो देख, तू इस बार भी नहीं लेगा ना? लूंगा ना, अगली दिवाली। अपने मन की विश को मत टालो। SBI कार्ड के फेस्टिव EMI ऑफर्स के साथ जो मन चाहे ले डालो। यजमान, हमारे पिताजी आपके पिताजी के पंडित थे, तो इस हिसाब से हम आपके पंडित हुए। आप लिस्ट बनाइए। लिखो लिखो लिखो। होल्ड ऑन जजमान, खुल जा। ये लीजिए पूजा का हर पात्र का समाधान WHPjewelers.com। सबके लिए कुछ खास। मिश्रा जी, दिवाली का एक्स्ट्रा बोनस मिल गया क्या आपको? नहीं मैडम सर। क्यों? आपकी शाही दावत देखकर तो लगता है। वो क्या है ना मैडम सर, इस बार थोड़ा एक्स्ट्रा इनकम हो गई। मिश्रा जी, स्मार्ट बाजार में ग्रोसरी इतने कम दाम में मिल गई तो हो गई ना एक्स्ट्रा इनकम। मिश्रा जी, मीठा। चलिए, आ गया फेस्टिवल सेल 1 से 15 नवंबर। इस दिवाली ग्रोसरी सबसे कम दाम में चाहिए। स्मार्ट बाजार चलिए।
India's first certified sustainable hard trolleys, made for nature and tested by nature. Uppercase, never ordinary. Dinosaur Kanda. Oh, damn! World War I की antique gun. Oh, damn! फिर दीवार तोड़ो, फिर बनाओ. बर्जर डैम स्टॉप लगाओ. इसका नैनो सिलिकॉन टेक्नोलॉजी चढ़ा वाटर प्रूफिंग का कवर जो बिना दीवार तोड़े डैम रिपेयर करे. बर्जर डैम स्टॉप. नो झंझट, डैम स्टॉप फटाफट. बोल्टास बैको ये 30 दिन तक फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को फ्रेश रखता है. और तुमने मान लिया. लेकिन वैसे भी 30 दिन की सब्जियां कौन खाता है? तू. वोल्टास बेको डुअल कूलिंग रेफ्रिजरेटर की स्टोर फ्रेश टेक्नोलॉजी से सब्जियां 30 दिन तक फ्रेश रह सकती हैं. Voltas Beko, tested by real moms. Hello, Moto. Motorola, India's best 5G smartphone brand, brings you the latest breaking news update from across the country only on Republic TV. Hello, Moto. Motorola, India's best 5G smartphone And here's a brand. recap of our top headlines at 11:30. The Mahadev betting controversy snowballs as Republic TV airs some tapes. Bhupesh Baghel refuses to answer direct and specific questions, however, says that the case is an attempt to defame him. In a huge impact, the government issues blocking orders against 22 illegal betting apps and websites. The BJP escalates its attack on the Chhattisgarh government over the Mahadev betting app scam. As the Israel-Hamas war continues to rage on and enters its second month, the IDF asks civilians to move away from the north of Gaza. Now, after the release of a video by the BJP in which Shubham Soni, an accused in the Mahadev book betting app case, claims that he had the proof of paying 508 crores to the Chhattisgarh Chief Minister Bhupesh Baghel, the latter called it an attempt to spoil his image just before the assembly elections. Now, the Chhattisgarh Chief Minister, in a post on X, has alleged that the BJP is employing central agencies to tarnish the image of the people-friendly Congress government in the state. Meanwhile, as the video was released, the Congress party is now on the defensive. ये सब पूरी तरीके से भाजपा का षड्यंत्र है. भाजपा जहां चुनाव हो रहा है, राजस्थान में भी ईडी के छापे पड़ रहे हैं, छत्तीसगढ़ में भी छापे पड़ रहे हैं, अन्य जगह भी छापे पड़ रहे हैं. तो चुनाव में उनको ईडी याद आती है और छापा याद आता है, महादेव ऐप आता है. उसके पहले क्यों नहीं किया? अगर जानकारी थी तो चुनाव के पहले करना चाहिए था. तो चुनाव के केवल दृष्टिकोण से चुनाव में फ़ायदा लेने के लिए वो ईडी का, सीबीआई का और इनकम टैक्स का दुरुपयोग कर रहे हैं. कि पहले भी बहुत सारे इस तरह के साइबर क्राइम हुए हैं और सरकार ने प्रतिबंध भी लगाया, टिकटॉक का जैसे लगाया था. लेकिन यह बंदी क्यों छत्तीसगढ़ तक के लिए हो, पूरे देश से क्यों नहीं होनी चाहिए? एक दूसरी बात है कि इसकी पूरी जिम्मेदारी आईटी मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री की है कि कर क्या रहे थे अभी तक. जब घटना हो जाती है तब एक्शन लेते हैं. तो इसके मतलब इनकी असफलता है और कई असफलताएं इनकी हो चुकी हैं. तो अब बयान करने से क्या फ़ायदा है? क्या इनको पहले से नहीं पता था? यह मंत्रालय कर क्या रहा है आखिर में? घटनाएं जब हो जाती हैं, हत्याएं जब श्रीनगर में हो जाती हैं, या जो साइबर ऑनलाइन जो बहुत बड़े स्कैंडल हो जाते हैं, तब ये सरकार जगती है. तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है. कल दूसरा ऐप चालू हो जाएगा. All right, now the Congress party, of course, is trying to defend itself, even as an accused in the alleged Mahadev app case has claimed that the Chhattisgarh Chief Minister Bhupesh Baghel had advised him to go to Dubai. Now, the case, of course, involves allegations of money laundering and the use of illegal funds during election against Bhupesh Baghel. Let's go across to what Raman Singh has said over this entire controversy.
आरोप ही नहीं है, प्रमाणित दस्तावेज के साथ उनके सामने साक्ष्य पेश किए गए। 509 करोड़ का लेन देन का प्रमाण हुआ, ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड मिले हैं। 5 करोड़ का राशि और 7 करोड़ की राशि जब्त किए गए हैं। दुबई से कनेक्शन मिला है। दुबई के कनेक्शन के साथ इनके सचिवालय के 3 अधिकारियों का सीधा महादेव ऐप के जो संचालक हैं उनके साथ पैसे का ट्रांजैक्शन का प्रमाण ईडी ने प्रस्तुत किया है। इसके बाद क्या बचता है मुझे समझ में नहीं आता भूपेश बघेल का। ये अब कोई उसको रंगे हाथ कोई उसके घर में पकड़ेगा क्या? इससे ज़्यादा प्रमाण। लेकिन देखिए मुख्यमंत्री जी तो ये कह रहे हैं कि ये सब आरोप है, इनको उनकी छवि धूमिल करने के लिए ये सब आरोप है भारतीय जनता पार्टी द्वारा। बताइए। महादेव ऐप में इतना बड़ा खुलासा पीएमएलए में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में हुआ है तो क्या आसमान खा गया पैसा? पूरा संरक्षण प्राप्त है छत्तीसगढ़ में ऐसे अपराधी गतिविधियों का। सट्टा जुआ और इस अपराध में इलेक्शन के लिए फंडिंग कर रहे हैं। 509 करोड़ चुनाव के लिए भेजा है भूपेश बघेल के लिए। बल्कि आपको पता ही होगा कि हमने भी सर एक स्टिंग किया जिसमें हमें पता चला है कि काफ़ी पुलिस वाले भी शायद सम्मिलित हुए, उसमें ईडी ने भी अरेस्ट किया उसके बाद, और उसके जो लिंक्स है वो मुख्यमंत्री के ऑफिस तक मतलब जा रहे हैं। ऑफिस तक मिले हैं। 3 नाम प्रकट रूप से आए हैं और ये तीनों लोगों की संलिप्तता साफ दिख रही है और ये अकेला एक प्रकार का महादेव ऐप की बात नहीं है। हिंदुस्तान में और कहीं ऐसा हो सकता है क्या? सरकारी खजाना का लूट इतना खुलेआम हो कि बिना हॉलमार्क के 40% शराब को बिना टैक्स पटाए सरकारी शराब दुकान से बेची जाए। क्या कोयले में इससे ज़्यादा भ्रष्टाचार दुनिया में कहीं हो सकता है? लेकिन सर मैं महादेव में ही ज़रा फोकस रखूँगा सर। एक और मतलब अब खुलासा आया है, ये ईडी की रिमांड कॉपी में भी आया है और अब एक वीडियो भी इमर्ज आ रही है कि जिसमें एक इंसान है शुभम सोनी, वो अपने आप को महादेव का ओनर बुलाता है, अपने आप को महादेव का ओनर बोलता है और वो बोलता था कि वो असीम दास के द्वारा चीफ मिनिस्टर ऑफिस में कोई वर्मा जी है उनके द्वारा पैसे भेजता था। अब ये कितनी सच्चाई है? ये असीम के पास ही तो 5.37 करोड़ रुपए के पैसे जब्त हुए। वही असीम दास है जिसने स्वीकार किया बघेल नामक व्यक्ति को मैं पैसा देता। वही असीम दास है जिसके दुबई के कनेक्शन मिले हैं। ये सारे प्रमाण के लिंक मिलते जा रहे हैं और प्रमाण के साथ ईडी ने ऐसी कार्रवाई नहीं की, पूरे पुख्ता जानकारी के साथ पूरे दस्तावेज के साथ किया है और उसके बाद भी बेशर्मी की हद भूपेश बघेल ईडी पे आरोप लगा रहे हैं। इसका अंत आप कहाँ तक देखते हैं? अंत होगा, न्यायालय में जाएंगे और न्यायालय में कार्रवाई होगी और सजा होगी। Now, as the case, of course, explodes, let's go across to Harsha, who has more details on this. Harsha, give us a sense of how the Congress plans to go forward on this, because obviously the allegations that have come out against the Chief Minister of Chhattisgarh are damning. Rightly stated, Nupur. Now the CM of Chhattisgarh, Bhupesh Baghel, is refuting all the allegations by stating that just before the elections, there is the tactics being used by the central government to tarnish the image of the CM of Chhattisgarh, Bhupesh Baghel, and therefore the ED just before elections have just arrested the unknown person, and because of a cash courier, just because of cash courier guy allegation, the allegations are leveled against Bhupesh Baghel that he is involved directly in Mahadev betting scam. Moreover, Bhupesh Baghel is also saying that why not catch and arrest the main owners of Mahadev betting scam who are sitting in Dubai. But to tell you, in Republic Sting operation as well, we have got to look how from top to bottom, each and every official, politicians, policemen, and the bureaucrats who are directly linked with the house, the CM house, are involved in this huge nexus of Mahadev betting scam. The scam which started from 2020 and now has huge number of people are involved in this Mahadev betting scam. It is a robust module. It is a setup where most of the youths, the panel operator, the localites, the medical shop owners, the jewelry shop owners, everyone is playing through Mahadev betting app by taking the panel, and how huge sum of money is directly reaching to CM Bhupesh Baghel. In our sting operation, the uncle of Saurabh Chandrakar also revealed how huge money was demanded
from Mahadev betting app operators, promoters by CM Bhupesh Baghel. And it was not a sum only 500 or 100 crores in our operation. The uncle has clearly stated it was more than 2,000 crore. The amount which was separately asked by the CM house from the promoters of Mahadev betting scam. So now we have to wait and watch for the investigation in which direction ED will investigate, because the loopholes are clearly stating that there is a huge network and people from Raipur to Delhi, the Congress High Command, are involved in this entire Mahadev betting scam. So now the name has come, and the ED and in the ED press release, it has also been stated that how CM Bhupesh Baghel is directly involved. So we have to wait and watch in which direction the ED investigation will go. Back to you, Rapur. All right. Thank you very much for joining us on the broadcast. So as Harsha is pointing out, of course, the Congress party is still defending itself on this, saying that these are allegations that have been levelled because elections are nearby. All right, the Congress says that central government is using its agencies against them because the good governance track record of the Congress in Chhattisgarh. Now, these allegations have come even as a video was released which seems to suggest that the owner of the app, who says he's the one who owns the app, had said that he paid about 500 crore rupees to the Chief Minister. Now, Madras High Court has slammed the Tamil Nadu police for failing to take action against Ministers Udayanidhi Stalin and PK Sekhar Babu for making inflammatory comments on Sanatan Dharma. Justice G. Jayachandran stated that only because of inaction of police, now petitions are being filed for permission for conducting meetings against the Dravidian ideology. Police refrained from action against the ministers and members of the ruling party. Let's go across to Varshini, who has more details. All right, we'll go across to her in just a bit. But the Madras High Court has slammed the Tamil Nadu police for failing to act against Ministers Udayanidhi Stalin and PK Sekhar Babu. This is over what they say are defamatory and inflammatory comments on Sanatan Dharma. The Justice G. Jayachandran has said that only because of inaction of the police, petitions before the court are now piling up. The court has come down severely, saying that this is dereliction of duty by the police as far as they are concerned, and the Tamil Nadu police should have acted on these inflammatory comments. Let me go across to Varshini. Varshini, tell us more, please. All right, so we'll try and get her back in just a bit. There seems to be some audio trouble over there, but the court essentially pulling up the Tamil Nadu cops and saying that the police should have acted against people who made these inflammatory comments, and the court sees this as a dereliction of duty. Let's try and go across back to Varshini on the phone line. Varshini, please tell us more about what the court has said. Well, you see, this was in a case where a petition was filed by a person from Chennai called Mahesh Karthikeyan, where he sought the court's permission to conduct a conference to eradicate Dravidian ideology. And this, during this hearing, Justice G. Jayachandran, who heard this, has stated that, these kind of petitions have started to come up only because the police, the Tamil Nadu police, did not take any action against the ministers and the party leaders of the ruling government, the DMK government, who spoke against Sanatan Dharma. Earlier this year in September, we saw Minister Udayanidhi Stalin and HRMC Minister PK Sekhar Babu participating in a conference that was specifically conducted against Sanatan Dharma, eradication of Sanatan Dharma. Therefore, the court, Madras High Court, even spoke about this conference and said that these kind of propaganda against another ideology is very wrong, and that is why the
the judge also stated that no person in this country can have a right to propagate divisive ideas and conduct a meeting to abolish or eradicate any ideology. Coexistence is very important, is what the judge essentially stated. Therefore, now he's pinpointed these events and he stated that, this is why he will not allow these kind of events to happen, and he says this has happened only because of the dereliction of the Tamil Nadu police. On this, thank you. इसका परिणाम एक और हुआ है कि डेवलपमेंट स्कीम्स जो भी हैं पूरे के पूरे रुक गए हैं कर्नाटक में, और ये खुलेआम से कांग्रेस के एमएलए, कांग्रेस के डिप्टी चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि हमारे पास अब पैसा नहीं है। तो एक तो गारंटी नहीं निभाना, दूसरा आर्थिक व्यवस्था को ऐसे तबाही करना कि वहाँ पे डेवलपमेंट के लिए, रास्ते के लिए, स्कूल के लिए, अस्पताल के लिए, बिजली के लिए पैसा नहीं होना, और तीसरा, और ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट मुद्दा है मेरे हिसाब से, कि इस गारंटी के बेसिस पे जो इलेक्शन जीत कर आए हैं लोग, तो तरस रही हैं। मैंने कहा इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है, नौकरी नहीं क्रिएट हो रहे हैं, लेकिन ये भी बता दूं आपको कि 3 महीने में 50 किसान, कुल 3 महीने में 50 किसान ने खुदकुशी किया है इस कांग्रेस के सरकार के आने के बाद। पावर शॉर्टेजेस, लोड शेडिंग, और जब ड्राउट आया है, एक भी मंत्री ने ड्राउट का कोई भी डिस्ट्रिक्ट नहीं विजिट किया है, क्योंकि वो जानते हैं जब वो जाएंगे डिस्ट्रिक्ट, लोग पूछेंगे कि आपने जो वायदे किए हैं वो कहाँ हैं। तो आज भी बेंगलोर में बैठे हुए हैं, कोई भी डिस्ट्रिक्ट विजिट करने के लिए तैयार नहीं है उनके मंत्री और उनके एमएलए। ये है गारंटीज के बेसिस पर आने वाले सरकार, गारंटी के खिलवाड़ और राजनीति करने वाले सरकार का स्टेटस। कांग्रेस और करप्शन के बारे में तो लोग सब जानते ही हैं। यूपीए के दौरान क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, ये सब हम जानते ही हैं। लेकिन एक और मैं आपको फैक्ट दिखा दूँगा आपके इंफॉर्मेशन के लिए, और आपके व्यूअर्स और आपके माध्यम से जो भी पढ़ते हैं, आप टीवी देखते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। कुल 4 महीने में 3.5 महीने के सरकार के आने के बाद एक कॉन्ट्रैक्टर के घर से 109 करोड़ के पैसे निकले। सिद्धरामैया और डीके शिवकुमार का जो कांग्रेस सरकार है कर्नाटक में, गारंटी के नाम पे आए सरकार में, गारंटी को फुलफिल नहीं किया उन्होंने, लेकिन उनका जो एक मकसद था कर्नाटक को एटीएम बनाना, वो उन्होंने पूरी तरह से शुरुआत उन्होंने कर दिया है। ये फैक्ट हाल ही में 1 महीने पहले एक कॉन्ट्रैक्टर के घर से और डीके शिवकुमार के करीबी हुए कॉन्ट्रैक्टर के घर से ये निकला था। हम इलेक्शन के टाइम पे हमने ये बहुत स्पष्ट रूप से कहा था कि अगर कांग्रेस कर्नाटक में आता है, कर्नाटक बनेगा एक परिवार का एटीएम, और ये सच साबित हुआ है। आप देख रहे हैं कि कर्नाटक में एटीएम और लूट कैसा शुरू हो गया है। ये मैं ऐसे हवा में नहीं कह रहा हूँ, ये फैक्ट्स के साथ कह रहा हूँ। और आप देखिए कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री के दावेदार और मुख्यमंत्री के बैकग्राउंड और नीयत और उनके परफॉर्मेंस क्या है। कर्नाटक के सिद्धरामैया जी ने दिखा दिया आपको पैसे का लूट का, एटीएम का शुरुआत। आपने कल देखा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 508 करोड़ ले रहे हैं। किससे ले रहे हैं?
एक क्रिमिनल एलिमेंट बैक्ड बेटिंग। मैं ये क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आज के दिन में जो बेटिंग ऐप्स हैं, बेटिंग एजेंसियां हैं, वो इलीगल हैं और उसके बैक पीछे क्रिमिनल एलिमेंट होते हैं। तो एक तो इलेक्शन के लिए पैसा लेना, दूसरा इलेक्शन के लिए क्रिमिनल एलिमेंट से पैसा लेना, वो भूपेंद्र बघेल जी ने कल दिखा दिया है और सिद्धरामैया जी ने कर्नाटक में दिखा दिया है। और यहाँ के दावेदार कौन हैं? कमलनाथ जी। कमलनाथ जी के बारे में हम क्या कहें? वो तो और एक एडिशनल लेवल के कांग्रेसी हैं। यहाँ पे भूपेंद्र बघेल जी क्रिमिनल एलिमेंट से पैसा लेते हैं, सिद्धरामैया जी कॉन्ट्रैक्टर से पैसा लेते हैं। कमलनाथ जी का तो कनेक्शंस बहुत ही इंटरनेशनल हैं, ग्लोबल हैं, उसके बारे में मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा, लेकिन आप सब जानते हैं हेलीकॉप्टर कहाँ से खरीदते हैं, कौन खरीदता है, किसको कमीशन मिलता है। तो ये जो मुख्यमंत्री, और फिर राजस्थान में आपने देखा ही है कि अशोक गहलोत जी के ईडी के जो इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं। तो मुझे यही कहना था कि ये कांग्रेस का एक राजनीतिक स्ट्रैटेजी बन गया है कि गारंटियां बांटे इलेक्शन से पहले, गारंटियों के बल पे सरकार में या पावर में आए, लेकिन उनका एक ही राजनीतिक मकसद है कि किसी तरह एक परिवार के लिए और उनके परिवार के लिए वोटर, मध्य प्रदेश के हर नागरिक इस गारंटी के, कांग्रेस के जो फेक गारंटीज हैं, इसको नकार दे, इसके जाल में मत फंसे। और जो एक ही गारंटी है, जो सच गारंटी है आज के दिन में, नरेंद्र मोदी जी का जो गारंटी है डेवलपमेंट का, अपॉर्चुनिटी का, युवाओं के लिए स्किलिंग का, एजुकेशन का, यही हमारे प्रदेश के लिए और देश के लिए इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। और मुझे बहुत कुछ और कहना है, लेकिन टाइम कम है, इसीलिए मैं ये दो चीज़ आपके सामने रखना चाहता था कि इनका जो गारंटी का राजनीति है उसका सीधा ताल्लुक है उनका करप्शन का मकसद से। और ये मैं, और इनके चारों के चार मुख्यमंत्री दावेदार या मुख्यमंत्री, इनके नियत, इनके काम से ये बड़ा स्पष्ट होता है कि इनका लूटना ही इनका एक तरह से पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव है। और इस Hello, Moto. Motorola, India's best 5G smartphone brand. बंद करो, कान बंद करो, कभी भी फट सकता हूँ, पटाखा जो लग रहा हूँ। दिवाली है, तैयार होकर आइए। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। You are the one. Unmatched, unequaled, unbeatable. LG OLED Evo, the one and only. You know what could have been my biggest weakness? The fact that I didn't grow up wearing a lot of makeup turned out to be my biggest strength, because I could relate to the girl next door. I could relate to the girl who had regular skin with skin issues and went through public transport and would sweat all day and wanted makeup that would last through that sweating. People with absolutely who create products for celebrities don't get the requirement of the regular girl in India, which I really got because I was her. Catch Technophantom V Plus 5G presents Women Pioneers of India only on Republic TV. जब एक दिया जलता है, पूरा घर रोशन हो जाता है। सोचिए, जब आस्था के दीप जगमगाएंगे और प्रभु श्री राम के अयोध्या आगमन का उत्सव मनाएंगे,
तो कैसा अलौकिक दृश्य होगा जो अपने आप में एक कीर्तिमान होगा और पूरी रामनगरी डूब जाएगी दिव्य अलौकिक दीपोत्सव की जगमगाहट में। आप भी सपरिवार इस विश्व कीर्तिमान का हिस्सा बने और अपनी अयोध्या नगरी को विश्व मानचित्र पर आने का उत्सव मनाइए। भव्य दीपोत्सव उत्सव त्योहार है, ज्योतिर्मय तेज है, ये रोशनी की धार है, पाप पर प्रहार है, सच की जीत की हुंकार है, दिए से दिया जलाए, राम राज सरकार है, राम 11 नवंबर सरयू घाट पर आइए और प्रभु श्री राम की महिमा गुनगुनाइए। This Diwali, New Hawkins, good old friends, fun times again. In a journey that defines our dynamic future, Bharat embarks on a mission of shaping a new and determined nation. Witness a journey towards development where turning dreams into reality is not just a possibility but a certainty. Join us on Bharat 2050, where unwavering commitment and self-reliance meet economically brilliant tomorrow. Welcome back. Now, a soldier was brutally attacked while he had come to Karnataka's Belgavi to meet his friends. Parshuram Patil was attacked in front of a bar in Ganeshpur. The incident took place 3 days ago and CCTV footage has now emerged. In a shocker from Karnataka in Belagavi district, a soldier has been attacked by a group of unknown miscreants in the city outside a bar, and the soldier has now been identified as Parshuram Patil, and it is also being understood that he is a resident of Maharashtra and had come to the Belagavi city to go on and visit his friends as well, at which point of time a heated argument has taken out in place of the bar on a busy street as well 3 days ago, and he's been beaten black and blue, and he's also been kicked on his private parts. The soldier was also seen bleeding from head to toe as well, until and unless some of the residents stepped and made sure that the altercation broke off over there, and immediately an ambulance was also called in. The police were also informed about this particular ruckus which broke out as well, and they too came in here. And it is now being understood that even after 3 days there has been no sort of action that has been taken against the miscreants, and therefore a social media campaign demanding justice for the Indian Jawan Parshuram Patil has started out in the state of Karnataka as well. You're watching Republic TV, and still to come we get you the latest from the Israel-Hamas war. And the US Secretary of State Antony Blinken arrives in Turkey to hold a key diplomatic meeting. बंद करो कान बंद करो, कभी भी फट सकता हूँ, पटाखा जो लग रहा हूँ। दिवाली है, तैयार होकर आइए। मन चाहे 65 इंच 4K। देख मन, फिसल मत, यही चाहिए, यही लूंगा, यही चाहिए। तो देख, तू इस बार भी नहीं लेगा ना? लूंगा ना, अगली दिवाली। अपने मन की विश को मत टालो। SBI कार्ड के फेस्टिव EMI ऑफर्स के साथ
जो मन चाहे ले डालो। PC Chandra Jewelers presents Dhanteras Dhan Varsha offer. 25% off on jewelry making charges, 10% off on the value of diamonds and precious stones, 100 rupees off per gram of gold jewelry. Win attractive mega prizes. Offer valid till 11th November. Terms and conditions apply. Visit us today. PC Chandra Jewelers, a jewel of jewels. Hey Alexa, start the robo. Introducing Forbes Robo Vacuum Cleaner. Daily cleaning as easy as 1, 2, 3. It dry vacuums, even wet mops, and recharges automatically. Get the Forbes Robo Vacuum Cleaner from Eureka Forbes. RP Sanjeev Goenka Group, growing legacies over 200 years. You know what could have been my biggest weakness? The fact that I didn't grow up wearing a lot of makeup turned out to be my biggest strength, because I could relate to the girl next door. I could relate to the girl who had regular skin with skin issues and went through public transport and would sweat all day and wanted makeup that would last through that sweating. People with absolutely who create products for celebrities don't get the requirement of the regular girl in India, which I really got because I was her. Catch Techno Phantom V Plus 5G presents Women Pioneers of India only on Republic TV. सेफ्टी की इतनी चिंता? तो पेमेंट सिर्फ वीजा से ही करना। वीजा कार्ड से पे करने पर मर्चेंट को कार्ड डिटेल में सिर्फ एक टोकन नंबर जाता है, यानी तेरा कार्ड और पेमेंट दोनों एकदम सेफ। क्लिक टू पे विद वीजा, सेफ रहने का स्मार्ट तरीका। जब पेरेंटल कंट्रोल के बिना हो हैकर्स के पास अथॉरिटी, फिर किस बात की साइबर सिक्योरिटी? क्विक हील, आज के लाइफ की प्रायोरिटी साइबर सिक्योरिटी। Hello Moto. Motorola, India's best 5G smartphone brand. लेकिन हमने तो एकदम सॉलिड TMT बार लगाया है। मतलब रुंगटा स्टील TMT बार, जंग से न माने हार और मजबूती बेशुमार। रुंगटा स्टील TMT बार है बिल्कुल रेडी। Hello Moto. Motorola, India's best 5G smartphone brand, brings you the latest breaking news update from across the country, only on Republic TV. पतंगे रस्सी से खाने हो रहा हूँ ना, बड़े बड़े लोग हैं, यहाँ तक कि यहाँ के कोई नेता नहीं छुड़ा, बड़े बड़े लोग भाई, यहाँ पुलिस वाले सस्पेंड हो गए एक चक्कर में। एक विधायक भी पैसा मांग रहे सीधा पैसे की डिमांड किसके थ्रू करते हैं ये लोग? कुछ जैसे कि यहाँ जो पकड़ाए हैं सतीश चंद्राकर और हाँ ASI क्या बोल रहा हूँ विनोद वर्मा का नाम ले दिया, ठीक यहाँ का व्यापारी नाम लिया था महीनों में। A very good afternoon to all of you. I'm Nikita Sahai on Republic TV and you're watching the 12 noon bulletin with me. Let's get you the top headlines at this hour. Mahadev bombshell tapes aired on Republic becomes the turning point in multi-crore betting scam coverage. Republic sting and alleged tapes become the biggest talking point in Chhattisgarh election campaign. Bhupesh Baghel on the back foot, corner Chief Minister calls charges against him a conspiracy.
Ethics panel to meet on November 9 to discuss the way forward in probe into Maua payoff scam. Madras High Court pulls up Tamil Nadu police for inaction over insult to Sanatan Dharma. As Delhi AQI continues to drop, AAP and BJP face off over pollution control measures carried. After the release of a video by the BJP in which Shubham Soni, an accused in the Mahadev book betting app case, claims that he had the proof of paying 508 crores to Chhattisgarh Chief Minister Bhupesh Baghel, the latter called it an attempt to spoil his image just before the assembly elections. The Chhattisgarh Chief Minister, in a post on X, formerly Twitter, alleged that BJP is employing central agencies to tarnish the image of the people-friendly Congress government of the state. Meanwhile, as the bombshell video explodes, the Congress party is now on the defensive. Listen in. ये सब पूरी तरीके से भाजपा का षड्यंत्र है। भाजपा जहां चुनाव हो रहा है, राजस्थान में भी ईडी के छापे पड़ रहे हैं, छत्तीसगढ़ में भी छापे पड़ रहे हैं, अन्य जगह भी छापे पड़ रहे हैं, तो चुनाव में उनको ईडी याद आती है और छापा याद आता है, महादेव ऐप आता है, उसके पहले क्यों नहीं किया? अगर जानकारी थी तो चुनाव के पहले करना चाहिए था। तो चुनाव के केवल दृष्टिकोण से चुनाव में फ़ायदा लेने के लिए वो ईडी का, सीबीआई का और इनकम टैक्स का दुरुपयोग कर रहे हैं। कि पहले भी बहुत सारे इस तरह के साइबर क्राइम हुए हैं और सरकार ने प्रतिबंध भी लगाया, टिकटॉक का जैसे लगाया था, लेकिन यह बंदी क्यों छत्तीसगढ़ तक के लिए ही हो, पूरे देश से क्यों नहीं होनी चाहिए? एक दूसरी बात है कि इसकी पूरी जिम्मेदारी आईटी मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री की है कि कर क्या रहे थे अभी तक। जब घटना हो जाती है तब एक्शन लेते हैं, तो इसके मतलब इनकी असफलता है और कई असफलताएं इनकी हो चुकी हैं। तो अब बयान करने से क्या फ़ायदा है? क्या इनको पहले से नहीं पता था? यह मंत्रालय कर क्या रहा है आखिर में? घटनाएं जब हो जाती हैं, हत्याएं जब श्रीनगर में हो जाती हैं, या जो साइबर ऑनलाइन जो बहुत बड़े स्कैंडल हो जाते हैं, तब ये सरकार जगती है। तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है, कल दूसरा ऐप चालू हो जाएगा। ये आरोप ही नहीं है, प्रमाणित दस्तावेज के साथ उनके सामने साक्ष्य पेश किए गए। 509 करोड़ का लेन देन का प्रमाण हुआ, ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड मिले हैं, 5 करोड़ का राशि और 7 करोड़ की राशि जब्त किए गए हैं। दुबई से कनेक्शन मिला है, दुबई के कनेक्शन के साथ इनके सचिवालय के 3 अधिकारियों का सीधा महादेव ऐप के जो संचालक हैं उनके साथ पैसे का ट्रांजैक्शन का प्रमाण ईडी ने प्रस्तुत किया है। इसके बाद क्या बचता है मुझे समझ में नहीं आता भूपेश बघेल का। ये अब कोई उसको रंगे हाथ कोई उसके घर में पकड़ेगा क्या? इससे ज़्यादा प्रमाण। लेकिन देखिए, मुख्यमंत्री जी तो ये कह रहे हैं कि ये सब आरोप है, इनको उनकी छवि धूमिल करने के लिए ये सब आरोप है भारतीय जनता पार्टी द्वारा। बताइए। महादेव ऐप में इतना बड़ा खुलासा पीएमएलए में, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में हुआ है, तो क्या आसमान खा गया पैसा? पूरा संरक्षण प्राप्त है छत्तीसगढ़ में ऐसे अपराधी गतिविधियों का। सट्टा, जुआ और इस अपराध में इलेक्शन के लिए फंडिंग कर रहे हैं। 509 करोड़ चुनाव के लिए भेजा है भूपेश बघेल के लिए। बल्कि आपको पता ही होगा कि हमने भी सर एक स्टिंग किया जिसमें हमें पता चला है कि काफ़ी पुलिस वाले भी शायद सम्मिलित हुए, उसमें ईडी ने भी अरेस्ट किया उसके बाद, और उसके जो लिंक्स है वो मुख्यमंत्री के ऑफिस तक मतलब जा रहे हैं। ऑफिस तक मिले हैं, 3 नाम प्रकट रूप से आए हैं और तीनों लोगों की संलिप्तता साफ दिख रही है और है। और ये अकेला एक प्रकार का महादेव ऐप की बात नहीं है। हिंदुस्तान में और कहीं ऐसा हो सकता है क्या? सरकारी खजाना का लूट इतना खुलेआम हो कि बिना हॉलमार्क के 40% शराब को बिना टैक्स पटाए सरकारी शराब दुकान से बेची जाए। क्या कोयले में इससे ज़्यादा भ्रष्टाचार दुनिया में कहीं हो सकता है? लेकिन सर मैं महादेव में ही ज़रा फोकस रखूँगा सर। एक और मतलब अब खुलासा आया है, ये ईडी की रिमांड कॉपी में भी आया है और अब एक वीडियो भी इमर्ज आ रही है कि जिसमें एक इंसान है शुभम सोनी,
वो अपने आप को महादेव का ओनर बुलाता है, अपने आप को महादेव का ओनर बोलता है, और वो बोलता था कि वो असीम दास के द्वारा चीफ मिनिस्टर ऑफिस में कोई वर्मा जी है उनके द्वारा पैसे भेजता था। अब ये कितनी सच्चाई है? ये असीम के पास ही तो 5.37 करोड़ रुपए के पैसे जब्त हुए। वही असीम दास है जिसने स्वीकार किया बघेल नामक व्यक्ति को मैं पैसा देता हूँ। वही असीम दास है जिसके दुबई के कनेक्शन मिले हैं। ये सारे प्रमाण के लिंक मिलते जा रहे हैं और प्रमाण के साथ ईडी ने ऐसी कार्रवाई नहीं की, पूरे पुख्ता जानकारी के साथ, पूरे दस्तावेज के साथ किया है और उसके बाद भी बेशर्मी की हद भूपेश बघेल ईडी पे आरोप लगा रहे हैं। इसका अंत आप कहाँ तक देखते हैं? अंत होगा, न्यायालय में जाएंगे और न्यायालय में कार्रवाई होगी और सजा होगी। आपने कल देखा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 508 करोड़ ले रहे हैं। किससे ले रहे हैं? एक क्रिमिनल एलिमेंट बैक्ड बेटिंग। मैं ये क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आज के दिन में जो बेटिंग एप्स हैं, बेटिंग एजेंसियां हैं, वो इलीगल हैं और उसके बैक पीछे क्रिमिनल एलिमेंट्स होते हैं। तो एक तो इलेक्शन के लिए पैसा लेना, दूसरा इलेक्शन के जिन्हें आपने बैन कर दिया है। भूपेश बघेल कह रहे हैं कि वो तो 1.5 साल से कहते आ रहे थे, पहले क्यों नहीं किया? अच्छा, 1.5 साल से वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। उन्होंने एक भी लेटर नहीं लिखा है, उन्होंने कभी भी एक भी मांग नहीं किया कि ये ऐप बंद करें। इसीलिए तो उनका 1.5 साल का इन्वेस्टिगेशन का कारण ही तो उनको 508 करोड़ रुपए मिले हैं इनसे। उन्होंने किसी भी एजेंसी से किसी भी तरह हमें कोई नोटिफिकेशन नहीं भेजा है इन 1.5 सालों में। पहली बार अगर सरकार को एक नोटिफिकेशन मिला है इन इलीगल ऐप्स के बारे में, वो कल सुबह एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने भेजा है और हमने कल दोपहर को उस सभी 22 ऐप जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने लिस्ट भेजे थे उनको हमने बैन कर दिया है। और ये भी कह रहे हैं कि जीएसटी 28% जीएसटी मिलती थी इसलिए प्रतिबंधित नहीं किया। आप अभी तक तो समझ गए होंगे, सभी लोग समझ गए होंगे कि कांग्रेस के राजनीति में झूठ और झूठ होना बहुत ही एक नॉर्मल सा फिनोमिनन है। यहाँ पर भी बघेल जी झूठ बोल रहे हैं, वो भी जानते हैं, सब जानते हैं, क्योंकि 1.5 साल से वो एक इन्वेस्टिगेशन को खींच रहे हैं जो 6 मिनट में पता कर सकते थे कि ये एक बेटिंग ऐप है और 6 मिनट में वो लेटर लिख सकते थे कि देखिए इसको बैन कीजिए। सीधे उन पर आरोप लगा है 508 करोड़ रुपए ले रहे हैं, दुबई से वीडियो जारी हुआ है। इसके बाद क्या उन पर शिकंजा कसेगा? तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और एजेंसीज तय करेंगे। मेरा काम यही था, हमारे सरकार और हमारे मिनिस्ट्री का काम था कि ये इलीगल ऐप्स जो क्रिमिनल ऐप्स हैं उनको बंद करें। हमने बंद कर दिया। रिपब्लिक ने स्टिंग भी किया है, अभिषेक पल्ला जो एसपी हैं उन्होंने भी कबूला है, कई और लोग इस स्टिंग में फंसे हैं, तो इनके खिलाफ क्या सख्त कार्रवाई के निर्देश? मेरा स्पष्ट कहना है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पूरा का पूरा बघेल के सिस्टम, भूपेश बघेल जी के सिस्टम इनके पीछे थे, इसीलिए उनको 508 करोड़ रुपए मिले, इसीलिए 1.5 साल से उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया उनके साथ। ये थे केंद्रीय राज्य मंत्री राजेश चंद्रशेखर, जिनका साफ तौर पर कहना है कि 1.5 साल से किसी तरह की शिकायत नहीं मिली, शिकायत मिलते ही कार्रवाई की गई है और अब आगे ईडी अपने हिसाब से कार्रवाई करेगी। कैमरामैन संजय अंकिल के साथ सत्यवेद सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क, भोपाल। For more on this, we have with us our colleague Harsha. Harsha, could you please tell us that with such a massive scam which has broken out, the Mahadev betting app scam, and now there's this whole political furore over it, Congress versus BJP. BJP saying that why did not the Chhattisgarh government came before, or why did not come before, or why did not it speak about banning the app? The Bghel government is saying that it is just a ploy to spoil his scope in the upcoming election starting tomorrow. So where does this leave this whole major betting scam which has come out? And now the alleged owner has also said that yes, Chief Minister Bghel, Chief Minister of Chhattisgarh, Mr. Bhupesh Bghel, was paid an amount of 508 crores. So where does it leave this whole episode, the political episode? So Nikita, now we understand that this all revelation has come after Republic's exclusive investigation and the sting which Republic team has done from Chhattisgarh, where the key characters initially directly stated that how CM House was directly involved from bottom to top. There were politicians, there were bureaucrats, there were constables and all the panel operators who were running the panels from Bhilai in Chhattisgarh only, and how this nexus is not only in Chhattisgarh but this nexus
several parts of the country as well. In Kolkata, Odisha, Mumbai, everywhere the panel operators are running and the panel promoters are shielded by the Bhupesh Baghel government itself, and the protection money was given to the CM Bhupesh Baghel by the promoters of Mahadev betting app. Now we know that after Republic investigation, political face-off has erupted, and after the ED arrested Asim and the driver too, and through Asim the massive revelation has been made by Shubham Soni, one of the panel operator and also the manager of the Mahadev betting app, now who clearly states that he has the evidence, the proof, which clearly indicates that how 508 crore money was given to Bhupesh Baghel just before election, and the amount is not only 508 crore, and that is what ED is investigating right now. Major cash was seized by Enforcement Directorate on the 3rd of November, and after that back-to-back arrests took place, which clearly indicates this nexus is not small, but this nexus is vast, this nexus is huge. Now Bhupesh Baghel has refuted, Nikita, all the allegations made by Enforcement Directorate, stating that this is an ugly attempt to malign, to tarnish his image just before the election. And Enforcement Directorate is doing all this in behest of the central government, on the behest of BJP party. And also Bhupesh Baghel clearly states that he doesn't know Shubham Soni, he has never met. And on the other side, Shubham Soni has clearly given the evidence, he has the proof that how huge sum of money was given to the CM house, how the political advisor of CM Vinod Verma was directly linked in transferring the amount, huge sum of money directly to Bhupesh Baghel. And initially also, when first the Enforcement Directorate started its investigation in 2022 September, first time was when Vinod Verma's name came into picture, and Republic also did the deep investigation in Chhattisgarh, where we got to know that how the CM house, the politicians, the policemen, all were hand in gloves, all were in cahoots with Mahadev betting app promoters. Now, although BJP party is also stating that this is Bhupesh Baghel has taken money just before assembly elections, and this is a huge scam which is running under the nose of CM Bhupesh Baghel. In fact, there were few BJP leaders who stated that Bhupesh Baghel himself is the partner in the Mahadev betting scam, and therefore this should be thoroughly investigated. We saw day before yesterday where our reporter Piyush also spoke to Ajit Jogi, who stated that this nexus is huge, and CM's son, CM's wife and the other bureaucrats are also in cahoots with Mahadev betting app. So Nikita, now the investigation has all taken in the side of how CM Bhupesh Baghel is involved, and we have to wait and watch how ED reveals more after the massive and deep investigation which Enforcement Directorate, the agency, is doing right now in Chhattisgarh, because more panel operators are being caught by the agencies. Back to you. Thank you so much, Harsha, for this comprehensive report on this whole major, massive Mahadev betting app scam which has broken out. And as the assembly elections are about to start, and Chhattisgarh going to be the first state to start with the assembly elections tomorrow, that is, it's a massive political scam. A big political furore has broken out over the Mahadev betting app. Now moving on to our next story. A soldier was brutally attacked in front of a bar in Ganeshpur. The said individual, Parashuram Patil, had come to Karnataka's Belagavi to meet his friends. The incident took place 3 days ago, and now the CCTV footage of the same has emerged. Here's a detailed report. Take a look. In a shocker from Karnataka in Belagavi district, a soldier has been attacked by a group of unknown miscreants in the city outside a bar, and the soldier has now been identified as Parashuram Patil. And it is also being understood that he is a resident of Maharashtra and had come to the Belagavi city to go on and visit his friends as well, at which point of time a heated argument has taken out in place of the bar on a busy street as well 3 days ago. And he's been beaten black and blue, and he's also been kicked on his private parts. The soldier was also seen bleeding from head to
tow as well, until and unless some of the residents stepped and made sure that the altercation broke off over there, and immediately an ambulance was also called in. The police were also informed about this particular ruckus which broke out as well, and they too came in here. And it is now being understood that even after 3 days, there has been no sort of action that has been taken against the miscreants, and therefore a social media campaign demanding justice for the Indian Jawan Parshuram Patil has started out in the state of Karnataka as well. While the Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal has called for a high-level meeting at the Delhi Secretariat on the issue of increasing pollution, the matter has now reached the top court. Take a look. Air emergency in the national capital has continued for the 5th consecutive day in Delhi. This is a situation right now where the people of Delhi has been gasping for breath, and for the 5th day in the row, the AQI levels have soared in the severe category. So much so has been done by the authorities as well, but no avail on the ground. Right now, we are at India Gate, and to my left you can see the iconic monument of the historical prominence, India Gate, and the visibility has completely dropped to an abysmal low. And from here, where there has been a normal scenario that from the India Gate Road, a person could have been able to see the south or north block. To my right, you would be seeing that there is no visibility towards that side at the India Gate of the Vijay Chowk. The situation has become so grim that people of Delhi have been continuing to put up masks even under the guidelines of the Commission for Air Quality Management, which has also invoked stage 4 of the GRAP, which essentially is the highest level of the measures under the GRAP, which are to be put to curb the air pollution menace in the national capital and the NCR region. Under the stage 4 of the GRAP, the ban on the entry of trucks carrying non-essential items has been put up, and the entry of light commercial vehicles which are not registered in Delhi has also been put up. And the schools have also been shut till class 5th by the Delhi government till November 10th. In the view of curbing the air pollution that has been creating several health hazards for the people of Delhi, the Delhi CM Arvind Kejriwal has also called an emergency meeting this afternoon with the top officials to discuss how measures should be put in place to finally give some respite to the people of Delhi who have been bearing and battling this menace situation in the national capital. इस साल दिल्ली में 8 सालों में सबसे बेहतर हवा थी। आंकड़े बताते हैं कि दिल्ली में इस बार 31% पोल्यूशन कम हुआ। केंद्र सरकार को भी ये स्वीकारना पड़ा। अपने इकोनॉमिक सर्वे जो पार्लियामेंट में टेबल किया था 2022-2023 का, कि दिल्ली में इस बार 8 सालों में सबसे बेहतर हवा थी। CAQM के आंकड़े भी दिखाते हैं कि पंजाब में इस बार अभी तक पिछले साल के मुकाबले 50 to 67% पराली कम जली है। जो पराली पंजाब में अभी जल रही है वो यहां से 500 किलोमीटर दूर है, और जो पराली हरियाणा में जल रही है वो यहां से करीब 100 किलोमीटर दूर है। दिल्ली के सबसे करीब राज्य हरियाणा है, तो जरूरी है कि समीक्षा की जानी चाहिए कि 2014 से खट्टर सरकार ने प्रदूषण को लेकर हरियाणा में क्या स्टेप्स उठाए। कि अभी जो ठहराव दिल्ली में पिछले 4-5 दिनों से देखा जा रहा है मौसम का, हवा की गति का, वो ठहराव अभी भी बना हुआ है, थोड़ा 19-20 हो रहा है। अगर कल की तुलना में देखें तो आज थोड़ा सा AQI में सुधार देखा जा रहा है,
लेकिन अभी भी गंभीर श्रेणी में ही जो है स्थिति बनी हुई है। उसको देखते हुए दिल्ली के अंदर जो सोर्सेज हैं खासतौर से जिससे प्रदूषण पैदा हो रहा है, गाड़ियों का प्रदूषण, डस्ट का पोल्यूशन, बायोमास बर्निंग का पोल्यूशन, उसको लेकर के सरकार जो है आज 12 बजे मुख्यमंत्री जी ने बैठक बुलाई है, जिसमें और जो है कैसे सख्ती के साथ प्रदूषण के जो बढ़ने वाले जो सोर्स हैं उन पर कंट्रोल किया जाए, उसका आज निर्णय लिया जाएगा, जिससे दिल्ली के इस प्रदूषण को जो विपरीत मौसम में भी कंट्रोल किया जा सके। दिल्ली की आबो हवा आज फिर से जहरीली है। फिर से एक बार लगातार दिल्ली का AQI सीवियर कैटेगरी में है। फिर से एक बार दिल्ली का AQI कहीं 500, कहीं 600, कहीं 700 पार हो चुका है और कहीं पर तो 999 तक जा रहा है। उसके आगे तो मीटर बढ़ता भी नहीं है। दिल्ली का AQI जो है वो 5 सालों में सबसे खराब स्थिति में आप पहुंचा है। ये इसलिए हुआ है, दिल्ली आज गैस चेंबर इसलिए बनी है क्योंकि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने पिछले 8-9 वर्षों में केवल प्रदूषित राजनीति की है, दोषारोपण की राजनीति की है। सत्ता में आने से पहले पंजाब में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कहते थे कि दिल्ली की प्रदूषण का मुख्य कारण, और आज जो प्रदूषण की स्थिति दिल्ली में बनी हुई है उसके लिए जो मुख्य कारण है वो प्रदूषण के दिल्ली के भीतर ही है। रोड डस्ट जो लगातार बढ़ता जा रहा है उसको कर्व करने के लिए आज अरविंद केजरीवाल जी ने वैक्यूम क्लीनिंग करवाई, सड़कों की स्वीपिंग करवाई, मैकेनाइज स्वीपिंग करवाई। कौन रोक रहा था उन्हें मैकेनाइज स्वीपिंग कराने से? MCD तो आज उनके पास है। जो दिल्ली में व्हीक्यूलर पोल्यूशन लगातार बढ़ता जा रहा है उसको कर्व करने के लिए क्या अरविंद केजरीवाल ने 11,000 DTC बसेस खरीदी? कौन रोक रहा था उन्हें? भ्रष्टाचार कर दिया उसमें। आज जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल ने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन जो पोल्यूशन होता है, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन होता है, बायोमास बर्निंग से पोल्यूशन होता है, उस पर क्या कार्रवाई की और लॉन्ग टर्म क्या उस पर सोल्यूशन दिया? कोई उसका जवाब नहीं है। केवल दोष लगाना। कभी Stay with us as we'll be back with ethics panel to meet on the 9th of November to discuss the way forward in probe into Mawa payoff scam. Madras High Court pulls up Tamil Nadu police for inaction over insult to Sanatan Dharma. Hello, Moto. Motorola, India's best 5G smartphone brand. Co-powered by Tata EV. Move with meaning. बंद करो कान बंद करो, कभी भी फट सकता हूँ। पटाखा जो लग रहा हूँ। दिवाली है, तैयार होकर आइए। In the global employability rankings by Times Higher Education UK, only the following 6 institutions from India are ranked amongst the top 230 in the world for having the most employable graduates. IIT Delhi, IISc Bangalore, IIT Bombay, IIM Ahmedabad, IIT Kharagpur and Amity University. You are the one. Unmatched, unequaled, unbeatable. LG OLED Evo, the one and only. Helps beat sensitivity fast. Sensodyne Rapid Relief. You know what could have been my biggest weakness? The fact that I didn't grow up wearing a lot of makeup turned out to be my biggest strength because I could relate to the girl next door. I could relate to the girl who had regular skin with skin issues and went through public transport and would sweat all day and wanted makeup that would last through that sweating. People with absolutely who create products for celebrities don't get the requirement of the regular girl in India, which I really got because I was her. Catch Techno Phantom V Flip 5G presents Women Pioneers of India only on Republic TV. जब मां सरयू के घाटों को दिव्य दीपमालाओं से सजाया जाए, वो दीपोत्सव है।
दीपों की असंख्य ज्योतियां जब अवधपुरी सजाए, वो दीपोत्सव है। जब श्री राम की जय जयकार से संपूर्ण अयोध्या धाम गूंजित हो उठे और हर मन मंत्रमुग्ध हो जाए, वो दीपोत्सव है। 2017 से शुरू हुआ दीपोत्सव हर साल एक नया कीर्तिमान गढ़ रहा है। विकास पथ पर अग्रसर योगी सरकार जहां एक तरफ अयोध्या को आधुनिक बना रही है, वहीं दूसरी तरफ सनातन परंपराओं को संजोने का कार्य कर रही है। दिव्य दीपोत्सव से दैदीप्यमान है श्री राम जन्मभूमि। विकास के प्रकाश से प्रकाशमान है श्री राम जन्मभूमि। आइए आस्था के असंख्य दीपों से सुसज्जित इस दीपोत्सव के साक्षी बने और प्रभु श्री राम का अभिनंदन करें। श्री राम को नमन है, श्री राम का वंदन है। Viewers, top headlines we're tracking right now. Mahadev bombshell tapes aired on Republic becomes the turning point in the multi-crore betting scam coverage. Republic sting and alleged tapes becomes the biggest talking point in Chhattisgarh election campaign. Bhupesh Baghel on the back foot, cornered CM calls charges against him a conspiracy. Ethics panel to meet on November 9th to discuss the way forward and probe into Mahua payoff scam. Madras High Court pulls up Tamil Nadu police for an action over insult to Sanatan Dharma. As Delhi AQI continues to drop, Aam Aadmi Party and BJP face off over pollution control measures. Viewers, we are live and breaking this Monday afternoon. I'm Shivangi Shukla getting you the latest, and our top story takes us to what's really happening in the Mahadev betting scam. The Republic investigation in the Mahadev betting scam has completely exploded, and with the emergence of the tapes of a person who claims to be the key aide of Saurabh Chandrakar and calls himself the owner of Mahadev booking scam. Now this alleged testimony has given a very big and a fresh twist in the Mahadev betting scam, viewers. That's the top update coming in. And remember that this person claims to be the owner of the Mahadev app. Not only that, we are also seeing many other updates come in where now the CM of Chhattisgarh, Bhupesh Baghel, has said once again that the allegations against him are nothing but conspiracy and political vendetta. Let's go ahead, viewers, and listen to the reactions coming in. So viewers, what we see right now, this man on your screen on the left-hand side calls himself the owner of the Mahadev betting app, has implicated CM Bhupesh Baghel's office. He also talks about his meeting with somebody called Verma ji, who is CM Baghel's political advisor, and implicates the CM's office. Let's go ahead, viewers, and play out the statements and the reactions. मैं शुभम सोनी बोल रहा हूँ और मैं महादेव बुक का ओनर हूँ। ये रहे उसके डॉक्यूमेंट्स। और ये मेरे आधार डॉक्यूमेंट्स हैं। ये मेरा आधार कार्ड है।
ये मेरा पैन कार्ड है, और ये मेरा पासपोर्ट है। और महादेव बुक का ओनर मैं ही हूँ। ये आपको डॉक्यूमेंट दिखा दिया मैंने, और 2021 में इसको मैंने चालू किया था। ये उसका पूरा डॉक्यूमेंट्स है। मेरा गैम्बलिंग का काम बहुत अच्छे से चलने लगा था फिर भिलाई में, और ये तो बहुत ही छोटे से काम चालू हुआ था। उसके बाद धीरे धीरे काम बढ़ता गया। अब काम बढ़ता गया, उसके बाद हमारा लाइफस्टाइल भी चेंज होता गया, क्योंकि पैसा बहुत आ रहे थे। तो सब नोटिस करने लगे, मेरे मतलब जो आसपास के लोग हैं वो लोग नोटिस करने लगे। धीरे धीरे बात ऊपर तक गया, तो फिर कंप्लेन वगैरह भी होने लगा। तो फिर ऐसा हुआ कि अब प्रोटेक्शन का जब बहुत ज़रूरत था हमको, क्योंकि लड़के भी अंदर हो रहे थे कुछ कुछ। तो उसके बाद मुझे पता चला वर्मा जी के बारे में। फिर मैंने उनसे मीटिंग की। फिर मुझे समझ लो हफ्ता वसूली वाला काम चालू हो गया। अब वर्मा जी से मैंने मीटिंग किया, तो फिर उनसे बात हुआ, और ये हुआ कि अब उनको मुझे हर महीना 10 लाख रुपए देना है। तो वो भी ओके हो गया। अब हर महीना मैंने उनको 10 लाख रुपए देना चालू कर दिया। तो काम अब बढ़िया चलने लगा मेरा, और पैसा भी कमा रहे थे हम, सब कुछ ओके था। उसके कुछ दिन बाद ऐसा हुआ कि हमारे लड़के फिर अंदर हुए। अब वो छूट ही नहीं रहे हैं वापस। तो मैंने वर्मा जी को कॉल लगाया कि सर अभी कैसे हो गया, आपको तो मैं पैसा भी दे रहा हूँ, उसके बाद भी लड़के अंदर हो रहे हैं और छूट भी नहीं रहे, बाहर निकल ही नहीं रहे वो लोग। तो वो बोले कि चलो करते हैं कुछ। फिर उसके बाद भी लड़के नहीं छूटे। फिर मैंने वापस कॉल किया उनको, तो वो बोले कि भैया लगता है अभी यहाँ से काम नहीं होगा, मैं चलो आपको किससे मिलवाता हूँ, ऐसा करके बोले हो। मैं बोला ठीक है सर मिलवा दीजिए, बस लड़के लोग को बाहर निकलवाना है। तो वो मेरे को लेके गए, साथ में लेके गए रायपुर। मैं बोला ठीक है मिलवा लो भैया, जिससे भी मिलवाना है। ये आरोप ही नहीं है, प्रमाणित दस्तावेज के साथ उनके सामने साक्ष्य पेश किए गए। 509 करोड़ का लेन देन का प्रमाण हुआ, ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड मिले हैं। 5 करोड़ का राशि और 7 करोड़ की राशि जब्त किए गए हैं। दुबई से कनेक्शन मिला है। दुबई के कनेक्शन के साथ इनके सचिवालय के 3 अधिकारियों का सीधा महादेव ऐप के जो संचालक हैं उनके साथ पैसे का ट्रांजैक्शन का प्रमाण ईडी ने प्रस्तुत किया है। इसके बाद क्या बचता है मुझे समझ में नहीं आता भूपेश बघेल का। ये अब कोई उसको रंगे हाथ कोई उसके घर में पकड़ेगा क्या, इससे ज़्यादा प्रमाण। लेकिन देखिए मुख्यमंत्री जी तो ये कह रहे हैं कि ये सब आरोप है, इनको उनकी छवि धूमिल करने के लिए ये सब आरोप है भारतीय जनता पार्टी द्वारा। बताइए महादेव ऐप में इतना बड़ा खुलासा पीएमएलए में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में हुआ है, तो क्या आसमान खा गया पैसा। पूरा संरक्षण प्राप्त है छत्तीसगढ़ में ऐसे अपराधी गतिविधियों का। सट्टा जुआ और इस अपराध में इलेक्शन के लिए फंडिंग कर रहे हैं। 509 करोड़ चुनाव के लिए भेजा है भूपेश बघेल के लिए। बल्कि आपको पता ही होगा कि हमने भी सर एक स्टिंग किया जिसमें हमें पता चला है कि काफ़ी पुलिस वाले भी शायद सम्मिलित हुए, उसमें ईडी ने भी अरेस्ट किया उसके बाद, और उसके जो लिंक्स है वो मुख्यमंत्री के ऑफिस तक मतलब जा रहे हैं। ऑफिस तक मिले हैं। 3 नाम प्रकट रूप से आए हैं, और तीनों लोगों की संलिप्तता साफ दिख रही है और है। और ये अकेला एक प्रकार का महादेव ऐप की बात नहीं है। हिंदुस्तान में और कहीं ऐसा हो सकता है क्या सरकारी खजाना का लूट इतना खुलेआम हो कि बिना हॉलमार्क के 40% शराब को बिना टैक्स पटाए सरकारी शराब दुकान से बेची जाए। क्या कोयले में इससे ज़्यादा भ्रष्टाचार दुनिया में कहीं हो सकता है। लेकिन सर मैं महादेव में ही ज़रा फोकस रखूँगा सर। एक और मतलब अब खुलासा आया है, ये ईडी की रिमांड कॉपी में भी आया है, और अब एक वीडियो भी इमर्ज आ रही है कि जिसमें एक इंसान है शुभम सोनी, वो अपने आप को महादेव का ओनर बुलाता है, अपने आप को महादेव का ओनर बोलता है, और वो बोलता था कि वो असीम दास के द्वारा चीफ मिनिस्टर ऑफिस में कोई वर्मा जी है उनके द्वारा पैसे भेजता था। अब ये कितनी सच्चाई है। ये असीम के पास ही तो 5.37 करोड़ रुपए के पैसे जब्त हुए। वही असीम दास है जिसने स्वीकार किया बघेल नामक व्यक्ति को मैं पैसा देता हूँ। वही असीम दास है जिसके दुबई के कनेक्शन मिले हैं। ये सारे प्रमाण के लिंक मिलते जा रहे हैं, और प्रमाण के साथ ईडी ने ऐसी कार्रवाई नहीं की, पूरे पुख्ता जानकारी के साथ पूरे दस्तावेज के साथ किया है।
और उसके बाद भी बेशर्मी की हद भूपेश बघेल ईडी पे आरोप लगा रहे हैं। इसका अंत आप कहाँ तक देखते हैं? अंत होगा, न्यायालय में जाएंगे और न्यायालय में कार्रवाई होगी, सजा होगी। 1.5 साल से वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, उन्होंने एक भी लेटर नहीं लिखा है, उन्होंने कभी भी एक भी मांग नहीं किया कि ये ऐप बंद करें। इसीलिए तो उनका 1.5 साल का इन्वेस्टिगेशन का कारण ही तो उनको 508 करोड़ रुपए मिले हैं इनसे। उन्होंने किसी भी एजेंसी से किसी भी तरह हमें कोई नोटिफिकेशन नहीं भेजा है इन 1.5 सालों में। पहली बार अगर सरकार को एक नोटिफिकेशन मिला है इन इलीगल ऐप्स के बारे में, वो कल सुबह एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने भेजा है और हमने कल दोपहर को उस सभी 22 ऐप जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने लिस्ट भेजे थे उनको हमने बैन कर दिया है। और ये भी कह रहे हैं कि जीएसटी 28% जीएसटी मिलती थी इसलिए प्रतिबंधित नहीं किया। आप अभी तक तो समझ गए होंगे, सभी लोग समझ गए होंगे कि कांग्रेस की राजनीति में झूठ और झूठ होना बहुत ही एक नॉर्मल सा फिनोमिनन है। यहाँ पर भी बघेल जी झूठ बोल रहे हैं, वो भी जानते हैं, सब जानते हैं, क्योंकि 1.5 साल से वो एक इन्वेस्टिगेशन को खींच रहे हैं जो 6 मिनट में पता कर सकते थे कि ये एक बेटिंग ऐप है और 6 मिनट में वो लेटर लिख सकते थे कि देखिए इसको बैन कीजिए। सीधे सीधे उन पर आरोप लगा है 508 करोड़ रुपए ले रहे हैं, दुबई से वीडियो जारी हुआ है, इसके बाद क्या उन पर शिकंजा कसेगा? तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और एजेंसीज तय करेंगे। मेरा काम यही था, हमारे सरकार और हमारे मिनिस्ट्री का काम था कि ये इलीगल ऐप्स जो क्रिमिनल ऐप्स हैं उनको बंद करें, हमने बंद कर दिया। रिपब्लिक ने स्टिंग भी किया है, अभिषेक पल्ला जो एसपी हैं उन्होंने भी कबूला है, कई और लोग इस स्टिंग में फंसे हैं, तो इनके खिलाफ क्या सख्त कार्रवाई के निर्देश? मेरा स्पष्ट कहना है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पूरा का पूरा बघेल के सिस्टम, भूपेश बघेल जी के सिस्टम इनके पीछे थे, इसीलिए उनको 508 करोड़ रुपए मिले, इसीलिए 1.5 साल से उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया उनके साथ। कांग्रेस मतलब घोटालों की गारंटी। कांग्रेस ने तो गोबर और गोठान में लूटा ही था, परंतु शराब और जुए में भी कैसे लूट मचाई, इसके भी प्रमाण अब सामने आ चुके हैं। और कांग्रेस ने लूटते लूटते महादेव जी के नाम को भी नहीं बख्शा। सोचिए, हम हर हर महादेव बोलते हैं और कांग्रेस पार्टी महादेव के नाम पर लूट खसूट करती है। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसके खिलाफ और उसके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ अब पुख्ता सबूत और प्रमाण सामने आ चुके हैं कि कैसे महादेव इलीगल बेटिंग ऐप के मालिक शुभम सोनी ने 508 करोड़ रुपए भूपेश बघेल को दिए। किस प्रकार से असीम दास को तो रंगे हाथ पैसों के साथ पकड़ा गया। डिजिटल एविडेंस भी सामने आया है कि ये पैसे दुबई से छत्तीसगढ़ के चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी को दिए जा रहे थे, भूपेश बघेल जी को दिए जा रहे थे। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी की सरकार के सरकारी मुलाजिम ही ये बयान और सबूत दे चुके हैं कि कम से कम 64 करोड़ रुपए महादेव ऐप तमाम ओनर से उन्हें मिले, ताकि उन्हें पुलिस वालों को और पॉलिटिशियंस को, कांग्रेस पार्टी की सरकार के नेताओं को वो पैसे दिए जा सके। And viewers, let's go straight to our correspondents who are on the ground getting us all the stories, all the exclusives. I'm being joined by Harsha and I'm being joined by Piyush Ori. I'll just come across to Harsha first. Harsha, we saw the entire statement, a bombshell video. In that bombshell video, Sony talks about a meeting with Verma ji. Verma ji, if you could take our viewers through exactly who is Verma ji, because it's important for our viewers to know that the CM's political advisor, Vinod Verma, has already been arrested by the ED in the Mahadev app betting case, Harsha. So let me tell you, Shivangi, the Vinod Verma, he's this Shubham Soni, the one of the main panel operators here is talking about Vinod Verma, the political advisor of CM Bhupesh Baghel, because Bhupesh Baghel's entire Mahadev betting app promoter, the link with it is seen by Vinod Verma, who's a political advisor. And few months back, Vinod Verma refuted to all these claims when ASI Chandrabhushan Verma was arrested by Enforcement Directorate and was taken into custody when 65 crore rupees were found
were recovered in the raid in Chhattisgarh in Bhilai area. And in our stunning investigation operation as well, it has been revealed by IPS Abhishek Pallav that how ASI Chandrabhushan Verma was in touch with Vinod Verma, who is the political advisor of CM Chhattisgarh Bhupesh Baghel, and how they have a robust module of the syndicate, the illegal betting scam which is running in Chhattisgarh and now has extended its leg to other states as well, like Kolkata, Odisha, Mumbai. And this panel operator is just one panel operator. Shivangi, let me tell you that ED is probing this entire scam, and more faces and key characters in few days will also be caught, because Bhim Singh Yadav is just one constable. The police officials from bottom to top, the constable, the head constable, the TI level officials, the ASI level officials are all in cahoots with Mahadev betting app promoters, and they have been working since pandemic, since 2020 with Mahadev betting app promoters. In fact, in a stunning investigation operation, it was also revealed that how Saurabh Chandrakar, the main owner of Mahadev betting app, who has fled to Dubai, he came to Chhattisgarh Bhilai twice, and police officials knew about it, and not once they arrested Saurabh Chandrakar. In fact, in multiple raids as well, not once the main panel operators were caught. They all were released. Only the workers were caught. It was all done in behest of the Saurabh Chandrakar, the promoter of the Mahadev betting app, who was shielded by Bhupesh Baghel, the government of Chhattisgarh, because continuously protection money was sent by Mahadev betting app promoter to the CM house. And this is how this nexus directly reaches to the house, the CM house, which Abhishek Pallav has also revealed in our investigation. So right now more and more people will be caught, because this app has major people involved in it, along with CM Bhupesh Baghel, which ED also revealed in its press statement that how 508 crore rupees was given to Bhupesh Baghel for the election, and this amount could also get more higher after other future arrests which will be made by Enforcement Directorate, because now deep investigation is happening in Chhattisgarh, with the ED officials have taken up, and it was since September. Shivangi, back to you. Absolutely, Harsha. Absolutely. I'll also go across to Piyush in just a moment. We are getting a reaction coming in just right now. The Maharashtra Minister Uday Samant on the Mahadev betting app scam. Let's play that reaction and then go to Piyush Ore. महाराष्ट्र में कैबिनेट मंत्री उदय सामंत हमारे साथ हैं। छत्तीसगढ़ में हुए घोटाले में अब भूपेश बघेल का नाम आ रहा है। बताया जा रहा है कि महादेव बुकिंग ऐप के जरिए करोड़ों का कारोबार जो है वो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने किया। कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी और करप्शन का जो तालमेल है दोबारा से जुड़ गया, और अब आंच जो है छत्तीसगढ़ पहुंच गई है। 500 करोड़ का जो है वो घूस जो है, या यूं कहें ब्राइबरी जो है, मुख्यमंत्री के दफ्तर तक पहुंचा। नहीं, ये वापिस का के लिए पहले से ही कांग्रेस और करप्शन का बहुत नज़दीक का नाता था, लेकिन इसके बारे में इन्फॉर्मेशन लेना पड़ेगा। उसमें कौन गिल्टी है कौन नहीं है, उसका इन्फॉर्मेशन लेके अगर बयान दे दिया जाए तो अच्छा रहेगा। लेकिन इसमें नया कुछ नहीं है, कांग्रेस और करप्शन का नाता बहुत नज़दीक का है। कांग्रेस पार्टी तो कह रही है कि चुनाव आ रहे हैं और चुनाव की वजह से इस प्रकार की कार्रवाई ईडी सीबीआई को लेकर के। नहीं, क्या है कि जिसके आदमी ने ये किया है उसको तो सपोर्ट करना उनकी जिम्मेदारी है। इसलिए अभी करप्शन होने के बाद भी अगर वो बोल रहे हैं कि ये ईडी का मामला है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है, ये अच्छी बात नहीं है। जिसने करप्शन किया है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कैबिनेट मंत्री उदय सामंत, जिनका ये कहना है कि कोई भी व्यक्ति कानून से बड़ा नहीं हो सकता, और कहीं ना कहीं जो भी व्यक्ति करप्शन में लिप्त है, भ्रष्टाचार में लिप्त है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मुंबई से वीडियो जर्नलिस्ट मयूर के साथ संदीप सिंह, रिपब्लिक टीवी। Live right now. Piyush Ore joins us live right now from Raipur. Piyush, I'm coming to you, and you are right there in Chhattisgarh. If you could take our viewers through exactly how the Chhattisgarh government has been reacting, because CM Bhupesh Baghel and the Congress have said once again that this is political vendetta, but the BJP has said that Congress is setting new records when it comes to corruption. Piyush. So definitely what I can tell you over here on the ground and Chhattisgarh is that
the sting which has been done by a courageous reporter Harish Chandwani and Republic team has. इनकी मनसा बंद कराने की नहीं है, ये लोग अपने कस्टमर को APK भेजकर सट्टा खिलाते हैं। इस पर कार्रवाइयाँ करना चाहिए और पूरे देश में सभी ग्रुप को प्रतिबंधित करना चाहिए, बंद करवाना चाहिए। व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल से भी संचालित होता है जो अभी भी चल रहा है। जब तक ऑनलाइन बेटिंग बंद नहीं होगा कुछ भी बंद होने वाला नहीं है। ऑनलाइन सट्टा खिलाने वाले ने पूरे देश भर में लाखों फर्जी खाते खुलवाए हैं जिनमें बड़ी रकमों का लेन देन होता है और इसमें अधिकांश बैंक खाते नए नए राष्ट्रीय बैंकों में हैं या फर्जी खाते बहुत छोटी छोटी अवधियों में बंद कर दिए जाते हैं। केंद्र सरकार को चाहिए कि ऐसे सभी खातों की पहचान कर उनको बंद कराया जाना चाहिए। उसमें जमा राशि को राजसात कर लिया जाए, तभी ऑनलाइन सट्टा पर नियंत्रण पाया जा सकता है। हमने 3-4 हजार फर्जी बैंक अकाउंट बंद कराए। 2 साल से जांच चल रहा है। छत्तीसगढ़ के बच्चे को पता है कि मेन प्रमोटर रवि उपल और सौरभ चंद्राकर है। ईडी को पता ही नहीं है और 17 तारीख को ऐसी कहानी आते रहेंगे। आप देखते सुनते रहिए, एंजॉय करिए। बीजेपी को पता है वो हार रही है, इनको अपने आका के लिए छत्तीसगढ़ का खदान चाहिए, इसलिए प्राण लगाए हुए हैं। दूसरी बात यह है कि ये एक जो बंदा नया आया है, आप ईडी के जो प्रेस रिलीज है उसमें उसको बताया गया है कि ये जो महादेव का है उसका एक अधिकारी है। दूसरे दिन वीडियो आता है कि वो उसका मालिक है। ये जो सौरभ चंद्राकर है वो उसके कर्मचारी हैं। बड़ा उदार आदमी है जो अपने नौकर की शादी में 250 करोड़ रुपए खर्चा करता है। आज तक हमने नहीं सुना, क्योंकि सुनिए दुनिया में ये नहीं सुना है कि अपने नौकर के शादी में 200-250 करोड़ रुपए खर्च कर दे, लेकिन इन्होंने किया है। और वीडियो आपने देखा होगा कितने बार उठ के वो वीडियो ठीक करता है, थूक गटक रहा है, बोलने के तौर तरीके कितने उसमें कट पेस्ट हुआ है। इससे पता चलता है कि और जितना इसको गोदी मीडिया में दिखाया गया है, इतना तेजी से प्रचार प्रसार किया गया है, इसके प्रचार प्रसार से कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। छत्तीसगढ़ की जनता ने मन बना लिया है और ये षड्यंत्रकारी लोगों को इस समय, और पिछले समय 15 सीट भी रह गए थे, इस समय उतनी भी सीट नहीं मिलने वाली। ये स्थिति इनकी है। सर, महादेव ऐप को लेकर केंद्रीय मंत्री का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि इतने पैसे कहाँ से आए, पैसे वाले दोस्ती है क्या, आरोपियों को हम पकड़ेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। आप कैसे देखते हैं उनके बयान को? अब तो हम अभी तक के 450 लोग गिरफ्तार कर लिए, पैसा गिरफ्तार कर लिए, 72 FIR हुआ है, उसके लैपटॉप जब्त हुए हैं, पैसा जब्त हुआ है। आप क्या कर रहे हैं? आपकी जिम्मेदारी है कि ये बंद कराना चाहिए, उसको गिरफ्तार करके लाना चाहिए। लुकआउट सर्कुलर तो हम कब से जारी कर चुके हैं, उसकी कॉपी में भी दिखा देता हूँ। उसकी जो उसके लिए ये देखिए, हमने गूगल को पहले ही लिख दिया, ये चिट्ठी है कि आप इसको बंद करें, लेकिन जिम्मेदारी किसकी है? भारत सरकार की। सर, ये जो लगातार मैनिपुलेशन हो रहा है, आपका नाम खराब किया जा रहा है, तो इसमें क्या मानहानि का कोई दावा ठोकेंगे? क्योंकि वो ये देखो, ये राजनीतिक लड़ाई है, हम राजनीतिक ढंग से लड़ेंगे। आचार संहिता के दौरान सर, लेकिन इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। निर्वाचन आयोग को सुनिश्चित करना होता है, तो ये क्या निर्वाचन आयोग नहीं कर पा रहा है? निर्वाचन आयोग को तो पहले बताना चाहिए कि रायपुर में जब मीटिंग हुई थी, ईडी अधिकारी बैठे थे। दूसरी बात यह है कि अभी तक संज्ञान क्यों नहीं लिए? जब इतनी बड़ी बात सारे मीडिया में आ चुका है तो निर्वाचन आयोग को तो स्वयं संज्ञान लेना चाहिए। वैसे हमारे तरफ से कंप्लेन जाएगा। किसी की छवि खराब करने के लिए जिस प्रकार से प्रयास हो रहा है उसमें कार्रवाई होनी चाहिए, जबकि स्पष्ट निर्देश है निर्वाचन की जो नियमावली है कि उसमें इस प्रकार से जो FIR होगा या कोई भी कार्रवाई होगी उसका दुरुपयोग कोई व्यक्ति नहीं कर पाएगा, कोई राजनीतिक दल नहीं कर पाएगा। लेकिन इसका खुलेआम उल्लंघन हो रहा है, निर्वाचन आयोग को इसको देखना चाहिए। सर, कब कंप्लेन करेंगे सर?
होगा, आज चल देगा। सर बीजेपी प्रतिनिधिमंडल जो है वो मुलाकात करने गई है ईडी के ऊपर जो ऐप है उसको लेकर कार्रवाई के लिए, और नारायणपुर में जो घटना हुई उसको लेकर भी, और कहीं आरोप जो है आपके घर पर भी लगा रही है। क्या कार्रवाई के लिए ज्ञापन सौंपने गई है निर्वाचन आयोग की कार्रवाई की जाए करके। ईडी का ईडी और जो ईडी पर कार्रवाई करना चाहिए। मैं समझा नहीं तुम्हारा, आपका प्रश्न नहीं समझ पाया। सर ये ऐप है सर कि चुनाव के पहले चरण के चुनाव के एक दिन पहले बैन किया गया। हाँ। जब से कार्यवाही शुरू हुई उस दौरान भी बैन किया जा सकता था, एक दिन पहले बैन करने की क्या? सवाल वही है कि ये बंद भी नहीं हुआ है ना, ये कहाँ बंद हुआ है? जिसको एपीके है वो तो चल ही रहा है, उसको कब बंद करेंगे? वीडियो बीजेपी ने जारी किया है और बयान पहले ईडी ने दिया था, कल वीडियो बीजेपी जारी की, ईडी ने किया जारी वीडियो। ये नई बात बता रहे हैं, वीडियो जो है बीजेपी ने जारी किया है, है ना, और प्रेस नोट है ईडी ने जारी किया। तो मतलब कितना बढ़िया संबंध है, हाँ? जैसे पहले कार्रवाई करते थे ईडी और प्रेस विज्ञप्ति जारी करता था रमन सिंह। तो ये तो ईडी और भाजपा की मिली भगत है, वो तो स्पष्ट हो गया है। तो क्या लगता है इसे इफेक्ट पड़ेगा? इससे कुछ फर्क नहीं पड़ना है। छत्तीसगढ़ की जनता पहले जान चुकी है ईडी आईडी की किस प्रकार से दुरुपयोग कर रहा है, इससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, बल्कि इससे भारतीय जनता पार्टी का और नुकसान होगा। वो जितना करेंगे उतना नुकसान होगा। असम के मुख्यमंत्री ने कहा है कि नक्सलवाद और कांग्रेस के बीच में इलू इलू है, इसे कैसे देखते हैं? हम बिल्कुल सही बात है, भारतीय जनता पार्टी कितना संबंध है ना, वो जीरम घाटी में हमने देख लिया है, हमने अपने नेताओं को खोया है, जांच करने नहीं दे रहे हैं। और पहले तो बताओ, उसकी पत्नी ने एप्लीकेशन दिया था क्या, तो भारत सरकार से वो 10 करोड़ का जो उसकी राशि मिली है, भारत सरकार ने अपने आप दे दिया कि इन्होंने आवेदन दिया? अभी तक जवाब नहीं दिया है। सर भाजपा सवाल खड़ा कर रही है कि नरवा गरवा घुरवा बाड़ी और जो जीरा घाटी घटना है उसका घोषणा पत्र में कोई जिक्र नहीं है। भाई वो पहले से ही है, हमारे को जो काम हम लोग पहले से कर रहे हैं उसको बार बार डालने का औचित्य क्या है? वो तो ऑनगोइंग प्रोसेस है। हमारी सरकार बनेगी फिर से हम उसको आगे बढ़ाएंगे। तो पहले कल के राजीनामा प्रेस में मैंने बोला भी। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। All right, viewers, that is the press conference of the Chhattisgarh CM Bhupesh Baghel. He spoke on the Mahadev betting app scam. And as usual, he has maintained the same line. He has said it's nothing more than vendetta, also saying that these allegations against me will not affect me whatsoever, viewers. So that is a top update coming in Republic TV, where the Chhattisgarh CM Bhupesh Baghel has said and slammed the BJP, saying that the BJP is trying to ruin my image. Taking a very short break, much more coming up on the other side as we continue getting you the top updates. Ethics panel to meet on November 9th to discuss the way forward and probe into Mahua's payoff scam. बंद करो कान बंद करो, कभी भी फट सकता हूँ। पटाखा जो लग रहा हूँ, दिवाली है, तैयार होकर आइए। हूबहू तू मुझसा है, रंग भरा एक किस्सा है, तू वो यार है, तू ही त्योहार है। हर कार में है त्योहार। मारुति सुजुकी अरीना, फाइंड योर मैच। मेहमान आ गए, इनका फैशन जो है खत्म नहीं हो रहा। मिश्रा जी, कुर्ता जच रहा है। थैंक यू मैडम सर। 42 की फिटिंग, 42? वो भी सिर्फ 599 में। आपको कैसे पता? पता तो ये भी है कि स्मार्ट बाजार से खरीदा है। टैग। खाना खा लें? चलिए। आ गया फेस्टिवल सेल 1 से 15 नवंबर। दिवाली फैशन सबसे अच्छे दाम में चाहिए? स्मार्ट बाजार चलिए। Poems, not my thing. Are short stories your thing? Yeah. I actually have some other app. Phone Pay accepts money from any app, whatever's your thing.
Actually, I'll take this thing also. Yeah. PC Chandra Jewelers presents Dhanteras Dhan Varsha offer. 25% off on jewelry making charges, 10% off on the value of diamonds and precious stones, 100 rupees off per gram of gold jewelry. Win attractive mega prizes. Offer valid till 11th November. Terms and conditions apply. Visit us today. PC Chandra Jewelers, a jewel of jewels. In the global employability rankings by Times Higher Education UK, only the following 6 institutions from India are ranked amongst the top 230 in the world for having the most employable graduates. IIT Delhi, IISc Bangalore, IIT Bombay, IIM Ahmedabad, IIT Kharagpur and Amity University. बोल्टास बैको ये 30 दिन तक फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को फ्रेश रखता है और तुमने मान लिया। वैसे भी 30 दिन की सब्जियां कौन खाता है? तू। वोल्टास बेको डुअल कूलिंग रेफ्रिजरेटर की स्टोर फ्रेश टेक्नोलॉजी से सब्जियां 30 दिन तक फ्रेश रह सकती हैं। वोल्टास बेको, टेस्टेड बाय रियल मॉम्स। हर खरीदारी के साथ एक गोल्ड कॉइन मुफ्त। हैप्पी दिवाली! कल्याण ज्वेलर्स। Hello, Moto. Motorola, India's best 5G smartphone brand. Sarah, this is your space. Play it your way. This Diwali, New Hawkins, good old friends, fun times again. India's first certified sustainable heart trolleys, made for nature and tested by nature. Uppercase, never ordinary. लेकिन हमने तो एकदम सॉलिड टीएमटी बार लगाया है। लुंगटा स्टील टीएमटी बार, जंग से न माने हार और मजबूती बेशुमार। लुंगटा स्टील टीएमटी बार है बिल्कुल रेडी। Hello, Moto. Motorola, India's best 5G smartphone brand, brings you latest news updates from across the country only on Republic TV. Very good afternoon and thank you for tuning in. You're watching Live and Breaking at 1 p.m. I'm Suresha Sound. We get you all the top stories we're tracking for you this afternoon. First, a quick check of the headlines. Mahadev bombshell tapes air on Republic becomes the turning point in this multi-crore betting scam coverage. Republic sting and alleged tapes becomes the biggest talking point in Chhattisgarh election campaign. Bhupesh Baghel on the back foot, cornered Chief Minister, calls charges against him a conspiracy. Ethics panel to meet on the 9th of November to discuss the way forward in probe into Mahua payoff scam. Madras High Court pulls up Tamil Nadu police for inaction over insult to Sanatan Dharam. As Delhi AQI continues to drop, Aam Aadmi Party and BJP face off over pollution control measures. And first up, we cut across to breaking news coming in. NDA has taken a massive lead in Maharashtra Gram Panchayat polls
NDA lead has escalated with 484 against 170 for the Maharashtra Vikas Aghadi out of 2,349 Gram Panchayat polls. These are the latest numbers that are just coming in, and the NDA leading with a huge margin, where they've taken a lead in the Maharashtra Gram Panchayat polls. Cutting across to Sandeep, who's joining us on the phone line. Sandeep, take us through the latest. It seems that NDA is in fact very much ahead in the 2,349 Gram Panchayat seats, and in fact, as far as the numbers are concerned, 484 are the seats wherein NDA is ahead, whereas Mahavikas Aghadi is concerned. Mahavikas Aghadi is 170 in numbers. As far as the party-wise division of Gram Panchayat votes are concerned, 227 Gram Panchayat seats are with the Bharatiya Janata Party, whereas NCP's Ajit Pawar has contributed around 140 seats, and Eknath Shinde Shiv Sena stands on 170. As far as Mahavikas Aghadi is concerned, NCP's Sharad Pawar faction is having 53 seats and in fact 46 with Uddhav Thackeray. So definitely it is indeed the picture seems to be in the support of NDA, and in fact BJP. For NDA and in fact BJP and Ajit Pawar camp and Shiv Sena of Eknath Shinde Shiv's biggest gainer Panchayat poll. Oh yes, absolutely, and it was extremely crucial also given the circumstances under which the Eknath Shinde, BJP, NCP coalition also happened. So in that sense, NDA getting this massive lead. In fact, Sudhir Mungantiwar is also joining us on the phone line. Thank you for speaking to Republic. What is your view on people's verdict? And while we understand that the numbers are still coming in, but what's the sentiment at this point? जो योजनाएं किसान के कल्याण की गई, विकास की गई, जो निर्णय हमारी सरकार ने गांव के उन्नति के लिए लिए गए, आम आदमी के जीवन में खुशियां हो, इस दृष्टिकोण से, चाहे वो आनंद का शिधा हो, 6,000 रुपए डायरेक्ट किसान के अकाउंट में डालने का निर्णय हो, 1 रुपए में क्रॉप इंश्योरेंस हो, या जीवनदायी योजना की 1,50,000 की मर्यादा बढ़ाकर 5 लाख तक करने की बात हो, या इस राज्य में 4.4 मिलियन निराधार विधवा बहनों का जो अनुदान है उसमें बढ़ोतरी या इजाफा करने की बात हो, सरकार ने आम व्यक्ति के जीवन में खुशियां लाने के लिए पूरी कोशिश की है। और मैं समझता हूं कुछ लोग जातियों का जहर फैलाकर सत्ता हासिल करना चाहते हैं, और ऐसे लोगों को गांव की इस जनता ने सही दिशा दी है कि विकास की ओर चले, एनडीए के साथ चले। जी बिल्कुल, धन्यवाद रिपब्लिक से बात करने के लिए। Moving on to the biggest story that is making headlines, Republic investigation in the Mahadev betting scam that has exploded with the emergence of the tapes of a person who claims to be the key aide of Saurabh Chandrakar and calls himself the owner of Mahadev app. This alleged testimony that has given a whole new twist in the Mahadev betting scam and the investigation that is continuing. Listen in. मैं शुभम सोनी बोल रहा हूँ और मैं महादेव बुक का ओनर हूँ। ये रहे उसके डॉक्यूमेंट्स। और ये मेरे आधार डॉक्यूमेंट्स हैं। ये मेरा आधार कार्ड है। ये मेरा पैन कार्ड है।
और ये मेरा पासपोर्ट है। और महादेव बुक का ओनर मैं ही हूँ। ये आपको डॉक्यूमेंट दिखा दिया मैंने। और 2021 में इसको मैंने चालू किया था। ये उसका पूरा डॉक्यूमेंट्स है। मेरा गैम्बलिंग का काम बहुत अच्छे से चलने लगा था फिर भिलाई में। और ये तो बहुत ही छोटे से काम चालू हुआ था। उसके बाद धीरे धीरे काम बढ़ता गया। अब काम बढ़ता गया। उसके बाद हमारा लाइफस्टाइल भी चेंज होता गया क्योंकि पैसा बहुत आ रहे थे। तो सब नोटिस करने लगे। मेरे मतलब जो आसपास के लोग हैं वो लोग नोटिस करने लगे। धीरे धीरे बात ऊपर तक गया। तो फिर कंप्लेन वगैरह भी होने लगा। तो फिर ऐसा हुआ कि अब प्रोटेक्शन का जब बहुत ज़रूरत था हमको, क्योंकि लड़के भी अंदर हो रहे थे कुछ कुछ। तो उसके बाद मुझे पता चला वर्मा जी के बारे में। फिर मैंने उनसे मीटिंग की। फिर मुझे समझ लो हफ्ता वसूली वाला काम चालू हो गया। अब वर्मा जी से मैंने मीटिंग किया तो फिर उनसे बात हुआ। और ये हुआ कि अब उनको मुझे हर महीना 10 लाख रुपए देना है। तो वो भी ओके हो गया। अब हर महीना मैंने उनको 10 लाख रुपए देना चालू कर दिया। तो काम अब बढ़िया चलने लगा मेरा। और पैसा भी कमा रहे थे हम, सब कुछ ओके था। उसके कुछ दिन बाद ऐसा हुआ कि हमारे लड़के फिर अंदर हुए। अब वो छूट ही नहीं रहे हैं वापस। तो मैंने वर्मा जी को कॉल लगाया कि सर अभी कैसे हो गया, आपको तो मैं पैसा भी दे रहा हूँ, उसके बाद भी लड़के अंदर हो रहे हैं और छूट भी नहीं रहे, बाहर निकल ही नहीं रहे वो लोग। तो वो बोले कि चलो करते हैं कुछ। फिर उसके बाद भी लड़के नहीं छूटे। फिर मैंने वापस कॉल किया उनको। तो वो बोले कि भैया लगता है अभी यहाँ से काम नहीं होगा, मैं चलो आपको किससे मिलवाता हूँ, ऐसा करके बोले हो। मैं बोला ठीक है सर मिलवा दीजिए, बस लड़के लोग को बाहर निकलवाना है। तो वो मेरे को लेके गए, साथ में लेके गए रायपुर। मैं बोला ठीक है मिलवा लो भैया जिससे भी मिलवाना है। All right, so this is the testimony coming in from this man, Shubham Soni, where the story has taken an entire new twist. He claims to be the owner of the Mahadev app, and he's also put out documents to this effect, where he is saying that he is the man who has been at the center point of this scam. Meanwhile, Chhattisgarh Chief Minister Bhupesh Baghel is on the back foot as the Mahadev betting scam is exploring further. Chief Minister is alleging that it is a political conspiracy and has failed to respond to any of these charges that have been levelled against him. Listen in. जांच चल रहा है। छत्तीसगढ़ के बच्चे को पता है कि मेन प्रमोटर रवि उपल और सौरभ चंद्राकर है। ईडी को पता ही नहीं है। और 17 तारीख को ऐसी कहानी आते रहेंगे, आप देखते सुनते रहिए, एंजॉय करिए। बीजेपी को पता है वो हार रही है। इनको अपने आका के लिए छत्तीसगढ़ का खदान चाहिए, इसलिए प्राण लगाए हुए हैं। दूसरी बात यह है कि ये एक जो बंदा नया आया है, आप ईडी के जो प्रेस रिलीज है उसमें उसको बताया गया है कि ये जो महादेव का है उसका एक अधिकारी है। दूसरे दिन वीडियो आता है कि वो उसका मालिक है। ये जो सौरभ चंद्राकर है वो उसके कर्मचारी हैं। बड़ा उदार आदमी है जो अपने नौकर की शादी में 250 करोड़ रुपए खर्चा करता है। आज तक हमने नहीं सुना, क्योंकि सुनिए दुनिया में ये नहीं सुना कि अपने नौकर के शादी में 200-250 करोड़ रुपए खर्च कर रहे, लेकिन इन्होंने किया है। और वीडियो आपने देखा होगा कितने बार उठ के वो वीडियो ठीक करता है, थूक गटक रहा है, बोलने के तौर तरीके कितने उसमें कट पेस्ट हुआ है। इससे पता चलता है कि और जितना इसको गोदी मीडिया में दिखाया गया है, इतना तेजी से प्रचार प्रसार किया गया है, इसके प्रचार प्रसार से कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। छत्तीसगढ़ की जनता ने मन बना लिया है और ये षड्यंत्रकारी लोगों को इस समय, और पिछले समय 15 सीट भी रह गए थे, इस समय उतनी भी सीट नहीं मिलने वाली। ये स्थिति।
1.5 साल से वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, उन्होंने एक भी लेटर नहीं लिखा है, उन्होंने कभी भी एक भी मांग नहीं किया कि ये आप बंद करें। इसीलिए तो उनका 1.5 साल का इन्वेस्टिगेशन का कारण ही तो उनको 508 करोड़ रुपए मिले हैं इनसे। उन्होंने किसी भी एजेंसी से किसी भी तरह हमें कोई नोटिफिकेशन नहीं भेजा है इन 1.5 सालों में। पहली बार अगर सरकार को एक नोटिफिकेशन मिला है इन इलीगल ऐप्स के बारे में, वो कल सुबह एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने भेजा है और हमने कल दोपहर को उस सभी 22 ऐप जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने लिस्ट भेजे थे उनको हमने बैन कर दिया है। और ये भी कह रहे हैं कि जीएसटी 28% जीएसटी मिलती थी इसलिए प्रतिबंधित नहीं किया। आप अभी तक तो समझ गए होंगे, सभी लोग समझ गए होंगे कि कांग्रेस की राजनीति में झूठ और झूठ होना बहुत ही एक नॉर्मल सा फिनोमिनन है। यहाँ पर भी बघेल जी झूठ बोल रहे हैं, वो भी जानते हैं, सब जानते हैं, क्योंकि 1.5 साल से वो एक इन्वेस्टिगेशन को खींच रहे हैं जो 6 मिनट में पता कर सकते थे कि ये एक बेटिंग ऐप है और 6 मिनट में वो लेटर लिख सकते थे कि देखिए इसको बैन कीजिए। सीधे सीधे उन पर आरोप लगाया 508 करोड़ रुपए ले रहे हैं, दुबई से वीडियो जारी हुआ है, इसके बाद क्या उन पर शिकंजा कसेगा? तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और एजेंसीज तय करेंगे। मेरा काम यही था, हमारे सरकार और हमारे मिनिस्ट्री का काम था कि ये इलीगल ऐप्स जो क्रिमिनल ऐप्स हैं उनको बंद करें, हमने बंद कर दिया। रिपब्लिक ने स्टिंग भी किया है, अभिषेक पल्लव जो एसपी हैं उन्होंने भी कबूला है, कई और लोग इस स्टिंग में फंसे हैं, तो इनके खिलाफ क्या सख्त कार्रवाई के निर्देश? मेरा स्पष्ट कहना है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पूरा का पूरा बघेल के सिस्टम, भूपेश बघेल जी के सिस्टम इनके पीछे थे, इसीलिए उनको 508 करोड़ रुपए मिले, इसीलिए 1.5 साल से उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया उनके साथ। कांग्रेस मतलब घोटालों की गारंटी। कांग्रेस ने तो गोबर और गोठान में लूटा ही था, परंतु शराब और जुए में भी कैसे लूट मचाई, इसके भी प्रमाण अब सामने आ चुके हैं। और कांग्रेस ने लूटते लूटते महादेव जी के नाम को भी नहीं बख्शा। सोचिए, हम हर हर महादेव बोलते हैं और कांग्रेस पार्टी महादेव के नाम पर लूट खसूट करती है। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसके खिलाफ और उसके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ अब पुख्ता सबूत और प्रमाण सामने आ चुके हैं कि कैसे महादेव इलीगल बेटिंग ऐप के मालिक शुभम सोनी ने 508 करोड़ रुपए भूपेश बघेल को दिए। किस प्रकार से असीम दास को तो रंगे हाथ पैसों के साथ पकड़ा गया। डिजिटल एविडेंस भी सामने आया है कि ये पैसे दुबई से छत्तीसगढ़ के चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी को दिए जा रहे थे, भूपेश बघेल जी को दिए जा रहे थे। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी की सरकार के सरकारी मुलाजिम ही ये बयान और सबूत दे चुके हैं कि कम से कम 64 करोड़ रुपए महादेव ऐप के तमाम ओनर से उन्हें मिले, ताकि उन्हें पुलिस वालों को और पॉलिटिशियंस को, कांग्रेस पार्टी की सरकार के नेताओं को वो पैसे दिए जा सके। Shifting focus now, Israel's army has said that Hamas is using hospitals in Gaza as bases of operation in a systematic attempt to conceal its activities. As Israel steps up the attack on Hamas infrastructure using its Apache fighter jet, Gursimran is getting us this next report from Ashkelon in southern Israel. Take a look. The operations have been intensified near the Israel-Gaza border, and now the Apache attack helicopters have been swung into the action. I'll request Vijay Surendra Rawat if we can zoom and we can show you that how the aerial recce is being conducted at the point targets of the Israel Defense Forces. This is the same area from where the terrorists of Hamas barged into the territory of Israel via sea route. This is the Zikkim beach from where the terrorists barged into the territory, very close to the Ashkelon, and now the security has been beefed up here on the highways. The Apache attack helicopters were first used in action in the past 48 hours due to the situation that rose, especially reason being that there were the casualties. The number was crossing the double digit for the first time in a single day, as the terrorists of Hamas, using the forts that they have built, were trying to mount the pressure, and now multiple attack helicopters Apache have been pressed into the action. The reason being that the Israel Defense Forces have made it amply clear that there won't be any collateral damage anymore. They want to make it very sure that there is no collateral damage and they can secure their areas as well as the places where the terror hideouts are, first with the airstrikes and then followed by it will remain the ground operations. There have been more
more than 3,500 reserve forces that have been pushed into action. And I'll request Vijay Surendra Rawat to kindly focus on the Apache attack helicopters that have now been pushed into the attacks. They are carrying out the surveillance very close to the border of Israel and the Hamas territory. The recce first being conducted, and then it will be the aerial strikes. It was 48 hours prior to this that attack that the helicopters were used to carry out the attack in the territory of Hamas, and now they are carrying out the aerial recce before carrying out the attacks on the areas of Hamas. We continue to report from the ground zero as Israel's attack on the terror infrastructure of Hamas continues inside the Gaza Strip. Hours after an unannounced stop in Iraq, U.S. Secretary of State Antony Blinken arrived in Turkey in the early hours of this morning to hold a key diplomatic meeting. Turkey happens to be his last stop in the region before heading to Asia. We just finished meetings here in Baghdad. We started with a briefing from Ambassador Romanowski and our entire team at the embassy about the security situation. As you know, there have been a series of attacks conducted by militia directed at our personnel, both in Iraq as well as in Syria. Job number one for me is to ensure the security of our people, and so I got an update on everything we're doing to make sure that our personnel. Meanwhile, more breaking news coming in. We are hearing that the Congress party is all set to approach the Election Commission of India on the Mahadev app issue today. This as there are allegations against the Congress over whether proceeds of the Mahadev app scam were also used as funding for the elections, and how the ED has also leveled these allegations of payments made to the Chhattisgarh Chief Minister to the tune of 508 crore rupees, which the Congress has completely denied. Now, this is the latest that is coming in. Congress party is all set to approach the Election Commission of India on the Mahadev app issue today. This as the probe continues. We are learning more on this. Harsha is joining us on the phone line. Harsha, what more have you gathered in terms of the Congress to approach the Election Commission on the Mahadev app? How are they going to take this forward, and what are they going to say? So right now we have got to know that Congress has refuted all the allegations, calling it baseless and false at Chhattisgarh CM Bhupesh Baghel. Now Congress party is planning to go to Election Commission, and a lot of political face-off could be seen in this entire matter, because Congress is saying that it is just before the elections that agencies are being deployed in the state of Chhattisgarh, and the attacks, the ugly attempt is being made to tarnish and malign the image of Bhupesh Baghel, the Chhattisgarh CM. And now we have got to know that Congress party today only will go to Election Commission of India and is going to give a notice and the letter regarding the baseless allegation which they are saying is made by the BJP party just before the election to tarnish the image of Chhattisgarh CM Bhupesh Baghel. We have to see, because we are waiting outside ECI only, where the Congress leaders will come here. We have got to know that Abhishek Manu Singhvi can also come to meet Election Commission chairperson here and give the letter regarding the false allegation in the Mahadev betting app scam and the direct link of Chhattisgarh CM Bhupesh Baghel, which BJP has levelled against Chhattisgarh CM, stating that there is a direct link of promoters of Mahadev betting app in CM Chhattisgarh, and he has received almost 508 crore rupee in this scam for the elections just before. Also, we got to see the video of Shubham Soni as well, one of the main panel operator, who clearly indicated that how he was running Mahadev betting app, and he had met CM Bhupesh Baghel, and also there is a proof and evidence
against Chhattisgarh CM that how much money he has given to the CM for the elections, and the evidence he's clearly stated that they are the solid evidence. So one can't deny that there's a link between the house and between the Mahadev betting app promoters from the year 2020 to 2023. In between twice, Saurabh Chandrakar, the main promoter of Mahadev betting scam, came to Chhattisgarh, but not even once lookout circular was issued against him. In fact, the IT minister Rajiv Chandrasekhar also stated that state has the power to recommend to the center to ban and block the website and the Mahadev betting app, but they didn't do so because they were protecting the interest of the promoter of the Mahadev betting app, because they were also shielding and getting money through the promoters, and the huge money is in Bhilai in Chhattisgarh. And from 2023 September to till now, we have seen how many arrests has been made by Enforcement Directorate in this entire scam. The ED first registered the case in 2022 August, and from that time to till now, several major arrests has been done, including ASI Chandrabhushan Verma, also Satish Chandrakar, and also several panel promoters and operator. Let me also tell you that the major people have fled away. The close aid of Saurabh Chandrakar like Deepak Nepali, Raj Gupta, Sagar, Satnam, and several others like Chamnani brothers, who are, search are being made, and the probe is being made by Enforcement Directorate to nab all these accused who are directly linked to the main panel operator, Mahadev betting app promoter Saurabh Chandrakar, and with whose help the money was flouted in the state of Chhattisgarh and was made directly to CM Bhupesh Baghel. So this entire nexus was also revealed in the investigation in the Republic sting as well. How IPS Abhishek Pallab was clearly indicating and stated that from bottom to top, there were several police officials, the constables, the ASI level officials who were working in cahoots with Mahadev betting app promoters, and not even once the main panel operator were caught by the police officials. The raids, 30 to 40 raids which were made in the year 2022 between March to August by the Chhattisgarh police, only normal workers were caught. Not single time the panel operators were caught. This was all being done in the behest of Mahadev betting app promoters, and also the direct order which came from the political advisor of Chhattisgarh CM Vinod Verma. So this is what we have gathered to know, and we are waiting for Congress leaders to come at ECI office, that they will be giving letter and stating that this is all being done to tarnish and malign. IT के माध्यम से लड़ रहे हैं। All right, Harsha, we were trying to cut to that live soundbite of Bhupesh Baghel, and we'll try and cue that again to see that whether he said something substantial on these allegations at this point, but so far he has been refuting it. Harsha, my point also is, how do you view a move like this? The probe is ongoing, and the Congress is well within its right to refute these allegations if they think that they're not true. But how can they possibly jump the gun and straight away approach the Election Commission to put their side of the story, whereas the investigation is still ongoing? Rightly stated. Now Congress is going to Election Commission because they are saying that this is the breach of the Model Code of Conduct that Enforcement Directorate, the agencies, are in Chhattisgarh, and they are continuously nabbing and attacking directly CM Bhupesh Baghel. They are stating that this is a breach of Code of Conduct, and therefore agencies can't do this. And that is the reason why the senior Congress leaders here in Delhi, after discussion with CM Bhupesh Baghel, have taken to ECI this entire matter, because they are saying that this is being done. The ugly attempt is being made by the BJP party just before elections to win the elections, so to divert the vote bank entirely, and that is the reason why he is being targeted. Therefore, the Congress leaders have taken to ECI right now, because this matter is getting bigger and bigger. Now we know that more and more people, the politicians, the bureaucrats, the police officials, are involved in this entire Mahadev betting scam. And right now on our frame also we can see the visuals, so this clearly indicates that Congress
Congress has stated that they will give BJP the taste of their own medicine, because now they have taken to ECI this entire matter, stating that this is a breach of the conduct and the enforcement directorate can't in a statement directly attack CM Bhupesh Baghel because without proper evidence and on the basis of just unknown cash courier and the arrested accused Bhim Singh Yadav and Asim. They can't directly point out at CM Bhupesh Baghel, stating that Bhupesh Baghel is involved in this entire scam. This is what Congress is stating. But let me tell you that the political furor could be seen, because the BJP is saying that it is not only Bhupesh Baghel, but this nexus is deep and it is connected with the high command of Congress in Delhi. In Delhi also, more and more senior Congress leaders are involved in this scam. Money was flouted from Raipur to Delhi several times. Now you are watching Republic TV. With this exclusive investigative operation, we have seen that how this entire political furor has erupted from Raipur straight to Delhi. Congress leaders are on their way to meet ECI chairman of this entire Mahadev betting app scam. You are watching Republic TV. Time for a short break. On the other side of the break, we'll show you more breaking updates on the Mahadev betting scam. Stay tuned for a short break. Co-powered by Tata EV. Move with meaning. अरे बंद करो कान बंद करो, कभी भी फट सकता हूँ पटाखा जो लग रहा हूँ। दिवाली है, तैयार होकर आइए। Hi guys, happy Diwali. चलो दीप जला के हर घर सजाए रे, झिलमिल चेहरों पे खुशी खुशी चहके, रिश्ते होंगे रोशन जगमगाए रे। ओ प्रिय रे आई रे दीवाने, मन ताजीना नाचे, अंग अंग चमके, priceless। हर खरीदारी के साथ एक गोल्ड कॉइन मुफ्त। कल्याण ज्वेलर्स। You know what could have been my biggest weakness? The fact that I didn't grow up wearing a lot of makeup turned out to be my biggest strength, because I could relate to the girl next door. I could relate to the girl who had regular skin with skin issues and went through public transport and would sweat all day and wanted makeup that would last through that sweating. People with absolutely who create products for celebrities don't get the requirement of the regular girl in India, which I really got because I was her. Catch Techno Phantom V Flip 5G presents Women Pioneers of India only on Republic TV. You are the one. Unmatched, unequaled, unbeatable. LG OLED Evo, the one and only. India's first certified sustainable heart trolleys, made for nature and tested by nature. Uppercase, never ordinary. Hello, Moto. Motorola, India's best 5G smartphone brand, brings you the latest breaking news updates from across the country, only on Republic TV. Viewers, top headlines are tracking right now. Mahadev bombshell tapes aired on Republic becomes the turning point in multi-crore betting scam coverage. छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल
508 करोड़ ले रहे हैं। किससे ले रहे हैं? एक क्रिमिनल एलिमेंट बैक्ड बेटिंग। Republic sting and alleged tapes becomes the biggest talking point in Chhattisgarh election campaign. Bhupesh Baghel on the back foot, cornered CM calls charges against him a conspiracy. Ethics panel to meet on November 9th to discuss the way forward in a probe into the Mahua payoff scam. Madras High Court pulls up Tamil Nadu police for an action over insult to Sanatan Dharma. As Delhi AQI continues to drop, Aam Aadmi Party and BJP face off over pollution control measures. Viewers, we are live and breaking. I'm Shubhangi Shukla getting you the latest this Monday afternoon. And what we are talking right now is a Mahadev betting app scam. And many details have been coming out in this story. A public investigation in the Mahadev betting scam has exploded even more with the emergence of the tapes of a person who claims to be the key aide of Saurabh Chandrakar and calls himself the owner of the Mahadev app. This alleged testimony has given a fresh twist in the Mahadev betting scam. In the latest update coming in, the Congress party will be approaching the Election Commission of India on the Mahadev app issue today itself. That is right. The latest coming in is that the Congress party is going to, I repeat, is going to approach the Election Commission of India on the Mahadev app issue today. Let's move ahead and look at the reactions coming in. मैं शुभम सोनी बोल रहा हूँ और मैं महादेव बुक का ओनर हूँ। ये रहे उसके डॉक्यूमेंट्स। और ये मेरे आधार डॉक्यूमेंट्स हैं। ये मेरा आधार कार्ड है। ये मेरा पैन कार्ड है। और ये मेरा पासपोर्ट है। और महादेव बुक का ओनर मैं ही हूँ। ये आपको डॉक्यूमेंट दिखा दिया मैंने और 2021 में इसको मैंने चालू किया था। ये उसका पूरा डॉक्यूमेंट्स है। मेरा गैम्बलिंग का काम बहुत अच्छे से चलने लगा था फिर भिलाई में, और ये तो बहुत ही छोटे से काम चालू हुआ था। उसके बाद धीरे धीरे काम बढ़ता गया। अब काम बढ़ता गया, उसके बाद हमारा लाइफस्टाइल भी चेंज होता गया क्योंकि पैसा बहुत आ रहे थे। तो सब नोटिस करने लगे, मेरे मतलब जो आसपास के लोग हैं वो लोग नोटिस करने लगे। धीरे धीरे बात ऊपर तक गया, तो फिर कंप्लेन वगैरह भी होने लगा। तो फिर ऐसा हुआ कि अब प्रोटेक्शन का जब बहुत ज़रूरत था हमको, क्योंकि लड़के भी अंदर हो रहे थे कुछ कुछ। तो उसके बाद मुझे पता चला वर्मा जी के बारे में। फिर मैंने उनसे मीटिंग की। फिर मुझे समझ लो हफ्ता वसूली वाला काम चालू हो गया। अब वर्मा जी से मैंने मीटिंग किया तो फिर उनसे बात हुआ, और ये हुआ कि अब उनको मुझे हर महीना 10 लाख रुपए देना है। तो वो भी ओके हो गया। अब हर महीना मैंने उनको 10 लाख रुपए देना चालू कर दिया। तो काम अब बढ़िया चलने लगा मेरा, और पैसा भी कमा रहे थे हम, सब कुछ ओके था। उसके कुछ दिन बाद ऐसा हुआ कि हमारे लड़के फिर अंदर हुए। अब वो छूट ही नहीं रहे हैं वापस। तो मैंने वर्मा जी को कॉल लगाया कि सर अभी कैसे हो गया, आपको तो मैं पैसा भी दे रहा हूँ, उसके बाद भी लड़के अंदर हो रहे हैं और छूट भी नहीं रहे, बाहर निकल ही नहीं रहे वो लोग। तो वो बोले कि चलो करते हैं कुछ। फिर उसके बाद भी लड़के नहीं छूटे। फिर मैंने वापस कॉल किया उनको, तो वो बोले कि भैया लगता है अभी यहाँ से काम नहीं होगा, मैं चलो आपको किससे मिलवाता हूँ, ऐसा करके बोले हो। मैं बोला ठीक है सर मिलवा दीजिए, बस लड़के लोग को बाहर निकलवाना है। तो वो मेरे को लेके गए, साथ में लेके गए रायपुर। मैं बोला ठीक है मिलवा लो भैया जिससे भी मिलवाना है। And viewers,
Viewers, we have got a reaction coming in from the Chhattisgarh CM Bhupesh Baghel. In fact, Bhupesh Baghel is right now on the back foot as a Mahadev betting scam explodes. CM is alleging political conspiracy and has completely failed so far to respond to the charges against him. Listen in. आज चल रहा है छत्तीसगढ़ के बच्चे को पता है कि मेन प्रमोटर रवि उपल और सौरभ चंद्राकर है। ईडी को पता ही नहीं है और 17 तारीख को ऐसी कहानी आते रहेंगे। आप देखते सुनते रहिए, एंजॉय करिए। बीजेपी को पता है वो हार रही है, इनको अपने आका के लिए छत्तीसगढ़ का खदान चाहिए, इसलिए प्राण लगाए हुए हैं। दूसरी बात यह है कि ये एक जो बंदा नया आया है, आप ईडी के जो प्रेस रिलीज है उसमें उसको बताया गया है कि ये जो महादेव का है उसका एक अधिकारी है। दूसरे दिन वीडियो आता है कि वो उसका मालिक है। ये जो सौरभ चंद्राकर है वो उसके कर्मचारी हैं। बड़ा उदार आदमी है जो अपने नौकर की शादी में 250 करोड़ रुपए खर्चा करता है। आज तक हमने नहीं सुना, क्योंकि सुनिए दुनिया में ये नहीं सुना है कि अपने नौकर के शादी में 200-250 करोड़ रुपए खर्च कर रहे, लेकिन इन्होंने किया है। और वीडियो आपने देखा होगा कितने बार उठ के वो वीडियो ठीक करता है, थूक गटक रहा है, बोलने के तौर तरीके कितने उसमें कट पेस्ट हुआ है। इससे पता चलता है कि और जितना इसको गोदी मीडिया में दिखाया गया है, इतना तेजी से प्रचार प्रसार किया गया है, इसके प्रचार प्रसार से कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। छत्तीसगढ़ की जनता ने मन बना लिया है और ये षड्यंत्रकारी लोगों को इस समय, और पिछले समय 15 सीट भी रह गए थे, इस समय उतनी भी सीट नहीं मिलने वाली। ये स्थिति इनकी है। So viewers, what we see right now is a reaction coming in from the CM Bhupesh Baghel, where he is silent on the charges and instead he is saying this is nothing, I repeat, nothing more than an attempt for the BJP to ruin his image, to malign his image. I remember when Republic TV had tried to pose him questions, my colleague Piyush Ori tried to pose him some important question. Bhupesh Baghel completely ignored Piyush, my colleague, and lost his cool. Viewers, top updates coming in right now on Republic TV. Let's go ahead and play out the reactions. ये आरोप ही नहीं है, प्रमाणित दस्तावेज के साथ उनके सामने साक्ष्य पेश किए गए। 509 करोड़ का लेन देन का प्रमाण हुआ, ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड मिले हैं, 5 करोड़ का राशि और 7 करोड़ की राशि जब्त किए गए हैं। दुबई से कनेक्शन मिला है, दुबई के कनेक्शन के साथ इनके सचिवालय के 3 अधिकारियों का सीधा महादेव ऐप के जो संचालक हैं उनके साथ पैसे का ट्रांजैक्शन का प्रमाण ईडी ने प्रस्तुत किया है। इसके बाद क्या बचता है मुझे समझ में नहीं आता भूपेश बघेल का। ये अब कोई उसको रंगे हाथ कोई उसके घर में पकड़ेगा क्या? इससे ज़्यादा प्रमाण। लेकिन देखिए मुख्यमंत्री जी तो ये कह रहे हैं कि ये सब आरोप है, इनको उनकी छवि धूमिल करने के लिए ये सब आरोप है भारतीय जनता पार्टी द्वारा। बताइए, महादेव ऐप में इतना बड़ा खुलासा पीएमएलए में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में हुआ है, तो क्या आसमान खा गया पैसा? पूरा संरक्षण प्राप्त है छत्तीसगढ़ में ऐसे अपराधी गतिविधियों का। सट्टा जुआ और इस अपराध में इलेक्शन के लिए फंडिंग कर रहे हैं। 509 करोड़ चुनाव के लिए भेजा है भूपेश बघेल के लिए। बल्कि आपको पता ही होगा कि हमने भी सर एक स्टिंग किया जिसमें हमें पता चला है कि काफ़ी पुलिस वाले भी शायद सम्मिलित, उसमें ईडी ने भी अरेस्ट किया उसके बाद, और उसके जो लिंक्स है वो मुख्यमंत्री के ऑफिस तक मतलब जा रहे हैं। ऑफिस तक मिले हैं, 3 नाम प्रकट रूप से आए हैं और तीनों लोगों की संलिप्तता साफ दिख रही है और ये अकेला एक प्रकार का महादेव ऐप की बात नहीं है। हिंदुस्तान में और कहीं ऐसा हो सकता है क्या सरकारी खजाना का लूट इतना खुलेआम हो कि बिना हॉलमार्क के 40% शराब को बिना टैक्स पटाए सरकारी शराब दुकान से बेची जाए? क्या कोयले में इससे ज़्यादा भ्रष्टाचार दुनिया में कहीं हो सकता है? लेकिन सर मैं महादेव में ही ज़रा फोकस रखूँगा सर। एक और मतलब अब खुलासा आया है, ये ईडी की रिमांड कॉपी में भी आया है और अब एक वीडियो भी इमर्ज आ रही है कि जिसमें एक इंसान है शुभम सोनी, वो अपने आप को महादेव का ओनर बुलाता है, अपने आप को महादेव का ओनर बोलता है और वो बोलता था कि वो असीम दास के द्वारा चीफ मिनिस्टर ऑफिस
में कोई वर्मा जी है उनके द्वारा पैसे भेजता था। अब ये कितनी सच्चाई है? ये असीम के पास ही तो 5.37 करोड़ रुपए के पैसे जब्त हुए। वही असीम दास है जिसने स्वीकार किया बघेल नामक व्यक्ति को मैं पैसा देता हूँ। वही असीम दास है जिसके दुबई के कनेक्शन मिले हैं। ये सारे प्रमाण के लिंक मिलते जा रहे हैं और प्रमाण के साथ ईडी ने ऐसी कार्रवाई नहीं की, पूरे पुख्ता जानकारी के साथ पूरे दस्तावेज के साथ किया है और उसके बाद भी बेशर्मी की हद भूपेश बघेल ईडी पे आरोप लगा रहे हैं। इसका अंत आप कहाँ तक देखते हैं? अंत होगा, न्यायालय में जाएंगे और न्यायालय में कार्रवाई होगी, सजा होगी। 1.5 साल से वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, उन्होंने एक भी लेटर नहीं लिखा है, उन्होंने कभी भी एक भी मांग नहीं किया कि ये आप बंद करें। इसीलिए तो उनका 1.5 साल का इन्वेस्टिगेशन का कारण ही तो उनको 508 करोड़ रुपए मिले हैं इनसे। उन्होंने किसी भी एजेंसी से किसी भी तरह हमें कोई नोटिफिकेशन नहीं भेजा है इन 1.5 सालों में। पहली बार अगर सरकार को एक नोटिफिकेशन मिला है इन इलीगल ऐप्स के बारे में, वो कल सुबह एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने भेजा है और हमने कल दोपहर को उस सभी 22 ऐप जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने लिस्ट भेजे थे उनको हमने बैन कर दिया है। और ये भी कह रहे हैं कि जीएसटी 28% जीएसटी मिलती थी इसलिए प्रतिबंधित नहीं किया। आप अभी तक तो समझ गए होंगे, सभी लोग समझ गए होंगे कि कांग्रेस की राजनीति में झूठ और झूठ होना बहुत ही एक नॉर्मल सा फिनोमिनन है। यहाँ पर भी बघेल जी झूठ बोल रहे हैं, वो भी जानते हैं, सब जानते हैं, क्योंकि 1.5 साल से वो एक इन्वेस्टिगेशन को खींच रहे हैं जो 6 मिनट में पता कर सकते थे कि ये एक बेटिंग ऐप है और 6 मिनट में वो लेटर लिख सकते थे कि देखिए इसको बैन कीजिए। सीधे सीधे उन पर आरोप लगा है 508 करोड़ रुपए ले रहे हैं, दुबई से वीडियो जारी हुआ है, इसके बाद क्या उन पे शिकंजा कसेगा? तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और एजेंसीज तय करेंगे। मेरा काम यही था, हमारे सरकार हमारे मिनिस्ट्री का काम था कि ये इलीगल ऐप्स जो क्रिमिनल ऐप्स हैं उनको बंद करें, हमने बंद कर दिया। रिपब्लिक ने स्टिंग भी किया है, अभिषेक पल्ला जो एसपी हैं उन्होंने भी कबूला है, कई और लोग इस स्टिंग में फंसे हैं, तो इनके खिलाफ क्या सख्त कार्रवाई के निर्देश? मेरा स्पष्ट कहना है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पूरा का पूरा बघेल के सिस्टम, भूपेश बघेल जी के सिस्टम इनके पीछे थे, इसीलिए उनको 508 करोड़ रुपए मिले, इसीलिए 1.5 साल से उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया उनके साथ। अब घोटालों की गारंटी कांग्रेस ने तो गोबर और गोठान में लूटा ही था, परंतु शराब और जुए में भी कैसे लूट मचाई इसके भी प्रमाण अब सामने आ चुके हैं। और कांग्रेस ने लूटते लूटते महादेव जी के नाम को भी नहीं बख्शा। सोचिए, हम हर हर महादेव बोलते हैं और कांग्रेस पार्टी महादेव के नाम पर लूट खसूट करती है। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसके खिलाफ और उसके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ अब पुख्ता सबूत और प्रमाण सामने आ चुके हैं कि कैसे महादेव इलीगल बेटिंग ऐप के मालिक शुभम सोनी ने 508 करोड़ रुपए भूपेश बघेल को दिए। किस प्रकार से असीम दास को तो रंगे हाथ पैसों के साथ पकड़ा गया। डिजिटल एविडेंस भी सामने आया है कि ये पैसे दुबई से छत्तीसगढ़ के चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी को दिए जा रहे थे, भूपेश बघेल जी को दिए जा रहे थे। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी की सरकार के सरकारी मुलाजिम ही ये बयान और सबूत दे चुके हैं कि कम से कम 64 करोड़ रुपए महादेव ऐप के तमाम ओनर से उन्हें मिले, ताकि उन्हें पुलिस वालों को और पॉलिटिशियंस को, कांग्रेस पार्टी की सरकार के नेताओं को वो पैसे दिए जा सके। Viewers, much more coming up on the Soil Ethics panel to meet on November 9 to discuss the way forward and probe into Mahua payoff scam. Hello, Moto. Motorola, India's best 5G smartphone brand. बंद करो कान बंद करो, कभी भी फट सकता हूँ। पटाखा जो लग रहा हूँ। दिवाली है, तैयार होकर आइए। You know what could have been my biggest weakness? The fact that I didn't grow up wearing a lot of makeup turned out to be my biggest strength, because I could relate to the girl next door. I could relate to the girl who had regular skin with skin issues and went through public transport and would sweat all day and wanted makeup that would last through that sweating.
people with absolutely, who create products for celebrities don't get the requirement of the regular girl in India, which I really got because I was her. Catch Techno Phantom V Flip 5G presents Women Pioneers of India only on Republic TV. PC Chandra Jewelers presents Dhanteras Dhan Varsha offer. 25% off on jewelry making charges, 10% off on the value of diamonds and precious stones, 100 rupees off per gram of gold jewelry. Win attractive mega prizes. Offer valid till 11th November. Terms and conditions apply. Visit us today. PC Chandra Jewelers, a jewel of jewels. Hey Alexa, start the robo. Introducing Forbes Robo Vacuum Cleaner. Daily cleaning as easy as 1, 2, 3. It dry vacuums, even wet mops, and recharges automatically. Get the Forbes Robo Vacuum Cleaner from Eureka Forbes. This Diwali, New Hawkins, good old friends, fun times again. Whenever I had ice cream or cold water, I would experience a sharp shooting sensation. So I just kept ignoring it. Even my hot chai was giving me the same amount of discomfort. My dentist recommended Sensodyne. So now I can be completely carefree and sip my hot cup of tea. It really works. With 49 studios, Woodville has revolutionized the Indian modular kitchen industry by bringing the best of Europe for Indian homes. Visit the nearest store for a new design and a quote. Getting some big breaking updates coming in right now, where a big update is coming in, a mega political scam, and a reaction coming in from Bhupesh Baghel. Let's play out that reaction. 2 साल से जांच चल रहा है। छत्तीसगढ़ के बच्चे को पता है कि मेन प्रमोटर रवि उपल और सौरभ चंद्राकर है। ईडी को पता ही नहीं है और 17 तारीख को ऐसी कहानी आते रहेंगे। आप देखते सुनते रहिए, एंजॉय करिए। बीजेपी को पता है वो हार रही है। इनको अपने आका के लिए छत्तीसगढ़ का खदान चाहिए, इसलिए प्राण लगाए हुए हैं। दूसरी बात ये है कि ये एक जो बंदा नया आया है, आप ईडी के जो प्रेस रिलीज है उसमें उसको बताया गया है कि ये जो महादेव का है उसका एक अधिकारी है। दूसरे दिन वीडियो आता है कि वो उसका मालिक है। ये जो सौरभ चंद्राकर है वो उसके कर्मचारी हैं। बड़ा उदार आदमी है जो अपने नौकर की शादी में 250 करोड़ रुपए खर्चा करता है। आज तक हमने नहीं सुना, क्योंकि सुनिए दुनिया में ये नहीं सुना है कि अपने नौकर के शादी में 200-250 करोड़ रुपए खर्च कर रहे, लेकिन इन्होंने किया है। और वीडियो आपने देखा होगा कितने बार उठ के वो वीडियो ठीक करता है, थूक गटक रहा है, बोलने के तौर तरीके कितने उसमें कट पेस्ट हुआ है। इससे पता चलता है कि और जितना इसको गोदी मीडिया में दिखाया गया है, इतना तेजी से प्रचार प्रसार किया गया है, इसके प्रचार प्रसार से कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। छत्तीसगढ़ की जनता ने मन बना लिया है और ये षड्यंत्रकारी लोगों को इस समय, और पिछले समय 15 सीट भी रह गए थे, इस समय उतनी भी सीट नहीं मिलने वाली। ये स्थिति इनकी है। Viewers, much more coming up on to the side. Madras High Court pulls up Tamil Nadu police for inaction over insult to Sanatan Dharma.
बंद करो कान बंद करो कभी भी फट सकता हूँ पटाखा जो लग रहा हूँ दिवाली है तैयार होकर आइए In the global employability rankings by Times Higher Education UK, only the following 6 institutions from India are ranked amongst the top 230 in the world for having the most employable graduates. IIT Delhi, IISc Bangalore, IIT Bombay, IIM Ahmedabad, IIT Kharagpur and Amity University. इस दिवाली पूरे किचन का होगा मेकओवर। जब होम वन हीट डॉट टेक्नोलॉजी नॉन स्टिक कुकवेयर रेंज पर मिलेगा फ्लैट 50% ऑफ। आ गया स्मार्ट बाजार फेस्टिवल सेल 1 से 15 नवंबर। फेस्टिवल को बेस्टिवल बनाइए, स्मार्ट बाजार चलिए। जब एक दिया जलता है पूरा घर रोशन हो जाता है। सोचिए जब आस्था के दीप जगमगाएंगे और प्रभु श्री राम के अयोध्या आगमन का उत्सव मनाएंगे तो कैसा अलौकिक दृश्य होगा जो अपने आप में एक कीर्तिमान होगा और पूरी राम नगरी डूब जाएगी दिव्य अलौकिक दीपोत्सव की जगमगाहट में। आप भी सपरिवार इस विश्व कीर्तिमान का हिस्सा बने और अपनी अयोध्या नगरी को विश्व मानचित्र पर आने का उत्सव मनाइए। भव्य दीपोत्सव उत्सव त्योहार है, ज्योतिर्मय तेज है, ये रोशनी की धार है, पाप पर प्रहार है, सच की जीत की हुंकार है, दिए से दिया जलाए, राम राज सरकार है, राम 11 नवंबर सरयू घाट पर आइए और प्रभु श्री राम की महिमा गुनगुनाइए। Sarah, this is your space. Play it your way. Hello, Moto. Motorola, India's best 5G smartphone brand, brings you the latest breaking news update from across the country only on Republic TV. Viewers, top publicity tracking right now on Republic TV. AIMIM Chief Aswaddin Owaisi participated in a campaign rally in the constituency along with the AIMIM candidates as well in Hyderabad. Rajasthan CM Ashok Gehlot meets his family members in Jodhpur before filing nomination. Rajasthan CM Ashok Gehlot files his nomination from Sardarpur constituency for the upcoming state assembly elections. Ahead of Mizoram election, polling parties leave for their respective polling station in Mizoram ahead of the assembly election scheduled for tomorrow, November 7th. And in other news that we're tracking right now, we are seeing that, in fact, Martin was taken to a hospital for a medical checkup by Kochi police ahead of being produced before the Principal Sessions Court. The Principal Sessions Court granted custody application of Dominic Martin. The court further asked the accused if the police had tortured him. Viewers, much more coming up on the side. Bhupesh Baghel on the back foot. Cornered CM calls charges against him a conspiracy. Stay tuned. Hello, Moto. Motorola, India's best 5G smartphone brand. बंद करो कान बंद करो कभी भी फट सकता हूँ पटाखा जो लग रहा हूँ दिवाली है तैयार होकर आइए। लेकिन हमने तो एकदम सॉलिड टीएमटी बार लगाया है। रूंगटा स्टील टीएमटी बार, जंग से न माने हार और मजबूती बेशुमार। रूंगटा स्टील टीएमटी बार है बिल्कुल रेडी। जब एक दिया जलता है पूरा घर रोशन हो जाता है। सोचिए जब आस्था के दीप जगमगाएंगे
और प्रभु श्री राम के अयोध्या आगमन का उत्सव मनाएंगे तो कैसा अलौकिक दृश्य होगा, जो अपने आप में एक कीर्तिमान होगा और पूरी राम नगरी डूब जाएगी दिव्य अलौकिक दीपोत्सव की जगमगाहट में। आप भी सपरिवार इस विश्व कीर्तिमान का हिस्सा बने और अपनी अयोध्या नगरी को विश्व मानचित्र पर आने का उत्सव मनाइए। भव्य दीपोत्सव उत्सव त्योहार है, ज्योतिर्मय तेज है, ये रोशनी की धार है, पाप पर प्रहार है, सच की जीत की हुंकार है, दिए से दिया जलाए, राम राज सरकार है, राम 11 नवंबर सरयू घाट पर आइए और प्रभु श्री राम की महिमा गुनगुनाइए। You know what could have been my biggest weakness? The fact that I didn't grow up wearing a lot of makeup turned out to be my biggest strength, because I could relate to the girl next door. I could relate to the girl who had regular skin with skin issues and went through public transport and would sweat all day and wanted makeup that would last through that sweating. People with absolutely who create products for celebrities don't get the requirement of the regular girl in India, which I really got because I was her. Catch Techno Phantom V Flip 5G presents Women Pioneers of India only on Republic TV. हर कार में है त्योहार। मारुति सुजुकी अरीना, फाइंड योर मैच। हर खरीदारी के साथ एक गोल्ड कॉइन मुफ्त। हैप्पी दिवाली! कल्याण ज्वेलर्स। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। This Diwali, New Hawkins, good old friends, fun times again. You are the one. Unmatched, unequaled, unbeatable. LG OLED Evo, the one and only. जब डेटा ब्रीच अलर्ट के बिना हो हैकर्स के पास अथॉरिटी, फिर किस बात की साइबर सिक्योरिटी। क्विक हील, आज के लाइफ की प्रायोरिटी साइबर सिक्योरिटी। In a journey that defines our dynamic future, Bharat embarks on a mission of shaping a new and determined nation. Witness a journey towards development where turning dreams into reality is not just a possibility but a certainty. Join us on Bharat 2050, where unwavering commitment and self-reliance meet economically brilliant tomorrow. Hello, Moto. Motorola, India's best 5G smartphone brand, brings you the latest breaking news update from across the country only on Republic TV. Thank you for staying with Republic. You're watching live and breaking at 2 p.m. I'm Suesha Sawan. The Mahadev bombshell that has now exploded, and the political reactions that are coming in on it. The story is developing at a very fast pace. We'll get to the very latest. First, a quick check of the headlines we are tracking. Mahadev bombshell tapes aired on Republic becomes the turning point in the multi-crore betting scam coverage.
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 508 करोड़ ले रहे हैं। किससे ले रहे हैं? एक क्रिमिनल एलिमेंट बैक्ड बेटिंग। Republic sting and alleged tapes become the biggest talking point in Chhattisgarh election campaign. Bhupesh Baghel on the back foot. Cornered Chief Minister calls charges against him a conspiracy. Ethics panel to meet on the 9th of November to discuss the way forward in probe into Mahua payoff scam. Madras High Court pulls up Tamil Nadu police for inaction over insult to Sanatan Dharam. As Delhi AQI continues to drop, Aam Aadmi Party and BJP face off over pollution control measures. And well, it was on Sunday when Republic had aired the first part of the Mahadev bombshell tapes in which a man claiming to be Mahadev book owner Shubham Soni implicated CM's office. Now we are showing you the second part of this tape in which he names Chief Minister Bhupesh Baghel and claims that Chief Minister told him to start operations in Dubai. Listen. वो बोले कि चलो अब मिलवाता हूँ। हम गए साथ में, वहाँ पर सीएम सर और बिट्टू भैया से हमारा मीटिंग हुआ। ये चीज़ का मैंने पूरा अपना लिख के दे दिया है उसमें रिटर्न स्टेटमेंट में कि क्या हुआ वहाँ, कैसे हुआ, क्या किस बात का डील हुआ, हर चीज़ का स्टेटमेंट मैंने दे दिया अपने रिटर्न डॉक्यूमेंट में। मैं सितंबर 2020 में दुबई आया। जैसा कि मेरा मीटिंग हुआ था सीएम साहब से, तो उन्होंने बोला था कि दुबई जाओ, अपना काम बढ़ाओ और वहाँ मीटिंग करो जाके। तो मैं गया और मीटिंग भी हुआ मेरा कई लोगों से। तो 2 लोग के साथ मेरा यहाँ बिजनेस भी सेट हो गया और अच्छा खासा काम भी बढ़ने लगा, सब कुछ ओके चलने लगा। जैसा सीएम साहब बोले थे सब बढ़िया हो गया। उसके बाद मुझे यहाँ 2 लोग मिले जो भी मेरे भिलाई के ही थे, सौरभ और रवि। तो वो लोग से मैं मिला, उनका यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम था। तो मैंने सोचा मैं भी काम चालू कर लेता हूँ, यहाँ अच्छा काम है ये चीज़। तो मैं उन्हें अपना पर्सनल एडवाइज़र रख लिया ये काम पे, कंस्ट्रक्शन के काम पे। अब इसके बाद हुआ ये कि फेमस ये लोग होने लगे महादेव बुक के नाम से। मैंने बुक खड़ा किया, मैंने बुक चालू किया, फेमस ये लोग हो रहे हैं। मैंने जीरो से चालू करके पूरा ओके आसमान तक पहुँचाया इस बुक को, और फेमस ये लोग हो रहे हैं। बताओ, ऐसा थोड़ी होता है। ठीक है, उनको आशीर्वाद नहीं था सीएम साहब का, इसलिए उनको वो फेमस हो गए। ये गलत बात है ना। इस चीज़ का बुरा लगता है बहुत ज़्यादा। एक बात बता रहा हूँ आपको, हमारे सीएम साहब का एक आदत है बघेल जी का कि वो कुछ दिन में पलटी मार देते हैं, और ऐसा मेरे साथ हुआ है। जब उन्होंने मुझे दुबई भेजा कि वहाँ जाके अपना काम सेटल करो, लोगों से मिलो, तो मैं गया, मिला भी और मेरा काम भी बहुत अच्छा सेट हो गया। उसके बाद हुआ ये कि कुछ दिन तक तो अच्छा चला, उसके बाद फिर प्रॉब्लम आने लगा मेरे काम पे। हमारे लोग अंदर होने लगे और छूट ही नहीं रहे वो लोग। मैं फ़ोन पे फ़ोन लगाया जाता हूँ, परेशान हो रहा हूँ। तो वापस मैंने वर्मा जी को फ़ोन लगाया, तो बोले कि चलो ठीक है, आप भिलाई आ जाओ, आपका मीटिंग कराते वापस से। अब मैं डर से पहुंच गया भिलाई कि लोग बाहर आ जाएंगे करके। तो वर्मा जी से मैं मिलने गया। वर्मा जी और गिरीश तिवारी मुझे मिले रायपुर एयरपोर्ट रोड पे। वो फिर लेके गए, वर्मा जी तो वहीं उतर गए, फिर गिरीश तिवारी मुझे लेके गए। हमारे उस समय के एसपी हैं प्रशांत अग्रवाल जी, उनसे जाके मेरा मीटिंग कराया। अब मैं उनको अपना प्रॉब्लम पूरा शेयर किया, तब वो फ़ोन घुमाया। उसके बाद वो बात किए, लाउड स्पीकर में ही था फ़ोन, तो सीधा सीधा आवाज़ तो समझ आ ही रहा था, हमारे बघेल जी का ही आवाज़ था वो। तो पूरा प्रॉब्लम बताने के बाद उन्होंने वहाँ से ये बोला कि कैसे रे सोनी, तेरे को मैं वहाँ भेजा था दुबई काम सेट करने के लिए, तू तो मालिक बन के बैठ गया है, शेख बन गया क्या वहाँ का।
अब मैं कुछ बोल ही नहीं पाया, एकदम मुंह उदास सा हो गया। तो मैंने यही बोला कि सर हम तो छोटे आदमी हैं, आप बताओ क्या करना है, जैसा बोलोगे हम वैसा करेंगे। तो बस वो यही बोले कि ठीक है आप प्रशांत जी से बात कर लो, वो आपको बता देंगे क्या कैसे करना है। मैं बोला ठीक है सर। उसके बाद हम चल गए वहाँ से। उसके बाद प्रशांत अग्रवाल जी से तो डील हो गया था कि क्या कैसे देना है, और वो सब तो मैंने अपने रिटर्न स्टेटमेंट में भी बता दिया है। उसमें लिखा भी हुआ है सब कुछ रिटर्न स्टेटमेंट में, क्या मैंने किसको दिया है, कैसे दिया है, किसके सोर्स से दिया है, हर कुछ लिखा हुआ है। अब इतना पैसा देने के बाद भी मेरा काम बढ़ नहीं रहा है, अंदर हो रहे हैं लोग, तो क्या मतलब, पूरा फंस गया हूं मैं पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर यार। तो प्रशांत अग्रवाल जी के जब मेरा मीटिंग हुआ उसके बाद से मैंने अब तक 508 करोड़ रुपए दे चुका है। हमारे बघेल साहब, बिट्टू भैया और उनके जो लोग हैं उनको मैंने 508 करोड़ रुपए दिया है। उसके बाद भी मेरा काम नहीं हो रहा है, मेरे काम में डिस्टर्बेंस हो रहा है इतना ज़्यादा। मैं इतना परेशान हो गया हूँ इस सिस्टम से, अब क्या करूँ समझ नहीं आता है। ज़बरदस्ती का मेरे ऊपर ईडी का कार्रवाई चालू हो गया है। अब ऐसा ऐसा कुछ होगा मेरे साथ, इतना पैसा देने के बाद भी, तो मैं क्या करूँ बताओ। अब बस मेरा यही लास्ट रिक्वेस्ट है हमारे इंडियन गवर्नमेंट से कि वो बस इतना हेल्प कर दे मेरी, कि मैं अब फंस चुका हूँ इस पॉलिटिकल सिस्टम में, मैं इससे बाहर निकलना चाहता हूँ। और आपको जैसा एविडेंस चाहिए, जैसा प्रूफ चाहिए, मैंने जैसे जैसा पैसा उनको दिया है, हर चीज़ का मेरे पास एविडेंस, प्रूफ, हर चीज़, एक एक चीज़ पड़ा हुआ है। तो मैं यही चाहता हूँ कि बस मेरा हेल्प कर दीजिए वहाँ से। मैं भी इंडिया जाना चाहता हूँ वापस। मुझे डर लगता है यहाँ से इंडिया जाने में। मैं वहाँ जाना चाहता हूँ वापस, वहीं रहना चाहता हूँ, लेकिन मेरा हेल्प कीजिए, यही रिक्वेस्ट है मेरे इंडियन गवर्नमेंट से यार। Cutting across to Shravan Sen, who's joining us on the broadcast. Shravan, these videos that have created such ripples, especially after the investigation conducted by Republic, and this is the man who's claiming that he is the man behind the Mahadev app. Not just that, he's spoken, given out details, given out his documents, and is also saying that Bhupesh Baghel was a part of it in every which way. Where does he figure on the ED investigation and the current ongoing talk of the Mahadev scam? Well, in fact, two sets of videos that have been accessed by Republic TV. Remember these videos in which a man claiming to be Shubham Soni says he's the owner of Mahadev app. But there are two important facts that are now emerging from it. Part one of the video that was put out by Republic TV on Sunday, which basically indicates that there is a man called Vinod Verma, whom Shubham Soni is referring as Verma Ji. Supposedly, it is the political advisor of the Chhattisgarh Chief Minister, Vinod Verma, whose name has also surfaced in the investigation that was carried out by Republic TV. Important to point out here is this. He makes this allegation that monthly payments were being made to Verma Ji. And now then he also goes on to say that there were meetings that were fixed by Verma Ji, and one of the meetings that he's actually had, allegedly had, was with none other than the Chhattisgarh Chief Minister, Bhupesh Baghel. In fact, he says that protection was actually given to him and his panel members, and also makes that stunning claim that only because of the protection, some of the panel operators who were actually arrested were also released because of the kind of protection he enjoyed. But now he goes on to say that he's been caught in this political trap, and that is the reason why he wants to come out. Now let's put this into perspective. Who exactly is Shubham Soni? Why has he been called up by the Enforcement Directorate? And whether at all these claims can be taken on face value or not. Number one, as far as these claims are concerned, it has to be investigated. The Enforcement Directorate has to step in and perhaps look into the allegations that have been leveled by Shubham Soni against the Chief Minister and his office. The Chief Minister says that this is an attempt that has been made by the Bharatiya Janata Party to tarnish his image through
the Enforcement Directorate. What's the truth? The Enforcement Directorate says that they've already sent out a summon to Shubham Soni. He's responded to it, not physically. He hasn't appeared before the Enforcement Directorate as yet, but he has written to the Enforcement Directorate, in which he has made this admission about the fact that 508 crore rupees, that's the amount that has already been given to the Chhattisgarh Chief Minister. It's, again, remember, a claim that has been made by Shubham Soni. What's the truth? It's the job of the Enforcement Directorate to find out whether at all these allegations that have been leveled against the Chief Minister, there is any merit to it, there is any truth to the allegations that have been leveled. But let's be very clear, from the entire investigation, the deep investigation that has been done by Republic TV and these videos that have surfaced, and also the remand copy of the Enforcement Directorate, it puts the Chief Minister of Chhattisgarh in the dock. It raises uncomfortable questions about this nexus that actually exists with the owners of Mahadev app and, for that matter, political stakeholders in this particular case. And the Chief Minister simply saying that this is an attempt to tarnish his image does not really cut the ice. The reason being is that can he actually deny the fact? Perhaps as far as the Enforcement Directorate, he could, but as far as the investigation that has been done by Republic TV, it becomes abundantly clear. It is his men, his police officers who have made the admission about the fact that the Chief Minister was aware of the... It is his police officers who are now saying that this is a police-led, police-guided operation. Then what more is left? In fact, there is another part 3 that is going to come up in a short while from now. That in itself, perhaps, Suesha, is going to make things even more difficult for the Chief Minister. He perhaps will have to come out in the open and make a public statement, because so far the statements that he has made has simply passed the buck and simply made an allegation here that the Bharatiya Janata Party is really responsible for it. These are evidence which ought to be investigated, Suesha. But really, to understand, Shravan, this man Shubham Soni, why was he quiet until now? What is his link with Saurabh Chandrakar? When ED had leveled all these allegations, Saurabh Chandrakar eventually and his PR team had released a statement where they had refuted those allegations. Is it Saurabh Chandrakar himself who's now putting Shubham Soni on the forefront? Even if we focus on the political angle, the Congress wants to approach the Election Commission as they continue to call this political vendetta, but this is an ongoing investigation by the ED. How are they possibly jumping the gun to really safeguard themselves ahead of the polls? How do you answer all of this? Well, so keeping aside the political rhetoric, expected lines taken by the Congress party. Of course, the Bharatiya Janata Party would jump at this, perhaps this opportunity that they sense at this point in time, just ahead of the elections, because this, after all, basically taints the image of the Chief Minister himself. And keeping that aside, let's just purely look at the merits of the case. Does this scam exist? Yes, it does exist. It's a 5,000 crore rupees scam that we are looking into, number one. Number two, with regards to the alleged involvement of the Chief Minister, not one, but at least five testimonies that we have put out, starting with 3 stings and 2 video testimonies. All of them essentially indicate two things. One, that there was police protection. 2, there was political patronage. Is there anything to basically, counter that? That's for the Chief Minister and the Chief Minister's office and even some other workers, the Congress party, to come out in the open and talk about it if they have any counter evidence to it, and for the Enforcement Directorate to find out. Answering your question as to who exactly is Shubham Soni, can this be taken on face value, and why exactly make this statement right now? भगवान को याद करें तो भी कांग्रेस आएगी वहाँ। जो एलिगेशन लगा रहे हैं 508 करोड़ रुपए लिए इस तरह के मुख्यमंत्री पर आरोप लगा रहे हैं। अरे ये सबको लगा रहे हैं, वो किसको छोड़े हैं? वो महादेव को भी नहीं छोड़े। सर, आप राजस्थान में हैं, कौन से बड़े मुद्दे जिनको लेकर आप चुनाव में जा रहे हैं? अब भाषण में जाएंगे, मैं बोलूंगा, अभी पब्लिक मीटिंग है वहाँ पर बोलता हूँ, आप वो लीजिए। इधर आए क्या तुम फिर? करके सर Sorry, we had to interrupt you there, Shravan, because this is the latest soundbite coming in from Mallikarjun Kharge. But as far as the political stance is concerned, it remains the same. Evasive answers when it comes to pointed questions on the Mahadev scam.
barring calling it political vendetta. What does this reflect? Well, in fact, there would be, allegations that would be leveled even by the Congress party. In fact, they say that this is nothing but political vendetta. I'll come back to the merit of this particular case because that's important. And for the Chief Minister and his staff members, it's important to answer these very questions. This app started operating in the year 2017. The Chhattisgarh Chief Minister claims that it is perhaps the prerogative of the centre to ban it. Was there a request actually made by the Chhattisgarh government to actually ban it? Number one. Number two, with regards to this investigation that has been carried out so far, why is it that when they were aware that such a scam existed, the main accused in this particular case, Saurabh Chandrakar, actually managed to leave the country? And if he did, what attempts were made by the Chhattisgarh State Police to prevent the exit of the main accused? Secondly, with regards to the lookout notice, why is it that the Chhattisgarh government or the Chhattisgarh State Police did not feel the need to first issue a lookout notice, which is extremely crucial to ensure that there is a fair investigation that is carried out? More importantly, when you have key characters in this particular investigation coming out and making this sensational allegation that money was being sent. Number one, they're saying that the government was demanding money in lieu of protection to be given to the panel members. Then yes, it is important that the Chief Minister comes out and goes beyond mere lip service by saying that this is an attempt to tarnish his image. What is it that he can counter at this point in time in terms of evidence? Because so far we haven't really heard anything in terms of evidence. All right, Shawan, do stay on with us. We'll keep coming back to you, as you've told our viewers that the third part of this video will be on Republic very, very soon. But we also trace the story back to where this video started. In fact, Republic investigation in the Mahadev betting scam that has completely exploded. And needless to say that with the emergence of these tapes of this person, Shubham Soni, who's claiming to be a close aide of Saurabh Chandrakar, he's calling himself the owner of Mahadev app. This alleged testimony that has given a whole new twist to the Mahadev betting scam. The latest, of course, being that the Congress party is planning to approach the Election Commission of India on the Mahadev app issue today. We'll also get you the latest on that, but back to where this video started. Take a look. मैं शुभम सोनी बोल रहा हूँ और मैं महादेव बुक का ओनर हूँ। ये रहे उसके डॉक्यूमेंट्स। और ये मेरे आधार डॉक्यूमेंट्स हैं। ये मेरा आधार कार्ड है। ये मेरा पैन कार्ड है। और ये मेरा पासपोर्ट है। और महादेव बुक का ओनर मैं ही हूँ। ये आपको डॉक्यूमेंट दिखा दिया मैंने। और 2021 में इसको मैंने चालू किया था। ये उसका पूरा डॉक्यूमेंट्स है। मेरा गैम्बलिंग का काम बहुत अच्छे से चलने लगा था फिर भिलाई में। और ये तो बहुत ही छोटे से काम चालू हुआ था। उसके बाद धीरे धीरे काम बढ़ता गया। अब काम बढ़ता गया। उसके बाद हमारा लाइफस्टाइल भी चेंज होता गया क्योंकि पैसा बहुत आ रहे थे। तो सब नोटिस करने लगे। मेरे मतलब जो आसपास के लोग हैं वो लोग नोटिस करने लगे। धीरे धीरे बात ऊपर तक गया। तो फिर कंप्लेन वगैरह भी होने लगा। तो फिर ऐसा हुआ कि अब प्रोटेक्शन का जब बहुत ज़रूरत था हमको, क्योंकि लड़के भी अंदर हो रहे थे कुछ कुछ। तो उसके बाद मुझे पता चला वर्मा जी के बारे में। फिर मैंने उनसे मीटिंग की। फिर मुझे समझ लो हफ्ता वसूली वाला काम चालू हो गया। अब वर्मा जी से मैंने मीटिंग किया तो फिर उनसे बात हुआ और ये हुआ कि अब उनको मुझे हर महीना 10 लाख रुपए देना है। तो वो भी ओके हो गया। अब हर महीना मैंने उनको 10 लाख रुपए देना चालू कर दिया। तो काम अब बढ़िया चलने लगा मेरा और पैसा भी कमा रहे थे हम, सब कुछ ओके था। उसके कुछ दिन बाद ऐसा हुआ कि हमारे लड़के फिर अंदर हुए। अब वो छूट ही नहीं रहे हैं वापस।
तो मैंने वर्मा जी को कॉल लगाया कि सर अभी कैसे हो गया, आपको तो मैं पैसा भी दे रहा हूँ, उसके बाद भी लड़के अंदर हो रहे हैं और छूट भी नहीं रहे, बाहर निकल ही नहीं रहे वो लोग। तो वो बोले कि चलो करते हैं कुछ। फिर उसके बाद भी लड़के नहीं छूटे। फिर मैंने वापस कॉल किया उनको, तो वो बोले कि भैया लगता है अभी यहाँ से काम नहीं होगा, मैं चलो आपको किससे मिलवाता हूँ, ऐसा करके बोले हो। मैं बोला ठीक है सर मिलवा दीजिए, बस लड़के लोग को बाहर निकलवाना है। तो वो मेरे को लेके गए, साथ में लेके गए रायपुर। मैं बोला ठीक है मिलवा लो भैया जिससे भी मिलवाना है। And this is the latest reaction coming in from the BJP, where BJP National President JP Nadda has picked up the Mahadev expose, questioning Bhupesh Baghel, saying that Baghel hasn't even left, and they are now asking pertinent questions to the Congress ahead of the polls in Chhattisgarh. Listen to what he said. ये घोटालों की सरकार अभी अभी महादेव ऐप, इन्होंने महादेव को भी नहीं छोड़ा। 6,000 करोड़ रुपए का घोटाला। किस बात का घोटाला? सत्ता में आने के लिए सट्टे का घोटाला, यानी सट्टेबाज भी हो गए। कोयला की तस्करी तो हो रही थी और घोटाले हो रहे थे, अब सट्टे में भी घोटाला हुआ। कितने का हुआ? 508 करोड़ रुपए का घोटाला। और जानते हैं वो असीम दास क्या बोलता है ईडी में? कि ये मैं पैसा दुबई से लेकर के भूपेश बघेल को देने आया था, उसने छत्तीसगढ़ के चुनाव के लिए। मुख्यमंत्री को प्रमोटर्स ने पैसा दिया है, तो ये पहले 5 करोड़ दिया है और इसमें आरोप है 500 करोड़ का टोटल। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट तो दिया ही गया है, ये तो एक आरोप है। जब उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, इसमें इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ईडी का स्टेटमेंट क्या है, हम इसमें इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। तो ये अगर चुनाव आयोग के पास जा रहे हैं तो क्या चुनाव आयोग के पास ये डिमांड लेके जा रहे हैं क्या? जो पैसा मिला है, हमको जो मिला है, इलीगली जो हुआ है, करप्शन जो हुआ है, मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है, फिर भी इंक्वायरी नहीं करना, इसका डिमांड यह है क्या चुनाव आयोग के सामने? ये क्या चीज़ लेके चुनाव आयोग के पास जाना चाहते हैं, मुझे तो समझ में नहीं आया है। ये तो सामान्य नागरिक, आम नागरिक को ये समझ में भी नहीं आ रहा है, हमको भी समझ में नहीं आ रहा है कि जब पैसा मिला है, एक इसमें जो पकड़ा गया है व्यक्ति बोला है मुख्यमंत्री को ऑलरेडी पैसा पहुंच गया है, तो उसका इन्वेस्टिगेशन हुआ नहीं होना है, इतना ही मेरा प्रश्न है बघेल जी को। And we cut across to more breaking news coming in. Dubai connection of Shubham Soni that is now exposed. Republic TV has accessed these videos of Shubham Soni in Dubai, where there were parties that were organized by Shubham Soni. Shubham Soni, who has alleged that Chief Minister had instructed him to shift his operations to Dubai, that the Chief Minister was in cahoots with all that was happening, and that they were directing a fixed amount towards the Chief Minister for all the help that was extended. Let me straight away bring in Senior Editor Shravan Sen, who's tracking every part of this story. Shravan, we are playing out those pictures. Take us through the details. Shubham Soni's Dubai connection. Where does Saurabh Chandrakar figure in all of this? How was Shubham Soni receiving help from the Chhattisgarh Chief Minister, as he has alleged? And these parties that were organized by Shubham Soni in Dubai, we've also played those videos. But how is this nexus working, Shravan?
Shavan, can you hear me? All right, not too sure if Shavan is still connected with us. We'll try and reconnect that line, but you see how fast the story is developing now. Republic has accessed these latest videos. Shubham Soni partying into Dubai, organizing these parties. Who all was he pleasing? How exactly was he receiving help? What was his political connection? As he claims that it was Chief Minister Bhupesh Baghel who had instructed him to shift operations to Dubai, and that now he's trapped in the politics that has been played by the Chief Minister. Shavan, I want to come back to you. I believe you're with us on the broadcast now. Shavan, we are staying with those videos, but take us through the Dubai connection of Shubham Soni, what he's claimed, where does the Chief Minister stand in all this, and what about Saurabh Chandrakar? Well, in fact, the Chief Minister, in a statement that he has given to some other networks while during his campaigning in Bastar, essentially says that how are we to believe who exactly is Shubham Soni? There is no clarity. Enforcement Director is saying that he's the manager of the app. He claims something else. Now, what we are showing to you is the Dubai connection. What exactly is the Dubai connection here? On your screens right now, these are videos that have been accessed by Republic TV of Shubham Soni in Dubai, carrying out perhaps, multiple parties. It turns out that some of the parties that were actually organized by Shubham Soni, in which celebrities were called in, and these are low-key celebrities who were basically called in, because remember, large part of the work that was being done on behalf of Saurabh Chandrakar was being done by none other than Shubham Soni. Now, with his claims that he's being making with regards to whether at all he's the owner of Mahadev app or not, now that is not something that anyone would be concerned about, barring the enforcement director, because it's for them to look into it. But whether at all what he is claiming, is there corroborative evidence? He says that Dubai link basically emerged because there was an instruction given to him by the Chief Minister that he should shift the operations. If you take a look at the entire timeline of this particular case, 2017, it starts few years later that the entire operation of Mahadev app, the aggregator, moves from India, from Bhilai in Chhattisgarh to Dubai. It is in Dubai where the operations were shifted. Panel operators, there were call centers that were operating out of UAE and a few other countries too, but large part of this operation was being carried out from Dubai. It turns out that the money that they were also making, they were siphoned off, they were basically being transferred to UAE, and there are several other characters too. In the next few hours, perhaps we'll also going to put out a few more details about the Dubai connection, who exactly was getting the money. An insider of Mahadev app gives us more details about what is this Dubai link that the Bharatiya Janata Party is talking about, and the Chief Minister of Chhattisgarh doesn't want to really clarify. So far, there is no clarification that has been made by the Chief Minister with regards to whether at all there is a Dubai link or not, and if at all there is a Dubai link, what is it all about? Now, those clarifications haven't really come in from the Chief Minister or from the Chief Minister's office. All that he has done is that pass the buck. Right now, these videos become extremely crucial because, remember, these are videos which basically proves the fact that he was in Dubai. Take a look at some of the pictures that we have accessed, and those pictures we're going to put out in a short while from now, and it becomes abundantly clear that he spent a substantial number of months, perhaps even years, in Dubai, where the operations were actually shifted after Saurabh Chandrakar, the main accused, got a whiff of the fact that there was the investigative agencies who were catching up. Possibly not happen without any political patronage, Shavan, is the very talking point in this story. Do stay on with us. We have more breaking news coming in, as it is a massive impact of the Republic sting. ED has written to Republic on this sting tape, and ED has also taken note of the Mahadev scam investigation, where the investigative agency has sought Republic Mahadev sting tapes. Republic had conducted this investigation over 9 days, where we had spoken to the key characters
and sting operations that were carried out on them, which is now to further aid the ED investigation. Shravan, I want to come back to you. ED has sought the Republic Mahadev sting tapes. That has given a whole new twist to this investigation and brought out these characters. How has the story moved forward? Please take us through the details. Well, in fact, we have just a short while back, a few hours ago, we have actually received a notice from the Enforcement Directorate, and I'm just quoting from the notice that was received this morning. It has been sent by the investigating officer. Remember, Enforcement Directorate has now taken cognizance of the tapes that we have put out, and I would like to just give you details that the Enforcement Directorate says in its letter to Republic TV, where they say it is informed that the sting operation is of relevance. Let's put out this line that the ED is calling this tape or the investigation done by Republic TV as relevant to the ongoing investigation in the matter. Hence, it is directed that the entire clips related to the above episode, supported by certificate under Section 65B of the Indian Evidence Act. The above information document are being called under Section 50 of the Prevention of Money Laundering Act, and the reply should be sent immediately. So let's just put out these lines. Suesha, if you can just take over for a minute, I would just like to put out some details for our desk to put it out. Under what sections have we been asked to put out the details, because these tapes, the Enforcement Directorate is essentially calling it relevant to their ongoing investigation. All right, Shravan, we do understand that you'll come back to us on this, but a lot of developments that are happening on this story right now. Of course, the very fact that Shubham Soni has emerged. Republic broke the first part of the tape on Sunday. The second part of this tape that we've just put out, and also more parts of this tape that are expected to break in the next couple of hours, as Shravan is also saying. Also, the very fact that Saurabh Chandrakar so far has refuted those allegations as had been levelled by the ED. But it is the Chief Minister who's in the dock, and the Congress that is in a huddle as they are refuting all these allegations, so much so that they're planning to approach the Election Commission of India today ahead of the polls in Chhattisgarh, where the Mahadev sting has become the biggest talking point. Republic had conducted the sting operation over 9 days and figured the key characters in this investigation who had put out details of the political patronage that was extended to the owners of the Mahadev app, the promoters of the Mahadev app. But this man, Shubham Soni, who's on your screens right now, who claims that he is a close aide of Saurabh Chandrakar. He's put out his documents. He's also put out details of how he is the owner of the app, and this entire process of how this app grew in time, of the political patronage that he had received. And this has evoked a lot of reactions, especially across party lines, where it is the BJP that is questioning the Congress over these allegations that have been levelled. I beg your pardon. Shravan, if you can speak to us at this point, important, because the ED has taken note of Republic's sting operation. They have sought these tapes. The story is moving forward at a very fast pace. But we ought to know more about Shubham Soni, and when are we possibly going to put out the other parts of this tape? Well, in fact, Suesha, before I get into further details of the investigation and what's more to come, because I would say that this is just the tip of the iceberg that we have put out. In a short while from now, our own investigation that was done over a period of 10 days. There is another part, and we are going to tonight reveal the Dubai link. Let's just put out more details of the fact that we are going to reveal the Dubai connection in a few hours from now, and that is an independent investigation that has been done by Republic TV. Remember, the Prime Minister has spoken about the Dubai link. Union Minister Smriti Irani and Anurag Thakur have all spoken about this Dubai link. So if many are wondering what exactly is the Dubai link, our own independent investigation has revealed the Dubai link, and what
What exactly is the link to the main accused? All this and much more tonight as we bring out more details of that deep investigation that has been done by Republic TV. But it's important to point out here, this morning, Republic TV has now received a letter from the Enforcement Directorate. In fact, this is a notice where the Enforcement Directorate has requested Republic Media Network to hand over the tapes of the undercover operation that was carried out, and they have called this entire investigation of Republic TV as relevant to their ongoing probe. They have specifically taken the name of two stings which they found of much interest. One is of the Superintendent of Police Abhishek Pallav, and the second is of his family member, and the third, importantly, is Saurabh Shukla, who's a member of Mahadev and has worked with Saurabh Chandrakar. He has also revealed the Dubai connection. All this and much more is going to come out. So for all our viewers, starting from Friday, we have put out at least 3 undercover operation tapes, 2 testimonies of Shubham Soni, documents that have also been accessed, which we are going to put out in a short while from now, and now the videos of Shubham Soni in Dubai, the parties that were organized by Shubham Soni, and all this much more that has been accessed by Republic TV. Let's put out all of this. And remember, now the Enforcement Directorate takes full cognizance of the investigation, the undercover operation that has been done by Republic TV. And it's of great importance because remember, beyond the allegations that have been leveled so far, there is a political rhetoric that is underway, but the fact of the matter is that can anyone deny the hard investigation that has been done by Republic TV, in which it becomes abundantly clear that there is police protection, there is political patronage, and who are these people who are actually providing this kind of protection? What was the motive behind it? Whether at all there was quid pro quo? These are facts, these are matters that should be investigated. And remember, when the Chief Minister is in the dock right now, beyond simply saying that this is an attempt to tarnish his image, the Chief Minister, it is incumbent on the Chief Minister to perhaps come out in the open and speak about the fact that whether at all he knows Shubham Soni, whether at all he knows Asim Das, and if he knows any one of them, is it true that Asim Das, who's basically made that sensational revelation that the money that he got from Shubham Soni, that money was going to go to the Chief Minister of Chhattisgarh. Is that true or not? These are aspects that the Chief Minister perhaps will have to answer. And in the days to come, as I understand, top sources are also now indicating that those who have been stung by Republic TV in their undercover operation, they will be called in for questioning by the Enforcement Directorate. Like you're saying, Shravan, that this is not just the biggest talking point in the country right now, but a huge political fight that has broken out between the BJP and the Congress. A lot of political reactions that are coming in BJP, questioning the Congress over these allegations, as the Congress remains evasive, but they are denying these claims also. The latest is an exclusive reaction of the Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami on Bhupesh Baghel, who's gone on to say that Congress and corruption are synonyms to each other. Let's listen in to what he said. छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, राज्य के मुख्यमंत्री पर सीधे आरोप लग रहा है 500 करोड़ का घूस। ये बहुत बड़ा गंभीर मामला है और निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की जनता और देश की जनता देख रही है और पहले से ही कांग्रेस हमेशा से करप्शन का पर्यायवाची शब्द अगर कोई पार्टी है तो कांग्रेस पार्टी है। लेकिन कांग्रेस कह रही है तो ये ईडी सीबीआई का गलत उपयोग किया जा रहा है, उनको बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है, बदले की भावना है। जिनका सामने टेलीविजन पर दिख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है कि कहाँ कार्रवाई होनी चाहिए और कहाँ नहीं होनी चाहिए। आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ में कहीं ना कहीं बघेल सरकार गिर जाएगी, आपको लग रहा है? वो तो जनता देखे, अब देख ही रही है। तो और जनता कैसी सरकार चाहती है और सब लोग देश के अंदर डबल इंजन चाहते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, राज्य के मुख्यमंत्री पर सीधे आरोप लग रहा है 500 करोड़ का घूस। ये बहुत बड़ा गंभीर मामला है और निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की जनता और देश की जनता देख रही है और पहले से ही कांग्रेस हमेशा से करप्शन का पर्यायवाची शब्द अगर कोई पार्टी है तो कांग्रेस पार्टी है। लेकिन कांग्रेस कह रही है तो ये ईडी सीबीआई का गलत उपयोग किया जा रहा है, उनको बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है, बदले की भावना है। जिनका सामने टेलीविजन पर दिख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है कि कहाँ कार्रवाई होनी चाहिए और कहाँ नहीं होनी चाहिए। आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ में कहीं ना कहीं बघेल सरकार गिर जाएगी, आपको लग रहा है?
वो तो जनता देखे, अब देख ही रही है। तो और जनता कैसी सरकार चाहती है, और सब लोग देश के अंदर डबल इंजन चाहते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। Meanwhile, Chhattisgarh Chief Minister Bhupesh Baghel, who is on the back foot as Mahadev betting scam has exploded further, Chief Minister is alleging political conspiracy and has failed to respond to the exact charges that have been leveled against him. Listen in. 2 साल से जांच चल रहा है। छत्तीसगढ़ के बच्चे को पता है कि मेन प्रमोटर रवि उपल और सौरभ चंद्राकर है। ईडी को पता ही नहीं है। और 17 तारीख को ऐसी कहानी आते रहेंगे, आप देखते सुनते रहिए, एंजॉय करिए। बीजेपी को पता है वो हार रही है, इनको अपने आका के लिए छत्तीसगढ़ का खदान चाहिए, इसलिए प्राण लगाए हुए हैं। दूसरी बात ये है कि ये एक जो बंदा नया आया है, आप ईडी के जो प्रेस रिलीज है उसमें उसको बताया गया है कि ये जो महादेव का है उसका एक अधिकारी है। दूसरे दिन वीडियो आता है कि वो उसका मालिक है। ये जो सौरभ चंद्राकर है वो उसके कर्मचारी हैं। बड़ा उदार आदमी है जो अपने नौकर की शादी में 250 करोड़ रुपए खर्चा करता है। आज तक हमने नहीं सुना कि विश्व में, दुनिया में ही नहीं सुना कि अपने नौकर के शादी में 200-250 करोड़ रुपए खर्च कर रहे, लेकिन इन्होंने किया है। और वीडियो आपने देखा होगा कितने बार उठ के वो वीडियो ठीक करता है, थूक गटक रहा है, बोलने के तौर तरीके कितने उसमें कट पेस्ट हुआ है। इससे पता चलता है कि और जितना इसको गोदी मीडिया में दिखाया गया है, इतना तेजी से प्रचार प्रसार किया गया है, इसके प्रचार प्रसार से कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। छत्तीसगढ़ की जनता ने मन बना लिया है और ये षड्यंत्रकारी लोगों को इस समय, और पिछले समय 15 सीट भी रह गए थे, इस समय उतनी भी सीट नहीं मिलने वाली। ये स्थिति इनकी है। And now for a short commercial break. On the other side, we'll also get you details as the Madras High Court has pulled up Tamil Nadu police for inaction over insult to Sanatan Dharam. Delhi AQI continues to drop. Aam Aadmi Party and the BJP's face off over pollution control measures. Hello Moto. Motorola, India's best 5G smartphone brand. अरे बंद करो, कान बंद करो, कभी भी फट सकता हूँ, पटाखा जो लग रहा हूँ। दिवाली है, तैयार होकर आइए। In the global employability rankings by Times Higher Education UK, only the following 6 institutions from India are ranked amongst the top 230 in the world for having the most employable graduates. IIT Delhi, IISc Bangalore, IIT Bombay, IIM Ahmedabad, IIT Kharagpur and Amity University. ये किचन नया तो कुक भी नया। 1 मिनट। हाँ, या नमक कम है तो डाल दो। यार ये नमक नकली है क्या? नमक नहीं, कुक नकली है। अब किचन इतना इनवाइटिंग होगा तो कुछ नया बनाना एक्साइटिंग होगा। कुक अप द न्यू कुचीना, द किचन एक्सपर्ट्स। ये सब क्या है? शनाया और शिवा। शिवा? अर्फी? सुना है तुम दोनों ने घर बनाया है। हाँ, पिंक वाला। घर की नींव में क्या लगता है? हमारा प्यार। प्यार नहीं, कमजोर टीएमटी का वार होगा। रॉकेट सिंह। अर्फी? लेकिन हमने तो एकदम सॉलिड टीएमटी बार लगाया है। मतलब रुंगटा स्टील टीएमटी बार। जंग से न माने हार, रुंगटा स्टील टीएमटी बार है बिल्कुल रेडी। You are the one. Unmatched, unequaled, unbeatable. LG OLED Evo, the one and only.
Thank you for staying with Republic and the Mahadev tapes that are our continued focus on Sunday. Republic had aired the first part of the Mahadev bombshell tapes in which a man claimed to be Mahadev book owner Shubham Soni implicated CM's office. Now in the second part of this tape, where he's naming Chief Minister Bhupesh Baghel and claiming that Chief Minister told him to start operations in Dubai. Listen in to what he said. तो वो बोले कि चलो अब मिलवाता हूँ। हम गए साथ में, वहाँ पर सीएम सर और बिट्टू भैया से हमारा मीटिंग हुआ। ये चीज़ का मैंने पूरा अपना लिख के दे दिया है उसमें रिटर्न स्टेटमेंट में कि क्या हुआ वहाँ, कैसे हुआ, क्या किस बात का डील हुआ, हर चीज़ का स्टेटमेंट मैंने दे दिया अपने रिटर्न डॉक्यूमेंट में। मैं सितंबर 2020 में दुबई आया। जैसा कि मेरा मीटिंग हुआ था सीएम साहब से, तो उन्होंने बोला था कि दुबई जाओ, अपना काम बढ़ाओ और वहाँ मीटिंग करो जाके। तो मैं गया और मीटिंग भी हुआ मेरा कई लोगों से। तो 2 लोग के साथ मेरा यहाँ बिजनेस भी सेट हो गया और अच्छा खासा काम भी बढ़ने लगा, सब कुछ ओके चलने लगा। जैसा सीएम साहब बोले थे सब बढ़िया हो गया। उसके बाद मुझे यहाँ 2 लोग मिले जो मेरे भिलाई के ही थे, सौरभ और रवि। तो वो लोग से मैं मिला, उनका यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम था। तो मैंने सोचा मैं भी काम चालू कर लेता हूँ, यहाँ अच्छा काम है ये चीज़। तो मैं उन्हें अपना पर्सनल एडवाइज़र रख लिया ये काम पे, कंस्ट्रक्शन के काम पे। अब इसके बाद हुआ ये कि फेमस ये लोग होने लगे महादेव बुक के नाम से। मैंने बुक खड़ा किया, मैंने बुक चालू किया, फेमस ये लोग हो रहे हैं। मैंने जीरो से चालू करके पूरा ओके आसमान तक पहुँचाया इस बुक को, और फेमस ये लोग हो रहे हैं। बताओ, ऐसा थोड़ी होता है। ठीक है, उनको आशीर्वाद नहीं था सीएम साहब का, इसलिए उनको वो फेमस हो गए। ये गलत बात है ना। इस चीज़ का बुरा लगता है बहुत ज़्यादा। एक बात बता रहा हूँ आपको, हमारे सीएम साहब का एक आदत है बघेल जी का कि वो कुछ दिन में पलटी मार देते हैं, और ऐसा मेरे साथ हुआ है। जब उन्होंने मुझे दुबई भेजा कि वहाँ जाके अपना काम सेटल करो, लोगों से मिलो, तो मैं गया, मिला भी और मेरा काम भी बहुत अच्छा सेट हो गया। उसके बाद हुआ ये कि कुछ दिन तक तो अच्छा चला, उसके बाद फिर प्रॉब्लम आने लगा मेरे काम पे। हमारे लोग अंदर होने लगे और छूट ही नहीं रहे वो लोग। मैं फ़ोन पे फ़ोन लगाया जाता हूँ, परेशान हो रहा हूँ। तो वापस मैंने वर्मा जी को फ़ोन लगाया, तो बोले कि चलो ठीक है, आप भिलाई आ जाओ, आपका मीटिंग कराते वापस से। अब मैं डर से पहुंच गया भिलाई कि लोग बाहर आ जाएंगे करके। तो वर्मा जी से मैं मिलने गया। वर्मा जी और गिरीश तिवारी मुझे मिले रायपुर एयरपोर्ट रोड पे। वो फिर लेके गए वर्मा जी तो वहीं उतर गए, फिर गिरीश तिवारी मुझे लेके गए हमारे उस समय के एसपी हैं प्रशांत अग्रवाल जी, उनसे जाके मेरा मीटिंग कराया। अब मैं उनको अपना प्रॉब्लम पूरा शेयर किया, तब वो फ़ोन घुमाया। उसके बाद वो बात किए, लाउड स्पीकर में ही था फ़ोन, तो सीधा सीधा आवाज़ तो समझ आ ही रहा था, हमारे बघेल जी का ही आवाज़ था वो। तो पूरा प्रॉब्लम बताने के बाद उन्होंने वहाँ से ये बोला कि कैसे रे सोनी, तेरे को मैं वहाँ भेजा था दुबई काम सेट करने के लिए, तू तो मालिक बन के बैठ गया है, शेख बन गया क्या वहाँ का। अब मैं कुछ बोल ही नहीं पाया, एकदम मुंह उदास सा हो गया। तो मैंने यही बोला कि सर हम तो छोटे आदमी हैं, आप बताओ क्या करना है, जैसा बोलोगे हम वैसा करेंगे। तो बस वो यही बोले कि ठीक है, आप प्रशांत जी से बात कर लो, वो आपको बता देंगे क्या कैसे करना है। मैं बोला ठीक है सर। उसके बाद हम चल गए वहाँ से। उसके बाद प्रशांत अग्रवाल जी से तो डील हो गया था कि क्या कैसे देना है, और वो सब तो मैंने अपने रिटर्न स्टेटमेंट में भी बता दिया है। उसमें लिखा भी हुआ है सब कुछ रिटर्न स्टेटमेंट में, क्या मैंने किसको दिया है, कैसे दिया है, किसके सोर्स से दिया है, हर कुछ लिखा हुआ है। अब इतना पैसा देने के बाद भी मेरा काम बढ़ नहीं रहा है, अंदर हो रहे हैं लोग, तो क्या मतलब, पूरा फंस गया हूं मैं पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर यार। तो प्रशांत अग्रवाल जी के जब मेरा मीटिंग हुआ उसके बाद से मैंने अब तक 508 करोड़ रुपए दे चुका है। हमारे बघेल साहब, बिट्टू भैया और उनके जो लोग हैं उनको मैंने 508 करोड़ रुपए दिया है। उसके बाद भी मेरा काम नहीं हो रहा है, मेरे काम में डिस्टर्बेंस हो रहा है इतना ज़्यादा, मैं इतना परेशान हो गया हूँ ये सिस्टम से। अब क्या करूँ समझ नहीं आता है।
ज़बरदस्ती का अब मेरे ऊपर ईडी का कार्रवाई चालू हो गया है। अब ऐसा कुछ होगा मेरे साथ, इतना पैसा देने के बाद भी तो मैं क्या करूं बताओ। अब बस मेरा यही लास्ट रिक्वेस्ट है हमारे इंडियन गवर्नमेंट से कि वो बस इतना हेल्प कर दे मेरी कि मैं अब फंस चुका हूँ इस पॉलिटिकल सिस्टम में, मैं इससे बाहर निकलना चाहता हूँ। और आपको जैसा एविडेंस चाहिए, जैसा प्रूफ चाहिए, मैंने जैसे जैसा पैसा उनको दिया है, हर चीज़ का मेरे पास एविडेंस प्रूफ, हर चीज़ एक एक चीज़ पड़ा हुआ है। तो मैं यही चाहता हूँ कि बस मेरा हेल्प कर दीजिए वहाँ से। मैं भी इंडिया जाना चाहता हूँ वापस। मुझे डर लगता है यहाँ से इंडिया जाने में। मैं वहाँ जाना चाहता हूँ वापस, वहीं रहना चाहता हूँ, लेकिन मेरा हेल्प कीजिए, यही रिक्वेस्ट है मेरे इंडियन गवर्नमेंट से यार। Time now for a short commercial break. On the other side, we'll get you details as the ethics panel that is all set to meet on the 9th of November to discuss the way forward in probe into Mahua payoff scam. Delhi AQI continues to drop. AAP and BJP face off over pollution control measures. बंद करो, कान बंद करो, कभी भी फट सकता हूँ। पटाखा जो लग रहा हूँ। दिवाली है, तैयार होकर आइए। बोल्टास बैको ये 30 दिन तक फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को फ्रेश रखता है और तुमने मान लिया। लेकिन वैसे भी 30 दिन की सब्जियां कौन खाता है? तू। वोल्टास बेको डुअल कूलिंग रेफ्रिजरेटर की स्टोर फ्रेश टेक्नोलॉजी से सब्जियां 30 दिन तक फ्रेश रह सकती हैं। वोल्टास बेको, टेस्टेड बाय रियल मॉम्स। हाय गाइस, हैप्पी दिवाली। चलो दीप जला के हर घर सजाए, झिलमिल चेहरों पे खुशी खुशी चहके, रिश्ते होंगे रोशन जगमगाए रे। ओ प्रिय रे हर खरीदारी के साथ एक गोल्ड कॉइन मुफ्त। कल्याण ज्वेलर्स। लेकिन हमने तो एकदम सॉलिड टीएमटी बार लगाया है। मतलब लुंगटा स्टील टीएमटी बार, जंग से न माने हार और मजबूती बेशुमार। लुंगटा स्टील टीएमटी बार है बिल्कुल रेडी। हर कार में है त्योहार। मारुति सुजुकी अरीना, फाइंड योर मैच। India's first certified sustainable heart trolleys, made for nature and tested by nature. Uppercase, never ordinary. Hello, Moto. Motorola, India's best 5G smartphone brand, brings you the latest breaking news updates from across the country, only on Republic TV. Hello, Moto. Motorola, India's best 5G smartphone brand. वीडियो आएगी फिर वो आना भी चालू। हाँ तो होगा ना, 17 तारीख तक सब लोग मजा लें। सर तो क्या रहेगी रणनीति, क्या ये इम्पैक्ट डालेगा सर? इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि लगातार मैं बोल रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ रही, ईडी आईटी के माध्यम से लड़ रहे हैं। पहले से ही कांग्रेस और करप्शन का बहुत नज़दीक का नाता था, लेकिन इसके बारे में इन्फॉर्मेशन लेना पड़ेगा। उसमें कौन गिल्टी है कौन नहीं है, उसका इन्फॉर्मेशन लेके अगर बयान दे दिया जाए तो अच्छा रहेगा। लेकिन इसमें नया कुछ नहीं है, कांग्रेस और करप्शन का नाता बहुत नज़दीक का है। क्या है कि जिसके आदमी ने ये किया है उसको तो सपोर्ट करना उनकी जिम्मेदारी है। इसलिए अभी करप्शन होने के बाद भी अगर वो बोल रहे हैं कि ये ईडी का मामला है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है, ये अच्छी बात नहीं है। जिसने करप्शन किया है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अभी तक तो समझ गए होंगे, सभी लोग समझ गए होंगे कि कांग्रेस की राजनीति में झूठ और झूठ
होना बहुत ही एक नॉर्मल सा फिनोमिनन है। यहाँ पर भी बघेल जी झूठ बोल रहे हैं, वो भी जानते हैं, सब जानते हैं, क्योंकि 1.5 साल से वो एक इन्वेस्टिगेशन को खींच रहे हैं जो 6 मिनट में पता कर सकते थे कि ये एक बेटिंग ऐप है, और 6 मिनट में वो लेटर लिख सकते थे कि देखिए इसको बैन कीजिए। Bhupesh Baghel on the back foot. Corner Chief Minister calls charges against him a conspiracy. As Delhi AQI continues to drop, Aam Aadmi Party and BJP face off over pollution control measures. Hello, Moto. Motorola, India's best 5G smartphone brand. बंद करो कान बंद करो, कभी भी फट सकता हूँ, पटाखा जो लग रहा हूँ। दिवाली है, तैयार होकर आइए। In the global employability rankings by Times Higher Education UK, only the following 6 institutions from India are ranked amongst the top 230 in the world for having the most employable graduates. IIT Delhi, IISc Bangalore, IIT Bombay, IIM Ahmedabad, IIT Kharagpur and Amity University. PC Chandra Jewelers presents Dhanteras Dhan Varsha offer. 25% off on jewelry making charges, 10% off on the value of diamonds and precious stones, 100 rupees off per gram of gold jewelry. Win attractive mega prizes. Offer valid till 11th November. Terms and conditions apply. Visit us today. PC Chandra Jewelers, a jewel of jewels. Hey Alexa, start the robo. Introducing Forbes Robo Vacuum Cleaner. Daily cleaning as easy as 1, 2, 3. It dry vacuums, even wet mops, and recharges automatically. Get the Forbes Robo Vacuum Cleaner from Eureka Forbes. जब मां सरयू के घाटों को दिव्य दीपमालाओं से सजाया जाए, वो दीपोत्सव है। दीपों की असंख्य ज्योतियां जब अवधपुरी सजाए, वो दीपोत्सव है। जब श्री राम की जय जयकार से संपूर्ण अयोध्या धाम गूंजित हो उठे और हर मन मंत्रमुग्ध हो जाए, वो दीपोत्सव है। 2017 से शुरू हुआ दीपोत्सव हर साल एक नया कीर्तिमान गढ़ रहा है। विकास पथ पर अग्रसर योगी सरकार जहां एक तरफ अयोध्या को आधुनिक बना रही है, वहीं दूसरी तरफ सनातन परंपराओं को संजोने का कार्य कर रही है। दिव्य दीपोत्सव से दैदीप्यमान है श्री राम जन्मभूमि। विकास के प्रकाश से प्रकाशमान है श्री राम जन्मभूमि। आइए आस्था के असंख्य दीपों से सुसज्जित इस दीपोत्सव के साक्षी बने और प्रभु श्री राम का अभिनंदन करें। श्री राम को नमन है, श्री राम का वंदन है। New Hawkins ceramic non-stick pressure cooker. Less oil, tasty and healthy. First time in India. Hawkins ceramic non-stick. जब प्राइवेसी प्रोटेक्शन के बिना हो हैकर्स के पास अथॉरिटी, फिर किस बात की साइबर सिक्योरिटी। क्विक हील, आज के लाइफ की प्रायोरिटी साइबर सिक्योरिटी। Motorola has been recognized as the best 5G smartphone brand in India in 2023 for its wide portfolio of industry-leading 5G smartphones cutting across affordable as well as premium price points. Motorola 5G smartphones are equipped with up to 13 5G bands covering all Indian and global bands for seamless connectivity. They also support super fast speeds with Motorola's advanced 5G technology and come with the best-in-class features and security that enables them to give the perfect 5G experience. So if you're thinking of buying a 5G smartphone, buy a Motorola smartphone. लेकिन हमने तो एकदम सॉलिड टीएमटी बार लगाया है। मतलब रुंगटा स्टील टीएमटी बार, जंग से न माने हार और मजबूती बेशुमार। रुंगटा स्टील टीएमटी बार है बिल्कुल रेडी। Hello, Moto.
Motorola, India's best 5G smartphone brand, brings you the latest breaking news update from across the country only on Republic TV. पतंगे रस्सी दूसरे खाली हो रहा हूँ ना, इसके बड़े बड़े लोग हैं, यहाँ तक कि यहाँ के कोई नेता नहीं छुड़ा, बड़े बड़े लोग भाई, यहाँ कितने पुलिस वाले सस्पेंड हो गए इस चक्कर में। एक विधायक भी पैसा मांग रहे सीधा मुँह खोल रहे हैं। पैसे की डिमांड किसके थ्रू करते हैं ये लोग? और कुछ जैसे कि यहाँ जो पकड़ाए हैं सतीश चंद्राकर और हाँ ASI क्या वर्मा उससे विनोद वर्मा का नाम ले दिया कि यहाँ का व्यापारिक नाम लिया था नहीं में। Viewers, top headlines we're tracking right now. Mahadev bombshell tapes aired on Republic becomes a turning point in multi-crore betting scam coverage. छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 508 करोड़ ले रहे हैं। किससे ले रहे हैं? एक क्रिमिनल एलिमेंट बैक्ड बेटिंग। Republic sting in alleged tapes becomes the biggest talking point in Chhattisgarh election campaign. Bhupesh Baghel on the back foot, cornered CM calls charges against him a conspiracy. Republic accesses videos of Shubham Soni in Dubai. Video show parties organized by Sony in Dubai. BJP raises Republic sting to attack Bhupesh Baghel over corruption charges. ED calls Republic stings as relevant to the ongoing probe. Writes to Republic seeking the stings. Viewers, we're live and breaking. I'm Shivangi Shukla, getting you the latest in a Mahadev betting scam is getting bigger and bigger. On Sunday, Republic aired the part 1 of Mahadev bombshell tapes in which a man claiming to be Mahadev booking owner, the owner of the app, Shubham Soni, implicated the CM's office. Now we air part 2. That is right. Now we air part 2 of the tape in which he names CM Bhupesh Baghel and claims that the chief minister told him to start operations in Dubai. Big update coming on Republic TV, viewers, and as we keep getting our viewers more updates, we can tell you that there's a part 2 that we have for you after the part 1. And the part 2 reveals many more details. Remember that CM Bhupesh Baghel held a press conference a short while back where he said that this is nothing more than a conspiracy. Nothing more than a conspiracy to malign him, to ruin his reputation. But the kind of details, the kind of information that Republic TV has accessed and what's coming out of the investigation is very much against and contrary to the defense that the CM of Chhattisgarh has been making. Let's play out that statement, the part 2 of the bombshell videos. चलो अब मिलवाता हूँ। हम गए साथ में वहाँ पर सीएम सर और बिट्टू भैया से हमारा मीटिंग हुआ। ये चीज़ का मैंने पूरा अपना लिख के दे दिया है उसमें रिटर्न स्टेटमेंट में कि क्या हुआ वहाँ, कैसे हुआ, क्या किस बात का डील हुआ, हर चीज़ का स्टेटमेंट मैंने दे दिया अपने रिटर्न डॉक्यूमेंट में। मैं सितंबर 2020 में दुबई आया। जैसा कि मेरा मीटिंग हुआ था सीएम साहब से, तो उन्होंने बोला था कि दुबई जाओ, अपना काम बढ़ाओ और वहाँ मीटिंग करो जाके। तो मैं गया और मीटिंग भी हुआ मेरा कई लोगों से। तो 2 लोग के साथ मेरा यहाँ बिज़नेस भी सेट हो गया और अच्छा खासा काम भी बढ़ने लगा, सब कुछ ओके चलने लगा। जैसा सीएम साहब बोले थे सब बढ़िया हो गया। उसके बाद मुझे यहाँ 2 लोग मिले जो भी मेरे भिलाई के ही थे, सौरभ और रवि। तो वो लोग से मैं मिला, उनका यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम था। तो मैंने सोचा मैं भी काम चालू कर लेता हूँ, यहाँ अच्छा काम है ये चीज़।
तो मैं उन्हें अपना पर्सनल एडवाइज़र रख लिया ये काम पे, कंस्ट्रक्शन के काम पे। अब इसके बाद हुआ ये कि फेमस ये लोग होने लगे महादेव बुक के नाम से। मैंने बुक खड़ा किया, मैंने बुक चालू किया, फेमस ये लोग हो रहे हैं। मैंने जीरो से चालू करके पूरा आसमान तक पहुंचाया इस बुक को, और फेमस ये लोग हो रहे हैं। बताओ, ऐसा थोड़ी होता है। ठीक है, उनको आशीर्वाद नहीं था सीएम साहब का, इसलिए उनको वो फेमस हो गए। ये गलत बात है ना, इस चीज़ का बुरा लगता है बहुत ज़्यादा। एक बात बता रहा हूँ आपको, हमारे सीएम साहब का एक आदत है, बघेल जी का, कि वो कुछ दिन में पलटी मार देते हैं, और ऐसा मेरे साथ हुआ है। जब उन्होंने मुझे दुबई भेजा कि वहाँ जाके अपना काम सेटल करो, लोगों से मिलो, तो मैं गया, मिला भी, और मेरा काम भी बहुत अच्छा सेट हो गया। उसके बाद हुआ ये कि कुछ दिन तक तो अच्छा चला, उसके बाद फिर प्रॉब्लम आने लगा मेरे काम पे। हमारे लोग अंदर होने लगे और छूट ही नहीं रहे वो लोग। मैं फ़ोन पे फ़ोन लगाया जाता हूँ, परेशान हो रहा हूँ। तो वापस मैंने वर्मा जी को फ़ोन लगाया, तो बोले कि चलो ठीक है, आप भिलाई आ जाओ, आपका मीटिंग कराते वापस से। अब मैं डर से पहुँच गया भिलाई कि लोग बाहर आ जाएंगे करके। तो वर्मा जी से मैं मिलने गया। वर्मा जी और गिरीश तिवारी मुझे मिले रायपुर एयरपोर्ट रोड पे। वो फिर लेके गए वर्मा जी तो वहीं उतर गए, फिर गिरीश तिवारी मुझे लेके गए हमारे उस समय के एसपी हैं प्रशांत अग्रवाल जी, उनसे जाके मेरा मीटिंग कराया। अब मैं उनको अपना प्रॉब्लम पूरा शेयर किया, तब वो फ़ोन घुमाए और उसके बाद वो बात किए। लाउड स्पीकर में ही था फ़ोन, तो सीधा सीधा आवाज़ तो समझ आ ही रहा था, हमारे बघेल जी का ही आवाज़ था वो। तो पूरा प्रॉब्लम बताने के बाद उन्होंने वहाँ से ये बोला कि कैसे रे सोनी, तेरे को मैं वहाँ भेजा था दुबई काम सेट करने के लिए, तू तो मालिक बन के बैठ गया है, शेख बन गया क्या वहाँ का। अब मैं कुछ बोल ही नहीं पाया, एकदम मुंह उदास सा हो गया। तो मैंने यही बोला कि सर हम तो छोटे आदमी हैं, आप बताओ क्या करना है, जैसा बोलोगे हम वैसा करेंगे। तो बस वो यही बोले कि ठीक है, आप प्रशांत जी से बात कर लो, वो आपको बता देंगे क्या कैसे करना है। मैं बोला ठीक है सर। उसके बाद हम चल गए वहाँ से। उसके बाद प्रशांत अग्रवाल जी से तो डील हो गया था कि क्या कैसे देना है, और वो सब तो मैंने अपने रिटर्न स्टेटमेंट में भी बता दिया है। उसमें लिखा भी हुआ है सब कुछ रिटर्न स्टेटमेंट में, क्या मैंने किसको दिया है, कैसे दिया है, किसके सोर्स से दिया है, हर कुछ लिखा हुआ है। अब इतना पैसा देने के बाद भी मेरा काम बढ़ नहीं रहा है, अंदर हो रहे हैं लोग, तो क्या मतलब, पूरा फंस गया मैं पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर यार। तो प्रशांत अग्रवाल जी के जब मेरा मीटिंग हुआ उसके बाद से मैंने अब तक 508 करोड़ रुपए दे चुका है। हमारे बघेल साहब, बिट्टू भैया और उनके जो लोग हैं उनको मैंने 508 करोड़ रुपए दिया है। उसके बाद भी मेरा काम नहीं हो रहा है, मेरे काम में डिस्टर्बेंस हो रहा है इतना ज़्यादा। मैं इतना परेशान हो गया हूँ इस सिस्टम से, अब क्या करूँ समझ नहीं आता है। ज़बरदस्ती का अब मेरे ऊपर ईडी का कार्रवाई चालू हो गया है। अब ऐसा कुछ होगा मेरे साथ, इतना पैसा देने के बाद भी, तो मैं क्या करूं बताओ। अब बस मेरा यही लास्ट रिक्वेस्ट है हमारे इंडियन गवर्नमेंट से कि वो बस इतना हेल्प कर दे मेरी, कि मैं अब फंस चुका हूँ इस पॉलिटिकल सिस्टम में, मैं इससे बाहर निकलना चाहता हूँ। और आपको जैसा एविडेंस चाहिए, जैसा प्रूफ चाहिए, मैंने जैसे जैसा पैसा उनको दिया है, हर चीज़ का मेरे पास एविडेंस, प्रूफ, हर चीज़, एक एक चीज़ पड़ा हुआ है। तो मैं यही चाहता हूँ कि बस मेरा हेल्प कर दीजिए वहाँ से। मैं भी इंडिया जाना चाहता हूँ वापस। मुझे डर लगता है यहाँ से इंडिया जाने में। मैं वहाँ जाना चाहता हूँ वापस, वहीं रहना चाहता हूँ, लेकिन मेरा हेल्प कीजिए, यही रिक्वेस्ट है मेरे इंडियन गवर्नमेंट से यार। And viewers, Republic brings you exclusive investigation on Mahadev betting scam. It has become the biggest talking point ahead of elections. This political link to the scam has shaken up, I repeat, shaking up Chhattisgarh completely. And the one question that everyone is asking is this: did CM Baghel know about this? Take a look. A betting app scam that started in 2021 in Congress-ruled Chhattisgarh. Possibility of political links in the scam cannot be ruled out.
When Republic investigative team tried to dig in, the first investigator of the scam said that Chief Minister Bhupesh Baghel knew about the scam. सर आपको लगता है कि मतलब इतना जानकारी ले रहे हैं सर, आपको लगता है कि उसको सब कुछ पता है कि क्या हो रहा है? देखिए, जैसा मुझे समझ में ये आया कि मैं तो सीएम साहब के काफ़ी लंबी बड़ी बात होती थी, सेक्रेटरी हाउस में आते थे, तो 3-4 चीज़ मुझे क्लियर हुआ कि हो रहा है ये पता था, इंटेंसिटी इतना ज़्यादा है ये नहीं पता। 2 चीज़ें हैं, एक चीज़ तो है कि कुछ फंडिंग हो सकता है, पॉलिटिकल फंडिंग बाकी स्टेट्स में करनी पड़ी हो, बहुत सारे चुनाव थे। The key political link in this scam seems to be Vinod Verma. Chhattisgarh CM's political advisor, IPS officer, says he could have benefited in some way. सर लेकिन उनका बेटा खुद इन्वॉल्व था, ईडी के पास ऐसे बेटा और उसकी पत्नी दोनों के नाम पे शेल कंपनियां बनाई गई, फिर कॉर्पोरेट अकाउंट से काफ़ी पैसा उनके पास गया। मैं ये भी बोल रहा हूँ कि देखिए 2 चीज़ें हैं, सतीश चंद्राकर और चंद्रभूषण वर्मा, ये दोनों खुल के बोलते थे कि हम चला रहे हैं, ये खुल के नहीं बोलते थे। विनोद जी, हाँ, विनोद वर्मा ने कभी खुल के नहीं बोला कि मैं संरक्षण दे रहा हूँ, बट पूरा संरक्षण था उनकी तरफ से। वो उनके मैं तो इंक्वायरी की नहीं होती, तो मैं बोल नहीं सकता, लेकिन इन दोनों का इन्होंने कमिट किया मेरे सामने आके। Baghel's right-hand man Vinod Verma was questioned by agencies in connection with the scam. No evidence as of now. But multiple players of the scam have said that Saurabh Chandrakar has a lot of political clout. मैम ये पूरी सरकार खरीद सकते हैं। खरीद सकते क्या? मुझे लगता है पैसा पूरा सरकार चला रहे हैं ये जो रेड वेड ये सब चीज चल रहा है मैम, ये मेरे को पूरा और टोटल में मेरे को गेम लगता है। Though there is no evidence of the political involvement so far, agencies are already investigating the political link to the scam. But those who know the case inside out believe that the scam of this proportion couldn't have gone unnoticed at political level. Special investigative report by Republic TV. And viewers, India's biggest scam is unraveling ahead of elections, and the facts are emerging. They're suggesting that the scam money was being used for political campaigns. This is what Republic has found in its investigation. Take a look. A scam running to the tune of over 400 crore rupees. And in the heat of election campaign, some sensational allegations have been made that proceeds of crime were used for political funding. काम के लिए पुलिस को साथ रखना जरूरी है और नेता लोग को सबका हाथ है। लेकिन सबसे ज्यादा पैसा सामने छत्तीसगढ़ में चुनाव ना सब पैसे की डिमांड कर रहे हैं, सबके सब पैसे की डिमांड कर रहा हूँ। अच्छा, और कुछ जैसे कि यहाँ जो पकड़ाए हैं सतीश चंद्राकर और ASI, चलो खोल दिया, पड़ी मार दो, इसको इतना देता था, उसको इतना देता था, कहीं जुगाड़ होगा। The accused in the scam has also claimed that cash was ferried in air ambulances to fund election. देखिए अभी ये हवाला का जो काम हो रहा है ना, अब देखिए अब इनके पास पैसा कैसे आएगा? प्राइवेट जेट से इनके पास पैसा आएगा। प्राइवेट जेट से आएगा या तो हेलीकॉप्टर के थ्रू इनके पास पैसा आएगा। ऐसा क्यों? मैम देखिए अब ईडी का इतना चल रहा है तो हवाला से भेज नहीं सकते। हवाला से भेज नहीं सकते। मैंने सुना तो कि एयर एम्बुलेंस का भी इस्तेमाल किए हैं ये लोग। किए अभी नहीं, पहले किए हैं। 2022 में किया था। 2022 में उन्होंने किया था, एयर एम्बुलेंस का इस्तेमाल हुआ है, पैसे के थ्रू हुआ है। Though the money trail is yet to be established and hawala transactions are under scanner, the claims made by the key players are certainly explosive. Were proceeds of crime used for election campaign? Did betting scam accused send cash to the political parties? Special investigative report by Republic TV. And viewers, Republic investigation in the Mahadev betting scam has exploded with the emergence of tapes of a person who claims to be the key aide of Saurabh Chandrakar and calls himself the owner of the Mahadev app. This alleged testimony has given a fresh twist in the Mahadev betting scam. In the latest update, the Congress party wants to approach the Election Commission of India on the Mahadev app issue today itself. मैं शुभम सोनी बोल रहा हूँ और मैं महादेव बुक का ओनर हूँ। ये रहे उसके डॉक्यूमेंट्स।
और ये मेरे आधार डॉक्यूमेंट्स हैं। ये मेरा आधार कार्ड है, ये मेरा पैन कार्ड है, और ये मेरा पासपोर्ट है। और महादेव बुक का ओनर मैं ही हूँ। ये आपको डॉक्यूमेंट दिखा दिया मैंने, और 2021 में इसको मैंने चालू किया था। ये उसका पूरा डॉक्यूमेंट्स है। मेरा गैम्बलिंग का काम बहुत अच्छे से चलने लगा था फिर भिलाई में, और ये तो बहुत ही छोटे से काम चालू हुआ था। उसके बाद धीरे धीरे काम बढ़ता गया। अब काम बढ़ता गया, उसके बाद हमारा लाइफस्टाइल भी चेंज होता गया, क्योंकि पैसा बहुत आ रहे थे। तो सब नोटिस करने लगे, मेरे मतलब जो आसपास के लोग हैं वो लोग नोटिस करने लगे। धीरे धीरे बात ऊपर तक गया, तो फिर कंप्लेन वगैरह भी होने लगा। तो फिर ऐसा हुआ कि अब प्रोटेक्शन का जब बहुत ज़रूरत था हमको, क्योंकि लड़के भी अंदर हो रहे थे कुछ कुछ। तो उसके बाद मुझे पता चला वर्मा जी के बारे में। फिर मैंने उनसे मीटिंग की। फिर मुझे समझ लो हफ्ता वसूली वाला काम चालू हो गया। अब वर्मा जी से मैंने मीटिंग किया, तो फिर उनसे बात हुआ, और ये हुआ कि अब उनको मुझे हर महीना 10 लाख रुपए देना है। तो वो भी ओके हो गया। अब हर महीना मैंने उनको 10 लाख रुपए देना चालू कर दिया। तो काम अब बढ़िया चलने लगा मेरा, और पैसा भी कमा रहे थे हम, सब कुछ ओके था। उसके कुछ दिन बाद ऐसा हुआ कि हमारे लड़के फिर अंदर हुए। अब वो छूट ही नहीं रहे हैं वापस। तो मैंने वर्मा जी को कॉल लगाया कि सर अभी कैसे हो गया, आपको तो मैं पैसा भी दे रहा हूँ, उसके बाद भी लड़के अंदर हो रहे हैं और छूट भी नहीं रहे, बाहर निकल ही नहीं रहे वो लोग। तो वो बोले कि चलो करते हैं कुछ। फिर उसके बाद भी लड़के नहीं छूटे। फिर मैंने वापस कॉल किया उनको, तो वो बोले कि भैया लगता है अभी यहाँ से काम नहीं होगा, मैं चलो आपको किससे मिलवाता हूँ, ऐसा करके बोले हो। मैं बोला ठीक है सर मिलवा दीजिए, बस लड़के लोग को बाहर निकलवाना है। तो वो मेरे को लेके गए, साथ में लेके गए रायपुर। मैं बोला ठीक है मिलवा लो भैया, जिससे भी मिलवाना है। And viewers, Chhattisgarh CM Bhupesh Baghel is on the back foot as Mahadev wedding scam explodes. CM is alleging political conspiracy and has completely failed to respond to any charges against him whatsoever. Listen in to what the CM has been saying for the longest time now. 2 साल से जांच चल रहा है। छत्तीसगढ़ के बच्चे को पता है कि मेन प्रमोटर रवि उप्पल और सौरभ चंद्राकर है। ईडी को पता ही नहीं है, और 17 तारीख को ऐसी कहानी आते रहेंगे। आप देखते सुनते रहिए, एंजॉय करिए। बीजेपी को पता है वो हार रही है, इनको अपने आका के लिए छत्तीसगढ़ का खदान चाहिए, इसलिए प्राण लगाए हुए हैं। दूसरी बात यह है कि ये एक जो बंदा नया आया है, आप ईडी के जो प्रेस रिलीज है उसमें उसको बताया गया है कि ये जो महादेव का है उसका एक अधिकारी है। दूसरे दिन वीडियो आता है कि वो उसका मालिक है। ये जो सौरभ चंद्राकर है वो उसके कर्मचारी हैं। बड़ा उदार आदमी है जो अपने नौकर की शादी में 250 करोड़ रुपए खर्चा करता है। आज तक हमने नहीं सुना, क्योंकि सुनिए दुनिया में ये नहीं सुना है कि अपने नौकर के शादी में 200-250 करोड़ रुपए खर्च कर दे, लेकिन इन्होंने किया है। और वीडियो आपने देखा होगा कितने बार उठ के वो वीडियो ठीक करता है, थूक गटक रहा है, बोलने के तौर तरीके कितने उसमें कट पेस्ट हुआ है। इससे पता चलता है कि और जितना इसको गोदी मीडिया में दिखाया गया है, इतना तेजी से प्रचार प्रसार किया गया है, इसके प्रचार प्रसार से कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। छत्तीसगढ़ की जनता ने मन बना लिया है, और ये षड्यंत्रकारी लोगों को इस समय, और पिछले समय 15 सीट भी रह गए थे, इस समय उतनी भी सीट नहीं मिलने वाली। ये स्थिति इनकी है। And viewers, as the Mahadev app scam explodes, what we see right now is also one more simultaneous development. Massive political tremors over Republic's investigation. In a big impact, even the ED has taken note of what Republic TV has done.
and written to the Republic for more information, seeking more details on the stings that Republic TV has done, which has shaken the entire state of Chhattisgarh. Getting in exclusive reactions on Mahadev betting scam of top leaders. Listen in. 1.5 साल से वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, उन्होंने एक भी लेटर नहीं लिखा है, उन्होंने कभी भी एक भी मांग नहीं किया कि ये ऐप बंद करें। इसीलिए तो उनका 1.5 साल का इन्वेस्टिगेशन का कारण ही तो उनको 508 करोड़ रुपए मिले हैं इनसे। उन्होंने किसी भी एजेंसी से किसी भी तरह हमें कोई नोटिफिकेशन नहीं भेजा है इन 1.5 सालों में। पहली बार अगर सरकार को एक नोटिफिकेशन मिला है इन इलीगल ऐप्स के बारे में, वो कल सुबह एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने भेजा है और हमने कल दोपहर को उस सभी 22 ऐप जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने लिस्ट भेजे थे उनको हमने बैन कर दिया है। और ये भी कह रहे हैं कि जीएसटी 28% जीएसटी मिलती थी इसलिए प्रतिबंधित नहीं किया। आप अभी तक तो समझ गए होंगे, सभी लोग समझ गए होंगे कि कांग्रेस की राजनीति में झूठ और झूठ होना बहुत ही एक नॉर्मल सा फिनोमिनन है। यहाँ पर भी बघेल जी झूठ बोल रहे हैं, वो भी जानते हैं, सब जानते हैं, क्योंकि 1.5 साल से वो एक इन्वेस्टिगेशन को खींच रहे हैं जो 6 मिनट में पता कर सकते थे कि ये एक बेटिंग ऐप है और 6 मिनट में वो लेटर लिख सकते थे कि देखिए इसको बैन कीजिए। सीधे सीधे उन पर आरोप लगाया 508 करोड़ रुपए ले रहे हैं, दुबई से वीडियो जारी हुआ है, इसके बाद क्या उन पर शिकंजा कसेगा? तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और एजेंसीज तय करेंगे। मेरा काम यही था, हमारे सरकार हमारे मिनिस्ट्री का काम था कि ये इलीगल ऐप्स जो क्रिमिनल ऐप्स हैं उनको बंद करें, हमने बंद कर दिया। पब्लिक ने स्टिंग भी किया है, अभिषेक पल्ला जो एसपी हैं उन्होंने भी कबूला है, कई और लोग इस स्टिंग में फंसे हैं, तो इनके खिलाफ क्या सख्त कार्रवाई के निर्देश? मेरा स्पष्ट कहना है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पूरा का पूरा बघेल के सिस्टम, भूपेश बघेल जी के सिस्टम इनके पीछे थे, इसीलिए उनको 508 करोड़ रुपए मिले, इसीलिए 1.5 साल से उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया उनके साथ। छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, राज्य के मुख्यमंत्री पर सीधा सीधे आरोप लग रहा है 500 करोड़ का घूस। ये बहुत बड़ा गंभीर मामला है और निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की जनता और देश की जनता देख रही है और पहले से ही कांग्रेस हमेशा से करप्शन का पर्यायवाची शब्द अगर कोई पार्टी है तो कांग्रेस पार्टी है। लेकिन कांग्रेस कह रही है तो ये ईडी सीबीआई का गलत उपयोग किया जा रहा है, उनको बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है, बदले की भावना है। जिनका सामने टेलीविजन पर दिख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है कि कहाँ कार्रवाई होनी चाहिए और कहाँ नहीं होनी चाहिए। आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ में कहीं ना कहीं बघेल सरकार गिर जाएगी, आपको लग रहा है? वो तो जनता देखे, अब देख ही रही है। तो और जनता कैसी सरकार चाहती है और सब लोग देश के अंदर डबल इंजन चाहते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। ये आरोप ही नहीं है, प्रमाणित दस्तावेज के साथ उनके सामने साक्ष्य पेश किए गए। 509 करोड़ का लेन देन का प्रमाण हुआ, ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड मिले हैं, 5 करोड़ का राशि और 7 करोड़ की राशि जब्त किए गए हैं। दुबई से कनेक्शन मिला है, दुबई के कनेक्शन के साथ इनके सचिवालय के 3 अधिकारियों का सीधा महादेव ऐप के जो संचालक हैं उनके साथ पैसे का ट्रांजैक्शन का प्रमाण ईडी ने प्रस्तुत किया है। इसके बाद क्या बचता है मुझे समझ में नहीं आता भूपेश बघेल का। ये अब कोई उसको रंगे हाथ कोई उसके घर में पकड़ेगा क्या? इससे ज़्यादा प्रमाण। लेकिन देखिए मुख्यमंत्री जी तो ये कह रहे हैं कि ये सब आरोप है, इनको उनकी छवि धूमिल करने के लिए ये सब आरोप है भारतीय जनता पार्टी द्वारा। बताइए, महादेव ऐप में इतना बड़ा खुलासा पीएमएलए में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में हुआ है तो क्या आसमान खा गया पैसा? पूरा संरक्षण प्राप्त है छत्तीसगढ़ में ऐसे अपराधी गतिविधियों का। सट्टा जुआ और इस अपराध में इलेक्शन के लिए फंडिंग कर रखी रहे हैं। 509 करोड़ चुनाव के लिए भेजा है भूपेश बघेल के लिए। बल्कि आपको पता ही होगा कि हमने भी सर एक स्टिंग किया जिसमें हमें पता चला है कि काफ़ी पुलिस वाले भी शायद समझ लेते, उसमें ईडी ने भी अरेस्ट किया उसके बाद, और उसके जो लिंक्स है वो मुख्यमंत्री के ऑफिस तक मतलब जा रहे हैं। ऑफिस तक मिले हैं, 3 नाम प्रकट रूप से आए हैं और तीनों लोगों की संलिप्तता साफ दिख रही है और ये अकेला एक प्रकार का महादेव ऐप की बात नहीं है। हिंदुस्तान में और कहीं ऐसा हो सकता है क्या? सरकारी खजाना का लूट इतना खुलेआम हो कि बिना हॉलमार्क के 40% शराब को बिना टैक्स पटाए सरकारी शराब दुकान से बेची जाए। क्या कोयले में इससे ज़्यादा भ्रष्टाचार दुनिया में कहीं हो सकता है? लेकिन सर मैं महादेव में ही ज़रा फोकस रखूँगा सर। एक और मतलब अब खुलासा आया है, ये ईडी की रिमांड कॉपी में भी आया है और अब एक वीडियो भी इमर्ज आ रही है कि जिसमें एक इंसान है शुभम सोनी, वो अपने आप को महादेव का ओनर बुलाता है, अपने आप को महादेव का ओनर बोलता है और वो बोलता था कि वो असीम दास के द्वारा चीफ मिनिस्टर ऑफिस
में कोई वर्मा जी है उनके द्वारा पैसे भेजता था। अब ये कितनी सच्चाई है? ये असीम के पास ही तो 5.37 करोड़ रुपए के पैसे जब्त हुए। वही असीम दास है जिसने स्वीकार किया बघेल नामक व्यक्ति को मैं पैसा देता। वही असीम दास है जिसके दुबई के कनेक्शन मिले हैं। ये सारे प्रमाण के लिंक मिलते जा रहे हैं और प्रमाण के साथ ईडी ने ऐसी कार्रवाई नहीं की, पूरे पुख्ता जानकारी के साथ, पूरे दस्तावेज के साथ किया है और उसके बाद भी बेशर्मी की हद भूपेश बघेल ईडी पे आरोप लगा रहे हैं। इसका अंत आप कहाँ तक देखते हैं? अंत होगा, न्यायालय में जाएंगे और न्यायालय में कार्रवाई होगी और सजा होगी। ये घोटालों की सरकार अभी अभी महादेव ऐप, इन्होंने महादेव को भी नहीं छोड़ा। 6,000 करोड़ रुपए का घोटाला। किस बात का घोटाला? सत्ता में आने के लिए सट्टे का घोटाला। 508 करोड़ रुपए का घोटाला। और जानते हैं वो असीम दास क्या बोलता है ईडी में कि ये मैं पैसा दुबई से लेकर के भूपेश बघेल को देने आया था, उसने छत्तीसगढ़ के चुनाव के लिए। Viewers, much more coming up on the side. Bhupesh Baghel on the back foot. Cornered CM calls charges against him a conspiracy. Plus, as Delhi AQI continues to drop, Aam Aadmi Party and the BJP face off over pollution control measures. Stay tuned to India's #1 news channel, Republic TV. Hello, Moto. Motorola, India's best 5G smartphone brand. बंद करो, कान बंद करो, कभी भी फट सकता हूँ, पटाखा जो लग रहा हूँ। दिवाली है, तैयार होकर आइए। You know what could have been my biggest weakness? The fact that I didn't grow up wearing a lot of makeup turned out to be my biggest strength because I could relate to the girl next door. I could relate to the girl who had regular skin with skin issues and went through public transport and would sweat all day and wanted makeup that would last through that sweating. People with absolutely who create products for celebrities don't get the requirement of the regular girl in India, which I really got because I was her. Catch Techno Phantom V Flip 5G presents Women Pioneers of India only on Republic TV. PC Chandra Jewelers presents Dhanteras Dhan Varsha offer. 25% off on jewelry making charges, 10% off on the value of diamonds and precious stones, 100 rupees off per gram of gold jewelry. Win attractive mega prizes. Offer valid till 11th November. Terms and conditions apply. Visit us today. PC Chandra Jewelers, a jewel of jewels. मुथूट फाइनेंस, भारत का #1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। Helps beat sensitivity fast. Sensodyne Rapid Relief. You are the one. Unmatched. Unequaled. Unbeatable. LG OLED Evo. The one and only. With 49 studios, Woodville has revolutionized the Indian modular kitchen industry by bringing the best of Europe for Indian homes. Visit the nearest store for a new design and a quote. पता नहीं रसूल से खाली हो रहा हूँ ना, बड़े बड़े लोग हैं, यहाँ तक कि यहाँ के कोई नेता नहीं छुड़ा। बड़े बड़े लोग भाई, यहाँ पुलिस वाले सस्पेंड हो गए इस चक्कर में।
एक विधायक भी पैसा मांग रहे सीधा मुंह हो गया। पैसे की डिमांड किसके थ्रू करते हैं ये लोग? होगा कुछ जैसे कि यहाँ जो पकड़ाए हैं सतीश चंद्राकर और हाँ ASI क्या वर्मा उससे विनोद वर्मा का नाम ले दिया कि यहाँ कभी बारी नाम लिया था नहीं में। The Chhattisgarh elections, ladies and gentlemen, is just less than 24 hours away. Now, the Mahadev betting app and the entire scam continues to get bigger by the moment. Will that have its resonance on how the voters will be voting? The BJP says this is a serious enough case that indicts no one else but the sitting Chief Minister of the Congress. We'll get you details of that and much more. The headlines first up. The Mahadev bombshell tape aired on Republic become the turning point in the multi-crore betting scam coverage. छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 508 करोड़ ले रहे हैं। किससे ले रहे हैं? एक क्रिमिनल एलिमेंट बैक्ड बेटिंग। Republic's sting in the alleged tape now becomes the biggest talking point in the Chhattisgarh election campaign. Bhupesh Baghel is on the back foot. The cornered chief minister calls all these charges against him a quote-unquote conspiracy. Republic accesses videos of Shubham Soni in Dubai. These videos show parties organized by him in Dubai. करोड़ रुपए का घोटाला। और जानते हैं वो असीम दास क्या बोलता है ईडी में कि ये मैं पैसा दुबई से लेकर के भूपेश बघेल को देने आया था, उसने छत्तीसगढ़ के चुनाव के लिए। The BJP raising the Republic sting to attack Bhupesh Baghel over corruption allegations. And the ED calls the Republic stings as relevant to the ongoing probe, writes to Republic seeking the stings. Now, the Republic investigation in the Mahadev betting scam has exploded with the emergence of tapes of a person who claims to be the key aide of Saurabh Chandrakar and calls himself the owner of the Mahadev app. This alleged testimony, remember, has given a fresh twist in the entire scam. Now, we've got your reactions that have come in from all major political parties. The BJP continues to allege that this is a scam that directly will implicate the sitting Chief Minister Bhupesh Baghel. But he says all this is nothing but vendetta. It's a conspiracy. In fact, on Sunday, Republic aired part 1 of the Mahadev bombshell tapes in which a man claiming to be the Mahadev book owner implicated the Chief Minister's office. Now we are putting forward part 2 of the tape in which he is naming the Chief Minister. मैं शुभम सोनी बोल रहा हूँ और मैं महादेव बुक का ओनर हूँ। ये रहे उसके डॉक्यूमेंट्स। और ये मेरे आधार डॉक्यूमेंट्स हैं। ये मेरा आधार कार्ड है। ये मेरा पैन कार्ड है। और ये मेरा पासपोर्ट है। और महादेव बुक का ओनर मैं ही हूँ। ये आपको डॉक्यूमेंट दिखा दिया मैंने। और 2021 में इसको मैंने चालू किया था। ये उसका पूरा डॉक्यूमेंट्स है। मेरा गैम्बलिंग का काम बहुत अच्छे से चलने लगा था फिर भिलाई में।
और ये तो बहुत ही छोटे से काम चालू हुआ था। उसके बाद धीरे धीरे काम बढ़ता गया। अब काम बढ़ता गया, उसके बाद हमारा लाइफस्टाइल भी चेंज होता गया क्योंकि पैसा बहुत आ रहे थे। तो सब नोटिस करने लगे, मेरे मतलब जो आसपास के लोग हैं वो लोग नोटिस करने लगे। धीरे धीरे बात ऊपर तक गया, तो फिर कंप्लेन वगैरह भी होने लगा। तो फिर ऐसा हुआ कि अब प्रोटेक्शन का जो बहुत ज़रूरत था हमको, क्योंकि लड़के भी अंदर हो रहे थे कुछ कुछ। तो उसके बाद मुझे पता चला वर्मा जी के बारे में। फिर मैंने उनसे मीटिंग की। फिर मुझे समझ लो हफ्ता वसूली वाला काम चालू हो गया। अब वर्मा जी से मैंने मीटिंग किया तो फिर उनसे बात हुआ और ये हुआ कि अब उनको मुझे हर महीना 10 लाख रुपए देना है। तो वो भी ओके हो गया। अब हर महीना मैंने उनको 10 लाख रुपए देना चालू कर दिया। तो काम अब बढ़िया चलने लगा मेरा, और पैसा भी कमा रहे थे हम, सब कुछ ओके था। उसके कुछ दिन बाद ऐसा हुआ कि हमारे लड़के फिर अंदर हुए। अब वो छूट ही नहीं रहे हैं वापस। तो मैंने वर्मा जी को कॉल लगाया कि सर अभी कैसे हो गया, आपको तो मैं पैसा भी दे रहा हूँ, उसके बाद भी लड़के अंदर हो रहे हैं और छूट भी नहीं रहे, बाहर निकल ही नहीं रहे वो लोग। तो वो बोले कि चलो करते हैं कुछ। फिर उसके बाद भी लड़के नहीं छूटे। फिर मैंने वापस कॉल किया उनको, तो वो बोले कि भैया लगता है अभी यहाँ से काम नहीं होगा, मैं चलो आपको किससे मिलवाता हूँ, ऐसा करके बोले हो। मैं बोला ठीक है सर मिलवा दीजिए, बस लड़के लोग को बाहर निकलवाना है। तो वो मेरे को लेके गए, साथ में लेके गए रायपुर। मैं बोला ठीक है मिलवा लो भैया जिससे भी मिलवाना है। And the next obvious question is, how has the Chhattisgarh Chief Minister Bhupesh Baghel responded to these very, very serious allegations? Now, many say he's on the back foot as the Mahadev Bering scam continues to explode by the moment. The Chief Minister says this is nothing but a political conspiracy to defame him ahead of the upcoming elections. And in the same breath, he fails to respond to any of the charges that have been leveled against him. जांच चल रहा है। छत्तीसगढ़ के बच्चे को पता है कि मेन प्रमोटर रवि उपल और सौरभ चंद्राकर है। ईडी को पता ही नहीं है। और 17 तारीख को ऐसी कहानी आते रहेंगे, आप देखते सुनते रहिए, एंजॉय करिए। बीजेपी को पता है वो हार रही है। इनको अपने आका के लिए छत्तीसगढ़ का खदान चाहिए, इसलिए प्राण लगाए हुए हैं। दूसरी बात यह है कि ये एक जो बंदा नया आया है, आप ईडी के जो प्रेस रिलीज है उसमें उसको बताया गया है कि ये जो महादेव का है उसका एक अधिकारी है। दूसरे दिन वीडियो आता है कि वो उसका मालिक है। ये जो सौरभ चंद्राकर है वो उसके कर्मचारी हैं। बड़ा उदार आदमी है जो अपने नौकर की शादी में 250 करोड़ रुपए खर्चा करता है। आज तक हमने नहीं सुना कि भी सुनिए, दुनिया में ही नहीं सुना कि अपने नौकर के शादी में 200-250 करोड़ रुपए खर्च कर रहे, लेकिन इन्होंने किया है। और वीडियो आपने देखा होगा कितने बार उठ के वो वीडियो ठीक करता है, थूक गटक रहा है, बोलने के तौर तरीके कितने उसमें कट पेस्ट हुआ है। इससे पता चलता है कि और जितना इसको गोदी मीडिया में दिखाया गया है, इतना तेज़ी से प्रचार प्रसार किया गया है, इसके प्रचार प्रसार से कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। छत्तीसगढ़ की जनता ने मन बना लिया है और ये षड्यंत्रकारी लोगों को इस समय, और पिछले समय 15 सीट भी रह गए थे, इस समय उतनी भी सीट नहीं मिलने वाली। ये स्थिति इनकी है। And there have been massive political tremors over Republic investigation. Even the ED has taken note and written to Republic seeking details of this sting. Let's also get your reactions that have come in from the BJP camp so far on this story. 1.5 साल से वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। उन्होंने एक भी लेटर नहीं लिखा है, उन्होंने कभी भी एक भी मांग नहीं किया कि ये आप बंद करें। इसीलिए तो उनका 1.5 साल का इन्वेस्टिगेशन का कारण ही तो उनको 508 करोड़ रुपए मिले हैं इनसे। उन्होंने किसी भी एजेंसी से किसी भी तरह हमें कोई नोटिफिकेशन नहीं भेजा है इन 1.5 सालों में।
पहली बार अगर सरकार को एक नोटिफिकेशन मिला है इन इलीगल ऐप्स के बारे में, वो कल सुबह एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने भेजा है और हमने कल दोपहर को उस सभी 22 ऐप जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने लिस्ट भेजे थे उनको हमने बैन कर दिया है। और ये भी कह रहे हैं कि जीएसटी 28% जीएसटी मिलती थी इसलिए प्रतिबंधित नहीं किया। आप अभी तक तो समझ गए होंगे, सभी लोग समझ गए होंगे कि कांग्रेस की राजनीति में झूठ और झूठ होना बहुत ही एक नॉर्मल सा फिनोमिनन है। यहाँ पर भी बघेल जी झूठ बोल रहे हैं, वो भी जानते हैं, सब जानते हैं, क्योंकि 1.5 साल से वो एक इन्वेस्टिगेशन को खींच रहे हैं जो 6 मिनट में पता कर सकते थे कि ये एक बेटिंग ऐप है और 6 मिनट में वो लेटर लिख सकते थे कि देखिए इसको बैन कीजिए। सीधे सीधे उन पर आरोप लगाया 508 करोड़ रुपए ले रहे हैं, दुबई से वीडियो जारी हुआ है, इसके बाद क्या उन पे शिकंजा कसेगा? तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और एजेंसीज तय करेंगे। मेरा काम यही था, हमारे सरकार और हमारे मिनिस्ट्री का काम था कि ये इलीगल ऐप्स जो क्रिमिनल ऐप्स हैं उनको बंद करें, हमने बंद कर दिया। रिपब्लिक ने स्टिंग भी किया है, अभिषेक पल्ला जो एसपी हैं उन्होंने भी कबूला है, कई और लोग इस स्टिंग में फंसे हैं, तो इनके खिलाफ क्या सख्त कार्रवाई के निर्देश? मेरा स्पष्ट कहना है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पूरा का पूरा बघेल के सिस्टम, भूपेश बघेल जी के सिस्टम इनके पीछे थे, इसीलिए उनको 508 करोड़ रुपए मिले, इसीलिए 1.5 साल से उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया उनके साथ। छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, राज्य के मुख्यमंत्री पर सीधे आरोप लग रहा है 500 करोड़ का घूस, ये बहुत बड़ा गंभीर मामला है और निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की जनता और देश की जनता देख रही है। और पहले से ही कांग्रेस हमेशा से करप्शन का पर्यायवाची शब्द अगर कोई पार्टी है तो कांग्रेस पार्टी है। लेकिन कांग्रेस कह रही है तो ये ईडी सीबीआई का गलत उपयोग किया जा रहा है, उनको बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है, बदले की भावना है। जिनका सामने टेलीविजन पर दिख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है कि कहाँ कार्रवाई होनी चाहिए और कहाँ नहीं होनी चाहिए। आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ में कहीं ना कहीं बघेल सरकार गिर जाएगी, आपको लग रहा है? वो तो जनता देखे, अब देख ही रही है। तो और जनता कैसी सरकार चाहती है और सब लोग देश के अंदर डबल इंजन चाहते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। ये आरोप ही नहीं है, प्रमाणित दस्तावेज के साथ उनके सामने साक्ष्य पेश किए गए। 509 करोड़ का लेन देन का प्रमाण हुआ, ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड मिले हैं, 5 करोड़ का राशि और 7 करोड़ की राशि जब्त किए गए हैं। दुबई से कनेक्शन मिला है, दुबई के कनेक्शन के साथ इनके सचिवालय के 3 अधिकारियों का सीधा महादेव ऐप के जो संचालक हैं उनके साथ पैसे का ट्रांजैक्शन का प्रमाण ईडी ने प्रस्तुत किया है। इसके बाद क्या बचता है मुझे समझ में नहीं आता भूपेश बघेल का। ये अब कोई उसको रंगे हाथ कोई उसके घर में पकड़ेगा क्या? इससे ज़्यादा प्रमाण। लेकिन देखिए मुख्यमंत्री जी तो ये कह रहे हैं कि ये सब आरोप है, इनको उनकी छवि धूमिल करने के लिए ये सब आरोप है भारतीय जनता पार्टी द्वारा। बताइए। महादेव ऐप में इतना बड़ा खुलासा पीएमएलए में, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में हुआ है, तो क्या आसमान खा गया पैसा? पूरा संरक्षण प्राप्त है छत्तीसगढ़ में ऐसे अपराधी गतिविधियों का। सट्टा जुआ और इस अपराध में इलेक्शन के लिए फंडिंग कर रहे हैं। 509 करोड़ चुनाव के लिए भेजा है भूपेश बघेल के लिए। बल्कि आपको पता ही होगा कि हमने भी सर एक स्टिंग किया जिसमें हमें पता चला है कि काफ़ी पुलिस वाले भी शायद समझ लेते, उसमें ईडी ने भी अरेस्ट किया उसके बाद, और उसके जो लिंक्स है वो मुख्यमंत्री के ऑफिस तक मतलब जा रहे हैं। ऑफिस तक मिले हैं, 3 नाम प्रकट रूप से आए हैं और तीनों लोगों की संलिप्तता साफ दिख रही है और है। और ये अकेला एक प्रकार का महादेव ऐप की बात नहीं है। हिंदुस्तान में और कहीं ऐसा हो सकता है क्या सरकारी खजाना का लूट इतना खुलेआम हो कि बिना हॉलमार्क के 40% शराब को बिना टैक्स पटाए सरकारी शराब दुकान से बेची जाए? क्या कोयले में इससे ज़्यादा भ्रष्टाचार दुनिया में कहीं हो सकता है? लेकिन सर मैं महादेव में ही ज़रा फोकस रखूँगा सर। एक और मतलब अब खुलासा आया है, ये ईडी की रिमांड कॉपी में भी आया है और अब एक वीडियो भी इमर्ज आ रही है कि जिसमें एक इंसान है शुभम सोनी, वो अपने आप को महादेव का ओनर बुलाता है, अपने आप को महादेव का ओनर बोलता है और वो बोलता था कि वो असीम दास के द्वारा चीफ मिनिस्टर ऑफिस में कोई वर्मा जी है उनके द्वारा पैसे भेजता था। अब ये कितनी सच्चाई है? ये असीम के पास ही तो 5.37 करोड़ रुपए के पैसे जब्त हुए। वही असीम दास है जिसने स्वीकार किया बघेल नामक व्यक्ति को मैं पैसा देता। वही असीम दास है जिसके दुबई के कनेक्शन मिले हैं। ये सारे प्रमाण के लिंक मिलते जा रहे हैं और प्रमाण के साथ ईडी ने ऐसी कार्रवाई नहीं की, पूरे पुख्ता जानकारी के साथ पूरे दस्तावेज के साथ किया है और उसके बाद भी बेशर्मी की हद भूपेश बघेल ईडी पे आरोप लगा रहे हैं। इसका अंत आप कहाँ तक देखते हैं? अंत होगा, न्यायालय में जाएंगे और न्यायालय में कार्रवाई होगी और सजा होगी।
ये घोटालों की सरकार अभी अभी महादेव ऐप, इन्होंने महादेव को भी नहीं छोड़ा। 6,000 करोड़ रुपए का घोटाला। किस बात का घोटाला? सत्ता में आने के लिए सट्टे का घोटाला। 508 करोड़ रुपए का घोटाला। और जानते हैं वो असीम दास क्या बोलता है ईडी में कि ये मैं पैसा दुबई से लेकर के भूपेश बघेल को देने आया था, उसने छत्तीसगढ़ के चुनाव के लिए। And as Republic brings you exclusive investigation on the Mahadev wedding scam, it has become the biggest talking point ahead of elections. The political link to the scam has also shaken up the Chhattisgarh state, and the one question that everyone continues to ask is that did the Chief Minister Bhupesh Baghel know about all this? A betting app scam that started in 2021 in Congress-ruled Chhattisgarh. Possibility of political links in the scam cannot be ruled out. When Republic investigative team tried to dig in, the first investigator of the scam said that Chief Minister Bhupesh Baghel knew about the scam. सर आपको लगता है कि मतलब इतना जानकारी ले रहे हैं, सर आपको लगता है कि उसको सब कुछ पता है कि क्या हो रहा है? देखिए, जैसा मुझे समझ में ये आया कि मैं तो सीएम साहब के काफ़ी लंबी बड़ी बात होती थी, हमेशा जब भी हाउस में आते थे तो 3-4 चीज़ मुझे क्लियर हुआ कि हो रहा है ये पता था, इंटेंसिटी इतना ज़्यादा है ये नहीं पता। 2 चीज़ें हैं, एक चीज़ तो है कि कुछ फंडिंग हो सकता है, पॉलिटिकल फंडिंग बाकी स्टेट्स में करनी पड़ी हो बहुत सारे चुनाव से। The key political link in this scam seems to be Vinod Verma. Chhattisgarh CM's political advisor, IPS officer, says he could have benefited in some way. सर लेकिन उनका बेटा खुद इन्वॉल्व था, ईडी के पास ऐसे बेटा और उसकी पत्नी दोनों के नाम पे शेल कंपनियां बनाई गई, जिससे कॉर्पोरेट अकाउंट से काफ़ी पैसा उनके पास गया। मैं ये भी बोल रहा हूँ कि देखिए 2 चीज़ें हैं, सतीश चंद्राकर और चंद्रभूषण वर्मा, ये दोनों खुल के बोलते थे कि हम चला रहे हैं, ये खुल के नहीं बोलते थे। विनोद जी, हाँ, विनोद वर्मा ने कभी खुल के नहीं बोला कि मैं संरक्षण दे रहा हूँ, बट पूरा संरक्षण था उनकी तरफ से। वो उनके मैं तो इंक्वायरी की नहीं होती, तो मैं बोल नहीं सकता, लेकिन इन दोनों का बोल तो इन्होंने कमिट किया मेरे सामने आके। Baghel's right-hand man Vinod Verma was questioned by agencies in connection with the scam. No evidence as of now. But multiple players of the scam have said that Saurabh Chandrakar has a lot of political clout. मैम ये पूरी सरकार खरीद सकते हैं। खरीद सकते क्या? मुझे लगता है पैसा पूरा सरकार चला रहे हैं ये जो रेड ये सब चीज चल रहा है मैम, ये मेरे को पूरा और टोटल में मेरे को गेम लगता है। Though there is no evidence of the political involvement so far, agencies are already investigating the political link to the scam. But those who know the case inside out believe that the scam of this proportion couldn't have gone unnoticed at political level. Special investigative report by Republic TV. So India's biggest scam unraveling ahead of elections, and the facts emerging suggest that the scam money was being used for political campaigns. That is also the allegation, and this is exactly what Republic has found in its investigation so far. A scam running to the tune of over 400 crore rupees. And in the heat of election campaign, some sensational allegations have been made that proceeds of crime were used for political funding. काम के लिए पुलिस को साथ रखना जरूरी है और नेता लोग को। ये सब कहाँ है? लेकिन सबसे ज़्यादा पैसा सामने छतरी में चुनाव ना, सब पैसे की डिमांड कर रहे हैं। सबके? सब पैसे की डिमांड कर रहा है वहाँ। अच्छा। और कुछ जैसे कि यहाँ जो पकड़ाए हैं सतीश चंद्राकर और ASI। चलो खोल दिया, बड़ी मार दो। इसको इतना देता था, उसको इतना देता था, कहीं जुगाड़ होगा। The accused in the scam has also claimed that cash was ferried in air ambulances to fund election. देखिए अभी ये हवाला में जो काम हो रहा है ना, अब देखिए अब इनके पास पैसा कैसे आएगा? प्राइवेट जेट से इनके पास पैसा आएगा। प्राइवेट जेट से? प्राइवेट जेट से आएगा या तो हेलीकॉप्टर के थ्रू इनके पास पैसा आएगा। ऐसा क्यों? मैम देखिए अब ईडी का इतना चल रहा है तो हवाला से भेज नहीं सकते? हवाला से भेज नहीं सकते। मैंने सुना था कि एयर एम्बुलेंस का भी इस्तेमाल किए हैं ये लोग। किए अभी नहीं, पहले किए हैं।
पहले किया 2022 में किया था 2022 में उन्होंने किया है मिनिमम का इस्तेमाल हुआ है प्राइवेट के थ्रू हुआ है Though the money trail is yet to be established and Hawala transactions are under scanner, the claims made by the key players are certainly explosive. Were proceeds of crime used for election campaign? Did betting scam accused send cash to the political parties? Special investigative report by Republic TV. It's time for us to head into a quick break. On the other side, Republic also accesses videos of Shubham Soni in Dubai, and these videos show parties being organized by him. We'll have the full story when we come back. बंद करो कान बंद करो कभी भी फट सकता हूँ पटाखा जो लग रहा हूँ दिवाली है तैयार होकर आइए In the global employability rankings by Times Higher Education UK, only the following 6 institutions from India are ranked amongst the top 230 in the world for having the most employable graduates. IIT Delhi, IISc Bangalore, IIT Bombay, IIM Ahmedabad, IIT Kharagpur and Amity University. मैडम सर छुट्टी चाहिए थी क्यों? दिवाली की गिफ्ट्स खरीदने अब सबकी पसंद अलग अलग तो 10 जगह घूमना पड़ेगा ना मिश्रा जी बताइए स्मार्ट बाजार फेस्टिवल सेल में हर गिफ्टिंग आइटम एक ही जगह मिल जाएगा वो भी सबसे कम दाम में तो अब छुट्टी का क्या करोगे सोच के आई है चलिए आ गया फेस्टिवल सेल 1 से 15 नवंबर इस दिवाली सारी गिफ्ट आइटम सबसे कम दाम पे चाहिए स्मार्ट बाजार चलिए You know what could have been my biggest weakness? The fact that I didn't grow up wearing a lot of makeup turned out to be my biggest strength because I could relate to the girl next door. I could relate to the girl who had regular skin with skin issues and went through public transport and would sweat all day and wanted makeup that would last through that sweating. People with absolutely who create products for celebrities don't get the requirement of the regular girl in India, which I really got because I was her. Catch Techno Phantom V Flip 5G presents Women Pioneers of India only on Republic TV. This Diwali, New Hawkins, good old friends, fun times again. एक कटिंग देना What happened to the test bag? Already tested by nature, sir. India's first certified sustainable heart trolleys. Made for nature and tested by nature. Uppercase. Never ordinary. Hello, Moto. Motorola, India's best 5G smartphone brand, brings you the latest breaking news update from across the country only on Republic TV. Hello, Moto. Motorola, India's best 5G smartphone brand. किए थे कि ऐसी ऐसी वीडियो आएगी फिर वो आना भी चालू हाँ तो होगा ना 17 तारीख तक सब लोग मजा लें सर तो क्या रहेगी रणनीति क्या ये इम्पैक्ट डालेगा सर इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि लगातार मैं बोल रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ रही ईडी आईटी के माध्यम से लड़ रहे हैं शुभम Hello, Moto. Motorola, India's best 5G smartphone brand. बंद करो कान बंद करो कभी भी फट सकता हूँ पटाखा जो लग रहा हूँ दिवाली है तैयार होकर आइए हर खरीदारी के साथ एक गोल्ड कॉइन मुफ्त। हैप्पी दिवाली
ज्वेलर्स, कल्याण ज्वेलर्स। जब एक दिया जलता है पूरा घर रोशन हो जाता है। सोचिए जब आस्था के दीप जगमगाएंगे और प्रभु श्री राम के अयोध्या आगमन का उत्सव मनाएंगे तो कैसा अलौकिक दृश्य होगा, जो अपने आप में एक कीर्तिमान होगा और पूरी राम नगरी डूब जाएगी दिव्य अलौकिक दीपोत्सव की जगमगाहट में। आप भी सपरिवार इस विश्व कीर्तिमान का हिस्सा बने और अपनी अयोध्या नगरी को विश्व मानचित्र पर आने का उत्सव मनाइए। भव्य दीपोत्सव उत्सव त्योहार है, ज्योतिर्मय तेज है, ये रोशनी की धार है, पाप पर प्रहार है, सच की जीत की हुंकार है, दिए से दिया जलाए, राम राज सरकार है, राम 11 नवंबर सरयू घाट पर आइए और प्रभु श्री राम की महिमा गुनगुनाइए। बोल्टास बैको ये 30 दिन तक फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को फ्रेश रखता है और तुमने मान लिया। लेकिन वैसे भी 30 दिन की सब्जियां कौन खाता है? तू। वोल्टास बेको डुअल कूलिंग रेफ्रिजरेटर की स्टोर फ्रेश टेक्नोलॉजी से सब्जियां 30 दिन तक फ्रेश रह सकती हैं। वोल्टास बेको, टेस्टेड बाय रियल मॉम्स। Hello Moto. Motorola, India's best 5G smartphone brand. पहले से ही कांग्रेस और करप्शन का बहुत नज़दीक का नाता था, लेकिन इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना पड़ेगा, उसमें कौन गिल्टी है कौन नहीं है, उसका इंफॉर्मेशन लेके अगर बयान दे दिया जाए तो अच्छा रहेगा। लेकिन इसमें नया कुछ नहीं है, कांग्रेस और करप्शन का नाता बहुत नज़दीक का है। क्या है कि जिसके आदमी ने ये किया है उसको तो सपोर्ट करना उनकी जिम्मेदारी है, इसलिए अभी करप्शन होने के बाद भी अगर वो बोल रहे हैं कि ये ईडी का मामला है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है, ये अच्छी बात नहीं है। जिसने करप्शन किया है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। बंद करो कान बंद करो, कभी भी फट सकता हूँ, पटाखा जो लग रहा हूँ। दिवाली है, तैयार होकर आइए। You are the one. Unmatched, unequaled, unbeatable. LG OLED Evo, the one and only. New Hawkins Tri-Ply Pressure Cooker. Spices don't stick. Food doesn't burn. New Hawkins Stainless Steel. Poems, not my thing. Are short stories your thing? Yeah. I actually have some other app. Phone Pay accepts money from any app, whatever's your thing. Actually, I'll take this thing also. Yeah. लेकिन हमने तो एकदम सॉलिड टीएमटी बार लगाया है। मतलब लूंटा स्टील टीएमटी बार, जंग से न माने हार और मजबूती बेशुमार। लूंटा स्टील टीएमटी बार है बिल्कुल रेडी। मिश्रा जी, दिवाली का एक्स्ट्रा बोनस मिल गया क्या आपको? नहीं मैडम सर। क्यों? आपकी शाही दावत देखकर तो लगता है। वो क्या है ना मैडम सर, इस बार थोड़ा एक्स्ट्रा इनकम हो गई। मिश्रा जी, स्मार्ट बाजार में ग्रोसरी इतने कम दाम में मिल गई तो हो गई ना एक्स्ट्रा इनकम। मिश्रा जी, मीठा। चलिए आ गया फेस्टिवल सेल 1 से 15 नवंबर। इस दिवाली ग्रोसरी सबसे कम दाम में चाहिए, स्मार्ट बाजार चलिए। Following the success of its inaugural edition last year, the popular Autumn Festival returned in Delhi from 3rd to 4th November 2023. Organized by Nagaland Tourism in association with the Union Ministry of Tourism, this festival showcased the essence of the popular Hornbill Festival to the people of the capital. We aim to provide an immersive experience for those unable to visit Nagaland while also deepening appreciation of those who can. It's a win-win for all, said Temjanim Nalong, Nagaland Minister of Tourism and Higher Education.
The Hornbill Festival, scheduled for December 1 to 10th, 2023 in Kisama Heritage Village, showcases Naga tribal culture. It's a great way to experience Nagaland's diversity. Hello, Moto. Motorola, India's best 5G smartphone brand, brings you the latest breaking news update from across the country, only on Republic TV. Very good afternoon and thank you for tuning in. You're watching Live and Breaking at 4 p.m. I'm Suesha Samant. Our top story remains the Mahadev bombshell tapes and more news that is coming in on it, which has become the biggest turning point when it also comes to the political rhetoric. That and much more in this edition. First, a quick check of the headlines we're tracking. Mahadev bombshell tapes aired on Republic becomes the turning point in the multi-crore betting scam coverage. छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 508 करोड़ ले रहे हैं। किससे ले रहे हैं? एक क्रिमिनल एलिमेंट बैक्ड बेटिंग। Republic sting and alleged tapes become the biggest talking point in Chhattisgarh election campaign. Bhupesh Baghel on the back foot cornered Chief Minister, calls charges against him a conspiracy. Republic accesses video of Shubham Soni in Dubai. Videos show parties organized by Soni in Dubai. ₹8 करोड़ का घोटाला। और जानते हैं वो असीम दास क्या बोलता है ईडी में कि ये मैं पैसा दुबई से लेकर के भूपेश बघेल को देने आया था, उसने छत्तीसगढ़ के चुनाव के लिए। BJP raises Republic sting to attack Bhupesh Baghel over corruption allegations. ED calls Republic stings as irrelevant to ongoing probe, writes to Republic seeking the sting tapes. Yes, viewers, Republic got you part 1 and part 2 of the Mahadev scam explosive tapes, where a man claiming to be Shubham Soni had made these sensational revelations in the Mahadev app scam. Now, Republic is getting you the third part of these sensational tapes. In part 3, the claim has been made that Chief Minister Baghel was paid off. The video throws up big questions as it makes direct allegations against Chief Minister Bhupesh Baghel, who so far has not just refuted these claims, but has been evasive to the pointed questions that stare at him. Let's take a look at the third part of these tapes. शुभम सारों को पता है कि रवि और सौरभ मालिक है महादेव ऐप के, और साले 2 बियर खींच के तू बन जाता है मालिक है। मैं 2 बियर खींचूं, 4 बियर खींचूं, मालिक तो मैं ही हूं महादेव बुक का यार। नहीं कैसे है तू? कैसे क्या? तू इतना दिन दूर था भी मेरे से, इसलिए तेरे को मेरे पता नहीं है। तेरे को तू ऐसा बात कर रहा है। तू आ गया वो सोशल मीडिया देख के, जैसे लोग अल्लाह कर रहे हैं सोशल मीडिया में कि कौन ओनर है कौन है, और तू किसका बात कर रहा हो भी मेरे को पता है। जहां तक मेरे को पता है सौरभ और रवि का ही बात कर रहा होगा तू, है ना? पेपर तो मेरे पास है ना भाई, महादेव बुक ओनर तो मैं हूँ, पेपर तो मेरे पास है। देखेगा क्या? मोबाइल में पड़ा हुआ है। 4 साल से मेहनत क्यों हंस रहा है यार? 4 साल से मेहनत क्यों भाई? जमीन से आसमान तक पहुंचाए बुक को।
नहीं, इतनी बड़ी शादी की उन्होंने, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तुम्हारे पैनल वाले पकड़े गए, पैनल मेंबर, उन्होंने किसी ने तेरा नाम नहीं लिया, सब रवि और सौरभ का नाम ले रहे हैं, तो तेरी कहां से हो गई भाई? अरे भाई वो मेरा, पहली बात तो शादी को जोड़ने का जरूरत नहीं महादेव बुक से, ऊपर से तेरे को बता रहा हूँ मैंने यूज किया शादी को प्रमोशन के लिए अपने, ठीक है, मैंने यूज किया उसको और मेरा काम भी हुआ बहुत अच्छे से। और क्या बोल रहा, कौन पैनल पकड़ा गया क्या? अरे जो तुम्हारे पैनल मेंबर पकड़े जाते हैं, फ्रेंचाइजी वाले। पैनल मेंबर पकड़ा ही नहीं सकते भाई, मेरे ऊपर ऐसे आदमी का आशीर्वाद है ना, और मैं मिल के आया हूं ऐसे आदमी से कि मेरा एक आदमी पकड़ा नहीं सकता, पकड़ाया भी सुबह पकड़ाएगा शाम को छूट जाएगा। कौन आदमी? एक ही तो यार, अपने काका साहब। और कौन? काका साहब? काका साहब कौन? सीएम है यार, और कौन? अच्छा तो क्या? अच्छा, तो क्या हल्के में लेकर रखा है क्या मेरे को? अच्छा, सीएम घर आया सीएम तेरे? सीएम घर नहीं आया भाई, मिलने आया तेरे से? सीएम मिलने नहीं आया, मैं गया था। और तू जानता ही होगा वर्मा को और गिरीश तिवारी को, सुना होगा ना मेरे मुंह से, कभी नाम सुना ही होगा एक आध बार। बस उन्होंने ही मेरा एसपी से सेटिंग करवाया और वहीं मेरा मीटिंग हुआ वहां पे, और वहीं से मेरे को जो आशीर्वाद मिला है, इतना बड़ा काम मेरा तभी हुआ है। लेकिन सीएम क्यों करेगा यार? क्या बोल रहा है तू? क्यों करेगा कोई इतना सब? किसके लिए? पैसे के लिए और काय के लिए? इतना बड़ा भाई, एक छत्तीसगढ़ छोटा सा स्टेट, वहां तो कुछ अमाउंट भी देगा तो बहुत बड़ा होता है, और मैंने ऐसा छोटा मोटा अमाउंट तो दिया नहीं है। जाने का क्या अमाउंट कितना दिया है? 450 से 500 रुपए तक का दिया हुआ है उधर अमाउंट, तब जाके आशीर्वाद मिला बेटा, ऐसे थोड़ी काम चल रहा है। And as the Mahadev scam explodes, more and more political reactions that are coming in. The latest by Union Minister Smriti Irani, who has leveled this fresh attack against Chhattisgarh Chief Minister Bhupesh Baghel. मैं स्तब्ध हूँ कि भारतीय राजनीति में पहली बार छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी दुबई के माध्यम से हवाला ऑपरेटर्स के सहयोग से अपना चुनाव लड़ रही है। कल रात को जिस प्रकार से महादेव ऐप को चलाने वाले व्यक्ति ने खुलासा किया कि उन्होंने भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपए की घूस दी है, साथ ही उस व्यक्ति ने ये भी कहा है कि उसके पास साक्ष्य हैं, प्रमाण हैं। ये बात छत्तीसगढ़ का बच्चा बच्चा जानता है कि भूपेश बघेल की जो सहयोगी हैं सौम्या जी, वो वर्तमान में हिरासत में है एक और घोटाले के लिए, कोयला घोटाले के लिए। एक और पत्रकार का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो भूपेश बघेल जी से देवर परिवार के साथ उनके संबंधों के बारे में पूछ रहे हैं, और ये वो परिवार है जो शराब घोटाले में लिप्त है। तो जिनको भूपेश जी जानते हैं, भूपेश जी ने स्वीकार किया है, वो जानते हैं, वो प्रदेश में 2000 करोड़ का घोटाला शराब के माध्यम से कर चुके हैं। भूपेश बघेल जी जो नाटक कर रहे हैं कि नहीं जानता, उससे 500 करोड़ रुपए वसूल लिया है। इलेक्शन कमीशन के पास जा रहे हैं कांग्रेस के सभी दिल्ली के नेता लोग, क्या कहेंगे आप? क्या कहना? उनका कहना है कि बघेल जी को और पैसा यूज करने दो, दुबई से और पैसा आने दो बघेल जी के लिए। कहने मैं स्तब्ध हूँ कि भारतीय राजनीति में पहली बार छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी दुबई के माध्यम से हवाला ऑपरेटर्स के सहयोग से अपना चुनाव लड़ रही है। कल रात को जिस प्रकार से महादेव ऐप को चलाने वाले व्यक्ति ने खुलासा किया कि उन्होंने भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपए की घूस दी है, साथ ही उस व्यक्ति ने ये भी कहा है कि उसके पास साक्ष्य हैं, प्रमाण हैं। ये बात छत्तीसगढ़ का बच्चा बच्चा जानता है कि भूपेश बघेल की जो सहयोगी हैं सौम्या जी, वो वर्तमान में हिरासत में है एक और घोटाले के लिए, कोयला घोटाले के लिए। एक और पत्रकार का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो भूपेश बघेल जी से देवर परिवार के साथ उनके संबंधों के बारे में पूछ रहे हैं, और ये वो परिवार है जो शराब घोटाले में लिप्त है।
तो जो जिनको भूपेश जी जानते हैं, भूपेश जी ने स्वीकार किया है, वो जानते हैं। वो प्रदेश में 2000 करोड़ का घोटाला शराब के माध्यम से कर चुके हैं। भूपेश बघेल जी जो नाटक कर रहे हैं कि नहीं जानता, उससे 500 करोड़ रुपए वसूल लिया है। इलेक्शन कमीशन के पास जा रहे हैं कांग्रेस के सभी दिल्ली के नेता लोग, क्या कहेंगे आप? क्या कहना है? उनका कहना है कि बघेल जी को और पैसा यूज करने दो, दुबई से और पैसा आने दो बघेल जी के लिए, कहने जा रहे हैं क्या? मैं And that is the latest reaction coming in from Union Minister Smriti Irani, who has also gone on to question Chhattisgarh Chief Minister, where these grave allegations are staring at him. This, of course, is the man on your screens. His name is Shubham Soni, and he claims to be the owner of the Mahadev app. In this testimony, he's put out scathing details and documents, not just proving how he owns the Mahadev app, but also speaking about how he is stuck in this political trap, how it is with the political patronage that he was able to function out of Dubai, and the very fact that it was the chief minister who guided him to shift operations to Dubai. Let's once again listen in to those bombshell tapes of Shubham Soni, where he has spoken about the involvement of the Chhattisgarh chief minister. Listen in. तो वो बोले कि चलो अब मिलवाता हूँ। हम गए साथ में, वहाँ पर सीएम सर और बिट्टू भैया से हमारा मीटिंग हुआ। ये चीज़ का मैंने पूरा अपना लिख के दे दिया है उसमें रिटर्न स्टेटमेंट में कि क्या हुआ वहाँ, कैसे हुआ, क्या किस बात का डील हुआ, हर चीज़ का स्टेटमेंट मैंने दे दिया अपने रिटर्न डॉक्यूमेंट में। मैं सितंबर 2020 में दुबई आया। जैसा कि मेरा मीटिंग हुआ था सीएम साहब से, तो उन्होंने बोला था कि दुबई जाओ, अपना काम बढ़ाओ और वहाँ मीटिंग करो जाके। तो मैं गया और मीटिंग भी हुआ मेरा कई लोगों से। तो 2 लोग के साथ मेरा यहाँ बिजनेस भी सेट हो गया और अच्छा खासा काम भी बढ़ने लगा, सब कुछ ओके चलने लगा। जैसा सीएम साहब बोले थे सब बढ़िया हो गया। उसके बाद मुझे यहाँ 2 लोग मिले जो भी मेरे भिलाई के ही थे, सौरभ और रवि। तो वो लोग से मैं मिला, उनका यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम था। तो मैंने सोचा मैं भी काम चालू कर लेता हूँ, यहाँ अच्छा काम है ये चीज़। तो मैं उन्हें अपना पर्सनल एडवाइज़र रख लिया ये काम पे, कंस्ट्रक्शन के काम पे। अब इसके बाद हुआ ये कि फेमस ये लोग होने लगे महादेव बुक के नाम से। मैंने बुक खड़ा किया, मैंने बुक चालू किया, फेमस ये लोग हो रहे हैं। मैंने जीरो से चालू करके पूरा ओके आसमान तक पहुंचाया इस बुक को, और फेमस ये लोग हो रहे हैं। बताओ, ऐसा थोड़ी होता है। ठीक है, उनको आशीर्वाद नहीं था सीएम साहब का, इसलिए उनको वो फेमस हो गए। ये गलत बात है ना। इस चीज़ का बुरा लगता है बहुत ज़्यादा। एक बात बता रहा हूँ आपको, हमारे सीएम साहब का एक आदत है बघेल जी का कि वो कुछ दिन में पलटी मार देते हैं, और ऐसा मेरे साथ हुआ है। जब उन्होंने मुझे दुबई भेजा कि वहाँ जाके अपना काम सेटल करो, लोगों से मिलो, तो मैं गया, मिला भी और मेरा काम भी बहुत अच्छा सेट हो गया। उसके बाद हुआ ये कि कुछ दिन तक तो अच्छा चला, उसके बाद फिर प्रॉब्लम आने लगा मेरे काम पे। हमारे लोग अंदर होने लगे और छूट ही नहीं रहे वो लोग। मैं फ़ोन पे फ़ोन लगाया जाता हूँ, परेशान हो रहा हूँ। तो वापस मैंने वर्मा जी को फ़ोन लगाया, तो बोले कि चलो ठीक है, आप भिलाई आ जाओ, आपका मीटिंग कराते वापस से। अब मैं डर से पहुँच गया भिलाई कि लोग बाहर आ जाएंगे करके। तो वर्मा जी से मैं मिलने गया। वर्मा जी और गिरीश तिवारी मुझे मिले रायपुर एयरपोर्ट रोड पे। वो फिर लेके गए, वर्मा जी तो वहीं उतर गए, फिर गिरीश तिवारी मुझे लेके गए हमारे उस समय के एसपी हैं प्रशांत अग्रवाल जी, उनसे जाके मेरा मीटिंग कराया। अब मैं उनको अपना प्रॉब्लम पूरा शेयर किया, तब वो फ़ोन घुमाए और उसके बाद वो बात किए। लाउड स्पीकर में ही था फ़ोन, तो सीधा सीधा आवाज़ तो समझ आ ही रहा था, हमारे बघेल जी का ही आवाज़ था वो। तो पूरा प्रॉब्लम बताने के बाद उन्होंने वहाँ से ये बोला कि कैसे रे सोनी, तेरे को मैं वहाँ भेजा था दुबई काम सेट करने के लिए, तू तो मालिक बन के बैठ गया है, शेख बन गया क्या वहाँ का। अब मैं कुछ बोल ही नहीं पाया, एकदम मुंह उदास सा हो गया। तो मैंने यही बोला कि सर हम तो छोटे आदमी हैं,
आप बताओ क्या करना है, जैसा बोलोगे हम वैसा करेंगे। तो बस वो यही बोले कि ठीक है आप प्रशांत जी से बात कर लो, वो आपको बता देंगे क्या कैसे करना है। मैं बोला ठीक है सर। उसके बाद हम चल गए वहाँ से। उसके बाद प्रशांत अग्रवाल जी से तो डील हो गया था कि क्या कैसे देना है, और वो सब तो मैंने अपने रिटर्न स्टेटमेंट में भी बता दिया है। उसमें लिखा भी हुआ है सब कुछ रिटर्न स्टेटमेंट में, क्या मैंने किसको दिया है, कैसे दिया है, किसके सोर्स से दिया है, हर कुछ लिखा हुआ है। अब इतना पैसा देने के बाद भी मेरा काम बढ़ नहीं रहा है, अंदर हो रहे हैं लोग, तो क्या मतलब, पूरा फंस गया हूं मैं पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर यार। तो प्रशांत अग्रवाल जी के जब मेरा मीटिंग हुआ उसके बाद से मैंने अब तक 508 करोड़ रुपए दे चुका है। हमारे बघेल साहब, बिट्टू भैया और उनके जो लोग हैं उनको मैंने 508 करोड़ रुपए दिया है। उसके बाद भी मेरा काम नहीं हो रहा है, मेरे काम में डिस्टर्बेंस हो रहा है इतना ज़्यादा। मैं इतना परेशान हो गया हूँ इस सिस्टम से, अब क्या करूँ समझ नहीं आता है। ज़बरदस्ती का अब मेरे ऊपर ईडी का कार्रवाई चालू हो गया है। अब ऐसा कुछ होगा मेरे साथ, इतना पैसा देने के बाद भी, तो मैं क्या करूँ बताओ। अब बस मेरा यही लास्ट रिक्वेस्ट है हमारे इंडियन गवर्नमेंट से कि वो बस इतना हेल्प कर दे मेरी, कि मैं अब फंस चुका हूँ इस पॉलिटिकल सिस्टम में, मैं इससे बाहर निकलना चाहता हूँ। और आपको जैसा एविडेंस चाहिए, जैसा प्रूफ चाहिए, मैंने जैसे जैसे पैसा उनको दिया है, हर चीज़ का मेरे पास एविडेंस, प्रूफ, हर चीज़, एक एक चीज़ पड़ा हुआ है। तो मैं यही चाहता हूँ कि बस मेरा हेल्प कर दीजिए वहाँ से। मैं भी इंडिया जाना चाहता हूँ वापस। मुझे डर लगता है यहाँ से इंडिया जाने में। मैं वहाँ जाना चाहता हूँ वापस, वहीं रहना चाहता हूँ, लेकिन मेरा हेल्प कीजिए, यही रिक्वेस्ट है मेरे इंडियन गवर्नमेंट से यार। Cutting across to Shravan Sen, who is now joining us live on the broadcast. Shravan, the story is getting bigger with every passing hour. More and more political reactions that are coming in. The BJP that has clearly made this a poll blank, and all these allegations against the Chhattisgarh Chief Minister. Now, a lot that is dependent on what the ED has to say and how the investigation moves further. They've also sought Republic investigation tapes. What is the status? Well, in fact, let me first begin with the undercover operation by Republic TV, which the Enforcement Directorate calls it relevant to the ongoing probe, and that is the reason why we have been asked to hand over our tapes, and we've made an announcement that Republic TV will cooperate with the Enforcement Directorate, and very soon we will be handing over the tapes. In fact, this would be the entire tapes that would be handed over to the Enforcement Directorate. Now, that's as far as our undercover operation goes, in which at least two things have come across. One, with regards to the fact that it pretty much establishes the fact that there was a police protection that was provided to the panel operators as well as the owners of Mahadev, and even the police was actually involved in the illegal betting scam. The second is with regards to the political patronage. Remember, that only raises some questions for the Chief Minister's office, given the fact that Vinod Verma, political advisor of the Chhattisgarh Chief Minister, has also been named by a few characters who were stung in that undercover operation. Now, coming to the video that we have accessed, part 1 and part 2 of the video that we have put out in a short while from now, part 3 of this video will also be put out. Now, these videos that have been accessed by Republic TV, now we aren't vouching for this particular video, because remember, in this video you have a man who claims to be Shubham Soni. He in fact says that he is the owner of Mahadev. That is something that is perhaps something that the investigative agencies will have to find out, because as we understand from the charge sheet that has been filed by the Enforcement Directorate, accused number 1, that is Saurabh Chandrakar, 28-year-old, is the real owner of Mahadev, simply going by the investigation that has been carried out. So far, the Enforcement Directorate does not say that there is no link. In fact, they say in the remand application that Shubham Soni happens to be a part of the top management of Mahadev. So that becomes abundantly clear that he is a significant character. In the first part of the video, he basically makes a mention of a man called Verma, and he calls him Verma G, to which he says that
there were monthly payments that were being given to Vermaji, roughly about 10 lakh rupees per month. And in return of the money that he was actually giving, there was protection that was being provided to the panel operators so that the operations could be, could be smooth. There would be no hiccups. There would be no problems created by the police themselves, by the police. The second part of the video is actually stinging, I would say, because the Chief Minister has been named by Shubham Soni. Now, it's one thing that the Enforcement Directorate will have to probe, whether at all there is any iota of truth in this allegation that has been leveled by Shubham Soni. But he is an important character because the Enforcement Directorate says that the money that was seized on Thursday late night, this money was sent by none other than Shubham Soni, was sent to a man called Asim Das, and he says that he was the intermediary as far as connection with politicians in Chhattisgarh are concerned. So that is the reason why Shubham Soni becomes an important character and rather important in the scheme of things. Absolutely, Shravan, and like you're saying that Republic can't vouch for the authenticity of these tapes, which certainly does become a turning point given the gravitas of the kind of allegations that are being leveled against the Chhattisgarh Chief Minister, especially ahead of the polls. At this point, as we understand, they have also sought the Republic investigation tapes. Shubham Soni does become a very important character, but any response so far from Saurabh Chandrakar, because so far he has been the center point of the story. Well, he's after all the accused in this particular case. Whether at all he responds or not, that is for the Enforcement Directorate to look out for, because it is the Enforcement Directorate which has sent out summons to Saurabh Chandrakar. So far as I understand, from the investigation point of view, he hasn't really responded. In fact, he hasn't turned up. It turns what we are picking up from our sources is that Saurabh Chandrakar actually ran away from India, set up the entire operations in Dubai, because he did actually get a sniff. Did get a sniff of it, of the investigation that was being carried out. I'm given to understand, Suesha, we're getting in some more breaking news. Let's take that. All right, so this is the latest that is just coming in. Strong tremors have been felt across Delhi, NCR. We are still awaiting further details of the intensity of these tremors and how much did it measure on the Richter scale. Shravan, I believe, continues to stay with us. Shravan, we are still awaiting further details, but what more can you share at this point? We'll also try and put out those videos that do come in of people who've actually experienced those tremors. But is there any sense of where and how these tremors have emanated, and what is the intensity of this earthquake? All right, not too sure if Shravan is still with us. We'll try and connect with my colleagues as they're gathering more details on the tremors in the national capital that have been felt. This is across Delhi NCR. Lately, not very long ago, such tremors that were also experienced in the national capital post the two heavy quakes that Nepal had witnessed, where that was the very epicenter. And now we are again learning of strong tremors that have been felt in Delhi. We'll try and put out some of those videos as shared by those who have actually witnessed it, experienced it, and anything that does come up on social media. However, this is the preliminary information we are gathering. Strong tremors that have been felt across Delhi NCR. Those are the pictures on your screens, as some of those who also rushed out of their homes and offices as strong tremors were felt in the national capital once again. Not very long ago, given the tremors in Nepal,
that was the epicenter, which also resulted in tremors that were felt in Delhi and the national capital. This is the second quake in North India in 3 days itself. And of course, previously what happened in Nepal, where there was also a loss of lives, more than 100 people who died in that earthquake and several others who were injured. This is the second quake that has been felt in North India in just a span of 3 days. We are yet to understand what exactly is the epicenter and what is the intensity of these tremors that have been felt and experienced in the national capital. How much does it exactly measure on the Richter scale when it comes to the intensity of these tremors? But strong tremors that were felt in Delhi NCR just a short while ago. The second earthquake that has been felt in the last 3 days itself. Quake that has jolted Delhi NCR. And once again, you see those videos on your screens where many who had to rush out of their homes and offices after the quake was felt. With that, we slip into a very short commercial break. Also, a quick check of what's lined up on the other side. BJP has raised Republic sting to attack Bhupesh Baghel over corruption allegations. ED calls Republic stings as relevant to ongoing probe, writes to Republic seeking the sting tips. Hello, Moto. Motorola, India's best 5G smartphone brand. बंद करो कान बंद करो कभी भी फट सकता हूँ पटाखा जो लग रहा हूँ दिवाली है तैयार होकर आइए You know what could have been my biggest weakness? The fact that I didn't grow up wearing a lot of makeup turned out to be my biggest strength, because I could relate to the girl next door. I could relate to the girl who had regular skin with skin issues and went through public transport and would sweat all day and wanted makeup that would last through that sweating. People with absolutely who create products for celebrities don't get the requirement of the regular girl in India, which I really got because I was her. Catch Techno Phantom V Flip 5G presents Women Pioneers of India only on Republic TV. PC Chandra Jewelers presents Dhanteras Dhan Varsha offer. 25% off on jewelry making charges, 10% off on the value of diamonds and precious stones, 100 rupees off per gram of gold jewelry. Win attractive mega prizes. Offer valid till 11th November. Terms and conditions apply. Visit us today. PC Chandra Jewelers, a jewel of jewels. Helps beat sensitivity fast. Sensodyne Rapid Relief. India's first certified sustainable heart trolleys, made for nature and tested by nature. Uppercase, never ordinary. Hey Alexa, start the robo. Introducing Forbes Robo Vacuum Cleaner. Daily cleaning as easy as 1, 2, 3. It dry vacuums, even wet mops, and recharges automatically. Get the Forbes Robo Vacuum Cleaner from Eureka Forbes. In a journey that defines our dynamic future, Bharat embarks on a mission of shaping a new and determined nation. Witness a journey towards development where turning dreams into reality is not just a possibility, but a certainty. Join us on Bharat 2050, where unwavering commitment and self-reliance meet economically brilliant tomorrow.
कि अभी ये हवाला का जो काम हो रहा है ना, अब देखिए अब इनके पास पैसा कैसे आएगा? प्राइवेट जेट से अब इनके पास पैसा आएगा। प्राइवेट जेट से आएगा या तो हेलीकॉप्टर के थ्रू इनके पास पैसा आएगा। मैंने सुना था कि एयर एम्बुलेंस का भी इस्तेमाल किए, अभी नहीं, पहले किए। यहाँ की सरकार ने, यहाँ के मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ की जनता को बताना चाहिए कि दुबई में बैठे इस घोटाले के आरोपियों के साथ उनके क्या संबंध है। Mahadev bombshell tapes aired on Republic become the turning point in the multi-crore betting scam coverage. छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 508 करोड़ ले रहे हैं। किससे ले रहे हैं? एक क्रिमिनल एलिमेंट बैक्ड बेटिंग। Republic's sting in the alleged tapes become the biggest talking point in the Chhattisgarh election campaign. Bhupesh Baghel on the back foot, the corner chief minister calls the charges against him a conspiracy. Republic accesses videos of Shubham Soni in Dubai. These videos show parties organized by him in Dubai. 508 करोड़ रुपए का घोटाला। और जानते हैं वो असीम दास क्या बोलता है ईडी में कि ये मैं पैसा दुबई से लेकर के भूपेश बघेल को देने आया था, उसने छत्तीसगढ़ के चुनाव के लिए। Bhupesh Baghel is on the back foot. He continues to say these charges are a conspiracy. Also, the BJP now raising their entire sting to attack him over the corruption allegation. ED calls Republic stings as relevant to the ongoing probe. Right to Republic seeking the stings. A very good evening. You're watching Republic and I'm Deepthi Sachdeva. The one story that possibly many believe could change the course of the upcoming Chhattisgarh election is the Mahadev betting app scam. Though the app now, remember, has been banned by the centre, but there are some very, very serious allegations being levelled at Bhupesh Baghel, the sitting chief minister of the Congress. Now, he goes on to say that this is nothing but a witch hunt, but it's a political vendetta. But there are a lot of political trading charges that continue to gain a lot of traction in the middle of all this. You see this man on the right of your screens. Now, he apparently claims that he is confirming a direct link of the Chief Minister Bhupesh Baghel in the entire scam. This is a sting first aired on Republic. Sit back and watch what we have, what we unearth, and how has the Chief Minister responded so far. मैं शुभम सोनी बोल रहा हूँ और मैं महादेव बुक का ओनर हूँ। ये रहे उसके डॉक्यूमेंट्स। और ये मेरे आधार डॉक्यूमेंट्स हैं। ये मेरा आधार कार्ड है। ये मेरा पैन कार्ड है। और ये मेरा पासपोर्ट है। और महादेव बुक का ओनर मैं ही हूँ। ये आपको डॉक्यूमेंट दिखा दिया है मैंने। और 2021 में इसको मैंने चालू किया था। ये उसका पूरा डॉक्यूमेंट्स है। मेरा गैम्बलिंग का काम बहुत अच्छे से चलने लगा था फिर भिलाई में। और ये तो बहुत ही छोटे से काम चालू हुआ था। उसके बाद धीरे धीरे काम बढ़ता गया। अब काम बढ़ता गया। उसके बाद
हमारा लाइफस्टाइल भी चेंज होता गया क्योंकि पैसा बहुत आ रहे थे। तो सब नोटिस करने लगे, मेरे मतलब जो आसपास के लोग हैं वो लोग नोटिस करने लगे। धीरे धीरे बात ऊपर तक गया, तो फिर कंप्लेन वगैरह भी होने लगा। तो फिर ऐसा हुआ कि अब प्रोटेक्शन का जब बहुत ज़रूरत था हमको, क्योंकि लड़के भी अंदर हो रहे थे कुछ कुछ। तो उसके बाद मुझे पता चला वर्मा जी के बारे में, फिर मैंने उनसे मीटिंग की। फिर मुझे समझ लो हफ्ता वसूली वाला काम चालू हो गया। अब वर्मा जी से मैंने मीटिंग किया तो फिर उनसे बात हुआ और ये हुआ कि अब उनको मुझे हर महीना 10 लाख रुपए देना है। तो वो भी ओके हो गया। अब हर महीना मैंने उनको 10 लाख रुपए देना चालू कर दिया। तो काम अब बढ़िया चलने लगा मेरा, और पैसा भी कमा रहे थे हम, सब कुछ ओके था। उसके कुछ दिन बाद ऐसा हुआ कि हमारे लड़के फिर अंदर हुए, अब वो छूट ही नहीं रहे हैं वापस। तो मैंने वर्मा जी को कॉल लगाया कि सर अभी कैसे हो गया, आपको तो मैं पैसा भी दे रहा हूँ, उसके बाद भी लड़के अंदर हो रहे हैं और छूट भी नहीं रहे, बाहर निकल ही नहीं रहे वो लोग। तो वो बोले कि चलो करते हैं कुछ। फिर उसके बाद भी लड़के नहीं छूटे। फिर मैंने वापस कॉल किया उनको, तो वो बोले कि भैया लगता है अभी यहाँ से काम नहीं होगा, मैं चलो आपको किससे मिलवाता हूँ, ऐसा करके बोले हो। मैं बोला ठीक है सर मिलवा दीजिए, बस लड़के लोग को बाहर निकलवाना है। तो वो मेरे को लेके गए, साथ में लेके गए रायपुर। मैं बोला ठीक है मिलवा लो भैया, जिससे भी मिलवाना है। So this is a man called Shubham Soni, who, ladies and gentlemen, now claims that he is the owner of the entire app. Then he also is taking the name of the sitting chief minister of Chhattisgarh, Bhupesh Baghel, and he is the one who says that he was aware of everything that was going on. And he also says that, in fact, we have a reaction that is just coming in also from the Congress. Let's quickly listen. तो वो राजनीतिक पार्टियों का नहीं है छत्तीसगढ़ में या भारत में, वो है बीजेपी, केंद्र सरकार और ईडी का। ये एक विशेष गठबंधन है, उसको इलेक्शन डिपार्टमेंट कह लीजिए, कुछ और कह लीजिए। तीसरा हमने बिंदु आपको बताया था कि ये बहुत अजीबोगरीब वाकया है कि पहला कोतवाल जो 1.5 साल से इन्वेस्टिगेट कर रहा है, जिसने जो मैंने आपको चौंका देने वाले आंकड़े दिए थे, लगभग 72 केस रजिस्टर किए हैं, 450 लोगों को गिरफ्तार किया है, और पूरा मैंने आपको चार्ट दी थी, 191 लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन 850, एटीएम कार्ड इत्यादि इत्यादि सबको पकड़ा है। उस पहले कोतवाल के 1.5 साल के अथक परिश्रम को भुलाकर एक दूसरा कोतवाल चुनाव के कुछ दिन पहले आ जाता, यानी ईडी। अब रोचक बात यह है कि प्रदेश सरकार द्वारा शुरुआत की गई जो जांच थी वो 30 मार्च 22 की है। ये तारीख आपको मैंने बताई थी, बड़ी महत्वपूर्ण तारीख है। और ईडी ने उसको विदेश में शुरू किया है मुश्किल से 6 महीने पहले। और उस 6 महीने पहले शुरू करने के बाद अभी तक कुछ उसमें तेजी नहीं पकड़ी जब तक कि चुनाव नहीं आया छत्तीसगढ़ में। अब हर चीज़ हो रही है छत्तीसगढ़ के चुनाव के 4 दिन पहले, 3 दिन पहले, 5 दिन पहले। एक व्यक्ति जो कुरियर हैं वो बैठकर एक वक्तव्य देते हैं जिसके विषय में हमने आपको अवगत करवाया शनिवार को। अब एक दूसरे व्यक्ति जो मैनेजर कह रहे थे अभी तक अपने को, वो चुनाव के 4 दिन पहले मालिक बताते हैं अपने आप को, और जो मन में आता है वो बोल देते हैं। तो जाहिर है कि ये सब चीज़ें राजनीतिक द्वेष निराधार तरीके से की जा रही हैं। लेकिन जो विशेष बिंदु जिसके लिए हमने आपको आज तकलीफ़ दी, मैं पहले उससे आपको अवगत करवा दूं। वो बिंदु ये है कि 24 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री बघेल जी ने बहुत विस्तार से व्यापक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। ये तारीखें महत्वपूर्ण हैं, यहीं की थी, इसी मंच से की थी, और आपको पूरा चिट्ठा खोल के बताया था कि ये हुआ महादेव ऐप में, इस प्रकार से जांच हुई, इतना जब्त हुआ, इतने लोग गिरफ्तार हुए, इतने केस हुए। ये कितने महीने हो गए? 3 महीने से ज़्यादा की बात है। उसके बाद केंद्र सरकार ने किसी रूप से इसको बैन नहीं किया, और किसी रूप से जो आज कह रहे हैं वो तब से अभी तक भी नहीं कहा, यानी अगस्त के बाद भी नहीं कहा। उसके 1 हफ्ते बाद माननीय मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से बैन की मांग भी की थी 30 अगस्त को।
24 अगस्त को प्रेस वार्ता थी, 30 अगस्त को बैन की मांग की और रायपुर में की थी। 3 नवंबर को चुनाव के एक हफ्ते पहले, जैसा कि हर चुनाव में आप देखते हैं होता जा रहा है, साझेदारी के पार्टनर ईडी ने ये आरोप लगाए और मुख्यमंत्री का नाम लिया। 4 तारीख को हमने प्रेस वार्ता की। अब 4 तारीख को ही हमने माननीय चुनाव आयोग से मांग की, क्योंकि एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा जो मैंने आपको जिक्र किया था, लेकिन उसको जरा विस्तार से मैं आपको बता दूं। बाकी सब चीज़ों के अलावा, राजनीतिक पक्ष, कानूनी पक्ष के अलावा एक अत्यंत महत्वपूर्ण पक्ष है जो पूरी तरह से संविधान के अंतर्गत चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में पड़ता है। वो है जिसको हम लेवल प्लेइंग फील्ड कहते हैं, एक समतल ज़मीन जिसके बिना चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र नहीं हो सकते। अगर चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र नहीं हो सकते तो गणतंत्र और लोकतंत्र को खतरा होता है, और इसलिए चुनाव की वो हर प्रक्रिया जो उसकी निष्पक्षता और स्वतंत्रता को कम करती है, उसको मूल ढांचे, बेसिक स्ट्रक्चर का एक अभिन्न अंग माना गया है। ये इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण के निर्णय से 1975 से आज तक लगभग 50 साल होने वाले हैं। ये एक मूल सिद्धांत है कानून का। यानी आप अगर कुछ ऐसी चीज़ करते हैं जिससे ज़मीन समतल न रहे, अनइवन हो, वन साइडेड हो, लॉपसाइडेड हो, तो वो सीधा इफेक्ट करता है बेसिक स्ट्रक्चर को। आप जानते हैं कि संविधान से भी ज़्यादा व्यापक चीज़ है। बेसिक स्ट्रक्चर एक ऐसी विशेष और विचित्र डॉक्ट्रिन है जो कहती है एक वाक्य में कि संविधान संशोधन भी असंवैधानिक हो सकता है। तो हम इसलिए आपके सामने ये कह रहे हैं कि आज जो हो रहा है, खुली छूट दे रखी है ईडी को। So you heard that detailed response that's coming in from the Congress that plays the victim card. It again underscores the fact that this is coming so close to the upcoming elections in Chhattisgarh, and the Congress says all this is politically motivated, not getting into the merits of the case, not speaking about whether 508 crores, as is being alleged by the Enforcement Directorate, is actually something that has gone into the hands of the Chief Minister. Remember, that is the allegation being made by the Enforcement Directorate. But even as that issue continues to gain a lot of momentum, by the moment the BJP has tried to use this as a poll plank, the BJP says that the Chief Minister of the state needs to respond to these very, very serious allegations. 1.5 साल से वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। उन्होंने एक भी लेटर नहीं लिखा है, उन्होंने कभी भी एक भी मांग नहीं किया कि ये आप बंद करें। इसीलिए तो उनका 1.5 साल का इन्वेस्टिगेशन का कारण ही तो उनको 508 करोड़ रुपए मिले हैं इनसे। उन्होंने किसी भी एजेंसी से किसी भी तरह हमें कोई नोटिफिकेशन नहीं भेजा है इन 1.5 सालों में। पहली बार अगर सरकार को एक नोटिफिकेशन मिला है इन इलीगल ऐप्स के बारे में, वो कल सुबह एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने भेजा है, और हमने कल दोपहर को उस सभी 22 ऐप जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने लिस्ट भेजे थे उनको हमने बैन कर दिया है। और ये भी कह रहे हैं कि जीएसटी 28% जीएसटी मिलती थी इसलिए प्रतिबंधित नहीं किया। आप अभी तक तो समझ गए होंगे, सभी लोग समझ गए होंगे कि कांग्रेस की राजनीति में झूठ और झूठ होना बहुत ही एक नॉर्मल सा फिनोमिनन है। यहाँ पर भी बघेल जी झूठ बोल रहे हैं, वो भी जानते हैं, सब जानते हैं, क्योंकि 1.5 साल से वो एक इन्वेस्टिगेशन को खींच रहे हैं जो 6 मिनट में पता कर सकते थे कि ये एक बेटिंग ऐप है, और 6 मिनट में वो लेटर लिख सकते थे कि देखिए इसको बैन कीजिए। सीधे सीधे उन पर आरोप लगाया 508 करोड़ रुपए ले रहे हैं, दुबई से वीडियो जारी हुआ है, इसके बाद क्या उन पर शिकंजा कसेगा? तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और एजेंसीज तय करेंगे। मेरा काम यही था, हमारे सरकार और हमारे मिनिस्ट्री का काम था कि ये इलीगल ऐप्स जो क्रिमिनल ऐप्स हैं उनको बंद करें। हमने बंद कर दिया। रिपब्लिक ने स्टिंग भी किया है, अभिषेक पल्लव जो एसपी हैं उन्होंने भी कबूला है, कई और लोग इस स्टिंग में फंसे हैं, तो इनके खिलाफ क्या सख्त कार्रवाई के निर्देश? मेरा स्पष्ट कहना है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पूरा का पूरा बघेल के सिस्टम, भूपेश बघेल जी के सिस्टम इनके पीछे थे, इसीलिए उनको 508 करोड़ रुपए मिले, इसीलिए 1.5 साल से उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया उनके साथ। छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, राज्य के मुख्यमंत्री पर सीधे आरोप लग रहा है 500 करोड़ का घूस। ये बहुत बड़ा गंभीर मामला है और निश्चित रूप से
छत्तीसगढ़ की जनता और देश की जनता देख रही है। और पहले से ही कांग्रेस हमेशा से करप्शन का पर्यायवाची शब्द अगर कोई पार्टी है तो कांग्रेस पार्टी है। लेकिन कांग्रेस कह रही है तो ये ईडी सीबीआई का गलत उपयोग किया जा रहा है, उनको बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है, बदले की भावना है। जिनका सामने टेलीविजन पर दिख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है कि कहाँ कार्रवाई होनी चाहिए और कहाँ नहीं होनी चाहिए। आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ में कहीं ना कहीं बघेल सरकार गिर जाएगी, आपको लग रहा है? वो तो जनता देखे, अब देख ही रही है। तो और जनता कैसी सरकार चाहती है, और सब लोग देश के अंदर डबल इंजन चाहते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए। ये आरोप ही नहीं है, प्रमाणित दस्तावेज के साथ उनके सामने साक्ष्य पेश किए गए। 509 करोड़ का लेन देन का प्रमाण हुआ, ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड मिले हैं, 5 करोड़ का राशि और 7 करोड़ की राशि जब्त किए गए हैं। दुबई से कनेक्शन मिला है। दुबई के कनेक्शन के साथ इनके सचिवालय के 3 अधिकारियों का सीधा महादेव ऐप के जो संचालक हैं उनके साथ पैसे का ट्रांजैक्शन का प्रमाण ईडी ने प्रस्तुत किया है। इसके बाद क्या बचता है मुझे समझ में नहीं आता भूपेश बघेल का। ये अब कोई उसको रंगे हाथ कोई उसके घर में पकड़ेगा क्या? इससे ज़्यादा प्रमाण। लेकिन देखिए मुख्यमंत्री जी तो ये कह रहे हैं कि ये सब आरोप है, इनको उनकी छवि धूमिल करने के लिए ये सब आरोप है भारतीय जनता पार्टी द्वारा। बताइए, महादेव ऐप में इतना बड़ा खुलासा पीएमएलए में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में हुआ है, तो क्या आसमान खा गया पैसा? पूरा संरक्षण प्राप्त है छत्तीसगढ़ में ऐसे अपराधी गतिविधियों का। सट्टा जुआ और इस अपराध में इलेक्शन के लिए फंडिंग कर रहे हैं। 509 करोड़ चुनाव के लिए भेजा है भूपेश बघेल के लिए। बल्कि आपको पता ही होगा कि हमने भी सर एक स्टिंग किया जिसमें हमें पता चला है कि काफ़ी पुलिस वाले भी शायद समझ लेते, उसमें ईडी ने भी अरेस्ट किया उसके बाद, और उसके जो लिंक्स है वो मुख्यमंत्री के ऑफिस तक मतलब जा रहे हैं। ऑफिस तक मिले हैं, 3 नाम प्रकट रूप से आए हैं और ये तीनों लोगों की संलिप्तता साफ दिख रही है और है। और ये अकेला एक प्रकार का महादेव ऐप की बात नहीं है। हिंदुस्तान में और कहीं ऐसा हो सकता है क्या? सरकारी खजाना का लूट इतना खुलेआम हो कि बिना हॉलमार्क के 40% शराब को बिना टैक्स पटाए सरकारी शराब दुकान से बेची जाए। क्या कोयले में इससे ज़्यादा भ्रष्टाचार दुनिया में कहीं हो सकता है? लेकिन सर मैं महादेव में ही ज़रा फोकस रखूँगा सर। एक और मतलब अब खुलासा आया है, ये ईडी की रिमांड कॉपी में भी आया है और अब एक वीडियो भी इमर्ज आ रही है कि जिसमें एक इंसान है शुभम सोनी, वो अपने आप को महादेव का ओनर बुलाता है, अपने आप को महादेव का ओनर बोलता है, और वो बोलता था कि वो असीम दास के द्वारा चीफ मिनिस्टर ऑफिस में कोई वर्मा जी है उनके द्वारा पैसे भेजता था। अब ये कितनी सच्चाई है? ये असीम के पास ही तो 5.37 करोड़ रुपए के पैसे जब्त हुए। वही असीम दास है जिसने स्वीकार किया बघेल नामक व्यक्ति को मैं पैसा देता हूँ। वही असीम दास है जिसके दुबई के कनेक्शन मिले हैं। ये सारे प्रमाण के लिंक मिलते जा रहे हैं और प्रमाण के साथ ईडी ने ऐसी कार्रवाई नहीं की, पूरे पुख्ता जानकारी के साथ पूरे दस्तावेज के साथ किया है और उसके बाद भी बेशर्मी की हद भूपेश बघेल ईडी पे आरोप लगा रहे हैं। इसका अंत आप कहाँ तक देखते हैं? अंत होगा, न्यायालय में जाएंगे और न्यायालय में कार्रवाई होगी और सजा होगी। ये घोटालों की सरकार अभी अभी महादेव ऐप, इन्होंने महादेव को भी नहीं छोड़ा। 6000 करोड़ रुपए का घोटाला। किस बात का घोटाला? सत्ता में आने के लिए सट्टे का घोटाला। 508 करोड़ रुपए का घोटाला। और जानते हैं वो असीम दास क्या बोलता है ईडी में कि ये मैं पैसा दुबई से लेकर के भूपेश बघेल को देने आया था, उसने छत्तीसगढ़ के चुनाव के लिए। We are into a break right now. On the other side, Republic accesses videos of Shubham Soni in Dubai. These videos show parties organized by him. Also, the ED calls Republic stings as relevant to the ongoing probe. Right to Republic seeking the stings. बंद करो कान बंद करो, कभी भी फट सकता हूं। पटाखा जो लग रहा हूं। दिवाली है, तैयार होकर आइए।
मेहमान आ गए, इनका फैशन जो है खत्म नहीं हो रहा। मिश्रा जी, कुर्ता जच रहा है। थैंक यू मैडम सर। 42 की फिटिंग, वो भी सिर्फ 599 में। आपको कैसे पता? पता तो ये भी है कि स्मार्ट बाजार से खरीदा है। टैग। खाना खा लें? चलिए। आ गया फेस्टिवल सेल 1 से 15 नवंबर। दिवाली फैशन सबसे अच्छे दाम में चाहिए? स्मार्ट बाजार चलिए। ये सब क्या है? शनाया और शिवा। शिवा। अर्फी। सुना है तुम दोनों ने घर बनाया है। हाँ, पिंक वाला। घर की नींव में क्या लगता है? हमारा प्यार। प्यार नहीं, कमजोर TMT का वार होगा। रॉकेट सिंह। लेकिन हमने तो एकदम सॉलिड TMT बार लगाया है। मतलब रुंगटा स्टील TMT बार। जंग से न माने हार, रुंगटा स्टील TMT बार है बिल्कुल रेडी। This Diwali, New Hawkins, good old friends, fun times again. हूबहू तू मुझसा है, रंग भरा एक किस्सा है। तू वो यार है, तू ही त्योहार है। हर कार में है त्योहार। मारुति सुजुकी अरीना, फाइंड योर मैच। Sarah, this is your space. Play it your way. With the versatile range of sanitary ware, faucets and tiles by Sarah. Hello, Moto. Motorola, India's best 5G smartphone brand, brings you latest news updates from across the country only on Republic TV. Hello, Moto. Motorola, India's best 5G smartphone brand. The Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal earlier has chaired a high-level meeting with cabinet ministers and officials as the air quality has dipped further in the city. At the end of this meeting, certain measures have been announced. The odd even is back starting November the 13th, and also schools continue to remain shut for the next 1 week. The BJP has slammed the hour for Delhi's severe pollution, saying the national capital has become a gas chamber because of the Chief Minister and the Aam Aadmi Party's quote-unquote polluted politics. दिल्ली की आबो हवा आज फिर से जहरीली है। फिर से एक बार लगातार दिल्ली का AQI सीवियर कैटेगरी में है। फिर से एक बार दिल्ली का AQI कहीं 500, कहीं 600, कहीं 700 पार हो चुका है और कहीं पर तो 999 तक जा रहा है। उसके आगे तो मीटर बढ़ता भी नहीं है। दिल्ली का AQI जो है वो 5 सालों में सबसे खराब स्थिति में आप पहुंचा है। ये इसलिए हुआ है, दिल्ली आज गैस चेंबर इसलिए बनी है क्योंकि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने पिछले 8-9 वर्षों में केवल प्रदूषित राजनीति की है, दोषारोपण की राजनीति की है। We head into a quick break. Right now on the other side, Bhupesh Baghel is on the back foot. The corner chief minister calls the charges against him a conspiracy. Hello, Moto. Motorola, India's best 5G smartphone brand. अरे बंद करो, कान बंद करो, कभी भी फट सकता हूँ, पटाखा जो लग रहा हूँ। दिवाली है, तैयार होकर आइए। You are the one. Unmatched, unequaled, unbeatable. LG OLED Evo, the one and only. जब मां सरयू के घाटों को दिव्य दीपमालाओं से सजाया जाए, वो दीपोत्सव है।
दीपों की असंख्य ज्योतियां जब अवधपुरी सजाए वो दीपोत्सव है। जब श्री राम की जय जयकार से संपूर्ण अयोध्या धाम गूंजित हो उठे और हर मन मंत्रमुग्ध हो जाए वो दीपोत्सव है। 2017 से शुरू हुआ दीपोत्सव हर साल एक नया कीर्तिमान गढ़ रहा है। विकास पथ पर अग्रसर योगी सरकार जहां एक तरफ अयोध्या को आधुनिक बना रही है, वहीं दूसरी तरफ सनातन परंपराओं को संजोने का कार्य कर रही है। दिव्य दीपोत्सव से दैदीप्यमान है श्री राम जन्मभूमि। विकास के प्रकाश से प्रकाशमान है श्री राम जन्मभूमि। आइए आस्था के असंख्य दीपों से सुसज्जित इस दीपोत्सव के साक्षी बने और प्रभु श्री राम का अभिनंदन करें। श्री राम को नमन है, श्री राम का वंदन है। This Diwali, New Hawkins, good old friends, fun times again. Hello, Moto. Motorola, India's best 5G smartphone brand. Following the success of its inaugural edition last year, the popular Autumn Festival returned in Delhi from 3rd to 4th November 2023. Organised by Nagaland Tourism in association with the Union Ministry of Tourism, this festival showcased the essence of the popular Hornbill Festival to the people of the capital. We aim to provide an immersive experience for those unable to visit Nagaland, while also deepening appreciation of those who can. It's a win-win for all, said Temjanim Nalong, Nagaland Minister of Tourism and Higher Education. The Hornbill Festival, scheduled for December 1 to 10th, 2023 in Kisama Heritage Village, showcases Naga tribal culture. It's a great way to experience Nagaland's diversity. Hello, Moto. Motorola, India's best 5G smartphone brand. जो आएगी फिर वो आना भी चालू। हाँ तो होगा ना, 17 तारीख तक सब लोग मजा लें। सर तो क्या रहेगी रणनीति, क्या ये इम्पैक्ट डालेगा सर? इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि लगातार मैं बोल रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ रही, ईडी आईटी के माध्यम से लड़ रहे हैं। बंद करो कान बंद करो, कभी भी फट सकता हूँ। पटाखा जो लग रहा हूँ। दिवाली है, तैयार होकर आइए। वोल्टास बैको ये 30 दिन तक फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को फ्रेश रखता है। और तुमने मान लिया। वैसे भी 30 दिन की सब्जियां कौन खाता है? तू। वोल्टास बेको डुअल कूलिंग रेफ्रिजरेटर की स्टोर फ्रेश टेक्नोलॉजी से सब्जियां 30 दिन तक फ्रेश रह सकती हैं। वोल्टास बेको, टेस्टेड बाय रियल मॉम्स। हाय गाइस, हैप्पी दिवाली। चलो दीप जला के हर घर सजाए रे, झिलमिल चेहरों पे खुशी खुशी चहके, रिश्ते होंगे रोशन जगमगाए रे। ओ प्रिय रे हर खरीदारी के साथ एक गोल्ड कॉइन मुफ्त। कल्याण ज्वेलर्स। लेकिन हमने तो एकदम सॉलिड टीएमटी बार लगाया है। मतलब रुंगटा स्टील टीएमटी बार, जंग से न माने हार और मजबूती बेशुमार। रुंगटा स्टील टीएमटी बार है बिल्कुल रेडी। इस दिवाली हेल्दी पकवानों से सजेगा डाइनिंग टेबल। जब गगना 4.2 लीटर डिजिटल एयर फ्रायर मिलेगा सिर्फ ₹4,999 में। आ गया स्मार्ट बाजार फेस्टिवल सेल 1 से 15 नवंबर। फेस्टिवल को बेस्टिवल बनाइए, स्मार्ट बाजार चलिए। With 49 studios, Woodfill has revolutionized the Indian modular kitchen industry by bringing the best of Europe for Indian homes. Visit the nearest store for a new design and a quote.
Hello, Moto. Motorola, India's best 5G smartphone brand, brings you the latest breaking news updates from across the country only on Republic TV. Viewers, we're live and breaking. I'm Shivangi Shukla getting you the latest, and our top focus remains on Mahadev betting scam. Sensational, shocking facts are emerging, and CM Baghel, the CM of Chhattisgarh, is completely on a back foot. We'll get you all the details of that, but first the headlines we're tracking at this moment. Mahadev bombshell tapes aired on Republic becomes the turning point in multi-crore betting scam coverage. छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 508 करोड़ ले रहे हैं। किससे ले रहे हैं? एक क्रिमिनल एलिमेंट बैक्ड बेटिंग। Republic's sting and alleged tapes becomes the biggest talking point in Chhattisgarh election campaign. Bhupesh Baghel on the back foot, cornered CM calls charges against him a conspiracy. Republic accesses of videos of Shubham Soni in Dubai. Video shows parties organized by Soni in Dubai. 508 करोड़ रुपए का घोटाला। और जानते हैं वो असीम दास क्या बोलता है ईडी में कि ये मैं पैसा दुबई से लेकर के भूपेश बघेल को देने आया था, उसने छत्तीसगढ़ के चुनाव के लिए। BJP raises Republic sting to attack Bhupesh Baghel over corruption charges. ED calls Republic stings as relevant to ongoing probe. Writes to Republic seeking the stings. Viewers, let's go to the top story we're tracking right now. And what we have been telling you all about and giving you the top details of is a Mahadev betting scam for the past few days. And Republic investigation in this scam has completely exploded with the emergence of tapes, these bombshell tapes of a person who claims to be the key aide of Saurabh Chandrakar and calls himself the owner of the Mahadev app. This alleged testimony has given a fresh twist in the Mahadev betting scam, and that is what we are seeing right now, viewers. Mega disclosures have come in at the same time as Republic has exposed the key players in the Mahadev scam. What we are seeing at the same time is what the Congress is saying. The Congress alleging political vendetta, but the BJP is saying that the Congress is setting new records when it comes to corruption. मैं शुभम सोनी बोल रहा हूँ और मैं महादेव बुक का ओनर हूँ। ये रहे उसके डॉक्यूमेंट्स। और ये मेरे आधार डॉक्यूमेंट्स हैं। ये मेरा आधार कार्ड है। ये मेरा पैन कार्ड है। और ये मेरा पासपोर्ट है। और महादेव बुक का ओनर मैं ही हूँ। ये आपको डॉक्यूमेंट दिखा दिया मैंने। और 2021 में इसको मैंने चालू किया था। ये उसका पूरा डॉक्यूमेंट्स है। मेरा गैम्बलिंग का काम बहुत अच्छे से चलने लगा था फिर भिलाई में। और ये तो बहुत ही छोटे से काम चालू हुआ था। उसके बाद धीरे धीरे काम बढ़ता गया। अब काम बढ़ता गया। उसके बाद हमारा लाइफस्टाइल भी चेंज होता गया क्योंकि पैसा बहुत आ रहे थे। तो सब नोटिस करने लगे। मेरे मतलब जो आसपास के लोग हैं वो लोग नोटिस करने लगे। धीरे धीरे बात ऊपर तक गया।
तो फिर कंप्लेन वगैरह भी होने लगा। तो फिर ऐसा हुआ कि अब प्रोटेक्शन का जब बहुत ज़रूरत था हमको, क्योंकि लड़के भी अंदर हो रहे थे कुछ कुछ। तो उसके बाद मुझे पता चला वर्मा जी के बारे में, फिर मैंने उनसे मीटिंग की। फिर मुझे समझ लो हफ्ता वसूली वाला काम चालू हो गया। अब वर्मा जी से मैंने मीटिंग किया तो फिर उनसे बात हुआ और ये हुआ कि अब उनको मुझे हर महीना 10 लाख रुपए देना है। तो वो भी ओके हो गया। अब हर महीना मैंने उनको 10 लाख रुपए देना चालू कर दिया। तो काम अब बढ़िया चलने लगा मेरा, और पैसा भी कमा रहे थे हम, सब कुछ ओके था। उसके कुछ दिन बाद ऐसा हुआ कि हमारे लड़के फिर अंदर हुए। अब वो छूट ही नहीं रहे हैं वापस। तो मैंने वर्मा जी को कॉल लगाया कि सर अभी कैसे हो गया, आपको तो मैं पैसा भी दे रहा हूँ, उसके बाद भी लड़के अंदर हो रहे हैं और छूट भी नहीं रहे, बाहर निकल ही नहीं रहे वो लोग। तो वो बोले कि चलो करते हैं कुछ। फिर उसके बाद भी लड़के नहीं छूटे। फिर मैंने वापस कॉल किया उनको, तो वो बोले कि भैया लगता है अभी यहाँ से काम नहीं होगा, मैं चलो आपको किससे मिलवाता हूँ, ऐसा करके बोले हो। मैं बोला ठीक है सर मिलवा दीजिए, बस लड़के लोग को बाहर निकलवाना है। तो वो मेरे को लेके गए, साथ में लेके गए रायपुर। मैं बोला ठीक है मिलवा लो भैया जिससे भी मिलवाना है। And viewers, what you just saw right now was just the part one of the Mahadev bombshell tapes, in which a man, he's claiming to be the Mahadev app owner, Shubham Soni. Now, Shubham Soni has implicated CM's office. Now, what you will watch next is the part two of the tape, in which he names CM Bhupesh Baghel and claims that CM told him to start his operations in Dubai. Listen it. वो बोले कि चलो अब मिलवाता हूँ। हम गए साथ में, वहाँ पर सीएम सर और बिट्टू भैया से हमारा मीटिंग हुआ। ये चीज़ का मैंने पूरा अपना लिख के दे दिया है उसमें रिटर्न स्टेटमेंट में कि क्या हुआ वहाँ, कैसे हुआ, क्या किस बात का डील हुआ, हर चीज़ का स्टेटमेंट मैंने दे दिया अपने रिटर्न डॉक्यूमेंट में। मैं सितंबर 2020 में दुबई आया। जैसा कि मेरा मीटिंग हुआ था सीएम साहब से, तो उन्होंने बोला था कि दुबई जाओ, अपना काम बढ़ाओ और वहाँ मीटिंग करो जाके। तो मैं गया और मीटिंग भी हुआ मेरा कई लोगों से। तो 2 लोग के साथ मेरा यहाँ बिज़नेस भी सेट हो गया और अच्छा खासा काम भी बढ़ने लगा, सब कुछ ओके चलने लगा। जैसा सीएम साहब बोले थे सब बढ़िया हो गया। उसके बाद मुझे यहाँ 2 लोग मिले जो मेरे भिलाई के ही थे, सौरभ और रवि। तो वो लोग से मैं मिला, उनका यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम था। तो मैंने सोचा मैं भी काम चालू कर लेता हूँ, यहाँ अच्छा काम है ये चीज़। तो मैं उन्हें अपना पर्सनल एडवाइज़र रख लिया ये काम पे, कंस्ट्रक्शन के काम पे। अब इसके बाद हुआ ये कि फेमस ये लोग होने लगे महादेव बुक के नाम से। मैंने बुक खड़ा किया, मैंने बुक चालू किया, फेमस ये लोग हो रहे हैं। मैंने जीरो से चालू करके पूरा ओके आसमान तक पहुँचाया इस बुक को, और फेमस ये लोग हो रहे हैं। बताओ ऐसा थोड़ी होता है। ठीक है उनको आशीर्वाद नहीं था सीएम साहब का, इसलिए उनको वो फेमस हो गए। ये गलत बात है ना, इस चीज़ का बुरा लगता है बहुत ज़्यादा। एक बात बता रहा हूँ आपको, हमारे सीएम साहब का एक आदत है बघेल जी का कि वो कुछ दिन में पलटी मार देते हैं, और ऐसा मेरे साथ हुआ है। जब उन्होंने मुझे दुबई भेजा कि वहाँ जाके अपना काम सेटल करो, लोगों से मिलो, तो मैं गया, मिला भी और मेरा काम भी बहुत अच्छा सेट हो गया। उसके बाद हुआ ये कि कुछ दिन तक तो अच्छा चला, उसके बाद फिर प्रॉब्लम आने लगा मेरे काम पे। हमारे लोग अंदर होने लगे और छूट ही नहीं रहे वो लोग। मैं फ़ोन पे फ़ोन लगाया जाता हूँ, परेशान हो रहा हूँ। तो वापस मैंने वर्मा जी को फ़ोन लगाया, तो बोले कि चलो ठीक है आप भिलाई आ जाओ, आपका मीटिंग कराते वापस से। अब मैं डर से पहुंच गया भिलाई कि लोग बाहर आ जाएंगे करके। तो वर्मा जी से मैं मिलने गया। वर्मा जी और गिरीश तिवारी मुझे मिले रायपुर एयरपोर्ट रोड पे। वो फिर लेके गए, वर्मा जी तो वहीं उतर गए, फिर गिरीश तिवारी मुझे लेके गए। हमारे उस समय के एसपी हैं प्रशांत अग्रवाल जी, उनसे जाके मेरा मीटिंग कराया। अब मैं उनको अपना प्रॉब्लम पूरा शेयर किया, तब वो फ़ोन घुमाए और उसके बाद वो बात किए। लाउड स्पीकर में ही था फ़ोन, तो सीधा आवाज़ तो समझ आ ही रहा था, हमारे बघेल जी का ही आवाज़ था वो।
तो पूरा प्रॉब्लम बताने के बाद उन्होंने वहाँ से ये बोला कि कैसे रे सोनी, तेरे को मैं वहाँ भेजा था दुबई काम सेट करने के लिए, तू तो मालिक बन के बैठ गया है, शेख बन गया क्या वहाँ का। अब मैं कुछ बोल ही नहीं पाया, एकदम मुंह उदास सा हो गया। तो मैंने यही बोला कि सर हम तो छोटे आदमी हैं, आप बताओ क्या करना है, जैसा बोलोगे हम वैसा करेंगे। तो बस वो यही बोले कि ठीक है आप प्रशांत जी से बात कर लो, वो आपको बता देंगे क्या कैसे करना है। मैं बोला ठीक है सर। उसके बाद हम चल गए वहाँ से। उसके बाद प्रशांत अग्रवाल जी से तो डील हो गया था कि क्या कैसे देना है, और वो सब तो मैंने अपने रिटर्न स्टेटमेंट में भी बता दिया है। उसमें लिखा भी हुआ है सब कुछ रिटर्न स्टेटमेंट में, क्या मैंने किसको दिया है, कैसे दिया है, किसके सोर्स से दिया है, हर कुछ लिखा हुआ है। अब इतना पैसा देने के बाद भी मेरा काम बढ़ नहीं रहा है, अंदर हो रहे हैं लोग, तो क्या मतलब, पूरा फंस गया हूं मैं पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर यार। तो प्रशांत अग्रवाल जी के जब मेरा मीटिंग हुआ उसके बाद से मैंने अब तक 508 करोड़ रुपए दे चुका है। हमारे बघेल साहब, बिट्टू भैया और उनके जो लोग हैं उनको मैंने 508 करोड़ रुपए दिया है। उसके बाद भी मेरा काम नहीं हो रहा है, मेरे काम में डिस्टर्बेंस हो रहा है इतना ज़्यादा। मैं इतना परेशान हो गया हूँ इस सिस्टम से, अब क्या करूँ समझ नहीं आता है। ज़बरदस्ती का मेरे ऊपर ईडी का कार्रवाई चालू हो गया है। अब ऐसा ऐसा कुछ होगा मेरे साथ, इतना पैसा देने के बाद भी, तो मैं क्या करूँ बताओ। अब बस मेरा यही लास्ट रिक्वेस्ट है हमारे इंडियन गवर्नमेंट से कि वो बस इतना हेल्प कर दे मेरी, कि मैं अब फंस चुका हूँ इस पॉलिटिकल सिस्टम में, मैं इससे बाहर निकलना चाहता हूँ। और आपको जैसा एविडेंस चाहिए, जैसा प्रूफ चाहिए, मैंने जैसे जैसा पैसा उनको दिया है, हर चीज़ का मेरे पास एविडेंस, प्रूफ, हर चीज़, एक एक चीज़ पड़ा हुआ है। तो मैं यही चाहता हूँ कि बस मेरा हेल्प कर दीजिए वहाँ से। मैं भी इंडिया जाना चाहता हूँ वापस। मुझे डर लगता है यहाँ से इंडिया जाने में। मैं वहाँ जाना चाहता हूँ वापस, वहीं रहना चाहता हूँ, लेकिन मेरा हेल्प कीजिए, यही रिक्वेस्ट है मेरे इंडियन गवर्नमेंट से यार। And viewers, so that was part 1, and then you saw part 2 of Mahadev scam explosive tapes, where a man claiming to be Shubham Soni has made these sensational revelations in the Mahadev app case. Now what you will watch is part 3. That is right. Next is part 3 of the sensational tapes. In the part 3 which you will watch, the claim has been made that the Chief Minister Baghel was paid. The video throws up big questions as it makes direct allegations against the Chief Minister of Chhattisgarh. Listen. अरे आज शुभम सारों को पता है कि रवि और सौरभ मालिक है महादेव ऐप के, और साले 2 बियर खींच के तू बन जाता है मालिक है। मैं 2 बियर खींचूं, 4 बियर खींचूं, मालिक तो मैं ही हूँ महादेव बुक का यार। नहीं कैसे है तू? कैसे क्या, तू इतना दिन दूर था भी मेरे से, इसलिए तेरे को मेरे पता नहीं है, तेरे को तू ऐसा बात कर रहा है। तू आ गया वो सोशल मीडिया देख के, जैसे लोग हल्ला कर रहे हैं सोशल मीडिया में कि कौन ओनर है, कौन है, और तू किसका बात कर रहा हो भी मेरे को पता है। जहां तक मेरे को पता है सौरभ और रवि का ही बात कर रहा होगा तू, है ना। पेपर तो मेरे पास है ना भाई, महादेव बुक को ओनर तो मैं हूँ, पेपर तो मेरे पास है। देखेगा क्या, मोबाइल में पड़ा हुआ है। 4 साल से मेहनत क्यों, हंस रहा है यार, 4 साल से मेहनत क्यों भाई, जमीन से आसमान तक पहुंचाया बुक को। नहीं, इतनी बड़ी शादी की उन्होंने, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तुम्हारे पैनल वाले पकड़े गए, पैनल मेंबर, उन्होंने किसी ने तेरा नाम नहीं लिया, सब रवि और सौरभ का नाम ले रहे हैं, तो तेरी कहां से हो गई भाई? अरे भाई वो मेरा, पहली बात तो शादी को जोड़ने का जरूरत नहीं महादेव बुक से, ऊपर से तेरे को बता रहा हूँ मैंने यूज किया शादी को प्रमोशन के लिए अपने, ठीक है, मैंने यूज किया उसको और मेरा काम भी हुआ बहुत अच्छे से। और क्या बोल रहा, कौन पैनल पकड़ा गया क्या? अरे जो तुम्हारे पैनल मेंबर पकड़े जाते हैं, फ्रेंचाइजी वाले। पैनल मेंबर पकड़ा ही नहीं सकते भाई, मेरे ऊपर ऐसे आदमी का आशीर्वाद है ना, और मैं मिल के आया हूं ऐसे आदमी से कि मेरा एक आदमी पकड़ा नहीं सकता। पकड़ाया भी, सुबह पकड़ाएगा शाम को छूट जाएगा। कौन आदमी? एक ही तो यार, अपने काका साहब, और कौन।
काका साहब कौन? सीएम है यार, और कौन? अच्छा तो क्या? अच्छा, तो क्या हल्के में लेकर रखा है क्या मेरे को? अच्छा, सीएम घर आया सीएम तेरे? सीएम घर नहीं आया भाई, है मिलने आया तेरे से? सीएम मिलने नहीं आया, मैं गया था। और तू जानता ही होगा वर्मा को और गिरीश तिवारी को, सुना होगा ना मेरे मुंह से, कभी नाम सुना ही होगा एक आध बार। बस उन्होंने ही मेरा स्टेज सेटिंग करवाया और वहीं मेरा मीटिंग हुआ वहां पे, और वहीं से मेरे को जो आशीर्वाद मिला है, इतना बड़ा काम मेरा तभी हुआ है। लेकिन सीएम क्यों करेगा यार? क्या बोल रहा है तू? क्यों करेगा कोई इतना सब? किसके लिए? पैसे के लिए और काय के लिए? इतना बड़ा भाई, छत्तीसगढ़ है छोटा सा स्टेट, वहां तो कुछ अमाउंट भी देगा तो बहुत बड़ा होता है, और मैंने ऐसा छोटा मोटा अमाउंट तो दिया नहीं है। जाने का क्या अमाउंट कितना दिया है? बताओ। 450 से 500 रुपए तक का दिया हुआ है उधर अमाउंट, तब जाके आशीर्वाद मिला है बेटा, ऐसे थोड़ी काम चल रहा है। And viewers, that was part 3. Now we move on to what really has been happening when it comes to the response coming in from CM Baghel. Cornered, he is cornered on this scam. CM Bhupesh Baghel has now evaded all questions the Republic has posed. The Congress top brass is yet to even issue a statement on the corruption allegations against the Chhattisgarh CM Bhupesh Baghel. Listen in. बघेल साहब, बस एक टिप्पणी चाहिए। जनता चाहती है कि आप सुने सर महादेव पे आपके आरोप लगे हैं, उसमें टिप्पणी दे दीजिए सर, ये आपकी भले का बोल रहा हूँ मैं सर। एक सेकंड सर, महादेव पे लगा हुआ सर, अभी रुक जाओ, लंच के लिए जाओ। सर महादेव पे हुआ सर, एक टिप्पणी दे दीजिए सर। बघेल जी एक टिप्पणी सर, एक टिप्पणी चाहिए सर। एक तो ये है, मैं इंडिविजुअल किसी को नहीं दे रहा हूँ। दूसरा, एक मिनट सुनो, आज घोषणा पत्र जारी किया है, दूसरे सब्जेक्ट में बात नहीं होगी। धन्यवाद सर, एक टिप्पणी सर, बस एक आपके भले के लिए। And viewers, as Republic is bringing you the exclusive investigation on the Mahadev betting scam, it's become the biggest talking point ahead of elections. The political link to the scam has now shaken up Chhattisgarh. That is right. After Republic TV brought you those videos, those sting operations and the bombshell videos, this is a talking point. And the one question that everyone is asking, the one question that everyone is wondering about is this. Did CM Baghel know about this? Take a look. A betting app scam that started in 2021 in Congress-ruled Chhattisgarh. Possibility of political links in the scam cannot be ruled out. When Republic investigative team tried to dig in, the first investigator of the scam said that Chief Minister Bhupesh Baghel knew about the scam. सर, आपको लगता है कि मतलब इतना जानकारी ले रहे हैं, सर आपको लगता है कि उसको सब कुछ पता है कि क्या हो रहा है? देखिए, जैसा मुझे समझ में ये आया कि मैं तो सीएम साहब के काफ़ी लंबी बड़ी बात होती थी, अगर हाउस में आते थे तो 3-4 चीज़ मुझे क्लियर हुआ कि हो रहा है ये पता था, इंटेंसिटी इतना ज़्यादा है ये नहीं पता। 2 चीज़ें हैं, एक चीज़ तो है कि कुछ फंडिंग हो सकता है, पॉलिटिकल फंडिंग बाकी स्टेट्स पे करनी पड़ी हो बहुत सारे चुनाव से। The key political link in this scam seems to be Vinod Verma.
Chhattisgarh CM's political advisor, IPS officer, says he could have benefited in some way. सर लेकिन उनका बेटा खुद इन्वॉल्व था ईडी के पास ऐसे बेटा और उसकी पत्नी दोनों के नाम पे शेल कंपनियां बनाई गई जिसमें कॉर्पोरेट अकाउंट से काफ़ी पैसा उनके पास गया। मैं ये भी बोल रहा हूँ कि देखिए दो चीज़ें हैं, सतीश चंद्राकर और चंद्रभूषण वर्मा ये दोनों खुल के बोलते थे कि हम चला रहे हैं, ये खुल के नहीं बोलते थे। विनोद जी, हाँ, विनोद वर्मा ने कभी खुल के नहीं बोला कि मैं संरक्षण दे रहा हूँ, बट पूरा संरक्षण था उनकी तरफ से। वो उनके मैं तो इंक्वायरी की नहीं होती तो मैं बोल नहीं सकता, लेकिन इन दोनों का इन्होंने कमिट किया मेरे सामने आके। Baghel's right-hand man Vinod Verma was questioned by agencies in connection with the scam. No evidence as of now. But multiple players of the scam have said that Saurabh Chandrakar has a lot of political clout. मैम ये पूरी सरकार खरीद सकते हैं। खरीद सकते क्या? मुझे लगता है पैसा पूरा सरकार चला रहे हैं ये जो रेड वेड ये सब चीज चल रहा है मैम, ये मेरे को पूरा और टोटल में मेरे को गेम लगता है। Though there is no evidence of the political involvement so far, agencies are already investigating the political link to the scam. But those who know the case inside out believe that the scam of this proportion couldn't have gone unnoticed at political level. Special investigative report by Republic TV. And viewers, India's biggest scam is unraveling before everyone's eyes. That too just ahead of elections, and the facts are emerging thick and fast. The facts suggest that the scam money was being used for political campaigns. Well, this is what Republic has found in its investigation. A scam running to the tune of over 400 crore rupees. And in the heat of election campaign, some sensational allegations have been made that proceeds of crime were used for political funding. काम के लिए पुलिस को हाथ रखना जरूरी है और नेता लोग को ये सबका हाथ है। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा पैसा सामने छत्तीस में चुनाव ना सब पैसे की डिमांड कर रहे हैं, सबके सब पैसे की डिमांड कर रहा हूँ। अच्छा, और कुछ जैसे कि यहाँ जो पकड़ाए हैं सतीश चंद्राकर और हाँ ASI, चलो खोल दी ना, पड़ी मार दो, इसको इतना देता था उसको इतना देता था, कहीं कहीं जुगाड़ होगा। The accused in the scam has also claimed that cash was ferried in air ambulances to fund election. देखिए अभी ये हवाला का जो काम हो रहा है ना, अब देखिए अब इनके पास पैसा कैसे आएगा? प्राइवेट जेट से इनके पास पैसा आएगा। प्राइवेट जेट से? प्राइवेट जेट से आएगा या तो हेलीकॉप्टर के थ्रू इनके पास पैसा आएगा। ऐसा क्यों? मैम देखिए अब ईडी का इतना चल रहा है तो हवाला से भेज नहीं सकते? हवाला से भेज नहीं सकते। मैंने सुना तो कि एयर एम्बुलेंस का भी इस्तेमाल किए हैं ये लोग। किए अभी नहीं, पहले किए हैं। 2022 में किया था इन्होंने। 2022 में उन्होंने किया था, एयर एम्बुलेंस का इस्तेमाल हुआ है, पैसे के थ्रू हुआ है। Though the money trail is yet to be established and Hawala transactions are under scanner, the claims made by the key players are certainly explosive. Were proceeds of crime used for election campaign? Did betting scam accused send cash to the political parties? Special investigative report by Republic TV. Viewers, much more coming up on the other side. Republic accesses videos of Shubham Soni in Dubai. Videos show parties organized by Soni in Dubai. ED calls Republic stings as relevant to ongoing probe. Writes to Republic seeking the stings. Stay tuned. Hello, Moto. Motorola, India's best 5G smartphone brand. Co-powered by Hyundai. It is safe if it's 6. बंद करो कान बंद करो, कभी भी फट सकता हूँ। पटाखा जो लग रहा हूँ दिवाली है, तैयार होकर आइए। यजमान, हमारे पिताजी आपके पिताजी के पंडित थे, तो इस हिसाब से हम आपके पंडित हुए। आप लिस्ट बनाइए। लिखो लिखो लिखो। होल्ड ऑन जजमान, खुल जा, ये लीजिए पूजा का हर पात्र का समाधान WHPjewelers.com। सबके लिए कुछ खास। You know what could have been my biggest weakness? The fact that I didn't grow up wearing a lot of makeup.
turned out to be my biggest strength because I could relate to the girl next door. I could relate to the girl who had regular skin with skin issues and went through public transport and would sweat all day and wanted makeup that would last through that sweating. People with absolutely who create products for celebrities don't get the requirement of the regular girl in India, which I really got because I was her. Catch Techno Phantom V Plus 5G presents Women Pioneers of India only on Republic TV. जब मां सरयू के घाटों को दिव्य दीपमालाओं से सजाया जाए, वो दीपोत्सव है। दीपों की असंख्य ज्योतियां जब अवधपुरी सजाए, वो दीपोत्सव है। जब श्री राम की जय जयकार से संपूर्ण अयोध्या धाम गूंजित हो उठे और हर मन मंत्रमुग्ध हो जाए, वो दीपोत्सव है। 2017 से शुरू हुआ दीपोत्सव हर साल एक नया कीर्तिमान गढ़ रहा है। विकास पथ पर अग्रसर योगी सरकार जहां एक तरफ अयोध्या को आधुनिक बना रही है, वहीं दूसरी तरफ सनातन परंपराओं को संजोने का कार्य कर रही है। दिव्य दीपोत्सव से दैदीप्यमान है श्री राम जन्मभूमि। विकास के प्रकाश से प्रकाशमान है श्री राम जन्मभूमि। आइए आस्था के असंख्य दीपों से सुसज्जित इस दीपोत्सव के साक्षी बने और प्रभु श्री राम का अभिनंदन करें। श्री राम को नमन है, श्री राम का वंदन है। Hello, Moto. Motorola, India's best 5G smartphone brand. Viewers, top publicity tracking right now. Mahadev bombshell tapes have, in fact, Air on Republic have become the turning point. Delhi CM Arvind Kejriwal on Monday chaired a high-level meeting with cabinet members and officials as the air quality dips further in the city. The meeting was attended by Delhi Environment Minister Gopal Rai, Ministers Atishi, Saurabh Bhardwaj and officials of the concerned departments. The BJP slammed the Aam Aadmi Party for over Delhi's severe pollution, saying that the national capital has become a gas chamber because of Chief Minister Arvind Kejriwal and Aam Aadmi Party's polluted politics. Amid the spike in air pollution, Delhi Environment Minister Gopal Rai has blamed stubble in Haryana as for the rise in Delhi's AQI index. Viewers, much more coming up on the side. Bhupesh Baghel on the back foot, cornered CM course, charges against him a conspiracy. And Republic accesses videos of Shubham Soni in Dubai. Videos show parties organized by Soni in Dubai. Stay tuned. बंद करो कान बंद करो, कभी भी फट सकता हूँ, पटाखा जो लग रहा हूँ। दिवाली है, तैयार होकर आइए। Hey Alexa, start the robo. Introducing Forbes Robo Vacuum Cleaner. Daily cleaning as easy as 1, 2, 3. It dry vacuums, even wet mops, and recharges automatically. Get the Forbes Robo Vacuum Cleaner from Eureka Forbes. 2022 में अयोध्या के दीपोत्सव में 15.76 लाख दीपों का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दूसरे कार्यकाल का ये दूसरा दीपोत्सव है, जिसे भव्य और दिव्य बनाने की तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं। करीब 21 लाख दीप जलाकर राम की पैड़ी पर फिर से विश्व रिकॉर्ड बनाया जाएगा। दीपोत्सव को ऐतिहासिक बनाने के लिए अयोध्या में राम की पैड़ी एवं चौधरी चरण सिंह के 51 घाटों पर 21 लाख दीपों को प्रज्वलित करने के लिए 25,000 से अधिक वॉलंटियर्स की मदद ली जाएगी। अयोध्या के 51 घाटों पर 21 लाख से अधिक दिए प्रज्वलित कर विश्व कीर्तिमान बनाने के लिए आवासीय परिसर सहित 27 महाविद्यालयों, 19 इंटरमीडिएट कॉलेज व 45 स्वयंसेवी संस्थाओं की बढ़ चढ़कर सहभागिता होगी।
Following the success of its inaugural edition last year, the popular Autumn Festival returned in Delhi from 3rd to 4th November 2023. Organised by Nagaland Tourism in association with the Union Ministry of Tourism, this festival showcased the essence of the popular Hornbill Festival to the people of the capital. We aim to provide an immersive experience for those unable to visit Nagaland, while also deepening appreciation of those who can. It's a win-win for all, said Temjanim Nalong, Nagaland Minister of Tourism and Higher Education. The Hornbill Festival, scheduled for December 1 to 10th, 2023 in Kisama Heritage Village, showcases Naga tribal culture. It's a great way to experience Nagaland's diversity. Hello, Moto. Motorola, India's best 5G smartphone brand, brings you the latest breaking news update from across the country only on Republic TV. Good evening and thank you for tuning in. You're watching Live and Breaking at 5:30. I'm Suesha Sam. The biggest story we are tracking for you this evening, the Mahadev bombshell tapes that air on Republic that have caused not just a political storm, but the investigative agencies also seeking those tapes as they are now probing finer details. That and much more in this edition. First, a quick check of the headlines. Mahadev bombshell tapes aired on Republic becomes the biggest talking point in multi-crore betting scam coverage. छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 508 करोड़ ले रहे हैं। किससे ले रहे हैं? एक क्रिमिनल एलिमेंट बैक्ड बेटिंग। Republic sting and alleged tapes become the biggest talking point in Chhattisgarh election campaign. Bhupesh Baghel on the back foot, cornered Chief Minister, calls charges against him a conspiracy. Republic accesses videos of Shubham Soni in Dubai. Videos show parties organized by Soni in Dubai. 808 करोड़ रुपए का घोटाला। और जानते हैं वो असीम दास क्या बोलता है ईडी में कि ये मैं पैसा दुबई से लेकर के भूपेश बघेल को देने आया था, उसने छत्तीसगढ़ के चुनाव के लिए। BJP raises Republic sting to attack Bhupesh Baghel over corruption allegations. ED calls Republic stings as relevant to ongoing probe, writes to Republic seeking the sting tapes. And where Republic got you the first part and the second part of the Mahadev scam explosive tapes, where a man claiming to be Shubham Soni has made sensational revelations in the Mahadev app scam. Republic is now getting you the third part of these sensational tapes. In this part, the claim has been made that Chief Minister Baghel was paid off. The video throws up big questions as it makes a direct allegation against Chief Minister Bhupesh Baghel. Listen in. अरे आज शुभम सारों को पता है कि रवि और सौरभ मालिक है महादेव ऐप के, और साले 2 बियर खींच के तू बन जाता है मालिक है। मैं 2 बियर खींचूं 4 बियर खींचूं, मालिक तो मैं ही हूँ महादेव बुक का यार। नहीं कैसे है तू? कैसे क्या? तू इतना दिन दूर था भी मेरे से, इसलिए तेरे को मेरे पता नहीं है। तेरे को तू ऐसा बात कर रहा है। तू आ गया वो सोशल मीडिया देख के, जैसे लोग अल्लाह कर रहे हैं सोशल मीडिया में कि कौन ओनर है कौन है, और तू किसका बात कर रहा हो भी मेरे को पता है। जहां तक मेरे को पता है सौरभ और रवि का ही बात कर रहा होगा तू, है ना? पेपर तो मेरे पास है ना भाई, महादेव बुक को ओनर तो मैं हूँ, पेपर तो मेरे पास है। देखेगा क्या? मोबाइल में पड़ा हुआ है। 4 साल से मेहनत क्यों हंस रहा है यार? 4 साल से मेहनत क्यों भाई? जमीन से आसमान तक पहुंचाओ बुक को।
नहीं, इतनी बड़ी शादी की उन्होंने, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तुम्हारे पैनल वाले पकड़े गए, पैनल मेंबर, उन्होंने किसी ने तेरा नाम नहीं लिया, सब रवि और सौरभ का नाम ले रहे हैं, तो तेरी कहां से हो गई भाई? अरे भाई वो मेरा पहली बात तो शादी को जोड़ने का जरूरत नहीं महादेव बुक से, ऊपर से तेरे को बता रहा हूँ मैंने यूज किया शादी को प्रमोशन के लिए अपने, ठीक है, मैंने यूज किया उसको और मेरा काम भी हुआ बहुत अच्छे से। और क्या बोल रहा, कौन पैनल पकड़ा गया क्या? अरे जो तुम्हारे पैनल मेंबर पकड़े जाते हैं फ्रेंचाइजी वाले, पैनल मेंबर पकड़ा ही नहीं सकते भाई, मेरे ऊपर ऐसे आदमी का आशीर्वाद है ना, और मैं मिल के आया हूं ऐसे आदमी से कि मेरा एक आदमी पकड़ा नहीं सकता, पकड़ाया भी सुबह पकड़ाएगा शाम को छूट जाएगा। कौन आदमी? एक ही तो यार, अपने काका साहब। और कौन? काका साहब? काका साहब कौन? सीएम है यार, और कौन? अच्छा तो क्या? अच्छा, तू क्या हल्के में लेकर रखा है क्या मेरे को? अच्छा, सीएम घर आया सीएम तेरे? सीएम घर नहीं आया भाई, है मिलने आया तेरे से? सीएम मिलने नहीं आया, मैं गया था। और तू जानता ही होगा वर्मा को और गिरीश तिवारी को, सुना होगा ना मेरे मुंह से, कभी नाम सुना ही होगा एक आध बार। बस उन्होंने ही मेरा एसपी से सेटिंग करवाया और वहीं मेरा मीटिंग हुआ वहां पे, और वहीं से मेरे को जो आशीर्वाद मिला है, इतना बड़ा काम मेरा तभी हुआ है। लेकिन सीएम क्यों करेगा यार? क्या बोल रहा है तू? क्यों करेगा कोई इतना सब? किसके लिए? पैसे के लिए और काय के लिए? इतना बड़ा भाई, छत्तीसगढ़ छोटा था स्टेट, वहां तो कुछ अमाउंट भी देगा तो बहुत बड़ा होता है, और मैंने ऐसा छोटा मोटा अमाउंट तो दिया नहीं है। जाने का क्या अमाउंट कितना दिया है? बताओ। 450 से 500 रुपए तक का दिया हुआ है उधर अमाउंट, तब जाके आशीर्वाद मिला बेटा, ऐसे थोड़ी काम चल रहा है। Massive political tremors over Republic investigation and a big impact. Even the ED has now taken note and written to Republic seeking details on the sting operations conducted, getting an exclusive reactions on Mahadev betting scam of top leaders. 1.5 साल से वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, उन्होंने एक भी लेटर नहीं लिखा है, उन्होंने कभी भी एक भी मांग नहीं किया कि ये आप बंद करें। इसीलिए तो उनका 1.5 साल का इन्वेस्टिगेशन का कारण ही तो उनको 508 करोड़ रुपए मिले हैं इनसे। उन्होंने किसी भी एजेंसी से किसी भी तरह हमें कोई नोटिफिकेशन नहीं भेजा है इन 1.5 सालों में। पहली बार अगर सरकार को एक नोटिफिकेशन मिला है इन इलीगल ऐप्स के बारे में, वो कल सुबह एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने भेजा है, और हमने कल दोपहर को उस सभी 22 ऐप जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने लिस्ट भेजे थे उनको हमने बैन कर दिया है। वो ये भी कह रहे हैं कि जीएसटी 28% जीएसटी मिलती थी इसलिए प्रतिबंधित नहीं किया। आप अभी तक तो समझ गए होंगे, सभी लोग समझ गए होंगे कि कांग्रेस की राजनीति में झूठ और झूठ होना बहुत ही एक नॉर्मल सा फिनोमिनन है। यहाँ पर भी बघेल जी झूठ बोल रहे हैं, वो भी जानते हैं, सब जानते हैं, क्योंकि 1.5 साल से वो एक इन्वेस्टिगेशन को खींच रहे हैं जो 6 मिनट में पता कर सकते थे कि ये एक बेटिंग ऐप है, और 6 मिनट में वो लेटर लिख सकते थे कि देखिए इसको बैन कीजिए। सीधे सीधे उन पर आरोप लगाया 508 करोड़ रुपए ले रहे हैं, दुबई से वीडियो जारी हुआ है, इसके बाद क्या उन पर शिकंजा कसेगा? तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और एजेंसीज तय करेंगे। मेरा काम यही था, हमारे सरकार और हमारे मिनिस्ट्री का काम था कि ये इलीगल ऐप्स जो क्रिमिनल ऐप्स हैं उनको बंद करें, हमने बंद कर दिया। रिपब्लिक ने स्टिंग भी किया है, अभिषेक पल्लव जो एसपी हैं उन्होंने भी कबूला है, कई और लोग इस स्टिंग में फंसे हैं, तो इनके खिलाफ क्या सख्त कार्रवाई के निर्देश? मेरा स्पष्ट कहना है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पूरा का पूरा बघेल के सिस्टम, भूपेश बघेल जी के सिस्टम इनके पीछे थे, इसीलिए उनको 508 करोड़ रुपए मिले, इसीलिए 1.5 साल से उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया उनके साथ। छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, राज्य के मुख्यमंत्री पर सीधे आरोप लग रहा है 500 करोड़ का घूस, ये बहुत बड़ा गंभीर मामला है और निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की जनता और देश की जनता देख रही है। और पहले से ही कांग्रेस हमेशा से करप्शन का पर्यायवाची शब्द अगर कोई पार्टी है तो कांग्रेस पार्टी है। लेकिन कांग्रेस कह रही है तो ये ईडी सीबीआई का गलत उपयोग किया जा रहा है, उनको बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है, बदले की भावना है।
जिनका सामने टेलीविजन पर दिख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है कि कहाँ कार्रवाई होनी चाहिए और कहाँ नहीं होनी चाहिए। आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ में कहीं ना कहीं बघेल सरकार गिर जाएगी, आपको लग रहा है? वो तो जनता देखे, अब देख ही रही है। तो और जनता कैसी सरकार चाहती है, और सब लोग देश के अंदर डबल इंजन चाहते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। ये आरोप ही नहीं है, प्रमाणित दस्तावेज के साथ उनके सामने साक्ष्य पेश किए गए। 509 करोड़ का लेन देन का प्रमाण हुआ, ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड मिले हैं, 5 करोड़ का राशि और 7 करोड़ की राशि जब्त किए गए हैं। दुबई से कनेक्शन मिला है, दुबई के कनेक्शन के साथ इनके सचिवालय के 3 अधिकारियों का सीधा महादेव वेब के जो संचालक हैं उनके साथ पैसे का ट्रांजैक्शन का प्रमाण ईडी ने प्रस्तुत किया है। इसके बाद क्या बचता है मुझे समझ में नहीं आता भूपेश बघेल का। ये अब कोई उसको रंगे हाथ कोई उसके घर में पकड़ेगा क्या, इससे ज़्यादा प्रमाण। लेकिन देखिए मुख्यमंत्री जी तो ये कह रहे हैं कि ये सब आरोप है, इनको उनकी छवि धूमिल करने के लिए ये सब आरोप है भारतीय जनता पार्टी द्वारा। बताइए, महादेव ऐप में इतना बड़ा खुलासा पीएमएलए में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में हुआ है, तो क्या आसमान खा गया पैसा? पूरा संरक्षण प्राप्त है छत्तीसगढ़ में ऐसे अपराधी गतिविधियों का। सट्टा जुआ और इस अपराध में इलेक्शन के लिए फंडिंग कर रहे हैं। 509 करोड़ चुनाव के लिए भेजा है भूपेश बघेल के लिए। बल्कि आपको पता ही होगा कि हमने भी सर एक स्टिंग किया जिसमें हमें पता चला है कि काफ़ी पुलिस वाले भी शायद समझ लेते, उसमें ईडी ने भी अरेस्ट किया उसके बाद, और उसके जो लिंक्स है वो मुख्यमंत्री के ऑफिस तक मतलब जा रहे हैं। ऑफिस तक मिले हैं, 3 नाम प्रकट रूप से आए हैं और तीनों लोगों की संलिप्तता साफ दिख रही है और है। और ये अकेला एक प्रकार का महादेव ऐप की बात नहीं है। हिंदुस्तान में और कहीं ऐसा हो सकता है क्या सरकारी खजाना का लूट इतना खुलेआम हो कि बिना हॉलमार्क के 40% शराब को बिना टैक्स पटाए सरकारी शराब दुकान से बेची जाए? क्या कोयले में इससे ज़्यादा भ्रष्टाचार दुनिया में कहीं हो सकता है? लेकिन सर मैं महादेव में ही ज़रा फोकस रखूँगा सर। एक और मतलब अब खुलासा आया है, ये ईडी की रिमांड कॉपी में भी आया है और अब एक वीडियो भी इमर्ज आ रही है कि जिसमें एक इंसान है शुभम सोनी, वो अपने आप को महादेव का ओनर बुलाता है, अपने आप को महादेव का ओनर बोलता है, और वो बोलता था कि वो असीम दास के द्वारा चीफ मिनिस्टर ऑफिस में कोई वर्मा जी है उनके द्वारा पैसे भेजता था। अब ये कितनी सच्चाई है? ये असीम के पास ही तो 5.37 करोड़ रुपए के पैसे जब्त हुए। वही असीम दास है जिसने स्वीकार किया बघेल नामक व्यक्ति को मैं पैसा देता। वही असीम दास है जिसके दुबई के कनेक्शन मिले हैं। ये सारे प्रमाण के लिंक मिलते जा रहे हैं और प्रमाण के साथ ईडी ने ऐसी कार्रवाई नहीं की, पूरे पुख्ता जानकारी के साथ पूरे दस्तावेज के साथ किया है और उसके बाद भी बेशर्मी की हद भूपेश बघेल ईडी पे आरोप लगा रहे हैं। इसका अंत आप कहाँ तक देखते हैं? अंत होगा, न्यायालय में जाएंगे और न्यायालय में कार्रवाई होगी और सजा होगी। भाई देखो, ईडी के द्वारा चुनाव, ईडी तो कांग्रेस के जमाने में भी थी, सीबीआई ईडी थे, उनके जमाने में क्यों ने वो जीत गए चुनाव? कांग्रेस के द्वारा वो संचालित होता था, वो कर सकते थे। भाई देखो, ये स्वतंत्र बॉडी है, हम किसी स्वतंत्र बॉडी पर आरोप लगाते हैं इस प्रकार का, चोरी और सीना जोरी ये नहीं चलेगा देश के अंदर। चोरी भी करें और सीना जोरी करके हम दूसरों पर आरोप लगाएं, हम जनता के मत से जीतेंगे। और छत्तीसगढ़ में और कांग्रेस के लोगों ने जो भ्रष्टाचार का बाजार गर्म किया, ये इंडी गठबंधन जो ठगबंधन बना है, ये भ्रष्टाचारियों का जमायत है, देश को गुमराह कर रहा है, देश के लोगों को हर तरह से एक षड्यंत्र रच करके मोदी 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 हटाओ और मोदी हटाओ, इसलिए मोदी गरीबों के लिए काम कर रहा है, मोदी पिछड़े अति पिछड़े के लिए काम कर रहा है, सभी वर्गों के लिए काम कर रहा है, इकोनॉमिक जो बैकवर्ड क्लास है उनके लिए उन्होंने आरक्षण लाया, इसलिए मोदी को हटाओ। मोदी को किस बात के लिए हटाओ? अरे मोदी ने तो वंशवाद को समाप्त किया है, इसलिए पेट में इनको दर्द है कि इनका वंश कैसे चलेगा। इनको सरकार और देश चलाने का नहीं, इनका वंश कैसे चलेगा कांग्रेसियों का, उसका ये इंडी गठबंधन बना के, महाठगबंधन बना के देश को ठगने के लिए चले हैं। अपने को भी सगों को ठगा, वो देश को ठगने के लिए, इसलिए देश के लोग अब गुमराह होने वाले नहीं हैं। मोदी ही फिर वापस आएगा और छत्तीसगढ़ में भी ये जाएगा बघेल, और ये जितने लोगों ने भ्रष्टाचार का काम किया है केवल उतना ही नहीं, जेल भी जाएंगे। ये घोटालों की सरकार अभी अभी महादेव ऐप, इन्होंने महादेव को भी नहीं छोड़ा। 6,000 करोड़ रुपए का घोटाला, किस बात का घोटाला? सत्ता में आने के लिए सट्टे का घोटाला।
508 करोड़ रुपए का घोटाला। और जानते हैं वो असीम दास क्या बोलता है ईडी में कि ये मैं पैसा दुबई से लेकर के भूपेश बघेल को देने आया था, उसने छत्तीसगढ़ के चुनाव के लिए। मैं स्तब्ध हूं कि भारतीय राजनीति में पहली बार छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी दुबई के माध्यम से हवाला ऑपरेटर्स के सहयोग से अपना चुनाव लड़ रही है। कल रात को जिस प्रकार से महादेव ऐप को चलाने वाले व्यक्ति ने खुलासा किया कि उन्होंने भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपए की घूस दी है, साथ ही उस व्यक्ति ने ये भी कहा है कि उसके पास साक्ष्य हैं, प्रमाण हैं। ये बात छत्तीसगढ़ का बच्चा बच्चा जानता है कि भूपेश बघेल की जो सहयोगी हैं सौम्या जी, वो वर्तमान में हिरासत में है एक और घोटाले के लिए, कोयला घोटाले के लिए। एक और पत्रकार का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो भूपेश बघेल जी से देवर परिवार के साथ उनके संबंधों के बारे में पूछ रहे हैं, और ये वो परिवार है जो शराब घोटाले में लिप्त है। तो जिनको भूपेश जी जानते हैं, भूपेश जी ने स्वीकार किया है, वो जानते हैं, वो प्रदेश में 2000 करोड़ का घोटाला शराब के माध्यम से कर चुके हैं। भूपेश बघेल जी जो नाटक कर रहे हैं कि नहीं जानता, उससे 500 करोड़ रुपए वसूल लिया है। इलेक्शन कमीशन के पास जा रहे हैं कांग्रेस के सभी दिल्ली के नेता लोग, क्या कहेंगे आप? क्या कहना है? उनका कहना है कि बघेल जी को और पैसा यूज करने दो, दुबई से और पैसा आने दो बघेल जी के लिए, कहने जा रहे हैं क्या? मुख्यमंत्री को प्रमोटर्स ने पैसा दिया है, तो ये पहले 5 करोड़ दिया है और इसमें आरोप है 500 करोड़ का टोटल। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट तो दिया ही गया है, ये तो एक आरोप है। जब उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, इसमें इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ईडी का स्टेटमेंट क्या है, हम इसमें इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। तो ये अगर चुनाव आयोग के पास जा रहे हैं तो क्या चुनाव आयोग के पास ये डिमांड लेके जा रहे हैं क्या, जो पैसा मिला है, हमको जो मिला है, इलीगली जो हुआ है, करप्शन जो हुआ है, मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है, फिर भी इंक्वायरी नहीं करना, इसका डिमांड ये है क्या चुनाव आयोग के सामने? ये क्या चीज़ लेके चुनाव आयोग के पास जाना चाहते हैं, मुझे तो समझ में नहीं आया है। ये तो सामान्य नागरिक, आम नागरिक को ये समझ में भी नहीं आ रहा है, हमको भी समझ में नहीं आ रहा है कि जब पैसा मिला है, एक इसमें जो पकड़ा गया है व्यक्ति बोला है मुख्यमंत्री को ऑलरेडी पैसा पहुंच गया है, तो उसका इन्वेस्टिगेशन हुआ है नहीं होना है, इतना ही मेरा प्रश्न है बघेल जी को। And while Republic's 7-part expose that has caused massive political quake, we are now getting your report on Republic expose on the corruption allegations of the decade that has hit the Grand Old Party. मतलब इतना जानकारी ले रहे हैं, आपको लगता है कि उसको सब कुछ पता है कि क्या हो रहा है? देखिए, जैसा मुझे समझ में ये आया कि मैं तो सीएम साहब के काफ़ी लंबी बड़ी बात होती थी, सेक्रेटरी हाउस में आते थे, तो 3-4 चीज़ मुझे क्लियर हुआ कि हो रहा है ये पता था, इंटेंसिटी इतना ज़्यादा है ये नहीं पता। 2 चीज़ें हैं, एक चीज़ तो है कि कुछ फंडिंग हो सकता है, पॉलिटिकल फंडिंग बाकी स्टेट्स पे करनी पड़ी हो बहुत सारे चुनाव से। सर लेकिन उनका बेटा खुद इन्वॉल्व था ईडी के पास, ऐसे बेटा उसकी पत्नी दोनों के नाम पे शेल कंपनियां बनाई गई, जिससे कॉर्पोरेट अकाउंट से काफ़ी पैसा उनके पास गया। मैं ये भी बोल रहा हूँ कि देखिए 2 चीज़ें हैं, सतीश चंद्राकर और चंद्रभूषण वर्मा, ये दोनों खुल के बोलते थे कि हम चला रहे हैं, ये खुल के नहीं बोलते थे। विनोद जी, हाँ, विनोद वर्मा ने कभी खुल के नहीं बोला कि मैं संरक्षण दे रहा हूँ, बट पूरा संरक्षण था उनकी तरफ से। वो उनके मैं तो इंक्वायरी की नहीं होती, तो मैं बोल नहीं सकता, लेकिन इन दोनों का इन्होंने कमिट किया मेरे सामने आके। पता नहीं रसूल से खाने बोल रहा हूँ ना, बड़े बड़े लोगों से यहाँ तक कि यहाँ पे कोई नेता नहीं छुड़ा। मैम ये पूरी सरकार खरीद सकते हैं। खरीद सकते क्या? मुझे लगता है पैसा पूरा चला रहे हैं ये।
ये जो रेड वेड ये सब चीज चल रहा है मैम, ये मेरे को पूरा और टोटल में मेरे को गेम लगता है। ये काम के लिए पुलिस को हाथ रखना जरूरी है और नेता लोग को है, ये सबका हाथ है। लेकिन सबसे ज्यादा पैसा सामने छतरी में चुनाव ना, सब पैसे की डिमांड कर रहे हैं, सबके सब पैसे की डिमांड कर रहा हूँ। अच्छा और कुछ जैसे कि यहाँ जो पकड़ाए हैं सतीश नगर और हाँ ASI, चलो खोल दी ना, बड़ी मार दो, इसको इतना देता था उसको इतना देता था, ऐसे होगा कहीं कहीं जुगाड़ होगा। उसकी विशेष पार्षद प्रियंका साहू इतना मोटा तो चेयर उसके गले में, जितना वो मोटा मेरी मिसेज पायल पहनती है, चारों उंगली में अंगूठी, ब्रेसलेट, एक सारा भोला बता दिया, सौरभ पसंद के चाचा यही है। ये सबका हाथ है। लेकिन सबसे ज्यादा पैसा सामने छतरी में चुनाव ना, सब पैसे की डिमांड कर रहे हैं, सबके सब पैसे की डिमांड कर रहा हूँ। अभी ये हवाला का जो काम हो रहा है ना, अब देखिए अब इनके पास पैसा कैसे आएगा, प्राइवेट जेट से इनके पास पैसा आएगा, प्राइवेट जेट से आएगा या तो हेलीकॉप्टर के थ्रू इनके पास पैसा आएगा। ऐसा क्यों मैम देखिए अब ईडी का इतना चल रहा है तो हवाला से भेज नहीं सकते, हवाला से भेज नहीं सकते। मैंने सुना तो एयर एम्बुलेंस का भी इस्तेमाल किए हैं ये लोग, किए अभी नहीं, पहले किए हैं, पहले किया 2022 में किया था 2022 में उन्होंने किया है, एयर एम्बुलेंस का इस्तेमाल हुआ है, पैसे के थ्रू हुआ है। के चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत, सर महादेव बेटिंग ऐप जो छत्तीसगढ़ में इस वक्त बड़ा मुद्दा है और छत्तीसगढ़ में इलेक्शंस भी है, रिपब्लिक ने एक स्टिंग किया है जहां पे हम साफ साफ देख रहे हैं कि महादेव बेटिंग ऐप के थ्रू जिसके लिंक्स और तार जो है वो छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल के साथ जुड़े हैं। आप ये सारे मामले को किस तरह से देखते हैं? सबसे पहले मैं रिपब्लिक को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, क्योंकि जिन्होंने ये स्टिंग करके, यानी जो मैं छत्तीसगढ़ में भी प्रचार कार्य के लिए गया था, वहाँ के यानी महादेव बैटिंग के बारे में, महादेव ऐप के बारे में हर एक कोई बोलता था, लेकिन ये कौन चला रहे, तो अब पता चला कि वो खुद वहाँ के चीफ मिनिस्टर बघेल जी ही चला रहे थे। वो उनके खुद जो चला रहा था वो डायरेक्टली बोल रहा है कि 500 करोड़ ऑफ रुपीस उन्होंने सीएम को दिया है। मुझे लगता है इस जैसी शर्मनाक बात नहीं है। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की जनता उनको सरकार हटाएगी और वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाएगी। वहाँ के युवक जो एस्पिरेंट है, वहाँ के महादेव ऐप ने जिस तरह से युवकों को लूटा है, वहाँ के लोगों को लूटा है, और वो जाके उनको दुबई में जाके दुबई से वो ऐप चला रहा था, तो इनडायरेक्टली वहाँ की सरकारी खुद ऐप चला रही थी, लोगों को लूटने का काम सरकारी कर रही थी। सर साथ ही साथ भूपेश बघेल ये कहते हैं कि उनकी इमेज टार्निश करने के लिए ये सब किया जा रहा है, और कांग्रेस पार्टी भी यही कह रही है कि कांग्रेस पार्टी को टारगेट करने के लिए ये सारा कुछ हो रहा है, उनका कोई रोल नहीं है, ऐसा कांग्रेस पार्टी कहती है। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं कह रही है कि खुद जो ऐप चला रहा है वो दुबई से वो खुद बता रहा है कि मैं ये खुद ऐप चला रहा था और मैंने कितने पैसे दे दिए। वो खुद आदमी बोल रहा है, और किस तरह से उसकी बघेल के साथ मीटिंग हो गई, उसको दुबई भेज गया। दुबई में 2 आदमी जो बघेल के थे उनके साथ में वो खुद कह रहा है। भारतीय जनता पार्टी का कुछ संबंध नहीं है। मुझे लगता है कि राइट टाइम पे उन्होंने लोगों को इशारा दे दिया, लोगों को पता चला, लोगों को इन्फॉर्मेशन दी। मैं तो बहुत बहुत उसका अभिनंदन करता हूँ कि कम से कम इससे आगे तो छत्तीसगढ़ की जनता इस महादेव ऐप से तो दूर रहेगी। महादेव ऐप में कोई तो पैसे, यानी वहाँ के युवक इस जो जुगाड़ में जो पैसे डाल रहे थे, वो तो कम से कम आगे आने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी की रहेगी। वहाँ के युवाओं के यानी एस्पिरेंट युवाओं के लिए जॉब देने वाली सरकार रहेगी, और छत्तीसगढ़ की यानी विकास करने वाली सरकार रहेगी। एक सवाल में तेलंगाना चुनाव। All right, so this is the latest reaction coming in from the Goa Chief Minister on the Mahadev app scam, as the political furor and questions being raised against Chhattisgarh Chief Minister Bhupesh Bघेल over whether he was accepting money and the political patronage that was being provided to the promoters of the Mahadev scam. More in these reactions continue as we have to slip into a very short commercial break right now. On the other side, we'll tell you more, and of course, the big story we're tracking for you, the videos of Shubham Soni in Dubai,
Those videos have been accessed where you can see how parties were organized by Sony in Dubai. ED calls Republic stings a relevant part of the ongoing probe, writing to Republic seeking these sting tips. Hello, Moto. Motorola, India's best 5G smartphone brand. बंद करो कान बंद करो कभी भी फट सकता हूँ पटाखा जो लग रहा हूँ दिवाली है तैयार होकर आइए Sarah, this is your space. Play it your way. With the versatile range of sanitary ware, faucets and tiles by Sarah. जब मां सरयू के घाटों को दिव्य दीपमालाओं से सजाया जाए, वो दीपोत्सव है। दीपों की असंख्य ज्योतियां जब अवधपुरी सजाए, वो दीपोत्सव है। जब श्री राम की जय जयकार से संपूर्ण अयोध्या धाम गूंजित हो उठे और हर मन मंत्रमुग्ध हो जाए, वो दीपोत्सव है। 2017 से शुरू हुआ दीपोत्सव हर साल एक नया कीर्तिमान गढ़ रहा है। विकास पथ पर अग्रसर योगी सरकार जहां एक तरफ अयोध्या को आधुनिक बना रही है, वहीं दूसरी तरफ सनातन परंपराओं को संजोने का कार्य कर रही है। दिव्य दीपोत्सव से दैदीप्यमान है श्री राम जन्मभूमि। विकास के प्रकाश से प्रकाशमान है श्री राम जन्मभूमि। आइए आस्था के असंख्य दीपों से सुसज्जित इस दीपोत्सव के साक्षी बने और प्रभु श्री राम का अभिनंदन करें। श्री राम को नमन है, श्री राम का वंदन है। इस दिवाली बच्चे बड़े और बड़ों से बड़े भी खाएंगे चॉकलेट। जब चॉकलेट्स पे मिलेगा अप टू 33% ऑफ। आ गया स्मार्ट बाजार फेस्टिवल सेल 1 से 15 नवंबर। फेस्टिवल को बेस्टिवल बनाइए, स्मार्ट बाजार चलिए। With 49 studios, Woodfill has revolutionized the Indian modular kitchen industry by bringing the best of Europe for Indian homes. Visit the nearest store for a new design and a quote. Hello, Moto. Motorola, India's best 5G smartphone brand. सर जैसा आप सस्पेक्ट किए थे कि ऐसी ऐसी वीडियो आएगी फिर वो आना भी चालू। हाँ तो होगा ना, 17 तारीख तक सब लोग मजा लें। सर तो क्या रहेगी रणनीति, क्या ये इम्पैक्ट डालेगा सर? इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि लगातार मैं बोल रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ रही, ईडी आईटी के माध्यम से लड़ रहे हैं। ही कांग्रेस और करप्शन का बहुत नज़दीक का नाता था, लेकिन इसके बारे में इन्फॉर्मेशन लेना पड़ेगा। उसमें कौन गिल्टी है कौन नहीं है, उसका इन्फॉर्मेशन लेके अगर बयान दे दिया जाए तो अच्छा रहेगा। लेकिन इसमें नया कुछ नहीं है, कांग्रेस और करप्शन का नाता बहुत नज़दीक का है। क्या है कि जिसके आदमी ने ये किया है उसको तो सपोर्ट करना उनकी जिम्मेदारी है। इसलिए अभी करप्शन होने के बाद भी अगर वो बोल रहे हैं कि ये ईडी का मामला है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है, ये अच्छी बात नहीं है। जिसने करप्शन किया है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। Co-powered by Hyundai. It is safe if it's 6. बंद करो कान बंद करो कभी भी फट सकता हूँ पटाखा जो लग रहा हूँ दिवाली है तैयार होकर आइए। Hey Alexa, start the robo. Introducing Forbes Robo Vacuum Cleaner. Daily cleaning as easy as 1, 2, 3. It dry vacuums, even wet mops, and recharges automatically. Get the Forbes Robo Vacuum Cleaner from Eureka Forbes. जब एक दिया जलता है, पूरा घर रोशन हो जाता है।
सोचिए, जब आस्था के दीप जगमगाएंगे और प्रभु श्री राम के अयोध्या आगमन का उत्सव मनाएंगे तो कैसा अलौकिक दृश्य होगा, जो अपने आप में एक कीर्तिमान होगा और पूरी राम नगरी डूब जाएगी दिव्य अलौकिक दीपोत्सव की जगमगाहट में। आप भी सपरिवार इस विश्व कीर्तिमान का हिस्सा बने और अपनी अयोध्या नगरी को विश्व मानचित्र पर आने का उत्सव मनाइए। भव्य दीपोत्सव उत्सव त्योहार है, ज्योतिर्मय तेज है, ये रोशनी की धार है, पाप पर प्रहार है, सच की जीत की हुंकार है, दिए से दिया जलाए, राम राज सरकार है, राम 11 नवंबर सरयू घाट पर आइए और प्रभु श्री राम की महिमा गुनगुनाइए। Hello Moto. Motorola, India's best 5G smartphone brand. Following the success of its inaugural edition last year, the popular Autumn Festival returned in Delhi from 3rd to 4th November 2023. Organised by Nagaland Tourism in association with the Union Ministry of Tourism, this festival showcased the essence of the popular Hornbill Festival to the people of the capital. We aim to provide an immersive experience for those unable to visit Nagaland, while also deepening appreciation of those who can. It's a win-win for all, said Temjanim Nalong, Nagaland Minister of Tourism and Higher Education. The Hornbill Festival, scheduled for December 1 to 10th, 2023 in Kisama Heritage Village, showcases Naga tribal culture. It's a great way to experience Nagaland's diversity. Mahadev bombshell tapes aired on Republic become the turning point in the multi-crore betting scam coverage. छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 508 करोड़ ले रहे हैं। किससे ले रहे हैं? एक क्रिमिनल एलिमेंट बैक्ड बेटिंग। Republic's sting and the alleged tapes become the biggest talking point in the Chhattisgarh election campaign. Bhupesh Baghel is on the back foot. The corner chief minister calls the charges against him a conspiracy. Republic accesses videos of Shubham Soni in Dubai. These videos show parties being organized by him. The BJP raises a Republic sting to attack Bhupesh Baghel over corruption allegations. DD calls Republic stings as relevant to the ongoing probe. Right to Republic seeking the stings. We begin this edition of the news with this quick breaking update coming in. Remember, the Chhattisgarh Chief Minister Bhupesh Baghel seems to be facing the heat as the Republic sting operation in the multi-crore Mahadev betting app scam continues to reveal some startling facts. Now, Republic was the first channel to sting the key characters who were aware and involved in the betting scam on Friday. And in multiple parts of our investigation, you have also seen the entire scam getting unraveled, the names of the chief minister being thrown up, the chief minister saying all this is a conspiracy. Now, there is a Dubai angle also that has been uncovered. Republic has stung the insider of the Mahadev app, one who's also said to be a close aide of the main accused, that is Saurabh Chandrakar here. This insider goes on to reveal how the Mahadev app promoters had connection in Dubai also with Dawood and how gold was smuggled as well. Republic investigation in Mahadev betting scam has set the agenda. The sting that mentioned alleged role of CMO in scam,
सर आपको लगता है कि मतलब इतना जानकारी ले रहे हैं, सर आपको लगता है कि उसको सब कुछ पता है कि क्या हो रहा है? देखिए, जैसा मुझे समझ में ये आया कि मैं तो सीएम साहब के काफ़ी लंबी बड़ी बात होती थी, एसएचपी हाउस में आते थे, तो 3-4 चीज़ मुझे क्लियर हुआ कि हो रहा है ये पता था, इंटेंसिटी इतना ज़्यादा है ये नहीं पता। 2 चीज़ें हैं, एक चीज़ तो है कि कुछ फंडिंग हो सकता है, पॉलिटिकल फंडिंग बाकी स्टेट्स पे करनी पड़ी हो, बहुत सारे चुनाव थे। But the betting scam rot runs deep. And another angle that has now been uncovered is the Dubai angle. As our sting cameras rolled, main accused Saurabh Chandrakar's key aide reveals how the entire betting empire was established in Dubai. तो मैम ये डायरेक्टली दुबई नहीं किया, ये डायरेक्ट ये नहीं किया, पहले पूरा चीज को समझा, मैम माइंडेड बहुत है। तो मैम इसके ये जब स्टार्ट किया ना मैम प्लेटफॉर्म को, तो डायरेक्ट दुबई से ये जो दुबई से उसको डायरेक्ट जो तार जोड़ रहे हैं ना, इसका डायरेक्ट दुबई से, ये पहले इंडिया से काम शुरू किया था। मैम ये सॉफ्टवेयर आप भी बनवा सकते हैं, ये चीज़ मतलब ये बहुत बड़े पैमाने पे काम हो गया है। तो इसका मतलब आज से मतलब 2024 लास्ट तक इसका कहना है कि मैं पाब्लो एस्कोबार से भी बहुत ऊंचा जाऊंगा, मतलब वर्ल्ड के ब्लैक मार्केट में मेरा टॉप क्लास में नाम रहेगा मेरा। मैं मतलब ना जब मैं दुबई में था ना, तो विला में वो आया था, तो ड्रिंक नहीं वो मैम वो कहीं नहीं जाता था। अच्छा। वो सिर्फ चुनिंदा लोग से बस मिलता था। अच्छा। जो हाई क्लास के जो उनके पार्टनर लोग थे ना, मैम शेख वेख लोग से उनको बाद में सपोर्ट की, ये बात सही है। और ये इसका जो क्रूज वगैरह है मैम, वाकई में इसका क्रूज उस समय था 2021 में 400 करोड़ का क्रूज लिया था मैम उसने। मेरे को हितेश पंजवानी ने भेजा था। मैम हम लोग पूरा पैनल ऑपरेट करते थे, मतलब हमको एक ब्रांच दे दिया जाता था। वो ब्रांच में मतलब एक लीडर होता था। वो पूरा मतलब हम लोग उस पूरी टीम को ऑपरेट करते चलते थे। कितना टाइम रहोगे सौरभ तुम दुबई में? मैम मैं था करीबन 4.5 महीना था। Saurabh Chandrakar's aide claims he too visited Dubai and witnessed the operations firsthand. अभी सेकंड टाइम में मैं अभी पकड़ा गया था, मैं अभी जेल में था। कब की बात? अभी मैं अभी 11 सितंबर को मैं छूटा मैं। अच्छा। हाँ, जुलाई अगस्त और समझ लीजिए सितंबर में जेल में था मैं क्या हुआ था मैम, मैं जब सेकंड टाइम जब गया था ना, तो मैं सेकंड टाइम जब मेरे को बुलाए थे, तो मैं वहाँ पहले मैं दुबई गया, दुबई से श्रीलंका गया। अच्छा। मैम क्या है ना, दुबई में काम दूसरी जगह इसलिए शिफ्ट कर रहे हैं क्योंकि वीजा का बहुत दिक्कत हो रहा है वहाँ पे दुबई में। हाँ दुबई, पहले क्या रहता था, आप वहाँ बैठे बैठे वीजा को बढ़वा लेते थे। अभी ऐसा नहीं हो रहा है। अभी मतलब उन लोग आस पास के किसी कंट्री में भेजते हैं वीजा बढ़वाने के लिए। मैम दुबई एक्चुअली मैं गया 2 बार। हाँ 2 बार दुबई। पहली बार तुम 2021 में गए? हाँ 2021। दूसरी बार अभी इसी साल में गया। आज 3 साल में अभी तक कम से कम 60 से 70 हजार करोड़ का व्यापार हो चुका है दुबई में। इसकी बहुत सारी मतलब बिजनेस इसका बहुत सारा है दुबई में। इसका सबसे मेन काम है दुबई में गोल्ड का काम है, हवाला का काम है, और जो गोल्ड जो तस्करी होती है दुबई से कलकत्ता के रास्ते जो आती है, उसका इसका बहुत बड़ा काम है इसका वहाँ पे। इसका अफ्रीका से अच्छा कनेक्शन है गोल्ड का, लेकिन अफ्रीका से इसका बहुत तगड़ा कनेक्शन है। अच्छा। हाँ, अफ्रीका की कोई गवर्नमेंट से इसका बहुत अच्छा लिंकअप है इसका। So is there an underworld angle in the biggest betting scam? Mahadev App Insider is alleging Dawood link. Is dirty money from Dubai being pumped in election campaign? ED is gathering information to make a watertight case. Special investigative report by Republic TV. So let's broaden the entire story. Let's get our team of reporters who've been tracking that story very, very closely. Harsha is tracking that story from New Delhi, and she, remember, has been that one reporter who's really stung these characters, and all these characters have a story to tell. We also have Piyush, who's joining us from Raipur at this point. We also have Shavan joining us, and he's been getting us more updates on how the ED is looking at this entire evidence that Republic has also put forward. And I want to begin with Harsha first. Harsha, we've played multiple parts of this sting operation that you've done yourself, and you've been on the ground, spoken to a lot of these people. A lot of these people today have revealed issues and revealed details that Bhupesh Baghel is unwilling to accept, Harsha. He says all this is a political conspiracy. He says these are timed to elections. He says this is political vendetta. But tell me how the story has moved in now from Raipur. It's moved beyond Chhattisgarh. And what is this Dubai angle, Harsha, that we are talking about?
Dipti, so as you rightly mentioned, Bhupesh Baghel has called this entire allegations political vendetta. He said that this is an ugly attempt to malign and tarnish his image. Our reporter Piyush Shori there tried to confront him, but he brushes away from all the questions raised by Republic. But we here know that Enforcement Directorate has the evidence that how Bhupesh Baghel is directly linked with Mahadev app promoters, and huge sum of money was siphoned from Dubai to Raipur, and how political leaders were also involved. In the latest arrest made by Enforcement Directorate Nitish Rana, the close aide of Saurabh Chandrakar also reveals that parallel operators were given commission. In fact, the politicians' commission was 50%, and this all was decided from Dubai. Saurabh Chandrakar's close aide used to give the commission directly to the police men and the political officials as well. The political advisor of CM Bhupesh Baghel used to deal directly on behalf of CM Bhupesh Baghel. This all has come in Republic investigation operation, and now Enforcement Directorate have also got the evidence through Bhim Singh Yadav, Asim Nitish Rana, SI Chandrabhushan Verma and Satish Chandrakar, who all are in the custody of Enforcement Directorate. So we know, Deepthi, here that the nexus is huge and the money was siphoned. In fact, before elections, huge sum of money was demanded from Mahadev betting app promoters directly from the house, which is CM Bhupesh Baghel. Back to you. Okay. Harsha, I think there is some stellar work that has been put forward, and the very fact, Shravan, today that the ED believes that all this is evidence that will help them make their case stronger. Now tell us something, where does the ED stand with the entire case as of now, Shravan, and the very fact that the ED has alleged that 508 crores is the money that possibly has gone into Bhupesh Baghel is a serious enough allegation. But why does the Congress believe that this is a witch hunt? Well, Deepthi, before I answer the question with regards to the Enforcement Directorate, I would just like to bring out more details of the undercover operation conducted by Republic TV. This was a 10-day-long investigation that we did roughly about 2 weeks ago. And we've identified key characters who have been linked directly or indirectly in this particular case, starting with the Superintendent of Police, and thereafter you also have the uncle of the main accused, and of course Saurabh Shukla, whose sting that we have put out. Now, I would like to focus on the latest update or the latest breaking that we are putting out with regards to what exactly is the Dubai link. The Prime Minister has referred to it. Union Ministers, starting with Smriti Irani to Anurag Thakur, all have basically hinted about a Dubai connection. In fact, in a short while from now, we'll also put out this breaking news coming in. We have been able to uncover the Dubai link. An insider who's worked with Saurabh Chandrakar, who spent considerable amount of time with Saurabh Chandrakar in Dubai, tells us as far as the gold smuggling link is concerned, and more importantly, what was the hawala route that was adopted. Because important to point out here is that if you see the latest seizure that was made by the Enforcement Directorate in the state of Chhattisgarh just about few days ago, on Thursday night to be specific, that too came through the hawala route. That's where Shubham Soni, Asim Das, the new characters in this entire investigation emerges. But here, from this testimony, the sting that we have essentially done, the undercover operation that has been done by our intrepid reporter Harsha, clearly brings out the full picture. The Dubai link. Let's put out the breaking news right now that we've got. In fact, I've also spoken to my sources while we were preparing for this story, because remember, we've done a full check of the credibility of this person, whether at all we can take this on face value, because it is important for the Enforcement Directorate, the agency, to really look into all the claims that have been made and to also look for corroborative evidence. But here comes in the bigger picture. All this while, remember, Deepthi, when we spoke about Mahadev app, largely we spoke about the Bollywood link. It was spoken in hushed tones that there is a political link. The undercover operation of Republic TV essentially proves 2 points. One, that this is a police-led, police-guided operation as claimed by the Superintendent of Police. The second, that there is political patronage. And the third very important aspect, that the undercover operation of Republic TV proves that there is a Dubai link
link. And what the political leaders have been talking about, we've taken a step further, getting you more details for our viewers to understand that here is a man who's now talking about the fact that there is a Hawala route that was adopted by Saurabh Chandrakar, and the very fact that this was not only about betting, that there is a gold smuggling angle that has come into picture. And sources within the Enforcement Directorate say that this is a new link that has emerged, and they would be probing this entire matter. So gold smuggling is an angle that wasn't uncovered all this while, that is now out in the open. We have uncovered yet another link, the biggest link right now that has emerged. The truth about the Dubai link, the D gang. In fact, the insider says that there is a link that Saurabh Chandrakar has had with underworld gangster Dawood Ibrahim. Now, how true is it? Remember, it's for the Enforcement Directorate to look into it, but this is a key character. In fact, this is the very sting that the Enforcement Directorate, in a notice that was sent to us early this morning, they've sought for the entire tape. They've also asked us to put out under the Indian Evidence Act, an affidavit to be provided from Republic TV, certifying these tapes, which essentially we would be doing in the next 48 hours. We would be cooperating with the Enforcement Directorate, providing them with all the tapes. Now, coming to the question that you've asked me, Deepthi, with regards to whether at all these characters, can they really be taken on face value? Why is it that the Congress party seems to be completely silent about this entire matter? Because remember, what is it that Mr. Bhupesh Baghel has to say? Bhupesh Baghel essentially says that the Enforcement Directorate has largely been used by the Enforcement Directorate to tarnish his image. There is absolutely no evidence. Having said that, there is no counter evidence that has been provided by the Chief Minister, or for that matter the Chief Minister's office, because all through, if you really look at not just that 508 crore rupees charge that has been leveled by the Enforcement Directorate, that is something that would go through the scrutiny of the court. But before that happens, at least you simply go by the undercover operation of Republic TV, almost all of it reaches the doorstep of the Chief Minister's office. That's why the character called Verma Ji, as referred to by Shubham Soni in that particular sting, also refers to the fact that it was the political advisor allegedly received funding or money from Shubham Soni, a manager of Mahadev app. And that is the reason why the question that we are again and again asking the Congress party as well as the Chief Minister is that whether at all they have any links with this man called Shubham Soni, or for that matter Saurabh Chandrakar. So the biggest link once again been uncovered, starting this on Friday when we began with the 4-part series, which largely spoke about two aspects: the political patronage and the police security. And tonight, we have exposed the Dubai link. Okay, Shaman, I think we do have Piyush also is joining us from Raipur. But before I also get him into this conversation, Shaman, why don't you tell us what happens next? Because, you know, netas say, and especially from the Congress party, they say that this is only time to elections. Now, what does the ED say? What could be the next step? Could Bhupesh Baghel be summoned? Could there be some bit of action? Is he going to be called in for questioning? Well, in fact, Deepthi, perhaps yet another breaking news that I wanted to put out, but we were already on air with this story, but something that we can put out now. Within this week, within the next 4 to 5 days, 2 important summons would be sent out, is what we are given to understand. Already the agency is contemplating looking into the new evidence that has come into picture, especially after Republic TV's 4 stings that have come out. In all likelihood, we are looking at, by way of sources that we've got to know, that there would be summons that would be issued. Now, as far as the Chief Minister is concerned, while at this point in time, we do not have any information with regards to whether at all the agency is planning to summon the Chief Minister. But if you simply go by the procedure, it is important that the Chief Minister is given that opportunity to explain his position in this entire matter. Let's also be very clear about this, that these are allegations that have been leveled by either an approver in this particular case or accused in this case. It is going to be important for the Enforcement Directorate, number one, to basically record the statements of
characters like Shubham Soni under Section 50 of the PMLA Act, which would essentially become perhaps admissible before the court, which hasn't been done so far. So Deepthi, it's important. You will have to take all these testimonies, especially the ones that are the videos that have been doing the rounds, which we've already made a mention of the fact that Republic does not vouch for their authenticity, especially the video where a man claims to be Shubham Soni. That video, for the Enforcement Directorate, it is going to be important that he physically appears, because so far he's just responded through email and has made these sensational revelations. So the Chief Minister will have to be given that opportunity to at least record his statement. So to do that, yes, of course, at some point in time, the Enforcement Directorate will have to send a summon to the Chief Minister so that his statement could also be recorded. His version can also be taken into account, because right now all that you've heard from the Chief Minister is a bit of a political rhetoric, but you do expect that coming in from the Chief Minister during the election season. You would not expect the Chief Minister to make anything public at this point in time with regards to his association, his alleged association with any of these members. So we'll have to wait for that, but procedurally speaking, in all likelihood, yes, the Chief Minister at some point in time will be called in for the questioning by the Enforcement Directorate. But let me just once again underscore the point that so far no summons have been sent to the Chief Minister. And this is also when Shravan, the ED itself has said that they need time to examine what Shubham Soni had said. But clearly these are allegations now in public domain. And that's why the Congress says that all this is a part of a propaganda, and the allegation is that ED is being used to tarnish the image of Bhupesh Baghel just ahead of the upcoming elections in Chhattisgarh. Remember, Chhattisgarh is voting tomorrow and on the 17th. And that's exactly what, Piyush, you've heard from most of the Congress netas, whether it's Bhupesh Baghel there in Chhattisgarh or it's the Congress's top brass here in Delhi. They say this is the vindictive nature. This is the same script that plays day in and day out on the eve of elections. But is that the only alibi, Piyush, that the Congress party has? Why doesn't Bhupesh Baghel come forward to refute these allegations? He can say he doesn't know this man, he's never spoken to him. Forget the fact that this man claims that he's the one, Bhupesh Baghel is the one, Piyush, who asked him, as in this man called Shubham Soni, to leave Chhattisgarh and to go to Dubai. So yes, Deepthi, in fact, this is the same question we tried to ask Bhupesh Baghel when we tried meeting him yesterday at Rajnandgaon, where he had come to present the Congress manifesto. And we had asked him very specifically that for the public interest, for the government he serves, and for the transparency, it was in his interest to come out and speak to Republic in open about what his links with Saurabh Chandrakar and Shubham Soni is. Because as what we have been told by the sources is that Saurabh Chandrakar and Shubham Soni all belong to Durg, and Durg is also the constituency of Bhupesh Baghel. In fact, the beginning of the Mahadev app to begin with started from Durg, and from there it propagated, it grew, and it spread to other areas of Chhattisgarh. So the critics of Bhupesh Baghel and all those investigating agencies officials whom we have had a word with say, to begin with, the Mahadev betting app began from Durg, and it only grew because it did not only had the help of the law enforcement officials, but it also had the help of political links. Now, shockingly, of the ED remand copy which we had accessed, it was revealed very specifically by the investigating agency that through a person named as Asim Das that has now been taken into custody by the Enforcement Directorate, Shubham Soni used to bring this cash and send it to the associates of Bhupesh Baghel. So thereby it became very important for Bhupesh Baghel to come out in the open and give his side of the story. However, he did not. Having said that, we will try to again speak to him about what his clarification in this entire matter is, and we will try to ask him about whether he had any links with the accused that were involved in this Mahadev betting scam, which perhaps is the biggest political scam which has been unearthed by Republic TV. Back to you in the studio. Okay, let's get in, Shravan. For the next question, you know, Shravan, many would say that the timing again is suspicious, coming so close on the eve of the Chhattisgarh elections.
Now, what in case this actually makes Bhupesh Baghel even stronger? Because he's played the victim card. He has said कि मैंने आपको शुरू से कहा है कि enforcement directorate आएगी, they will target us, they will tarnish us. Now, there have been selective leaks from the enforcement directorate without the veracity of these comments being established, without the veracity of perhaps a money trail being established. When the enforcement directorate is leaking out selectively, according to the Congress, this information that 508 crores has gone to the chief minister of Chhattisgarh, isn't the credibility of the enforcement directorate also here at stake? Well, Deepthi, as far as the Congress party calling this as a selective leak, perhaps they aren't really aware of how an investigation actually takes place. Let me just put this into perspective for our viewers to understand. Is this a selective leak to begin with? It's a remand application following the arrest of two key characters who goes by the name of Bhim Singh and Asim Das. That remand application is produced before the court. Remember, any remand application that is produced before the court becomes a public document too, given the fact that this would have been handed over to the accused, the legal team of the accused, and the very fact that this is a document that could be accessed by anyone to begin with. So to say that there is a selective leak would perhaps be a preposterous charge, simply because of the fact that roughly about 20 pages of remand copy is where most of these details are written. In particular, the 508 crore rupees charge. But important to point out here is the fact that they too, the enforcement directorate, if one goes through the fine print of the remand application, they make a clear discussion about, there's a clear discussion that has taken place within the agency too, which has been reflected in the remand application too, that these are charges that have been leveled. These are the statements that have been recorded so far. As far as corroborative evidence is concerned, that would be gathered over a period of time. And that's exactly what is happening. So far, even here at Republic TV, we are only saying that these are charges that have been leveled against the Congress party, and in particular the Chief Minister and Chief Minister staff members. Now, it is for the Congress party to perhaps, if they essentially believe that these are charges that have been leveled to only malign the image of the Chief Minister, then where is the counter evidence? So far, if you really look at it, not a single word has essentially been spoken about the alleged association of the Chief Minister's staff members with Mahadev app owners. Secondly, with regards to the fact that how the state police has been completely compromised. This case was first registered by the Chhattisgarh police. Why is it that the Chhattisgarh police did not feel the importance to actually forget about arrest, even issue a lookout notice that would have prevented the main accused from leaving it? So political rhetoric aside, yes, there is a lacuna which has been completely exposed, and that is the reason why perhaps some very uncomfortable questions have been asked of the Chief Minister, which he's yet to respond to. All right, Shravan, thank you so much. Also, we thank Piyush for reporting that story from Chhattisgarh. That's going to be polling in the next few hours, and Harsha has been leading the coverage on that big story. She is our person who's got you that entire story being uncovered, and she's a reporter who's actually done that sting for us. Harsha, thank you also so much for getting us all those details, and this is just not it. Because the Enforcement Directorate, ladies and gentlemen, believe that the Republic sting is as relevant to the ongoing probe on the other side. We'll tell you more of how it's written now to Republic seeking these stings, because it believes that that's going to help them in the investigation from here on. Hello, Moto. Motorola, India's best 5G smartphone brand. बंद करो कान बंद करो कभी भी फट सकता हूँ पटाखा जो लग रहा हूँ दिवाली है तैयार होकर आइए In the global employability rankings by Times Higher Education UK, only the following 6 institutions from India are ranked amongst the top 230 in the world for having the most employable graduates. IIT Delhi, IISc Bangalore, IIT Bombay, IIM Ahmedabad, IIT Kharagpur and Amity University.
मन चाहे 65 इंच 4K। देख मन, फिसल मत। यही चाहिए, यही लूंगा, यही चाहिए। प्राइस तो देख। तू इस बार भी नहीं लेगा ना? लूंगा ना, अगली दिवाली। अपने मन की विश को मत टालो। SBI कार्ड के फेस्टिव EMI ऑफर्स के साथ जो मन चाहे ले डालो। You are the one. Unmatched, unequaled, unbeatable. LG OLED Evo, the one and only. PC Chandra Jewelers presents Dhanteras Dhan Varsha offer. 25% off on jewelry making charges, 10% off on the value of diamonds and precious stones, 100 rupees off per gram of gold jewelry. Win attractive mega prizes. Offer valid till 11th November. Terms and conditions apply. Visit us today. PC Chandra Jewelers, a jewel of jewels. This Diwali, New Hawkins, good old friends, fun times again. मेहमान आ गए, इनका फैशन जो है खत्म नहीं हो रहा। मिश्रा जी, कुर्ता जच रहा है। थैंक यू मैडम सर। 42 की फिटिंग, वो भी सिर्फ 599 में। आपको कैसे पता? पता तो ये भी है कि स्मार्ट बाजार से खरीदा है। टैग। खाना खा लें? चलिए। आ गया फेस्टिवल सेल 1 से 15 नवंबर। दिवाली फैशन सबसे अच्छे दाम में चाहिए? स्मार्ट बाजार चलिए। लेकिन हमने तो एकदम सॉलिड TMT बार लगाया है। लुंगटा स्टील TMT बार, जंग से न माने हार और मजबूती बेशुमार। लुंगटा स्टील TMT बार है बिल्कुल रेडी। Hey Alexa, start the robo. Introducing Forbes Robo Vacuum Cleaner. Daily cleaning as easy as 1, 2, 3. It dry vacuums, even wet mops, and recharges automatically. Get the Forbes Robo Vacuum Cleaner from Eureka Forbes. ये वाला तो गूगली है। वो वाला? ये वाला तो सिक्सर है। कौन सा फ्लेवर बिजनेस बढ़ाएगा? ये खूबसूरत चिंता आप करिए। बिजनेस लोन की चिंता हम संभाल लेंगे विद ओवरड्राफ्ट लाइक बेनिफिट्स एंड नो कोलैटरल अप टू 75 lakhs. Hello, Moto. Motorola, India's best 5G smartphone brand, brings you the latest breaking news update from across the country only on Republic TV. Mahadev betting scam explodes completely as it becomes #1 election talking point. Enforcement Directorate takes note of Republic sting. ED writes to Republic seeking Mahadev sting tapes. Sources tell Republic underworld link is under investigation as key aid of accused reveal gold smuggling angle. बघेल साहब, बस एक टिप्पणी चाहिए। जनता चाहती है कि आप सुने। सर, महादेव पे आपके आरोप लगे हैं, उसमें टिप्पणी दे दीजिए सर। ये आपकी भले का बोल रहा हूँ मैं। सर, एक सेकंड। On the back foot corner, Chief Minister Bhupesh Baghel calls charges against him a conspiracy. छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी दुबई के माध्यम से हवाला ऑपरेटर्स के सहयोग से अपना चुनाव लड़ रही है। भूपेश बघेल जी जो नाटक कर रहे हैं कि नहीं जानता, उससे 500 करोड़ रुपए वसूल लिया है। BJP takes on the Congress over corruption, seeks answers from Bhupesh Baghel government on the mega scam. को भी वोट मत देना, बहुत चालू पार्टी है कांग्रेस। सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे? बंसल जी बेबंद में दुखी थे, कांग्रेस ने धोखा दे दिया।
Akhilesh versus Congress war of words continues. Akhilesh now claims Congress does not want SP to be part of the India alliance. All right, a breaking news development coming in. Prime Minister Narendra Modi has spoken to Iranian President Ibrahim Raisi, and the two leaders discussed the difficult situation in West Asia and the ongoing Israel-Hamas war. Prime Minister Modi has apprised through this tweet that he spoke to the Iranian leader, where Prime Minister says terrorist incidents, violence and loss of civilian lives are serious concerns. Preventing escalation, ensuring continued humanitarian aid and early restoration of peace and stability are important. He further says, Prime Minister Modi, that he welcomed the progress in our bilateral cooperation, including on the Chabahar port. So there was a bilateral component to the conversation that the two leaders had, Prime Minister Modi and President Ibrahim Raisi of Iran. And apart from that, the two leaders also discussed the West Asia situation. Naturally so. I'm told Professor Madhav Nalapat is joining us over the phone. Very good evening, Professor Nalapat. Important that India engage with all countries, all stakeholders in the region. So the Prime Minister has spoken to the Iranian leadership also. He has earlier spoken to the Jordanian and Egyptian leaders. You think speaking to Iran is the right thing, given the kind of perception that is there around Iranian backing of both Hezbollah and Hamas? Believe that Iran is in any way responsible for what the terrorist act that was committed by Hamas on October the 7th, exactly a month ago. The reality is that neither Iran nor Hezbollah, frankly, has any advantage in entering the conflict. They have seen what is happening to Gaza as a consequence of the terror action of Hamas. And they don't want that to be repeated in Lebanon. And neither does the population of Lebanon. Neither, of course, did the population of Gaza, most of whom are not at all supporters of Hamas. So I don't think Iran was in any way responsible. And I think that was made amply clear, quite frankly, by the Hezbollah chief, Hassan Nasrallah. I listened to her entire speech a few days ago, and he made it very clear that neither Hezbollah nor Iran had anything to do with the October 7 terror attack. So having said that, Iran is an important partner of India, whether it is in the sale of petroproducts, whether it is in ensuring connectivity between India and Central Asia and Afghanistan, or working together in Afghanistan to ensure that all sects are respected, including the Shia, the Sunni, every sect is respected in Afghanistan. India and Iran have been partners for quite some time, and the Iranian people and the Indian people share a very deep historical relationship. So overall, there's no question that Iran is an important player in this region, and there's no question that Prime Minister Narendra Modi did the right thing in having a good and friendly conversation with President Raisi of Iran. Yeah, absolutely. Thank you so much, Professor Madhav Nalapat, for that perspective. Of course, because Iran and India are working closely on the Chabahar port, it's likely that there would be good progress announced soon on that project, giving India an entry port to Central Asia via sea and then, of course, land. But then, given the situation in the Middle East, it's important that India's leadership engages with every country in the region. And Prime Minister there, having earlier spoken to the leaders of Egypt and Jordan and Saudi Arabia and UAE, now is speaking to the Iranian president as well. All right, now moving on and coming back to the focus on the Mahadev app scam and its political fallout in Chhattisgarh. Republic's 7-part expose has caused a massive political quake already. Here's a report on Republic expose on corruption allegation of the decade that has hit the grand old party, the Congress in Chhattisgarh. Take a look.
कि मतलब इतना जानकारी ले रहे हैं, आपको लगता है कि उसको सब कुछ पता है कि क्या हो रहा है? देखिए, जैसा मुझे समझ में ये आया कि मैं तो सीएम साहब के काफ़ी लंबी बड़ी बात होती थी हमेशा, जब भी हाउस में आते थे तो 3-4 चीज़ मुझे क्लियर हुआ कि हो रहा है ये पता था, इंटेंसिटी इतना ज़्यादा है ये नहीं पता। 2 चीज़ें हैं, एक चीज़ तो है कि कुछ फंडिंग हो सकता है, पॉलिटिकल फंडिंग बाकी स्टेट्स में करनी पड़ी हो बहुत सारे चुनाव से। सर लेकिन उनका बेटा खुद इन्वॉल्व था, ईडी के पास ऐसे बेटा और उसकी पत्नी दोनों के नाम पे शेल कंपनियां बनाई गई, जो कॉर्पोरेट अकाउंट से काफ़ी पैसा उनके पास गया। मैं ये भी बोल रहा हूँ कि देखिए 2 चीज़ें हैं, सतीश चंद्राकर और चंद्रभूषण वर्मा, ये दोनों खुल के बोलते थे कि हम चला रहे हैं, ये खुल के नहीं बोलते थे। विनोद जी, हाँ, विनोद वर्मा ने कभी खुल के नहीं बोला कि मैं संरक्षण दे रहा हूँ, बट पूरा संरक्षण था उनकी तरफ से। वो उनके मैं तो इंक्वायरी की नहीं होती तो मैं बोल नहीं सकता, लेकिन इन दोनों का इन्होंने कमिट किया मेरे सामने आके। पता नहीं रस्सी दूसरे खाने बोल रहा हूँ ना, इतना बड़े बड़े लोग हैं, यहाँ तक कि यहाँ के कोई नेता नहीं छुड़ा। मैम ये पूरी सरकार खरीद सकते हैं। खरीद सकते क्या? मुझे लगता है पैसा पूरा सरकार चला रहे हैं ये जो रेड वेड ये सब चीज चल रहा है मैम, ये मेरे को पूरा और टोटल में मेरे को गेम लगता है। तो काम किए पुलिस को हाथ रखना जरूरी है और नेता लोग को ये सबका हाथ है, लेकिन सबसे ज्यादा पैसा सामने छतरी में चुनाव ना सब पैसे की डिमांड कर रहे हैं, सबके सब पैसे की डिमांड कर रहा हूँ वहाँ। अच्छा, और कुछ जैसे कि यहाँ जो पकड़ाए हैं सतीश चंद्राकर और ASI, चलो खोल दी ना, बड़ी मार दो, इसको इतना देता था उसको इतना देता था, ऐसे होगा कहीं कहीं जुगाड़ होगा। उसकी विशेष पार्षद प्रियंका साहू इतना मोटा तो चैन उसके गले में, जितना वो मोटा था मेरी मिसेज पायल पहनती है, 4 उंगली में अंगूठी, ब्रेसलेट, एक सारा भोला बता दिया, सौरभ पसंद के चाचा यही है। ये सबका हाथ है, लेकिन सबसे ज्यादा पैसा सामने छतरी में चुनाव ना सब पैसे की डिमांड कर रहे हैं, सबके सब पैसे की डिमांड कर रहा हूँ। देखिए अभी ये हवाला का जो काम हो रहा है ना, अब देखिए अब इनके पास पैसा कैसे आएगा? प्राइवेट जेट से इनके पास पैसा आएगा, प्राइवेट जेट से आएगा या तो हेलीकॉप्टर के थ्रू इनके पास पैसा आएगा। ऐसा क्यों? मैम देखिए अब ईडी का इतना चल रहा है तो हवाला से भेज नहीं सकते, हवाला से भेज नहीं सकते। मैंने सुना तो कि एयर एम्बुलेंस का भी इस्तेमाल किए हैं ये लोग। किए अभी नहीं, पहले किए हैं, 2022 में किया था, 2022 में उन्होंने किया, एयर एम्बुलेंस का इस्तेमाल किया है, पैसे के थ्रू हुआ। Right, coming up on the other side, BJP takes on Congress over corruption, seeks answers from Baghel government on the mega scam. No end to Akhilesh versus Congress war of words. Akhilesh now claims Congress does not want SP as part of the India alliance. Powered by Uppercase Never Ordinary, AO Smith Water Purifiers. बंद करो कान बंद करो, कभी भी फट सकता हूँ, पटाखा जो लग रहा हूँ। दिवाली है, तैयार होकर आइए। मन चाहे 65 इंच 4K। देख मन फिसल मत, यही चाहिए, यही लूंगा, यही चाहिए। तो देख तू इस बार भी नहीं लेगा ना? लूंगा ना अगली दिवाली। अपने मन की विश को मत टालो। SBI कार्ड के फेस्टिव EMI ऑफर्स के साथ जो मन चाहे ले डालो। खुशियाँ आती हैं उंगली की एक प्यार भरी छुअन से। चाहे प्यार जताना हो या किसी को मनाना हो, बात मनवाना हो या रोते को हंसाना हो, खुशियों की सौगात या चमक की हो बात, अब आपके फिंगर टिप्स पे। WHPjewelers.com, something special for everyone. Just another Virtus on a long drive to get coffee. Spreading goosebumps.
taking on turns and what's around the turn. No drive is just another drive when you're in a Virtus. Volkswagen. New Hawkins ceramic non-stick pressure cooker. Less oil, tasty and healthy. First time in India. Hawkins ceramic non-stick. जब मां सरयू के घाटों को दिव्य दीपमालाओं से सजाया जाए, वो दीपोत्सव है। दीपों की असंख्य ज्योतियां जब अवधपुरी सजाए, वो दीपोत्सव है। जब श्री राम की जय जयकार से संपूर्ण अयोध्या धाम गूंजित हो उठे और हर मन मंत्रमुग्ध हो जाए, वो दीपोत्सव है। 2017 से शुरू हुआ दीपोत्सव हर साल एक नया कीर्तिमान गढ़ रहा है। विकास पथ पर अग्रसर योगी सरकार जहां एक तरफ अयोध्या को आधुनिक बना रही है, वहीं दूसरी तरफ सनातन परंपराओं को संजोने का कार्य कर रही है। दिव्य दीपोत्सव से दैदीप्यमान है श्री राम जन्मभूमि। विकास के प्रकाश से प्रकाशमान है श्री राम जन्मभूमि। आइए आस्था के असंख्य दीपों से सुसज्जित इस दीपोत्सव के साक्षी बने और प्रभु श्री राम का अभिनंदन करें। श्री राम को नमन है, श्री राम का वंदन है। ये वाला तो गूगली है, वो वाला ये वाला तो सिक्सर है। कौन सा फ्लेवर बिजनेस बढ़ाएगा, ये खूबसूरत चिंता आप करिए। बिजनेस लोन की चिंता हम संभाल लेंगे विद ओवरड्राफ्ट लाइक बेनिफिट्स एंड नो कोलैटरल अप टू 75 lakhs। बोल्टास बैको ये 30 दिन तक फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को फ्रेश रखता है और तुमने मान लिया। वैसे भी 30 दिन की सब्जियां कौन खाता है? तू। वोल्टास बेको डुअल कूलिंग रेफ्रिजरेटर की स्टोर फ्रेश टेक्नोलॉजी से सब्जियां 30 दिन तक फ्रेश रह सकती हैं। वोल्टास बेको, टेस्टेड बाय रियल मॉम्स। Sarah, this is your space. Play it your way. Hello, Moto. Motorola, India's best 5G smartphone brand, brings you the latest breaking news updates from across the country, only on Republic TV. Welcome back. Samajwadi Party Chief Akhilesh Yadav continues to attack the Congress. Yesterday, he had openly slammed Congress and said that the party has betrayed the Samajwadi Party. Today, Akhilesh has made a fresh allegation saying that the Congress party does not want Samajwadi in the India alliance in 2024. Take a listen. समाजवादी पार्टी की एक सीट थी जिसने कांग्रेस की भी सरकार बनवाई थी। अगर आपको याद हो, कांग्रेस के लोग जब समर्थन ढूंढ रहे थे, सबसे पहले कांग्रेस पार्टी को समाजवादियों ने समर्थन किया था। उसके बाद गवर्नर साहब ने बुला करके यहाँ पर सरकार बनाने का न्योता दिया था। ये अब उनकी सोच थी, वो नहीं चाहते थे कि समाजवादी उनके साथ आए। पहले से ज्यादा सीटें आएंगी। किसका समर्थन करेंगे? पहले से ज्यादा सीटें आएंगी। जो जाति जनगणना कराएगा, जो 27% पिछड़ों को आरक्षण देगा, उस पर विचार करेगी पार्टी। All right, another short break. On the other side, Enforcement Directorate takes note of Republic sting. ED writes to Republic seeking Mahadev sting tapes. And sources tell Republic underworld link is under investigation as key area of accused reveal gold smuggling angle. Hello, Moto. Motorola, India's best 5G smartphone brand. बंद करो, कान बंद करो, कभी भी फट सकता हूँ, पटाखा जो लग रहा हूँ।
दिवाली है, तैयार होकर आइए। In the global employability rankings by Times Higher Education UK, only the following 6 institutions from India are ranked amongst the top 230 in the world for having the most employable graduates. IIT Delhi, IISc Bangalore, IIT Bombay, IIM Ahmedabad, IIT Kharagpur and Amity University. मन चाहे 65 इंच 4K। देख मन, फिसल मत। यही चाहिए, यही लूंगा, यही चाहिए। तो देख, तू इस बार भी नहीं लेगा ना? लूंगा ना, अगली दिवाली। अपने मन की विश को मत टालो। SBI कार्ड के फेस्टिव EMI ऑफर्स के साथ जो मन चाहे ले डालो। PC Chandra Jewelers presents Dhanteras Dhan Varsha offer. 25% off on jewelry making charges, 10% off on the value of diamonds and precious stones, 100 rupees off per gram of gold jewelry. Win attractive mega prizes. Offer valid till 11th November. Terms and conditions apply. Visit us today. PC Chandra Jewelers, a jewel of jewels. Whenever I had ice cream or cold water, I would experience a sharp shooting sensation, so I just kept ignoring it. Even my hot chai was giving me the same amount of discomfort. My dentist recommended Sensodyne, so now I can be completely carefree and sip my hot cup of tea. It really works. लेकिन हमने तो एकदम सॉलिड TMT बार लगाया है। मतलब लुंगटा स्टील TMT बार, जंग से न माने हार और मजबूती बेशुमार। लुंगटा स्टील TMT बार है बिल्कुल रेडी। New Hawkins Tri-Ply Pressure Cooker. Spices don't stick. Food doesn't burn. New Hawkins Stainless Steel. Dinosaur Kanda. Oh, damn! World War I की antique gun. Oh, damn! फिर दीवार तोड़ो, फिर बनाओ। बर्जर डैम स्टॉप लगाओ। इसका नैनो सिलिकॉन टेक्नोलॉजी चढ़ा वाटर प्रूफिंग का कवर जो बिना दीवार तोड़े डैम रिपेयर करे। बर्जर डैम स्टॉप। नो झंझट, डैम स्टॉप फटाफट। कर निवेश खुद की हिम्मत में आसमां को धरती पे लाचे। जब भरोसे की हो बैकिंग तो निवेश का हर फैसला बन जाता है बुलंद। इसीलिए हम खड़े हैं हर निवेश के लिए, हर निवेशक के साथ। SBI Securities. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. बोल्टास बैको ये 30 दिन तक फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को फ्रेश रखता है। और तुमने मान लिया। वैसे भी 30 दिन की सब्जियां कौन खाता है? तू। वोल्टास बेको डुअल कूलिंग रेफ्रिजरेटर की स्टोर फ्रेश टेक्नोलॉजी से सब्जियां 30 दिन तक फ्रेश रह सकती हैं। Voltas Beko, tested by real moms. With 49 studios, Woodfill has revolutionized the Indian modular kitchen industry by bringing the best of Europe for Indian homes. Visit the nearest store for a new design and a quote. Hello, Moto. Motorola, India's best 5G smartphone brand. Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal on Monday chaired a high-level meeting with cabinet members and officials as the air quality dipped further in the city. The meeting was attended by Delhi Environment Minister Gopal Rai, Ministers Atishi and Saurabh Bharadwaj and officials of the concerned departments. The BJP slammed the AAP for over Delhi's severe pollution, saying the national capital has become a gas chamber because of Chief Minister Arvind Kejriwal and AAP's polluted politics. दिल्ली की आबो हवा आज फिर से जहरीली है। फिर से एक बार लगातार दिल्ली का AQI सीवियर कैटेगरी में है। फिर से एक बार दिल्ली का AQI कहीं 500, कहीं 600, कहीं 700 पार हो चुका है और कहीं पर तो 999 तक जा रहा है। उसके आगे तो मीटर बढ़ता भी नहीं है। दिल्ली का AQI जो है वो 5 सालों में सबसे खराब स्थिति में आ पहुंचा है। ये इसलिए हुआ है, दिल्ली आज गैस चेंबर इसलिए बनी है क्योंकि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने पिछले 8-9 वर्षों में केवल प्रदूषित राजनीति की है, दोषारोपण की राजनीति की। With the spike in air pollution, Delhi Environment Minister Gopal Rai has blamed the stubble burning in Haryana and Uttar Pradesh for the rise in Delhi's AQI. बीजेपी के सरकारों के निकम्मेपन की मार दिल्ली झेल रहा है।
दिल्ली सीएनजी की बस सड़क पे दौड़ा रहा है, लेकिन डीजल की बसें आज भी भाजपा की सरकारें दौड़ा रही हैं, उसका मार दिल्ली झेल रहा है। दिल्ली के अंदर जनरेटर सेट नहीं है, लेकिन पूरे यूपी और हरियाणा के अंदर जनरेटर सेट के धुओं की मार दिल्ली झेल रहा है। दिल्ली के अंदर जो काम हुए हैं, अगर भाजपा के लोग इसी समय जो काम चल रहे हैं ना उतना ही काम कर दें तो उससे भी दिल्ली की काफी फलाह हो जाएगा। The Delhi government has decided to reintroduce the odd even rule from November 13 to 20th in view of the concerns of deterioration in air quality. Delhi Environment Minister Gopal Rai said that after a high-level meeting, the decision will be implemented a day after Diwali, which will be celebrated on November the 12th and will continue for a week. Congress leader Navjot Singh Sidhu took a jibe at Punjab Chief Minister Bhagwant Mann, saying that Punjab is crumbling under AAP's governance. The Congress leader attacked Congress, the AAP, over corruption in the state and looting the people of Punjab. BJP leader and Union Minister Rajiv Chandrasekhar on Monday said he agreed with Samajwadi Party Chief Akhilesh Yadav's comments made against the Congress party. Chandrasekhar noted that Yadav's remarks were apt, claiming that the Congress has taken a U-turn after having announced allowance for unemployed Karnataka youth in their poll manifesto. कि जो आदमी गाड़ी चला रहा है, गाड़ी जिसकी गाड़ी जो ड्राइवर है वो भाजपा नेता के करीबी, जो गाड़ी पकड़ी गई है वो भारतीय जनता पार्टी बड़े नेता के रिश्तेदार की गाड़ी। तो ये गड़बड़ झाला क्या है, ये गोरख धंधा क्या है? मतलब भाजपा नेता के करीबी ड्राइवर, भाजपा नेता के करीबी का गाड़ी और ईडी का बयान और भारतीय जनता पार्टी जो वीडियो जारी कर रहा है। तो कुल मिला के ये है कि आप लोग 17 तारीख तक के आनंद लीजिए। बहुत सारे वीडियो, बहुत सारी विज्ञप्ति इस प्रकार आने वाली है, निश्चिंत रहिए, 17 तारीख तक चलेगा। Powered by Uppercase Never Ordinary, AO Smith Water Purifiers. अरे बंद करो, कान बंद करो, कभी भी फट सकता हूँ, पटाखा जो लग रहा हूँ। दिवाली है, तैयार होकर आइए। मन चाहे 65 इंच 4K। देख मन, फिसल मत, यही चाहिए, यही लूंगा, यही चाहिए। तो देख, तू इस बार भी नहीं लेगा ना? लूंगा ना, अगली दिवाली। अपने मन की विश को मत टालो। SBI कार्ड के फेस्टिव EMI ऑफर्स के साथ जो मन चाहे ले डालो। You are the one. Unmatched, unequaled, unbeatable. LG OLED Evo, the one and only. ये वाला तो गूगली है। वो वाला? ये वाला तो सिक्सर है। कौन सा फ्लेवर बिजनेस बढ़ाएगा? ये खूबसूरत चिंता आप करिए। बिजनेस लोन की चिंता हम संभाल लेंगे with overdraft like benefits and no collateral up to 75 lakhs. Poems, not my thing. Are short stories your thing? Yeah. I actually have some other app. Phone Pay accepts money from any app, whatever's your thing. Actually, I'll take this thing also. Yeah. The boldly stylish and comfortable Honda Elevate. You're the chase. मैडम सर, छुट्टी चाहिए थी। क्यों? दिवाली की गिफ्ट्स खरीदने। अब सबकी पसंद अलग अलग, तो 10 जगह घूमना पड़ेगा ना। मिश्रा जी, बताइए। स्मार्ट बाजार फेस्टिवल सेल में हर गिफ्टिंग आइटम एक ही जगह मिल जाएगा, वो भी सबसे कम दाम में। तो
अब छुट्टी का क्या करोगे? सोच के आई है, चलिए। आ गया फेस्टिवल सेल 1 से 15 नवंबर। इस दिवाली सारी गिफ्ट आइटम सबसे कम दाम पे चाहिए। स्मार्ट बाजार चलिए। This Diwali, New Hawkins, good old friends, fun times again. कर निवेश खुद की हिम्मत में आसमां को धरती पे लाचे ठा। जब भरोसे की हो बैकिंग तो निवेश का हर फैसला बन जाता है बुलंद। इसीलिए हम खड़े हैं हर निवेश के लिए, हर निवेशक के साथ। SBI Securities. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Hey Alexa, start the robo. Introducing Forbes Robo Vacuum Cleaner. Daily cleaning as easy as 1, 2, 3. It dry vacuums, even wet mops, and recharges automatically. Get the Forbes Robo Vacuum Cleaner from Eureka Forbes. Sarah, this is your space. Play it your way. Hello, Moto. Motorola, India's best 5G smartphone brand, brings you the latest breaking news update from across the country only on Republic TV. Hello and welcome you watching the biggest story tonight with me, Shavan Singh. Ladies and gentlemen, yet another expose by Republic TV. All this while, a lot was spoken about this Dubai connection, but little did anyone know what exactly is this Dubai connection and why exactly has the Prime Minister and Union Ministers all been referring to an alleged link that the Chief Minister of Chhattisgarh has had with Dubai through the Mahadev app owners. That's yet another link uncovered by Republic TV's SIT. All this and much more on this edition of Biggest Story tonight. But up first, these are the headlines we're tracking for you at this hour. Mahadev betting scam explodes completely as it becomes the #1 election talking point. Enforcement Directorate takes note of the Republic sting. ED writes to Republic seeking Mahadev sting tapes. Sources tell Republic underworld link is under investigation as key aid of the accused reveals gold smuggling angle. Massive impact of Republic Mahadev investigation. ED sources tell Republic summons to be issued soon. Chief Minister of Chhattisgarh Bhupesh Baghel on the back foot. Corner Chief Minister calls charges against him a conspiracy. BJP takes on Congress over corruption, seeks answers from Bhupesh Baghel's government on mega scam. No end to Akhilesh versus Congress war on words. Akhilesh now claims Congress does not want Samajwadi Party to be part of the India alliance. Ladies and gentlemen, Republic was the first and in fact the only channel to sting the key characters who were aware and involved in the betting scam on Friday. Now, in next part of Republic's investigation, the Dubai angle has been uncovered. Republic stung an insider of Mahadev app, one who is also said to be a close aide of main accused Saurabh Chandrakar. Now, this insider went on to reveal how Mahadev app promoters had connection in Dubai, also with the underworld gangster Dawood Ibrahim, and how gold was being smuggled in as well. So this is the Dubai link that
Bharatiya Janata Party leaders have been referring to without putting out much details. It's our investigation which essentially uncovers the Dubai link. Take a look at this investigative report by my colleague Harsha. Republic investigation in Mahadev betting scam has set the agenda. The sting that mentioned alleged role of CMO in scam. सर आपको लगता है कि जब इतना जानकारी ले रहे हैं सर आपको लगता है कि उसको सब कुछ पता है कि क्या हो रहा है? देखिए जैसा मुझे समझ में ये आया कि मैं तो सीएम साहब के काफ़ी लंबी बड़ी बात होती थी हमेशा जब भी हाउस में आते थे तो 3-4 चीज़ मुझे क्लियर हुआ कि हो रहा है ये पता था, इंटेंसिटी इतना ज़्यादा है ये नहीं पता। 2 चीज़ें हैं, एक चीज़ तो है कि कुछ फंडिंग हो सकता है पॉलिटिकल फंडिंग बाकी स्टेट्स में करनी पड़ी हो बहुत सारे चुनाव से। But the betting scam rot runs deep, and another angle that has now been uncovered is the Dubai angle. As our sting cameras rolled, main accused Saurabh Chandrakar's key aide reveals how the entire betting empire was established in Dubai. तो मैम ये डायरेक्टली दुबई नहीं किया, ये डायरेक्ट ये नहीं किया, पहले पूरा चीज को समझा। मैम माइंडेड बहुत है तो मैम इसके ये जब स्टार्ट किया ना मैम प्लेटफॉर्म को तो डायरेक्ट दुबई से ये जो दुबई से उसको डायरेक्ट जो कार जोड़ रहे हैं ना इसका डायरेक्ट दुबई से, ये पहले इंडिया से काम शुरू किया था। मैम ये सॉफ्टवेयर आप भी बनवा सकते हैं ये चीज़, मतलब ये बहुत बड़े पैमाने पे काम हो गया है। तो इसका मतलब आज से मतलब 2024 लास्ट तक इसका कहना है कि मैं पाब्लो एस्कोबार से भी बहुत ऊंचा जाऊंगा, मतलब वर्ल्ड के ब्लैक मार्केट में मेरा टॉप क्लास में नाम रहेगा मेरा। मैं मतलब ना जब मैं दुबई में था ना तो विला में आया था तो ड्रिंक नहीं वो मैम वो कहीं नहीं जाता था। अच्छा। वो सिर्फ चुनिंदा लोग से बस मिलता था। अच्छा। जो हाई क्लास के जो उनके पार्टनर लोग थे ना मैम शेख वेख लोग से उनको बाद में सपोर्ट की, ये बात सही है। और ये इसका जो क्रूज वगैरह है मैम वाकई में इसका क्रूज उस समय था 2021 में 400 करोड़ का क्रूज लिया था मैम। मेरे को हितेश पंजवानी ने भेजा था। मैम हम लोग पूरा पैनल ऑपरेट करते थे, मतलब हमको एक ब्रांच दे दिया जाता था। तो ब्रांच में मतलब एक लीडर होता था। वो पूरा मतलब हम लोग उस पूरी टीम को ऑपरेट करते चलते थे। कितना टाइम रहोगे सौरभ तुम दुबई में? मैम मैं था करीबन 4.5 महीना था। Saurabh Chandrakar's aide claims he too visited Dubai and witnessed the operations firsthand. अभी सेकेंड टाइम में मैं अभी पकड़ा गया था, मैं अभी जेल में था। कब की बात? अभी मैं अभी 11 सितंबर को मैं छूटा मैं। अच्छा। हाँ जुलाई अगस्त और समझ लीजिए सितंबर में जेल में था मैं क्या हुआ था मैम, मैं जब सेकंड टाइम जब गया था ना तो मेरे को सेकंड टाइम जब मेरे को बुलाए थे तो मैं वहाँ पहले मैं दुबई गया, दुबई से श्रीलंका गया। अच्छा। मैम क्या है ना दुबई में काम दूसरी जगह इसलिए शिफ्ट कर रहे हैं क्योंकि वीजा का बहुत दिक्कत हो रहा है वहाँ पे दुबई में। हाँ दुबई पहले क्या रहता था आप वहाँ बैठे बैठे वीजा को बढ़वा देते थे। अभी ऐसा नहीं हो रहा है। अभी मतलब उन लोग आस पास के किसी कंट्री में भेजते हैं वीजा बढ़वाने के लिए। मैम दुबई एक्चुअली में गया 2 बार। हाँ 2 बार दुबई। पहली बार तुम 2021 में गए? हाँ 2021। दूसरी बार अभी इसी साल में गया। आज से 3 साल में अभी तक कम से कम 60 से 70 हजार करोड़ का व्यापार हो चुका है दुबई में। इसकी बहुत सारी मतलब बिजनेस इसका बहुत सारा है दुबई में। इसका सबसे मेन काम है दुबई में गोल्ड का काम है, हवाला का काम है। और जो गोल्ड जो तस्करी होती है दुबई से कलकत्ता के रास्ते जो आती है उसका इसका बहुत बड़ा काम है इसका वहाँ पे। इसका अफ्रीका से अच्छा कनेक्शन है गोल्ड का, लेकिन अफ्रीका से इसका बहुत तगड़ा कनेक्शन है। अच्छा। हाँ अफ्रीका की कोई गवर्नमेंट से इसका बहुत अच्छा लिंकअप है इसका। So is there an underworld angle in the biggest betting scam? Mahadev App Insider is alleging Dawood link. पाकिस्तान से इनका जो लिंक बोल रहे हैं मैम है, दाऊद से इनका कनेक्शन है, नो डाउट है इनका, क्योंकि मैम बिना दाऊद के सपोर्ट के वो काम इतना बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। दाऊद को जो हर महीने पैसा जाता है वो सब हवाला के जरिए पहुंच रहा है, सब टोटल हवाला है, कुछ नहीं है। मेन हवाला ही तो है मैम। ये जो पैसा जो इतना तो करोड़ रुपए जो जा रहा है सब हवाला के थ्रू पहुंच रहा है। Is dirty money from Dubai being pumped in election campaign? ED is gathering information to make a watertight case. Special investigative report by Republic TV. Let me also bring in my colleague Harsha, our intrepid reporter who's got us this investigation. Harsha, this was the last part of our investigation that we are now finally putting it out for all our viewers to witness. The Prime Minister, Union Ministers all spoke about an alleged Dubai link.
no one really knows what this link is all about. Tonight, we are putting it out for everyone to witness. Now, this is an allegation that has been leveled by an insider. He says that he was not only involved in the Mahadev app, but also gold smuggling and also the Hawala route. First, tell our viewers, who exactly is this person? Why is he so very important for the investigation? And finally, what is it that he says with regards to the gold smuggling and the Hawala route? Shown on our screen is Saurabh Shukla, one of the accused and also the beneficiaries in the Mahadev betting app. This guy went to Dubai twice in 2022, and this year in September only he was released. He was in jail. He was caught in August, and for almost 1 month he was in Raipur jail. He was released on 14th of September only, and he was telling all this because he's directly connected to Raj Gupta, Deepak Nepali and other close aides of Saurabh Chandrakar. He was in Dubai in 2022 for almost 6 months. He worked for Saurabh Chandrakar in a panel. He clearly stated that there were Hawala operators, the jewelry shop owners and also the textile owners who were dealing in gold smuggling, and this connection is directly linked with Saurabh Chandrakar. The gold smuggling started in 2021 only, and from 2019 till 2022, there were thrice and 4 times when Saurabh Chandrakar visited Bhilai, and not even once police issued a lookout circular or arrested him. It was all in the behest of Saurabh Chandrakar that police officials were shielding him, were protecting him, and even the top policemen and the top political officials, bureaucrats knew that when Saurabh Chandrakar came, the police official last saw Saurabh Chandrakar in Bhilai in June 2022, and in August we know that Enforcement Directorate first came to the SP Abhishek Pallav to take over the entire case and the evidences which police have got. But the Dubai link is a huge link because a huge sum of money, Shawan, was siphoned directly from Dubai to Raipur, and also we have got to know that some amount was also sent from Raipur to Delhi. The air ambulance route was also used by Congress leader, by Bhupesh Baghel in the year 2022 twice. So Dubai link is huge, and that also we have revealed in our investigation. Saurabh Shukla has clearly stated that how he was closely linked and associated with Raj Gupta and the other 4 and 5 close aides of Saurabh Chandrakar who have now fled from the country, and Enforcement Directorate is already probing. The investigation is underway to catch all those who are linked with this entire scam, which is directly linked with Dubai. Back to you. Very much, Harsha, for getting us the latest details. We'll also try and go across to my colleague Piyush, who's getting us the latest from Raipur, because what has essentially happened so far is that there has been only 2 statements that have been issued by the Chief Minister of Chhattisgarh. One with regards to the 508 crore rupees charge that has been levelled by the Enforcement Directorate after recording the statement of Asim Das, and the second is once again hitting out at the Bharatiya Janata Party as well as the investigative agency. But so far, not a single word has really come in from the Chief Minister of Chhattisgarh with regards to the undercover operation carried out by Republic TV, which essentially proves 2 very key aspects. One, with regards to the fact that there could be a police angle to it. The very fact that you have the Superintendent of Police saying that this is a police-led, police-guided operation. And the second aspect is whether at all there is some sort of a political patronage or not. It certainly emerges from this investigation that it reaches at least the doorstep of the Chief Minister. In fact, let's also look at the other part of the investigation. On Sunday, Republic aired part 1 of Mahadev bombshell tapes in which a man claiming to be Mahadev book owner, Shubham Soni, implicated the Chief Minister's office. Now we bring to you part 2 and part 3 of the tape in which he names Chief Minister Bhupesh Baghel and claims that the Chief Minister told him to start the operations in Dubai. Take a look at this report. तो वो बोले कि चलो अब मिलवाता हूँ. हम गए साथ में, वहाँ पर सीएम सर और बिट्टू भैया से हमारा मीटिंग हुआ. ये चीज़ का मैंने पूरा अपना लिख के दे दिया है उसमें रिटर्न स्टेटमेंट में कि क्या हुआ वहाँ, कैसे हुआ, क्या किस बात का डील हुआ, हर चीज़ का
स्टेटमेंट मैंने दे दिया अपने रिटर्न डॉक्यूमेंट में। मैं सितंबर 2020 में दुबई आया। जैसा कि मेरा मीटिंग हुआ था सीएम साहब से, तो उन्होंने बोला था कि दुबई जाओ, अपना काम बढ़ाओ और वहाँ मीटिंग करो जाके। तो मैं गया और मीटिंग भी हुआ मेरा कई लोगों से। तो 2 लोग के साथ मेरा यहाँ बिजनेस भी सेट हो गया और अच्छा खासा काम भी बढ़ने लगा, सब कुछ ओके चलने लगा। जैसा सीएम साहब बोले थे सब बढ़िया हो गया। उसके बाद मुझे यहाँ 2 लोग मिले जो भी मेरे भिलाई के ही थे, सौरभ और रवि। तो वो लोग से मैं मिला, उनका यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम था। तो मैंने सोचा मैं भी काम चालू कर लेता हूँ, यहाँ अच्छा काम है ये चीज़। तो मैं उन्हें अपना पर्सनल एडवाइज़र रख लिया ये काम पे, कंस्ट्रक्शन के काम पे। अब इसके बाद हुआ ये कि फेमस ये लोग होने लगे महादेव बुक के नाम से। मैंने बुक खड़ा किया, मैंने बुक चालू किया, फेमस ये लोग हो रहे हैं। मैंने 0 से चालू करके पूरा ओके आसमान तक पहुंचाया इस बुक को, और फेमस ये लोग हो रहे हैं। बताओ, ऐसा थोड़ी होता है। ठीक है, उनको आशीर्वाद नहीं था सीएम साहब का, इसलिए उनको वो फेमस हो गए। ये गलत बात है ना। इस चीज़ का बुरा लगता है बहुत ज़्यादा। एक बात बता रहा हूँ आपको, हमारे सीएम साहब का एक आदत है बघेल जी का, कि वो कुछ दिन में पलटी मार देते हैं, और ऐसा मेरे साथ हुआ है। जब उन्होंने मुझे दुबई भेजा कि वहाँ जाके अपना काम सेटल करो, लोगों से मिलो, तो मैं गया, मिला भी, और मेरा काम भी बहुत अच्छा सेट हो गया। उसके बाद हुआ ये कि कुछ दिन तक तो अच्छा चला, उसके बाद फिर प्रॉब्लम आने लगा मेरे काम पे। हमारे लोग अंदर होने लगे और छूट ही नहीं रहे वो लोग। मैं फ़ोन पे फ़ोन लगाया जाता हूँ, परेशान हो रहा हूँ। तो वापस मैंने वर्मा जी को फ़ोन लगाया, तो बोले कि चलो ठीक है, आप भिलाई आ जाओ, आपका मीटिंग कराते वापस से। अब मैं डर से पहुँच गया भिलाई कि लोग बाहर आ जाएंगे करके। तो वर्मा जी से मैं मिलने गया। वर्मा जी और गिरीश तिवारी मुझे मिले रायपुर एयरपोर्ट रोड पे। वो फिर लेके गए, वर्मा जी तो वहीं उतर गए, फिर गिरीश तिवारी मुझे लेके गए हमारे उस समय के एसपी हैं प्रशांत अग्रवाल जी, उनसे जाके मेरा मीटिंग कराया। अब मैं उनको अपना प्रॉब्लम पूरा शेयर किया, तब वो फ़ोन घुमाए और उसके बाद वो बात किए। लाउड स्पीकर में ही था फ़ोन, तो सीधा सीधा आवाज़ तो समझ आ ही रहा था, हमारे बघेल जी का ही आवाज़ था वो। तो पूरा प्रॉब्लम बताने के बाद उन्होंने वहाँ से ये बोला कि कैसे रे सोनी, तेरे को मैं वहाँ भेजा था दुबई काम सेट करने के लिए, तू तो मालिक बन के बैठ गया है, शेख बन गया क्या वहाँ का। अब मैं कुछ बोल ही नहीं पाया, एकदम मुंह उदास सा हो गया। तो मैंने यही बोला कि सर हम तो छोटे आदमी हैं, आप बताओ क्या करना है, जैसा बोलोगे हम वैसा करेंगे। तो बस वो यही बोले कि ठीक है, आप प्रशांत जी से बात कर लो, वो आपको बता देंगे क्या कैसे करना है। मैं बोला ठीक है सर। उसके बाद हम चल गए वहाँ से। उसके बाद प्रशांत अग्रवाल जी से तो डील हो गया था कि क्या कैसे देना है, और वो सब तो मैंने अपने रिटर्न स्टेटमेंट में भी बता दिया है। उसमें लिखा भी हुआ है सब कुछ रिटर्न स्टेटमेंट में, क्या मैंने किसको दिया है, कैसे दिया है, किसके सोर्स से दिया है, हर कुछ लिखा हुआ है। अब इतना पैसा देने के बाद भी मेरा काम बढ़ नहीं रहा है, अंदर हो रहे हैं लोग, तो क्या मतलब, पूरा फंस गया हूं मैं पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर यार। तो प्रशांत अग्रवाल जी के जब मेरा मीटिंग हुआ उसके बाद से मैंने अब तक 508 करोड़ रुपए दे चुका है। हमारे बघेल साहब, बिट्टू भैया और उनके जो लोग हैं उनको मैंने 508 करोड़ रुपए दिया है। उसके बाद भी मेरा काम नहीं हो रहा है, मेरे काम में डिस्टर्बेंस हो रहा है इतना ज़्यादा, मैं इतना परेशान हो गया हूँ इस सिस्टम से। अब क्या करूँ समझ नहीं आता है। ज़बरदस्ती का मेरे ऊपर ईडी का कार्रवाई चालू हो गया है। अब ऐसा कुछ होगा मेरे साथ, इतना पैसा देने के बाद भी, तो मैं क्या करूं बताओ। अब बस मेरा यही लास्ट रिक्वेस्ट है हमारे इंडियन गवर्नमेंट से कि वो बस इतना हेल्प कर दे मेरी, कि मैं अब फंस चुका हूँ इस पॉलिटिकल सिस्टम में, मैं इससे बाहर निकलना चाहता हूँ। और आपको जैसा एविडेंस चाहिए, जैसा प्रूफ चाहिए, मैंने जैसे जैसे पैसा उनको दिया है, हर चीज़ का मेरे पास एविडेंस, प्रूफ, हर चीज़, एक एक चीज़ पड़ा हुआ है। तो मैं यही चाहता हूँ कि बस मेरा हेल्प कर दीजिए वहाँ से। मैं भी इंडिया जाना चाहता हूँ वापस। मुझे डर लगता है यहाँ से इंडिया जाने में। मैं वहाँ जाना चाहता हूँ वापस, वहीं रहना चाहता हूँ, लेकिन मेरा हेल्प कीजिए।
यही रिक्वेस्ट है मेरे इंडियन गवर्नमेंट से यार। Well, in fresh round of tapes the Republic has scooped in, which in the alleged video, which is yet to be probed by the agencies as per sources, and of which Republic makes no endorsement vis-a-vis the claims that have been made by the individual. Now, the man claiming to be Shubham Soni goes on to allege that it was the Chief Minister Bhupesh Baghel who asked him to go to Dubai and settle his business. The man claiming to be Shubham Soni, owner of the Mahadev app, has revealed alleged involvement of Chhattisgarh Chief Minister. The tape also shows Shubham Soni to be in Dubai. Soni can be seen claiming how he was allegedly asked by the Chief Minister to shift operations to Dubai. Baghel has so far denied Soni's claims. Latest revelations has raised the heat of the Congress party and Baghel government in the state. Take a look. अरे यार, शुभम सारों को पता है कि रवि और सौरभ मालिक है महादेव ऐप के, और साले 2 बियर खींच के तू बन जाता है मालिक है। मैं 2 बियर खींचूं, 4 बियर खींचूं, मालिक तो मैं ही हूँ महादेव बुक का यार। नहीं कैसे है तू? कैसे क्या? तू इतना दिन दूर था भी मेरे से, इसलिए तेरे को मेरे पता नहीं है। तेरे को तू ऐसा बात कर रहा है। तू आ गया वो सोशल मीडिया देख के, जैसे लोग हल्ला कर रहे हैं सोशल मीडिया में कि कौन ओनर है, कौन है, और तू किसका बात कर रहा हो वो भी मेरे को पता है। जहां तक मेरे को पता है सौरभ और रवि का ही बात कर रहा होगा तू, है ना? पेपर तो मेरे पास है ना भाई, महादेव बुक ओनर तो मैं हूँ, पेपर तो मेरे पास है। देखेगा क्या? मोबाइल में पड़ा हुआ है। 4 साल से मेहनत क्यों हंस रहा है यार? 4 साल से मेहनत क्यों भाई? जमीन से आसमान तक पहुंचाओ बुक को। नहीं, इतनी बड़ी शादी की उन्होंने, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तुम्हारे पैनल वाले पकड़े गए, पैनल मेंबर, उन्होंने किसी ने तेरा नाम नहीं लिया, सब रवि और सौरभ का नाम ले रहे हैं, तो तेरी कहां से हो गई भाई? अरे भाई वो मेरा, पहली बात तो शादी को जोड़ने का जरूरत नहीं महादेव बुक से। ऊपर से तेरे को बता रहा हूं, मैंने यूज किया शादी को प्रमोशन के लिए अपने, ठीक है, मैंने यूज किया उसको और मेरा काम भी हुआ बहुत अच्छे से। और क्या बोल रहा, कौन पैनल पकड़ा गया क्या? अरे जो तुम्हारे पैनल मेंबर पकड़े जाते हैं, फ्रेंचाइजी वाले। पैनल मेंबर पकड़ा ही नहीं सकते भाई। मेरे ऊपर ऐसे आदमी का आशीर्वाद है ना, और मैं मिल के आया हूं ऐसे आदमी से कि मेरा एक आदमी पकड़ा नहीं सकता। पकड़ाया भी, सुबह पकड़ाएगा शाम को छूट जाएगा। कौन आदमी? एक ही तो यार, अपने काका साहब। और कौन? काका साहब? काका साहब कौन? सीएम है यार, और कौन? अच्छा तो क्या? अच्छा, तू क्या हल्के में लेकर रखता है क्या मेरे को? अच्छा, सीएम घर आया सीएम तेरे? सीएम घर नहीं आया भाई, मिलने आया तेरे से। सीएम मिलने नहीं आया, मैं गया था। और तू जानता ही होगा वर्मा को और गिरीश तिवारी को, सुना होगा ना मेरे मुंह से, कभी नाम सुना ही होगा एक आध बार। बस उन्होंने ही मेरा एसपी से सेटिंग करवाया और वहीं मेरा मीटिंग हुआ वहां पे, और वहीं से मेरे को जो आशीर्वाद मिला है, इतना बड़ा काम मेरा तभी हुआ है। लेकिन सीएम क्यों करेगा यार? क्या बोल रहा है तू? क्यों करेगा कोई इतना सब? किसके लिए? पैसे के लिए और काय के लिए? इतना बड़ा भाई, देख छत्तीसगढ़ छोटा था स्टेट, वहां तो कुछ अमाउंट भी देगा तो बहुत बड़ा होता है, और मैंने ऐसा छोटा मोटा अमाउंट तो दिया नहीं है। जाने का क्या अमाउंट कितना दिया है? बताओ। 450 से 500 रुपए तक का दिया हुआ है उधर अमाउंट, तब जाके आशीर्वाद मिला बेटा। ऐसे थोड़ी काम चल रहा है। So what's the response coming in from the Chief Minister of Chhattisgarh? Cornered on Mahadev betting scam, Chief Minister Bhupesh Baghel has only evaded the Republic's questions. The Congress top brass is yet to issue a statement on the corruption allegations against Chhattisgarh Chief Minister Bhupesh Baghel. Listen in to what the Chief Minister had to say when he was confronted by my colleague Piyush Ore.
वकील साहब बस एक टिप्पणी चाहिए, जनता चाहती है कि आप सुने सर महादेव पे आपके आरोप लगे हैं, उस पर टिप्पणी दे दीजिए सर, ये आपकी भलाई का बोल रहा हूँ मैं सर। एक सेकंड सर महादेव पे लगा हुआ सर, अभी रुक जाओ, लंच के लिए जाओ। सर महादेव पे हुआ सर, एक टिप्पणी दे दीजिए सर। वकील जी एक टिप्पणी सर, एक टिप्पणी चाहिए सर। एक तो ये है, मैं इंडिविजुअल किसी को नहीं दे रहा हूँ। दूसरा, एक मिनट सुनो, आज घोषणा पत्र जारी किया है, दूसरे सब्जेक्ट में बात नहीं होगी। धन्यवाद सर, एक टिप्पणी सर, बस एक आपके भले के लिए। That's all that we could pack in this edition of Biggest Story tonight. On the other side, BJP takes on the Congress over corruption, seeks answers from Bhupesh Baghel government on the mega scam. No end to Akhilesh versus Congress war of words. Akhilesh now claims Congress does not want Samajwadi Party to be part of the India alliance. Hello, Moto. Motorola, India's best 5G smartphone brand. Powered by Century Ply Club Prime. Raho Befikar. Co-powered by Mankind Pharma brings premium DMF quality medicine for India. Levi's for now, for a lifetime. बंद करो, कान बंद करो, कभी भी फट सकता हूँ, पटाखा जो लग रहा हूँ। दिवाली है, तैयार होकर आइए। In the global employability rankings by Times Higher Education UK, only the following 6 institutions from India are ranked amongst the top 230 in the world for having the most employable graduates. IIT Delhi, IISc Bangalore, IIT Bombay, IIM Ahmedabad, IIT Kharagpur and Amity University. मन चाहे 65 इंच 4K। देख मन, फिसल मत, यही चाहिए, यही लूंगा, यही चाहिए। तो देख, तू इस बार भी नहीं लेगा ना? लूंगा ना, अगली दिवाली। अपने मन की विश को मत टालो। SBI कार्ड के फेस्टिव EMI ऑफर्स के साथ जो मन चाहे ले डालो। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और प्यार से बनाए खाने की सुगंध। मैं सबके साथ हूँ, सबकी जुबान पर हूँ, सबके स्वाद में हूँ। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। PC Chandra Jewelers presents Dhanteras Dhan Varsha offer. 25% off on jewelry making charges, 10% off on the value of diamonds and precious stones, 100 rupees off per gram of gold jewelry. Win attractive mega prizes. Offer valid till 11th November. Terms and conditions apply. Visit us today. PC Chandra Jewelers, a jewel of jewels. ये वाला तो गुगली है। वो वाला? ये वाला तो सिक्सर है। कौन सा फ्लेवर बिजनेस बढ़ाएगा? ये खूबसूरत चिंता आप करिए। बिजनेस लोन की चिंता हम संभाल लेंगे विद ओवरड्राफ्ट लाइक बेनिफिट्स एंड नो कोलैटरल अप टू 75 lakhs. Helps beat sensitivity fast. Sensodyne Rapid Relief. हर कार में है त्योहार। मारुति सुजुकी अरीना, फाइंड योर मैच। यजमान, हमारे पिताजी आपके पिताजी के पंडित थे, तो इस हिसाब से हम आपके पंडित हुए। आप लिस्ट बनाइए। लिखो लिखो लिखो। होल्ड ऑन जजमान, खुल जा। ये लीजिए पूजा का हर पात्र का समाधान WHP Jewelers.com।
सबके लिए कुछ खास। ये सब क्या है? शनाया और शिवा। शिवा। अर्फी। सुना है तुम दोनों ने घर बनाया है। हाँ, पिंक वाला। घर की नींव में क्या लगता है? हमारा प्यार। प्यार नहीं, कमजोर टीएमटी का वार होगा। रॉकेट सिंह। अर्फी। लेकिन हमने तो एकदम सॉलिड टीएमटी बार लगाया है। मतलब रुंगटा स्टील टीएमटी बार। जंग से न माने हार, रुंगटा स्टील टीएमटी बार है बिल्कुल रेडी। की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। You are the one. Unmatched, unequaled, unbeatable. LG OLED Evo, the one and only. कर निवेश खुद की हिम्मत में आसमां को धरती पे लाचे था। जब भरोसे की हो बैकिंग तो निवेश का हर फैसला बन जाता है बुलंद। इसीलिए हम खड़े हैं हर निवेश के लिए, हर निवेशक के साथ। SBI Securities. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. With 49 studios, Woodfill has revolutionized the Indian modular kitchen industry by bringing the best of Europe for Indian homes. Visit the nearest store for a new design and a quote. Mahadev betting scam explodes completely, viewers, as it becomes a #1 election talking point. ED takes note of Republic sting. ED writes to Republic seeking Mahadev sting tapes. Sources tell Republic underworld link is under investigation as key aide of accused reveals gold smuggling angle. Bhupesh Baghel on the back foot, cornered CM calls charges against him a conspiracy. BJP takes on Congress over corruption, seeks answers from Bhupesh Baghel government on mega scam. ये लोग जब समर्थन ढूंढ रहे थे, सबसे पहले कांग्रेस पार्टी को समाजवादियों ने समर्थन किया था। उनकी सोच थी, वो नहीं चाहते थे कि समाजवादी उनके साथ आए। And no end to Akhilesh versus Congress war of words. Akhilesh now claims Congress does not want SP to be part of INDI alliance. The top story tracking right now. Republic's 7-part expose has caused massive political quakes. Here is a report on the Republic expose on corruption allegations of their decade that have hit the grand old party. Take a look. मतलब इतना जानकारी ले रहे हैं, आपको लगता है कि उसको सब कुछ पता है कि क्या हो रहा है? देखिए,
जैसा मुझे समझ में ये आया कि मैं तो सीएम साहब के काफ़ी लंबी बड़ी बात होती थी हमेशा जब भी हाउस में आते थे, तो 3-4 चीज़ मुझे क्लियर हुआ कि हो रहा है ये पता था, इंटेंसिटी इतना ज़्यादा है ये नहीं पता। 2 चीज़ें हैं, एक चीज़ तो है कि कुछ फंडिंग हो सकता है, पॉलिटिकल फंडिंग बाकी स्टेट्स में करनी पड़ी हो बहुत सारे चुनाव से। सर लेकिन उनका बेटा खुद इन्वॉल्व था, ईडी के पास ऐसे बेटा और उसकी पत्नी दोनों के नाम पे शेल कंपनियां बनाई गई, फिर कॉर्पोरेट अकाउंट से काफ़ी पैसा उनके पास गया। मैं ये भी बोल रहा हूँ कि देखिए 2 चीज़ें हैं, सतीश चंद्राकर और चंद्रभूषण वर्मा, ये दोनों खुल के बोलते थे कि हम चला रहे हैं, ये खुल के नहीं बोलते थे। विनोद जी, हाँ, विनोद वर्मा ने कभी खुल के नहीं बोला कि मैं संरक्षण दे रहा हूँ, बट पूरा संरक्षण था उनकी तरफ से। वो उनके मैं तो इंक्वायरी की नहीं होती, हाँ। तो मैं बोल नहीं सकता, लेकिन इन दोनों का इन्होंने कमिट किया मेरे सामने आके। पता नहीं रस्सी दूसरे खाली हो रहा हूँ ना, बड़े बड़े लोग हैं, यहाँ तक कि यहाँ के कोई नेता नहीं छुड़ा। मैम ये पूरी सरकार खरीद सकते हैं। खरीद सकते क्या? मुझे लगता है पैसा पूरा सरकार चला रहे हैं ये जो वेड ये सब चीज चल रहा है मैम, ये मेरे को पूरा और टोटल में मेरे को गेम लगता है। काम के लिए पुलिस को हाथ रखना जरूरी है और नेता लोग को ये सबका हाथ है, लेकिन सबसे ज्यादा पैसा सामने चलते हुए चुनाव ना सब पैसे की डिमांड कर रहे हैं, सबके सब पैसे की डिमांड कर रहा हूँ। अच्छा, और कुछ जैसे कि यहाँ जो पकड़ाए हैं सतीश चंद्राकर और ASI, चलो खोल दी ना, पड़ी मार दो, इसको इतना देता था उसको इतना देता था, कहीं कहीं जुगाड़ हुआ। उसकी विशेष पार्षद प्रियंका साहू इतना मोटा तो चेयर उसके गले में, जितना वो मोटा था मेरी मिसेज पायल पहनती है, 4 उंगली में अंगूठी, ब्रेसलेट, एक सारा भोला बता दिया, सौरभ को सबके चाचा यही है, सबका हाथ है। लेकिन सबसे ज्यादा पैसा सामने चलते हुए चुनाव ना सब पैसे की डिमांड कर रहे हैं, सबके सब पैसे की डिमांड कर रहा हूँ। देखिए अभी ये हवाला का जो काम हो रहा है ना, अब देखिए अब इनके पास पैसा कैसे आएगा? प्राइवेट जेट से इनके पास पैसा आएगा, प्राइवेट जेट से आएगा या तो हेलीकॉप्टर के थ्रू इनके पास पैसा आएगा। ऐसा क्यों? मैम देखिए अब ईडी का इतना चल रहा है तो हवाला से भेज नहीं सकते? हवाला से भेज नहीं सकते। मैंने सुना तो एयर एम्बुलेंस का भी इस्तेमाल किए हैं ये लोग। किए अभी नहीं, पहले किए हैं, पहले किया 2022 में किया था, 2022 में उन्होंने किया, एयर एम्बुलेंस का इस्तेमाल किया पैसे के थ्रू। Viewers, big breaking update coming in right now. And what we have accessed are key documents. That is right. Now, these key documents relate to Shubham Soni. They have been accessed by Republic TV. That is right, viewers. Documents related to Shubham Soni have been accessed by Republic TV. And remember that Republic is the only channel to sting the key characters of the scam. Republic has also unveiled the Dubai link with the case as well as connections with the underworld. But let's go to Shravan Sen, our senior editor, joining us live right now to help us understand what these key documents are all about. Shravan, I'm handing it to you right now. What do these documents really reveal about Shubham Soni? Well, in fact, there was an elaborate plan to shift out the entire operation from India. And one such evidence that we've got our hands on are the very documents that Shubham Soni was the man claiming to be Shubham Soni, that particular video was talking about. By way of our investigation, we have essentially come across documents which essentially show 2 things. One, that the accused here, Saurabh Chandrakar, had already applied for a citizenship in Vanuatu. In fact, a document of his passport of Republic of Vanuatu has also been accessed by Republic TV. Let me quickly take you through the incorporation documents that have now been accessed. Here, if you take a look at it, now St. Vincent is where the incorporation was essentially done on 21st of June 2021. That's the incorporation, whereas the operations began much earlier. They're talking about an alleged meeting that took place in Chhattisgarh on the
21st day of June 2021, and it has got a signature of the Registrar of Business of Companies here, and it largely talks about the certificate of exemption for import duties. Now, I'll try and explain this a little later, but let's just scroll down and show you some of the, these are the minutes of the meeting that took place. Let's move to the other pages. I'll quickly take you through some more. Shubham Soni's signature there. And then let's move to the other documents here. There's the same document that has been repeated here, but it's the certification of incorporation once again coming back here. Now this has the address where Mahadev was trying to get themselves registered in Caribbean. Now they have essentially spoken about the fact that they were shifting their operations. They talk about the address being shifted to a place in Kingston, in St. Vincent. Let's just move down and take you through some more details of it. It's the incorporation money, the capital that was basically infused to basically begin the operations. Once again signed by Shubham Soni here. Now these are documents which have been accessed, which goes on to indicate that there was a larger plan that was put into place to move the entire operations. While the operation began in the year 2017, this document shows that it was on 21st day of June 2021 when the incorporation actually took place. Let's just take you through the other pages too. Here you see this is the address of Shubham Soni in Chhattisgarh, and they say that the appointment of him as the director of Mahadev happened on 2021. But this is a claim which perhaps will have to be once again investigated, because remember, the operation is not in the year 2021, but it is much before. Once again, it shows that the member and happens to be only Shubham Soni. That's again on 21st of June. Let's just scroll down again and take you through. Now this is the same. It shows Shubham Soni as the director of Mahadev and has given the address of it, and it's the same pages that we're looking at. These are the laws, the bylaws under which he has been appointed as the director. The meeting of the directors, minutes of the meeting has been given. So all that put together, there is an attempt that has largely been made to move the entire operation. Shubham Soni basically talks about the fact that there were instructions that were largely given by the Chief Minister. He says the Chief Minister himself has given those directions to change the operations of Mahadev from India to Dubai. And these documents go on to indicate that that already happened in the year 2021. All right, Shravan, thank you for getting us all the details coming in. And Republic has exposed the biggest scam of the decade. And in fact, we have got many more documents which reveal key information about the scam. We're taking a very short break right now, and we'll continue all the updates on Mahadev betting scam. Exclusive information which has shaken the state of Chhattisgarh. Powered by Century Ply Club Prime, Raho Befikar. Co-powered by Mankind Pharma, brings premium DMF quality medicine for India. Levi's for now, for a lifetime. बंद करो कान बंद करो, कभी भी फट सकता हूँ, पटाखा जो लग रहा हूँ। दिवाली है, तैयार होकर आइए। मन चाहे 65 इंच 4K। देख मन, फिसल मत। यही चाहिए, यही लूंगा, यही चाहिए। प्राइस तो देख। तू इस बार भी नहीं लेगा ना? लूंगा ना, अगली दिवाली। अपने मन की विश को मत टालो। SBI कार्ड के फेस्टिव EMI ऑफर्स के साथ जो मन चाहे ले डालो। You are the one. Unmatched, unequaled, unbeatable. LG OLED Evo, the one and only. दादी के हाथों का जादू
और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और प्यार से बनाए खाने की सुगंध। मैं सबके साथ हूँ, सबकी जुबान पर हूँ, सबके स्वाद में हूँ। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। This Diwali, New Hawkins, good old friends, fun times again. आपका बैंक सेविंग्स अकाउंट पे इंटरेस्ट देता है 3 महीने में एक बार। मेरा AU हर महीने। सोच बदलो और बैंक भी। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, बदलाव हमसे है। Whenever I had ice cream or cold water, I would experience a sharp shooting sensation, so I just kept ignoring it. Even my hot chai was giving me the same amount of discomfort. My dentist recommended Sensodyne, so now I can be completely carefree and sip my hot cup of tea. It really works. इस दिवाली दिल खोल के बांटे जाएंगे गिफ्ट्स। जब ड्राई फ्रूट्स गिफ्ट पैक्स पे मिलेगा बाय 1 गेट 1 फ्री। आ गया स्मार्ट बाजार फेस्टिवल सेल 1 से 15 नवंबर। फेस्टिवल को बेस्टिवल बनाइए, स्मार्ट बाजार चलिए। Hey Alexa, start the robo. Introducing Forbes Robo Vacuum Cleaner. Daily cleaning as easy as 1, 2, 3. It dry vacuums, even wet mops, and recharges automatically. Get the Forbes Robo Vacuum Cleaner from Eureka Forbes. इसको तो फुटबॉल खेलना भी आ गया और इससे तो पियानो बजाने भी आ गया। चंद्रयान भी उतर गया चांद पर हमें अब तक टेस्टी राजमा बनाना नहीं आया। बिना MDH राजमा मसाला के टेस्टी राजमा कैसे बनेगा? स्वादिष्ट राजमा के लिए MDH राजमा मसाला। क्या स्वादिष्ट राजमा बनाए? MDH। कर निवेश खुद की हिम्मत में, आसमां को धरती पे लाचे था। जब भरोसे की हो बैकिंग तो निवेश का हर फैसला बन जाता है बुलंद। इसीलिए हम खड़े हैं हर निवेश के लिए, हर निवेशक के साथ। SBI Securities. Investment in securities market is subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. टिप चाहिए, पैसा लगाना है तो सेंचुरी प्लाई क्लब प्राइम पे लगाओ। डूबेगा नहीं, जलेगा भी नहीं, कोई खा नहीं जाएगा और मिनिमम 30 साल का रिटर्न देगा। अब इससे बेटर इन्वेस्टमेंट है तो बताओ? सेंचुरी प्लाई क्लब प्राइम, रहो बेफिक्र। हेलो मोटो। Motorola, India's best 5G smartphone brand, brings you the latest breaking news update from across the country only on Republic TV. Viewers, welcome back. As Republic brings you exclusive investigation on Mahadev wedding scam, it has become the biggest talking point ahead of elections. The political link to the scam has shaken up Chhattisgarh, and the one question that everyone is asking right now is this: did CM Baghel know about all this which is happening? Take a look. A betting app scam that started in 2021 in Congress-ruled Chhattisgarh. Possibility of political links in the scam cannot be ruled out. When Republic investigative team tried to dig in, the first investigator of the scam said that Chief Minister Bhupesh Baghel knew about the scam. सर आपको लगता है कि मतलब इतना जानकारी ले रहे हैं, सर आपको लगता है कि उसको सब कुछ पता है कि क्या हो रहा है? देखिए, जैसा मुझे समझ में ये आया कि मैं तो CM साहब के काफ़ी लंबी बड़ी बात होती थी, हमेशा जब भी हाउस में आते थे तो 3-4 चीज़ मुझे क्लियर हुआ कि हो रहा है ये पता था, इंटेंसिटी इतना ज़्यादा है ये नहीं पता। 2 चीज़ें हैं, एक चीज़ तो है कि कुछ फंडिंग हो सकता है, पॉलिटिकल फंडिंग बाकी स्टेट्स पे करनी पड़ी हो बहुत सारे चुनाव से। The key political link in this scam seems to be Vinod Verma. Chhattisgarh CM's political advisor, IPS officer, says he could have benefited in some way. सर लेकिन उनका बेटा खुद इन्वॉल्व था, ईडी के पास ऐसे बेटा और उसकी पत्नी दोनों के नाम पे शेल कंपनियां बनाई गई, जिससे कॉर्पोरेट अकाउंट से काफ़ी पैसा उनके पास गया। मैं ये भी बोल रहा हूँ कि देखिए 2 चीज़ें, सतीश चंद्राकर और चंद्रभूषण वर्मा, ये दोनों खुल के बोलते थे कि हम चला रहे हैं, ये खुल के नहीं बोलते थे। विनोद जी, हाँ, विनोद वर्मा ने कभी खुल के नहीं बोला कि मैं संरक्षण दे रहा हूँ, बट पूरा संरक्षण था उनकी तरफ से। वो उनके मैं तो इंक्वायरी की नहीं होती, तो मैं बोल नहीं सकता, लेकिन इन दोनों का इन्होंने कमिट किया मेरे सामने आके।
Baghel's right-hand man Vinod Verma was questioned by agencies in connection with the scam. No evidence as of now. But multiple players of the scam have said that Saurabh Chandrakar has a lot of political clout. मैम ये पूरी सरकार खरीद सकते हैं। खरीद सकते क्या? मुझे लगता है पैसा पूरा सरकार चला रहे हैं ये जो रेड वेड ये सब चीज चल रहा है मैम, ये मेरे को पूरा और टोटल में मेरे को गेम लगता है। Though there is no evidence of the political involvement so far, agencies are already investigating the political link to the scam. But those who know the case inside out believe that the scam of this proportion couldn't have gone unnoticed at political level. Special investigative report by Republic TV. Hello, Moto. Motorola, India's best 5G smartphone brand. बंद करो कान बंद करो, कभी भी फट सकता हूँ, पटाखा जो लग रहा हूँ। दिवाली है, तैयार होकर आइए। In the global employability rankings by Times Higher Education UK, only the following 6 institutions from India are ranked amongst the top 230 in the world for having the most employable graduates. IIT Delhi, IISc Bangalore, IIT Bombay, IIM Ahmedabad, IIT Kharagpur and Amity University. मन चाहे 65 इंच 4K। देख मन, फिसल मत। यही चाहिए, यही लूंगा, यही चाहिए। तो देख, तू इस बार भी नहीं लेगा ना? लूंगा ना, अगली दिवाली। अपने मन की विश को मत टालो। SBI कार्ड के फेस्टिव EMI ऑफर्स के साथ जो मन चाहे ले डालो। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और प्यार से बनाए खाने की सुगंध। मैं सबके साथ हूँ, सबकी जुबान पर हूँ, सबके स्वाद में हूँ। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। PC Chandra Jewelers presents Dhanteras Dhan Varsha offer. 25% off on jewelry making charges, 10% off on the value of diamonds and precious stones, 100 rupees off per gram of gold jewelry. Win attractive mega prizes. Offer valid till 11th November. Terms and conditions apply. Visit us today. PC Chandra Jewelers, a jewel of jewels. बर्जर डैम स्टॉप लगा। इसका नैनो सिलिकॉन टेक्नोलॉजी चढ़ा वाटर प्रूफिंग का कवर जो बिना दीवार तोड़े डैम रिपेयर करे। बर्जर डैम स्टॉप। नो झंझट, डैम स्टॉप, फटाफट। Just another Virtus on a long drive to get coffee. Spreading goosebumps, taking on turns, and what's around the turn. No drive is just another drive when you're in a Virtus. Volkswagen. मिश्रा जी, दिवाली का एक्स्ट्रा बोनस मिल गया क्या आपको? नहीं मैडम सर, क्यों? आपकी शाही दावत देखकर तो लगता है। वो क्या है ना मैडम सर, इस बार थोड़ा एक्स्ट्रा इनकम हो गई। मिश्रा जी, स्मार्ट बाजार में ग्रोसरी इतने कम दाम में मिल गई तो हो गई ना एक्स्ट्रा इनकम। मिश्रा जी, मीठा। चलिए, आ गया फेस्टिवल सेल 1 से 15 नवंबर। इस दिवाली ग्रोसरी सबसे कम दाम में चाहिए। स्मार्ट बाजार चलिए। You are the one. Unmatched. Unequaled. Unbeatable. LG OLED Evo. The one and only. आपका बैंक सेविंग्स अकाउंट पे इंटरेस्ट देता है 3 महीने में एक बार। मेरा AU हर महीने। सोच बदलो और बैंक भी। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, बदलाव हमसे है। MDH की देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। Hi, what's that? That's a Manish Malhotra. Not your dress. The cupboard. The laminate is a Manish Malhotra design. Century Laminates by Manish Malhotra. Fashion for your furniture. Live it up, live it
तो पतंगे रस्सी दूसरे खा रही हो रहा हूँ ना, इसके साथ बड़े बड़े लोग हैं, यहाँ तक कि यहाँ के कोई नेता नहीं छुड़ा, बड़े बड़े लोग भाई, यहाँ कितने पुलिस वाले सस्पेंड हो गए इस चक्कर में। एक विधायक भी पैसा मांग रहे सीधा मुँह खोल रहे हैं। पैसे की डिमांड किसके थ्रू करते हैं ये लोग? और कुछ जैसे कि यहाँ जो पकड़ाए हैं सतीश चंद्राकर और हाँ ASI क्या वर्मा उससे विनोद वर्मा का नाम ले दिया, ठीक यहाँ का व्यापारिक नाम लिया था नहीं लगे। Viewers, big breaking updates coming in right now. Getting in this information. Now, what we see is this Saurabh Chandrakar's statement on Mahadev betting scam has just come in. The key accused statement in Mahadev betting scam has just come in. And what he says is that he's innocent. That is right. What he says is that he's innocent. Viewers, top updates coming on Republic TV, where we are learning the top updates that Saurabh Chandrakar says that he is innocent and he is the key accused in this case. Viewers, top updates coming in Republic TV, and as we keep getting more updates, we are getting more updates right now with the key accused statement of Mahadev betting scam is in. And remember that we have been getting you top updates. We have done sting operations as well, and bombshell videos have come out which really show the key players in the Mahadev betting scam. So top updates coming in Republic TV. At this time, what we can tell you is that the statement of the key accused is out. Let's go to Sandeep, who's joining us on the phone line. Sandeep, take us through what that statement is all about. He is saying, Saurabh Chandrakar is saying that he is innocent, and even after the kind of information that we have accessed, he is saying that he's innocent, Sandeep. Yes, indeed, he is has in fact issued a joint statement with Ravi Uppal. These both are the promoters of this very Mahadev booking app, and they say that the allegations by Shubham Soni is not true, and in fact they say he say that there were no such transactions been done to the Chhattisgarh Chief Minister, Mr. Bhupesh Baghel. That is what is being said by Saurabh Chandrakar, and they say that they are cooperating with the investigating agencies, and what all documents were required regarding this very investigation, they are in fact submitting to the investigating agency. But the biggest question out here, Shivangi, is that why is he hiding in Dubai? That is the biggest question, and in fact, he is the key accused in this very matter. If at all, right. In this case, if Chandrakar has not done anything. Absolutely, Sandeep. Absolutely, and very shocking statement coming out, especially after Republic TV, in fact, in a sting operation, has seen, and in fact we got information that the close aide of Chandrakar has revealed how the betting empire was established in Dubai and the involvement of the D gang. Taking a very short break, much more coming up. Presented by हर घर का हीरो ग्रीन प्लाई का E0. Powered by Amity University, ranked amongst the top 3 universities globally. Cucina, the kitchen experts, Cucina. Co-powered by Tata EV, move with meaning. बंद करो कान बंद करो, कभी भी फट सकता हूँ, पटाखा जो लग रहा हूँ। दिवाली है, तैयार होकर आइए। मन चाहे 65 इंच 4K। देख मन, फिसल मत, यही चाहिए, यही लूंगा, यही चाहिए। बस तो देख, तू इस बार भी नहीं लेगा ना? लूंगा ना, अगली दिवाली। अपने मन की विश को मत टालो।
SBI कार्ड के फेस्टिव EMI ऑफर्स के साथ जो मन चाहे ले डालो। लेकिन हमने तो एकदम सॉलिड TMT बार लगाया है। लुंगटा स्टील TMT बार जंग से न माने हार और मजबूती बेशुमार। लुंगटा स्टील TMT बार है बिल्कुल रेडी। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और प्यार से बनाए खाने की सुगंध। मैं सबके साथ हूँ, सबकी जुबान पर हूँ, सबके स्वाद में हूँ। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। मैडम को पैसे से प्यार नहीं है। भाई साहब, पैसे से प्यार है तभी तो AU से करार है। ऐसा क्यों? आपका बैंक सेविंग्स अकाउंट पे इंटरेस्ट देता है 3 महीने में एक बार। मेरा AU हर महीने। सोच बदलो और बैंक भी। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, बदलाव हमसे है। रंग भरा एक किस्सा है, तू वो यार है, तू ही त्योहार है। हर कार में है त्योहार। मारुति सुजुकी अरीना, find your match. Poems, not my thing. Are short stories your thing? Yeah. I actually have some other app. Phone pay accepts money from any app, whatever's your thing. Actually, I'll take this thing also. Yeah. कर निवेश खुद की हिम्मत में आसमां को धरती पे लाचे था। जब भरोसे की हो बैकिंग तो निवेश का हर फैसला बन जाता है बुलंद। इसीलिए हम खड़े हैं हर निवेश के लिए, हर निवेशक के साथ। SBI Securities. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. इसको तो फुटबॉल खेलना भी आ गया और इससे तो पियानो बजाने भी आ गया। चंद्रयान भी उतर गया चांद पर हमें अब तक टेस्टी राजमा बनाना नहीं आया। बिना MDH राजमा मसाला के टेस्टी राजमा कैसे बनेगा? स्वादिष्ट राजमा के लिए MDH राजमा मसाला। क्या स्वादिष्ट राजमा बनाए? MDH बोल्टास बैको ये 30 दिन तक फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को फ्रेश रखता है। और तुमने मान लिया। वैसे भी 30 दिन की सब्जियां कौन खाता है? तू। वोल्टास बेको डुअल कूलिंग रेफ्रिजरेटर की स्टोर फ्रेश टेक्नोलॉजी से सब्जियां 30 दिन तक फ्रेश रह सकती हैं। Voltas Beko, tested by real moms. Sarah, this is your space. Play it your way. पतंगे रस्सी से खाली हो रहा हूँ ना, इतना बड़े बड़े लोग हैं। यहाँ तक कि यहाँ के कोई नेता नहीं छुड़ा। बड़े बड़े लोग भाई, यहाँ कितने पुलिस वाले सस्पेंड हो गए एक चक्कर में। एक विधायक भी पैसा मांग रहे सीधा मुंह हो गया। पैसे की डिमांड किसके थ्रू करते हैं ये लोग? और कुछ जैसे कि यहाँ जो पकड़ाए हैं सतीश नगर और हाँ ASI क्या बोल रहा हूँ उससे विनोद वर्मा का नाम ले दिया। ठीक, यहाँ का व्यापारिक नाम लिया था नहीं। Burning question. The Mahadev bearing scam explodes completely as it becomes the #1 election talking point. The Enforcement Directorate takes note of the Republic sting. The ED writes to Republic seeking the Mahadev sting tapes. Sources tell Republic an underworld link is also under investigation as a key aid of the accused reveals a gold smuggling angle. Massive impact of the Republic Mahadev investigation. ED sources tell Republic summons to be issued very soon.
Bhupesh Baghel on the back foot. The corner chief minister calls all these charges against him a quote-unquote conspiracy. छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी दुबई के माध्यम से हवाला ऑपरेटर्स के सहयोग से अपना चुनाव लड़ रही है। भूपेश बघेल जी जो नाटक कर रहे हैं कि नहीं जानता, उससे 500 करोड़ रुपए वसूल लिया है। And the BJP is taking on the Congress over corruption, seeking answers from the Bhupesh Baghel government on the mega scam. कांग्रेस के लोग जब समर्थन ढूंढ रहे थे, सबसे पहले कांग्रेस पार्टी को समाजवादियों ने समर्थन किया था। उनकी सोच थी, वो नहीं चाहते थे कि समाजवादी उनके साथ आए। And there is no end to the Akhilesh versus the Congress war awards. Akhilesh now claims the Congress does not want the Samajwadi Party to be even a part of the INDA alliance. A very good evening. The show is called The Burning Question and I'm Deepthi Sachdeva. In my hands, ladies and gentlemen, I'm holding the press release of the Enforcement Directorate. The Congress says the ED is another arm of the BJP. They say the ED is equal to the BJP. The ED is fighting elections on behalf of the BJP. But from where has this entire charge come up? Now do remember, we are just hours away from the big election that gets underway in Chhattisgarh tomorrow. The first phase of polling in Chhattisgarh happens tomorrow. Now right now, you have a Congress-led government in the state. Bhupesh Baghel is the chief minister. But then in this ED press release that came out a few days ago, there has been a scathing charge that has been leveled against Bhupesh Baghel. Let's bring up key characters, as always, on the screen for you, and then we'll talk about the story before we deep dive into our conversation. Now, do remember, again and again, what is reiterated is the fact that corruption is a big talking point. The Prime Minister time and again has said, "Sare bhrashtachari ek saath ho gaye." But then, the bhrashtachar of the Congress is something that tops the cake, according to the BJP. On your screen is Bhupesh Baghel on one side, who many say is a strong chief minister in his own right. But on the other side are images of a republic sting. A republic sting that, ladies and gentlemen, has become the nation's talking point. More so in an election season. Because all these are individuals that have been stung by a team of reporters led by Harsha. And all these are individuals right now talking about Bhupesh Baghel. Now the connection is the Mahadev app. Now you've heard about this, it's a betting app. The app now has been banned by the central government. But then, what does this ED note really says? The ED note says, and according to all these individuals that you see on one side of your screens versus a Bhupesh Baghel, that there is possibly an allegation right now of more than 500 crores, and read my lips, 500 crores that has gone in to the benefit of the Chief Minister, Bhupesh Baghel. Now, in normal days and time, this is going to be a huge allegation. In ideal times, this should put a sitting Chief Minister to shame. There will be questions about his resignation. But in today's day and time, the Congress is fighting these allegations by only playing the victim card. They say the elections are around the corner, and that is the reason why someone like a Bhupesh Baghel is being targeted by the ED and the CBI. But he's completely silent on all the allegations that have been leveled in this ED press note. Now, important also to tell you that the ED is talking about some kind of money that has been recovered during raids. Allow me to quote just two lines from this entire press release. It says the Directorate of Enforcement received credible inputs and conducted a successful search operation on the 2nd of November in Chhattisgarh, in which 5.39 crore cash has been intercepted in the poll-bound state of Chhattisgarh. The ED right now, they say, is investigating the Mahadev book online betting app. Then it goes on to talk about the details. And at the bottom, it talks about a man called Asim Das, who now has been arrested. And the agencies say Asim Das has admitted that the seized funds were arranged by the Mahadev app promoters to be delivered to one politician Baghel
for upcoming election expenses. This is exactly the point that the BJP has picked up. They say this is a clear indictment of Bhupesh Baghel. And just one more point before we deep dive into this entire story. It then goes on to say, from the questioning of Asim Das and from the forensic examination of the phone recovered from him, an examination of an email sent by Shubham Soni. Now, this is a new character that has been introduced in this entire saga of the scam, Shubham Soni, who now claims that he is the app owner. He right now is sitting in Dubai. In fact, we'll just check from our team if we can put out images of this man called Shubham Soni as we are talking about him, who's sitting in Dubai. He's put out a video. Now, the BJP says that that is the clearest confession that indicts Bhupesh Baghel. But then the chief minister says, I do not know anyone called Shubham Soni. They say, I have nothing to do with him. I am not involved in any kind of money dealing with him. Now, this is the man who we are talking about. The man in the yellow t-shirt there that you see there sitting pretty, recording a video. The Congress says this is a heavily edited video, and that is the reason why it cannot be trusted. Now, what does this man say? This man, they say there is an email sent by Shubham Soni. There are many startling allegations that have come forth, namely that regular payments have been made in the past, and so far around 508 crore, 508 crore they say, have been paid by the Mahadev app promoters to Bhupesh Baghel. Here is where they actually name Bhupesh Baghel in this ED note. And they say the Chief Minister of Chhattisgarh. Then it says all this is right now subject to investigation. So on the look of it, these are serious allegations. But then can the Congress continue to play the victim card and say all this is only and only time to the elections? Sit back and watch our highlights of the Republic's sting, all the political reactions we have so far before we deep dive into a debate. मतलब इतना जानकारी ले रहे हैं, आपको लगता है कि उसको सब कुछ पता है कि क्या हो रहा है? देखिए, जैसा मुझे समझ में ये आया कि मैं तो सीएम साहब के काफ़ी लंबी बड़ी बात होती थी, हमेशा जब भी हाउस में आते थे तो 3-4 चीज़ मुझे क्लियर हुआ कि हो रहा है ये पता था, इंटेंसिटी इतना ज़्यादा है ये नहीं पता। 2 चीज़ें हैं, एक चीज़ तो है कि कुछ फंडिंग हो सकता है, पॉलिटिकल फंडिंग बाकी स्टेट्स में करनी पड़ी हो बहुत सारे चुनाव से। सर लेकिन उनका बेटा खुद इन्वॉल्व था ईडी के पास, ऐसे बेटा और उसकी पत्नी दोनों के नाम पे शेल कंपनियां बनाई गई, जो कॉर्पोरेट अकाउंट से काफ़ी पैसा उनके पास गया। मैं ये भी बोल रहा हूँ कि देखिए 2 चीज़ें हैं, सतीश चंद्राकर और चंद्रभूषण वर्मा, ये दोनों खुल के बोलते थे कि हम चला रहे हैं, ये खुल के नहीं बोलते थे। विनोद जी, हाँ, विनोद वर्मा ने कभी खुल के नहीं बोला कि मैं संरक्षण दे रहा हूँ, बट पूरा संरक्षण था उनकी तरफ से। वो ओके, मैं तो इंक्वायरी की नहीं होती तो मैं बोल नहीं सकता, लेकिन इन दोनों का इन्होंने कमिट किया मेरे सामने आके। पता नहीं रस्सी से खाली हो रहा हूँ ना, बड़े बड़े लोग हैं, यहाँ तक कि यहाँ के कोई नेता नहीं छुड़ा। मैम ये पूरी सरकार खरीद सकते हैं। खरीद सकते क्या? मुझे लगता है पैसा पूरा सरकार चला रहे हैं ये जो रेड वेड ये सब चीज चल रहा है मैम, ये मेरे को पूरा और टोटल में मेरे को गेम लगता है। काम के लिए पुलिस को हाथ रखना जरूरी है और नेता लोग को ये सबका हाथ है। लेकिन सबसे ज्यादा पैसा सामने छत्तीस में चुनाव ना, सब पैसे की डिमांड कर रहे हैं, सबके सब पैसे की डिमांड कर रहा हूँ वहाँ पे। अच्छा, और कुछ जैसे कि यहाँ जो पकड़ाए हैं सतीश चंद्राकर और ASI, चलो खोल दी ना, बड़ी मार दो, इसको इतना देता था, उसको इतना देता था, कहीं जुगाड़ होगा। उसकी विशेष पार्षद प्रियंका साहू इतना मोटा तो चेयर उसके गले में, जितना वो मोटा था मेरी मिसेज पायल पहनती है, 4 उंगली में अंगूठी, ब्रेसलेट, एक सारा भोला बता दिया सौरभ को, सब चाचा यही है। सबका हाथ है, लेकिन सबसे ज्यादा पैसा सामने छत्तीस में चुनाव ना, सब पैसे की डिमांड कर रहे हैं।
सबके सब पैसे की डिमांड कर रहा हूँ वहाँ। देखिए अभी ये हवाला का जो काम हो रहा है ना, अब देखिए अब इनके पास पैसा कैसे आएगा? प्राइवेट जेट से अब इनके पास पैसा आएगा। प्राइवेट जेट से? प्राइवेट जेट से आएगा या तो हेलीकॉप्टर के थ्रू इनके पास पैसा आएगा। ऐसा क्यों? मैम देखिए अब ईडी का इतना चल रहा है तो हवाला से भेज नहीं सकते? हवाला से भेज नहीं सकते। मैंने सुना तो एयर एम्बुलेंस का भी इस्तेमाल किए हैं ये लोग। किए हैं, अभी नहीं, पहले किए हैं। पहले किया 2022 में किया था 2022 में उन्होंने किया था। एयर एम्बुलेंस का इस्तेमाल हुआ है, पैसे के थ्रू हुआ है। So what kind of an impact will these corruption allegations have on Bhupesh Baghel, the Congress, and what happens tomorrow and on the 17th? Let's quickly introduce our panel of guests joining us. We do see Guru Prakash Paswan of the BJP with us. Shyam Prasad Mekaji represents the Congress, but he's appearing on the show as a political analyst. Akashdeep Muni leans towards the AAP. He's also a political analyst. We are also waiting for Swagata Shah, who represents the Ajit Pawar faction of the NCP, to join us in just a moment. And Guru, before I come to you, I want to ask Mr. Meka whether, you know, these allegations of corruption, Mr. Meka, do not matter. I've asked you this question on another debate. I hope we have a different answer this time around. Now, there is this ED note, sir, where it talks about the 508 crore that have been paid by the Mahadev app promoters to Bhupesh Baghel, the Chief Minister of Chhattisgarh. If we were sitting in, you know, a normal day and a time, perhaps this is good enough to make any kind of politician resign. At least ask for a resignation and say this is not done. Let me just step aside pending an investigation, and if I'm clean, I'm going to come back. But obviously these times are different, Mr. Meka, and so has been your response. So Deepthi, I don't know how these times are different, except the way that the democracy is in danger. Okay, let's forget that. Let's come to the point here. So the point is, okay, so there is some accusation made by this Das guy. Okay, let the agencies investigate it. Why are we losing sleep over it? Let the agencies investigate it. So just because somebody throws some mud on the chief minister doesn't mean the chief minister is going to resign, right? It should be credible. Second, people in this country, this has become a joke. They have overused the agencies for political purposes, and people have seen through this, and this has become a laughing stock now. So right before the election, this is a valiant effort in the desperate attempt by BJP to divert the attention of the people from the real issues of the corruption at the national level, the real issue of unemployment, the price rise. These are the issues, and they are trying desperately to divert the attention, and that's what people are seeing. I don't think they will be successful in doing this. By all means, conduct a thorough investigation. Get to the bottom of it. But Mr. Meka, you know, going by your own logic, when you say that this might not help the BJP, this brings kind of bad publicity to the BJP, to the ED, why would they do this? They wouldn't want to lose the Chhattisgarh election. They wouldn't want a Bhupesh Baghel to become stronger. And there is money that they have procured. There's a man called Asim Das. Now today there is another man who's come forward with a video from Dubai, and he is naming a sitting chief minister. He says that is the money I have paid to Bhupesh Baghel. Is timing, sir, your only alibi? Is timing your only excuse right now, Mr. Meka? No. I'm not asking for an excuse. I'm asking for a thorough inquiry. It's not about timing. It's about the modus operandi of this government, not just the timing. You asked a very interesting question. No, but if you've already passed a judgment, Mr. Meka, that the government is vindictive, the ED is acting on behalf of the BJP, you know, we've heard from Bhupesh Baghel who says ED is the BJP, BJP is the ED, then clearly you will not believe any kind of probe. Like, you know, the Aam Aadmi Party also says we are being targeted. They want to, you know, ensure that all our ministers go to jail. So you clearly sit on judgment and then you say we are open to a thorough probe, Mr. Meka. So you can't run with the hare and hunt with the hound. I mean, either you believe corruption does not matter, 508 crores does not matter, it's a betting app, so what? I mean, people will forget this.
No, we are not sitting on judgment, Deepthi. We are sitting on our convictions. We know these things are going to happen. Much worse will happen between now and April. We know that. जो लोग डर गए वो लोग जाके बीजेपी से ज्वाइन हो गए. हम लोग ऐसा लोग नहीं है. This is a different Congress. This is a different India. BJP is only stuck in its hate-filled India, and that's why they are continuing their old ideas. And this is a new India. People have realized it. People are seeing through this. This is a new India. This is a new Congress, Guru, says Mr. Mecca. And he says all your attempts will fall flat. But Guru, tell me something. You know, let's just change positions. Had you been, as in the BJP been ruling a state, had the Congress been in the center, and there would have been some action against one of your sitting chief minister, you would have also cried suspicion about the timing. So, I mean, does the very fact that this comes so close on the heels of the Chhattisgarh election, Guru, is that not suspicious? Deepthi, a very warm good evening to you and my fellow panelists, and I was patiently listening to the panelist before me, and you have raised a valid question, and let me remind you and let me remind the viewers as well. Lal Krishna Advani ji, his name, just his name came in one of the diaries with respect to Hawala cases. He did not offer to resign, he resigned at the moment his name came out. So this is our sanskar, this is our modus operandi. And I'm really amazed when the Congress supporter or the Congress sympathizer is saying that the timing is suspicious, he is questioning the integrity of the institution. Deepthi, we must realize that the people of India, they are sick and tired of this fallacious argument. This is a pointless argument. There are sufficient ample evidences available in the public domain. There is a betting app, there is a scam, there is cash, there is a person who is considered as the linchpin of the scam who is naming the chief minister. For the first time in the history of our politics, Deepthi, a scam as clear as this has come out in the public domain. Mr. Baghel has been named. Kaka ka paisa hai, Kaka ko paisa dena hai. Mr. Baghel is the Kaka. So where is the question? Where is the doubt? Where is the suspicion? I don't understand. And please, we are certainly sick and tired of this argument ki agency compromised hai. In 2013, let me remind your viewers and the panelists, in 2013, the Supreme Court of India, Justice R.M. Lodha made a very categorical statement. He said, CBI is a caged parrot. We all remember the days of emergency. Involuntary vasectomies in tunes of millions were conducted. That was the misuse of agency. We all remember the emergency when AIR was the only tool of propaganda of the Prime Minister. That is the misuse of agency. Now you have the audacity, now you have the courage when the Enforcement Directorate data suggests that only 3% of the cases of the total Enforcement Directorate cases are the political cases. All the rest are non-political cases. Now you are questioning the integrity of the institution and putting yourself on a different moral pedestal. This is not going to work, sir. 508 crores पैसे कहां से आए? बघेल जी का नाम कहां से आया? Accountability needs to be fixed. What is your answer? Answerable कौन है? बताना पड़ेगा आपको. The rampant use of black money in the elections. We have to understand, Deepthi, for the Congress leadership, for the senior Congress leadership, Rajasthan, Chhattisgarh and Karnataka, they are the ATM. पैसा छापने वाली मशीन इनके पास है ये सारे states. We all remember what happened in the Lal Diary case of Rajasthan. Guru. Congress's own minister, Mr. Gudha, came out in the open, similar to this case in the public domain, and said, मेरे पास सारा का सारा खाका है कि CM के पास पैसे कहां से गए, paper leak का पैसा Guru, कहां गया. if I may. Now, you've raised a lot of important points. I would want to get in Akashdeep Muni also and then Mr. Mecca. But Guru, because you raised the Jain Hawala diary case, and you would remember, much like Mr. Mecca and Akashdeep Muni also, that in spite of the fact that there was a diary, that was talking of money transactions and huge sum of money changing hands, but the court did not take that as a valid proof. That is point number one. The other thing, you spoke about the ATMs. Now, when you talk of corruption, I do remember in the run-up to Karnataka elections, there were multiple letters, the Contractors Association writing
even to the Prime Minister, talking of massive cuts, but that matter was never investigated. A number of your sitting MLAs, there were charges of corruption. I do not remember any action against them. And that is why the opposition says that this is selective. I do see Swagata Shah also now with us. Swagata, welcome, and I hope you will, be able to continue with us through the course of this debate. But Akashdeep, just playing the political vendetta card and crying victim all the time, will this work? Because at the end of the day, you have to go by what the agencies say. And the very fact that the Supreme Court in the Manish Sisodia case has actually also spoken about a tentative money trail, does that not blunt or perhaps kill the argument of a timing, of a vendetta for once and for all, Akashdeep? I'll put some facts onto the table. First of all, my friend from BJP who was saying that BJP has not cried foul, he was lying on national television. Our Honorable Home Minister, when he was arrested, our Honorable Prime Minister said the CBI's full form is Congress Bureau of Investigation. So he cried foul when he was Gujarat Chief Minister. First. Second point, in this particular case, very interesting, is that one Saurabh Soni, this person is speaking from Dubai. I don't know how BJP has their friends in Dubai, because it was BJP spokesperson who brought out this particular video. So from where the BJP spokesperson came across this video, he should tell the ED. The BJP should tell the ED. They should. Akashdeep, just for clarification, are you supporting Bhupesh Baghel? Are you supporting the Congress? And are you then also in a way standing with them in the middle of all these serious corruption allegations? I am saying that these all allegations are just because of elections happening and voting happening tomorrow. So if the voting would not have been happening tomorrow, BJP would not have been doing. So all this money is planted. Some videos. This man Shubham Soni, who's put out that video, he's also a plant. Everything is staged. No, where does BJP got this video? How does BJP got this video? कल तक मैं आपको बता रहा हूँ. कल तक ED बोलती थी शुभम सोनी मैनेजर है. आज BJP ने बोला कि he is the owner. So today we should believe ED or BJP. Dipti, tell me, whom should we believe? BJP or ED? ED तो मन से बोल रही है मैनेजर. पहला चीज. दूसरा आपको पता है, in this particular case, you talked about Manish Sisodia case. In this Manish Sisodia case also, they turned one person approver first by CBI. Then after 1 year, the ED turned the same person, arrested the approver and then turned the arrested person approver. ये पहली बार हुआ कि दो बार approver बनाया गया. Okay. So what is your allegation, Akashdeep? I think we must do some very straight talk. What is your allegation against the BJP before Guru responds to that? My allegation is, first of all, Guruji was talking about BJP not crying foul. BJP has cried foul first. And second thing is that the allegations are on a very false ground because it has not been investigated and put in front of a court of law. If there is a judgment from the court, I agree. No, that's exactly what I asked you, Akashdeep, that how do you know something is true or false? Because the Aam Aadmi Party, if you remember, when Arvind Kejriwal just began fighting election, he put out some very grave allegations against the then late Chief Minister Sheila Dikshit on the Delhi Jal Board case. Had you investigated something? And along with, Sheila Dikshit, a number of other leaders, you made political allegations, right? Now, these are allegations that have been made by the Enforcement Directorate, which is an investigative agency. So are you saying it's okay to make political allegations and, hold people guilty? But there is a problem if the Enforcement Directorate is making allegations on the behalf of the money they have recovered and on the behalf of someone who's turned an approver. Just 5 seconds. I will not acknowledge this in front of all that it was not ED. It is the Bharatiya Janata Party who brought this video, what you are showing here. This video is shown by the spokesperson of Bharatiya Janata Party, not ED. Till yesterday, ED was saying that he is the manager. Today, Bharatiya Janata Party is saying that he is the owner. So, should the investigation is done by ED or Bharatiya Janata Party, or there are many questions. Okay, because you raised that allegation, let's get Guru to respond to that before I get Swagata into the conversation. Guru,
Guru, Akashdeep and Mr. Meka are asking that how did this video reach the BJP? Are you behind, getting this entire video staged, edited and then released? No, Deepthi, this argument is just beating around the bush. I would sincerely urge my friend who was speaking before me to refer to this press release which came on 3rd of November by the Enforcement Directorate. In this press release, it has been categorically mentioned that the Aseem Das, who is one of the key players in this entire scam, Mr. Aseem Das is said in the public domain. It is out in the public domain. I did not speak when you were speaking, sir. No, I sir. did not speak. I was talking about Shubham Soni, sir. Sir, I did not. No, Akashdeep, I did not speak. let him respond to Deepthi, the question you have raised, shouting Akashdeep. Let him respond. Yes. No, Guru will respond. No, Deepthi, I think we represent our political parties here, we represent our ideologies here, and I think we should show some sanskar when we are talking. So I am just referring to a simple press release, Deepthi, that has come out from the Enforcement Directorate on 3rd of November. And this press release, my friend can go to the ED website and find it on the ED website. It is out in the public domain. Mr. Aseem Das has acknowledged in public that Mr. Baghel is involved with respect to the recipient of money. The cash was supposed to go to Mr. Baghel, number 1. The cash was supposed to be used for Chhattisgarh election, number 2. It is an open and shut case. The evidences are in the public domain. पैसे इतने मिले हैं, 508 crores money has been found, but still the Congress party and the Congress sympathizer are moving around. Now, Guru, you say this is an open and shut case. I also am holding the same press release, Guru, that you are reading from. In that same press release, at the bottom of this, where it says from the questioning of Aseem Das and from the forensic examination of the phone recovered from him, examination of an email sent by Shubham Soni, it says many startling allegations have come forth, namely that regular payments have been made in the past and so far around 508 crore have been paid by the Mahadev app promoters to Bhupesh Baghel, the Chief Minister of Chhattisgarh. Then it says, Guru, these are subject matter of investigation. So are you jumping the gun? Yeah, he's doing investigation, trial, everything here. Let him respond. Mr. Meka, please. Let him respond, please. Sir, please speak. I think Mr. Meka is the same man who was saying democracy is in danger. Now he is not letting other people speak. This is your behavior. This is your fascism, sir. You are exposed. No, listen. Now, let me make it very clear. One second. Mr. Rajiv Chandrasekhar. Wait. You have to be. Please be patient. Mr. Meka, there is enough time. I'm going to come back to you. Please, it's a question I've asked of Guru Prakash. Let him respond. Make your point. Mr. Meka, I will come back to you. You can counter him, please. But that question is for Guru, because the ED itself says that this is a subject matter of investigation. So on a basis of an allegation, Guru, how are you saying that Bhupesh Baghel is guilty of having taken this money? No, Mr. Meka, भाषण सुनना पड़ेगा अब आपको. चोरों के साथ, भ्रष्टाचारियों के साथ खड़ा मत रहिए आप. This is how you normalize bloody corruption. This is how you normalize corruption by questioning the timing. Timing, जो भी हो, timing का क्या संबंध है? Watch out. You cannot normalize the act of corruption. Let's find a language, please. Illegal and immoral act of corruption. Where you are going? You cannot do that. You cannot do that. You cannot do that. The illegal and Truce, please, immoral act of gentlemen, truce, corruption. one by one. Normalize that. Mr. Meka, there is enough time, sir. I will come back to you. I will come back to you. Let Guru please complete his point. Swagata also hasn't spoken. Please, Guru. No, Deepthi, I have a very simple point. Deepthi, which I'm trying to convey. What these people are doing, these people are trying to normalize the act of illegal and immoral corruption. There is exchange of money. The money has been found. The money is in the public domain. The CM's link has been exposed. The linchpin of the corruption scam, the linchpin is in Dubai. And Shubham Soni, Aseem Das, they have a direct link with the Chief Minister Baghel. Congress party must realize that this corruption, the days are gone. When Prime Minister Modi from the ramparts of Red Fort said कि आने वाले 25 सालों में भ्रष्टाचार रूपी कैंसर को खत्म करना है, no matter what happens, no matter what you say, no matter whatever allegations you make, no matter if you raise the question mark on the integrity of the institution, we are going to go ahead and eliminate this cancer of corruption from Indian politics today. Please be ready for that. There are clear-cut evidences, money is being exchanged, and regardless of your questioning,
चोर की दाढ़ी में तिनका. It is an open and shut case. CM is involved. CM must answer. Accountability must be fixed at all costs. But Guru, this only Whoever talks you about are, a you are CM, 5.39 crore you are in Sonia cash Gandhi, that has Rahul been Gandhi. intercepted in Chhattisgarh. Now, 508 crore, it's an allegation. That's what I said, that the ED note itself says that these are subject matter of investigation. But in spite of that, Mr. Mecca, the fact is that these are very, very serious charges, allegations against a sitting chief minister and a party that many would say has a baggage also of corruption, Mr. Mecca. If you do not take corruption seriously, this means, you know, perhaps you're okay and you're normalizing this corruption, Mr. Mecca. No, 1 second. See, you are making an allegation on us that we are normalizing corruption. We are not. What we are doing is we can discuss and ask the agencies to fast track the trial, fast track the investigation, and instead you bring up. But you are not saying that. No, all that you're saying, Mr. Mecca, is that this is politically timed. The ED is an arm of the BJP. You're not saying this. You are not saying that Bhupesh Baghel is ready to go to the ED office. He says, here I am, please investigate the matter, and perhaps pending an investigation, I'm willing to step aside because he is in a powerful position and he can influence a lot of other investigations. 1 second. You give an uninterrupted stint to BJP spokesperson. Wait, let me answer point by point. Don't jump on my throat. Simple thing is, we are sitting here in the studio and doing an investigation, calling it open and shut case. We are doing a trial. We are convicting people. What nonsense is this? Now, on top of that, somebody has the audacity that they can lecture others about sanskar and all that. What sanskar? Whose sanskar? Who is defining these things? We are going to change that equation in this country. People have no ownership of sanskar or Bharatiya Sabhyata. We are the people of India. We will decide. This nonsensical rhetorical answer to empirical questions should stop. We are, as I told you, we are not backing off. This is a new Congress. This is a new India. Your game is over. Okay, Mr. Mecca, if you're done, you haven't responded to the question I asked. But, you know, that's also for viewers to see. You wanted to express your angst and perhaps, you know, you've done that. Let me get Swagata into this conversation before I come to you, Akashdeep. Now, Swagata, you represent the Ajit Pawar faction of the NCP. Now, tell me something. Again and again, when you talk of corruption, that chakki piecing comment, you know, just goes round and round and round. Everyone knows that comment that has been made by multiple leaders of the BJP. And here you are doing business with the same party. So corruption clearly then is not an issue if you join the BJP, but it becomes an issue if you're sitting in the opposition, Swagata. Is there merit in that argument? See, ma'am, whereas it comes for Chhattisgarh issue, ED is taking care of it. It will be too early to pass any comment on such kind of topics because everything is out in public and people are there to judge. We have joined BJP for our government, for our state, for development of our state, for development of our country. And as you can see, we are doing much better. And you can say Maha Yuti, is doing really great. And we are glad to be part of BJP. In fact, if you know this, that Panchayat Swagata, the opposition alleges you are glad to be a part of the BJP because this washes away all the sins. This washes away all the pap is what they allege. How can you say that, ma'am? I mean, what makes everyone say that? ED is doing its work. The scam is out. Do you remember Devendra Fadnavis saying about Ajit Pawar chakki piecing and piecing? Do you remember what the Prime Minister spoke about the NCP before the NCP had not, split and Ajit Pawar had not joined the BJP? But he didn't specifically mention anyone's name. It was a generalized statement. That has nothing to do with Chhattisgarh scam. No, it's not about related to Chhattisgarh scam. The story is about corruption, Swagata.
I'm not linking this to Chhattisgarh at all. I'm just saying that corruption becomes a talking point when it's the opposition's corruption. But corruption is okay if it is about BJP and its own allies, is what the opposition alleges. Congress has been in power for a longer time, and there are a couple of you can see leaders now. It's not been said by me. It's out everywhere. If ED is doing their work and if the corruption is coming out, that has nothing to do with any particular political party. Whereas it comes for even Dada also, it was Devendra Fadnavis sir never specifically took Dada's name. It was just a generalized statement which he passed. Ajit Dada, Chakki Singh. What are you saying? You know, I wish I could just play out that reaction right now, but Akashdeep, corruption is an issue or it's not an issue. You know, more so for a party that has its genesis in an anti-corruption movement, but you have multiple leaders, I don't want to begin by naming them, who are right now not getting any relief from the courts. And does the INDA alliance continue to back the Congress in spite of the fact that there are such serious allegations, Akashdeep, on a sitting chief minister from the Congress in Chhattisgarh? Will you say that there should be a thorough investigation and we should not question the timing of this entire action? I'll surely say that there should be a thorough investigation by an independent ED, not a dependent on BJP ED. Okay, first. And Deepti, you did... What is an independent ED now? What is an independent ED? Perhaps led by AAP? Just. No, led by the courts. Let the courts have the ED, not the center. As the honorable... So you want a court-monitored investigation? You know, court-monitored investigation, it will be great. And one point, just 5 seconds more. You know, Guruji was talking about, rampants of, corruption-free India. Very good. You know, Guruji with Swagataji side by side. Looks so good, na? You know, Ajit Pawar 70,000 crore scam, ED's specific charges on Ajit Pawar, BJP saying that Chakki piecing comments, and then today, while Swagataji and ED, Guruji is sitting both together, and Guruji is talking about corruption-free India. You know, hypocrisy की भी सीमा होती है गुरुजी. आप देखिए सोचिए, ठीक है, अगर आप corruption-free India चाहते होते ना, तो आज आप अजित पवार को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाते नहीं. ये लोग इतना तो समझ जाते हैं, ठीक है. तो ये सब बोलना बंद कर दीजिए प्लीज. कहना करप्शन फ्री इंडिया आपसे ना हो पाए. What about corruption and the Aam Aadmi Party and all of you wanting to support the Congress right now? Matlab anything to defeat Modi. Anything to defeat Modi. Corruption is that one glue, Akashdeep, that binds everyone together, like the Prime Minister said. No. Anything to save the constitution. Very good statement. Obviously, there should be investigation. Okay, if there is an investigation going on, and after the investigation, if the courts say that yes, there has been a scam in this particular case, in this betting case, then I'll agree. Everybody will agree. But the courts have not said. The arguments have not put. The investigation has not been done. They have sent. They just sent to remand, the accused has sent to remand. So now these are just allegations. Let the allegations be argued on in the court and let the judgment be taken. Let's wait for the judgment happen. We sit in a law-abiding state. Let's, believe in our courts. You believe in the courts, but when the Supreme Court says that there is a tentative money trail in the Manish Sisodia case, the same Aam Aadmi Party says we do not agree with what the court has said. So clearly, I think different political parties, Akashdeep, will speak from where they are standing. No, with all respect, you are That is what wrong, Atishi said. I've heard that press conference. She said we do not agree with what the Supreme Court has said and we might go in for a review. No. Dipti ji, the first statement which you made, that Supreme Court has said that there is a money trail. There is not a single money trail to Manish Sisodia. Tentative money trail, they said this. In the order copy, has said that there is no money trail to Manish Sisodia till now. You can check the order copy. I am saying this on national television. There is no money trail to Manish Sisodia, Sanjay Singh. Both of them are inside jails. This particular PA, because of the stringent acts in the PMLA, which puts the onus of probity on the accused, not the accuser.
That is why the bail has not been granted. Trust me on this. But You can Akashdeep, check see, the in the PML Act. country, They will be granted in there the are sunset. laws, there is a parliament, there is the wing of the court. Now, the point is that you're okay with anything that is said and done if the entire verdict is in the favor of, a particular political party or a leader. But the moment that there are questions being raised on a party, then you people start questioning everything. I mean, just think of the viewer today, Mr. Mecca, who's going to be like looking at you, at Bhupesh Baghel and all. Now, Bhupesh Baghel says कि इंतजार करिए 17 तक ये चलता रहेगा और उसके बाद सब शांत हो जाएगा. So is that the position, Mr. Mecca, that you believe that the so-called grand old party should be taking on such serious allegations of corruption? You think जनता कुछ नहीं देखती है? No. First of all, we are not normalizing. We are not taking it easy. If there is allegation, if the allegation is credible, serious, substantial. So why hasn't Rahul Gandhi, why hasn't Mallikarjun Kharge issued a statement saying that these are very serious allegations and we welcome a thorough investigation? The first response, Mr. Mecca, has been that this is vendetta. This is time to the elections. Wait, you ask me a question and then you go on the rhetoric. Wait, see what we are saying is go there, do the investigation. Only thing I am saying is where I disagree with Bhupesh Baghel ji is सब शांत 17th के बाद नहीं होगा, अप्रैल तक चलेगा, अप्रैल तक यही चलेगा. That is what people are watching. Let the agencies decide if it's a credible allegation. Let the agencies decide it's a substantial allegation. Let the agencies decide further investigation. Why are we conducting a kangaroo court in the studio? Declaring it is an open shut case. No, there is no kangaroo court, Mr. Mecca. See, this is easy. This is a standard modus operandi. The moment I will tell Swagata about the cases against Ajit Pawar by the Enforcement Directorate, no, she'll also feign her ignorance. Much like you are feigning ignorance about what Bhupesh Baghel possibly has been alleged of all this wrongdoing, and much like the Aam Aadmi Party. But Swagata, still, before I go to Guru for his final comments, see, in July 2021, the ED attached properties worth 65 crore linked to Ajit Pawar and his wife in Satara. It said that the ED had attached properties including land, building, structure and plant and machinery. And also Ajit Pawar was first booked by the ED in 2019 in a money laundering case linked to the alleged Maharashtra State Cooperative Bank scam. Swagata, can you tell me what is the status of this entire investigation by the ED now? Ma'am, it's still going on. I don't think these allegations are going on? Must have been fake. There are a lot of fake allegations. See, exactly, also, Swagata. That's the point. That's exactly the position the Congress today is taking. That these are allegations and these allegations could be wrong. But they could also be right, Mr. Mecca. You know, I'm saying this with that caveat. So for any political party to dismiss them straight away, Akashdeep, and to allege political vendetta will mean that you are normalizing corruption. But Guru, why is it today that all these opposition parties who call themselves the INDA Alliance, beginning from the RJD to the JDU, to, Hemant Soren, to almost everyone will say that everything that you do, Guru, is timed to elections. I mean, the BJP is the world's largest political party. Why do you have to allegedly use the ED and the CBI to win elections? No, Deepthi, I think this is the narrative of the opposition party, and you see how conveniently my friends from the Aam Aadmi Party and the Congress sympathizer, they use this selectivity argument. When a certain Supreme Court observation suits their narrative, then the Supreme Court is good. When a certain Supreme Court observation is against your narrative, then we don't agree with the Supreme Court. This is not going to work, sir. We have to understand, and with respect to the Mahadev betting app case, only today, the Union Minister for Technology, Mr. Rajiv Chandrasekhar, has said this, that Section 69A of the IT Act empowers the Chhattisgarh state government to do an inquiry. But there was no inquiry. Since the last 1.5 years, these operations were going on. Nor did they ask the central government to do the inquiry. This clearly establishes one simple fact,
There is a beneficiary, there is a linchpin, and there is a system of corruption. The system of corruption is the Mahadev betting app case. The beneficiary of the corruption is the chief minister and the Congress party, and the person who are carrying out the corruption is Shubham Soni and Aseem Das. When someone like Aseem Das, who is the central figure, who is the protagonist, is coming in the public domain, and admittedly he is saying that he is the cash courier. This is the word that has been used by the... But Guru, ultimately is also conduit. Second, I mean, can you place your 100% trust in a conduit, in people who might have agendas? No, Deepthi, we cannot actually sit here and say that who is setting an agenda, but evidence is, things speaks for itself. We are no one to speak on behalf of anything. When you see so much cash on a vehicle stashed that was supposed to be delivered to the Chief Minister of Chhattisgarh, Mr. Bhupesh Baghel, then questions must be asked. And this constant heckling of the institution is something which is undemocratic, which is a problem, which is a concern for the democracy. Like I said in my initial observation, Preeti, just last 20 seconds. Okay, Guru, I think that's a very balanced point that you do put out, and I second that comment. That these are very, very serious charges. They warrant a thorough investigation. By simply questioning the timing, Mr. Mehka and Akashdeep Muni, this does not cut eyes. Corruption is a huge issue, and if you believe people will not look at corruption, we possibly will see how they respond at the ballot. I thank Swagata and all gentlemen for the moment for joining us as we'll continue to track that story. That entire sting, remember, has been put out by us here at Republic. Lot more details, as always, will go up also on republicworld.com. We just have enough time to put out this quick breaking update right now that we are getting in from the state of Chhattisgarh, where there are reports of an IED blast. Now, you're reading more details of that on your screens. It's been reported from Kanker in Chhattisgarh. Now, do remember again, you have Chhattisgarh that is voting tomorrow. A BSF constable and 2 poll officers have sustained injuries, is what we are learning. This is the latest. In fact, a BSF constable, 2 polling team members have been injured in an IED blast that took place in Kanker. A joint party of the BSF and district force was going from Camp Marbeda to Renga Ghati, Renagondi police station with about 4 polling teams from Chote Betia police station of district Kanker. The injured right now, we are learning, are undergoing treatment. Their condition is said to be out of danger. On your screen also our first images of the remains of that IED blast. And this blast apparently has happened quite close to a polling station. Now, this is the area that, remember, is voting tomorrow. Chhattisgarh is polling in 2 phases. The first is tomorrow, that is the 7th, and the second is on the 17th. And tomorrow is essentially a lot of the Naxal hotbed that is going to be voting tomorrow. The IED blast has been reported right now in the poll-bound state of Chhattisgarh. And there is limited information right now coming in of what really happened. The incident occurred earlier this evening. These were 4 polling parties escorted by security personnel were heading to their respective polling stations where this blast was reported. And we are learning that near Renagondi, a pressure IED exploded, leaving 2 polling personnel and BSF constable injured. Piyush is also joining us. He has more details. Piyush, what more do we know about what happened? Is there any official word that has come in from the BSF? As of now, there has been no official word which has come up from BSF because they are still in the process of ascertaining that what has been the injury that has been caused to the BSF personnel in this incident. But yes, from the local officials over here, I can tell you that yes, there has been a confirmation that yes, there has been an IED blast in which 2 polling personnel and 1 BSF personnel has got injured, and this blast occurred at the Kanker district in Chhattisgarh, which is just 3 hours to drive here from Raipur, and is one of the worst affected Naxal belt over here in Chhattisgarh. Now, this incident is very significant because this incident comes just hours after prior to the polling that has to be conducted over there. So yes, this is a very
this is a matter of concern. An IIT blast has been confirmed. Injuries have been sustained. We are now waiting to see that has there been unfortunately any injuries, any casualties in this or not. I also want to tell you that prior to this incident in the same district of Tankar, there was also 3 persons who were killed by the Naxals. So yes, this is a very serious incident indeed. Back to the studio. Okay, Piyush, for the moment, thank you. In fact, we are learning that there have been injuries, but thankfully they are all stable right now, out of danger for the moment. Thank you for getting us the latest on that as we head into a quick break right now. Hello, Moto. Motorola, India's best 5G smartphone brand. Powered by Reva University, a social impact multidisciplinary university. Century Ply Club Prime, Raho Befikar. Co-powered by Hyundai, it is safe if it's 6. बंद करो कान बंद करो कभी भी फट सकता हूँ पटाखा जो लग रहा हूँ दिवाली है तैयार होकर आइए In the global employability rankings by Times Higher Education UK, only the following 6 institutions from India are ranked amongst the top 230 in the world for having the most employable graduates. IIT Delhi, IISc Bangalore, IIT Bombay, IIM Ahmedabad, IIT Kharagpur and Amity University. सुबह की प्यारी सी धूप और खिलखिलाता आंगन, दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और प्यार से बनाए खाने की सुगंध। मैं सबके साथ हूँ, सबकी जुबान पर हूँ, सबके स्वाद में हूँ। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। मन चाहे 65 इंच 4K देख मन फिसल मत यही चाहिए यही लूंगा यही चाहिए तो देख तू इस बार भी नहीं लेगा ना लूंगा ना अगली दिवाली अपने मन की विश को मत टालो SBI कार्ड के फेस्टिव EMI ऑफर्स के साथ जो मन चाहे ले डालो। खुशियाँ आती हैं उंगली की एक प्यार भरी छुअन से, चाहे प्यार जताना हो या किसी को मनाना हो, बात मनवाना हो या रोते को हंसाना हो, खुशियों की सौगात या चमक की हो बात, अब आपके फिंगर टिप्स पे WHPjewelers.com, something special for everyone। जब एक दिया जलता है पूरा घर रोशन हो जाता है। सोचिए जब आस्था के दीप जगमगाएंगे और प्रभु श्री राम के अयोध्या आगमन का उत्सव मनाएंगे तो कैसा अलौकिक दृश्य होगा जो अपने आप में एक कीर्तिमान होगा और पूरी राम नगरी डूब जाएगी दिव्य अलौकिक दीपोत्सव की जगमगाहट में। आप भी सपरिवार इस विश्व कीर्तिमान का हिस्सा बने और अपनी अयोध्या नगरी को विश्व मानचित्र पर आने का उत्सव मनाइए। भव्य दीपोत्सव उत्सव त्योहार है, ज्योतिर्मय तेज है ये रोशनी की धार है, पाप पर प्रहार है सच की जीत की हुंकार है, दिए से दिया जलाए राम राज सरकार है, राम 11 नवंबर सरयू घाट पर आइए और प्रभु श्री राम की महिमा गुनगुनाइए। This Diwali New Hawkins, good old friends, fun times again. Welcome to AU Video Banking. क्या बैंक के सारे काम हो सकते हैं, सोच बदलो और बैंक भी। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, बदलाव हमसे है। Helps beat sensitivity fast. Sensodyne Rapid Relief. मेहमान आ गए, इनका फैशन जो है खत्म नहीं हो रहा। मिश्रा जी, कुर्ता जच रहा है। थैंक यू मैडम सर। 42 की फिटिंग, 42? वो भी सिर्फ 599 में। आपको कैसे पता? पता तो ये भी है कि स्मार्ट बाजार से खरीदा है। ओह, टैग। खाना खा लें? चलिए। आ गया फेस्टिवल सेल 1 से 15 नवंबर। दिवाली फैशन सबसे अच्छे दाम में चाहिए, स्मार्ट बाजार चलिए।
stylish and comfortable. Honda Elevate. You're the chase. की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। Hey Alexa, start the robo. Introducing Forbes Robo Vacuum Cleaner. Daily cleaning as easy as 1, 2, 3. It dry vacuums, even wet mops, and recharges automatically. Get the Forbes Robo Vacuum Cleaner from Eureka Forbes. कर निवेश खुद की हिम्मत में आसमां को धरती पे लाचे था। जब भरोसे की हो बैकिंग तो निवेश का हर फैसला बन जाता है बुलंद। इसीलिए हम खड़े हैं हर निवेश के लिए, हर निवेशक के साथ। SBI Securities. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. बंद करो, कान बंद करो, कभी भी फट सकता हूँ, पटाखा जो लग रहा हूँ। दिवाली है, तैयार होकर आइए। In the global employability rankings by Times Higher Education UK, only the following 6 institutions from India are ranked amongst the top 230 in the world for having the most employable graduates. IIT Delhi, IISc Bangalore, IIT Bombay, IIM Ahmedabad, IIT Kharagpur and Amity University. मन चाहे 65 इंच 4K। देख मन, फिसल मत। यही चाहिए, यही लूंगा, यही चाहिए। तो देख, तू इस बार भी नहीं लेगा ना? लूंगा ना, अगली दिवाली। अपने मन की विश को मत टालो। SBI कार्ड के फेस्टिव EMI ऑफर्स के साथ जो मन चाहे ले डालो। सुबह की प्यारी सी धूप और खिलखिलाता आंगन, दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और प्यार से बनाए खाने की सुगंध। मैं सबके साथ हूँ, सबकी जुबान पर हूँ, सबके स्वाद में हूँ। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। Mega debate on Mahadev scam investigation. Investigation that has set the political agenda. India's biggest political scam, debating tonight at 9 p.m. Biggest political scam explodes before elections. Congress silent on Mahadev betting scam charges. Mahadev scam truth. Can India Alliance look away? Debating tonight at 10 p.m. तो पता नहीं रस्सी से खाली हो रहा हूँ ना। बड़े बड़े लोग हैं, यहाँ तक कि यहाँ के कोई नेता नहीं छुड़ा। बड़े बड़े लोग भाई, यहाँ कितने पुलिस वाले सस्पेंड हो गए एक चक्कर में। एक विधायक भी पैसा मांग रहे सीधा। पैसे की डिमांड किसके थ्रू करते हैं ये लोग? और कुछ जैसे कि यहाँ जो पकड़ाए हैं सतीश चंद्राकर और ASI क्या बोल रहा है उससे विनोद वर्मा का नाम ले दिया कि यहाँ का व्यापारिक नाम लिया था नहीं
From the Delhi studios of Republic TV, it's time for the debate. The debate at 9, presented by Amity University, powered by RP Sanjeev Goenka Group, Century Ply, Club Prime, PolicyBazaar.com, and Sera. Good evening and welcome, friends. It's Monday, 9 p.m. I, Abhishek Kapoor, and my colleague Shawan Sen filling in today for Arnav Goswami. He would be back tomorrow, of course. And today, we are continuing to focus on the Mahadev app scam and its political fallout. Remember, Chhattisgarh is heading for its first phase of polling tomorrow morning, 7 a.m. And in the last 4 days, there have been frenetic pace of developments in this scam on the investigation side as also on the political side. We have seen the BJP trying to put the Congress on the mat. In fact, even the Chief Minister, after one of those associated with that online batting scam directly made a charge against Bhupesh Baghel, the Chhattisgarh Chief Minister, suggesting that he in fact got couriered a total of 500 plus crore rupees to the Chhattisgarh Congress and to the Chief Minister personally. In fact, one of those couriers was caught with 5 crore rupees 3 days back. The ED is questioning him, and all the information that's coming out, if you go by it, it's damning. But the point is, whether this is going to become a victim of the timing that this is happening, the politics that has panned out with the Congress party rebutting all these charges, connecting them with the elections, and in fact today petitioning the Election Commission of India, calling the ED press release of yesterday which named Bhupesh Baghel as a violation of the Model Code of Conduct. All those things we will discuss, as also of course the intricacies of the investigation and the legal aspects. So joining me, Shawan. Well, in fact, Abhishek, an 8-part Republic investigation which has now become the biggest talking point this election season. And why not, ladies and gentlemen, shouldn't corruption be one of the major plank for any election? We're talking about an investigation which leads to the doorstep of the Chief Minister's office, and the silence of the Chief Minister on this entire matter raises only very uncomfortable questions. Remember, a 10-day investigation that has been carried out by Republic TV, but the Chief Minister only believes that he could target the investigative agency, but not a single word, despite multiple attempts being made by the Republic Media Network to reach out to the Chief Minister, but not a single word as far as the investigation that has now completely exposed the state administration. That's debate number 1. And then we also take you to more details coming up in this big expose of what's the Dubai link. All right, apart from the political aspect, we are also going to discuss the implications of these developments on the India alliance. Remember, friends, we are discussing this on a day when Akhilesh Yadav has continued his relentless attack on the Congress party, from calling it a bunch of Chirkut netas, at least in Madhya Pradesh, to in fact calling Congress today a Chalu party. You know, if you remember those days from college, whom would you call Chalu? And so that gives you an idea of where the alliance is heading, whether the developments in Chhattisgarh are going to have an implication on the India alliance. That's going to be our debate number 2 at 10 p.m. Let's begin with the headlines first. Republic Mahadev investigation into Mahadev betting scam explodes. 8-part investigation becomes number 1 election issue. Republic sources suggest there is a gold smuggling angle. Enforcement Directorate sources tell us Dubai link is under investigation. Enforcement Directorate takes note of Republic sting, writes to Republic to get Mahadev investigation sting tapes.
Massive impact of Republic Mahadev investigation. ED sources tell Republic summons to be issued soon. वीडियो जारी किया, वो बताता है महादेव का मालिक मैं हूँ। अभी ईडी की पता नहीं कि मालिक है कि नौकर है। प्रेस विज्ञप्ति ईडी जारी करती है, वीडियो भारतीय जनता पार्टी जारी करती है। इसका मतलब क्या, ईडी भाजपा है या भाजपा ईडी है? In the eye of the storm, Chhattisgarh Chief Minister is completely corner, calls it a BJP conspiracy. ये घोटालों की सरकार, इन्होंने महादेव को भी नहीं छोड़ा। 6,000 करोड़ रुपए का घोटाला। किस बात का घोटाला? सत्ता में आने के लिए सट्टे का घोटाला। BJP escalates attack on Congress over corruption, questions Baghel government over the massive scam. Welcome again, friends. You know what started as a bunch of stink tapes carried out by a Republic team has turned into a full-blown investigation with allegations reaching right at the doorsteps of the Chief Minister of Chhattisgarh, Bhupesh Baghel. Of course, he has fought back by saying that this is politically motivated and timed with polling in the state. What is important is that some damning revelations have happened. In fact, there is a money trail also. So we are going to discuss all those aspects in this package, Shawan. Well, in fact, the Chhattisgarh Chief Minister Bhupesh Baghel has many questions to answer, as multiple players have named him in connection with the scam. Now, was money as much as 508 crore rupees accepted by the Chief Minister? Was the cash sent on a monthly basis to the Chief Minister's office? Republic investigation has put the focus on the political angle in the scam. Ladies and gentlemen, all this while perhaps everyone thought that there was only a Bollywood link, and perhaps the political link was being spoken in hushed tone. But this 8-part investigation of Republic TV conducted over 10 days exposes two very important links. Whether at all there was a political patronage given to the main accused, and second, was the state administration, the state police in particular, working in cahoots with the main accused? Take a look at this 8-part investigative report and then we begin the debate. पुलिस महकमे में कैसे बनाया, कैसे इसको पता चला कि नहीं प्रोटेक्शन चाहिए तो काम के लिए पुलिस को साथ रखना जरूरी है और नेता लोग को, है ना। आज भूपेश बोलता है मोदी को कि इतना बड़ा गेम चल रहा, बंद क्यों नहीं करवाता? मोदी भूपेश को बोलता कि तेरे साथ पे चल रहा है। किसको क्या बोलोगे? ये सबका हाथ है। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा पैसा सामने छत्तीसगढ़ चुनाव ना, सब पैसे की डिमांड कर रहे हैं। सबके सब पैसे की डिमांड कर रहा है। अच्छा, सब दुबई से पैसा मांग रहे हैं। हाँ, क्या एक विधायक भी पैसा मांग रहे सीधा? लेकिन मोड कैसे, पैसे की डिमांड किसके थ्रू करते हैं ये लोग? और कुछ जैसे कि यहाँ जो पकड़ाए हैं सतीश चंद्राकर और ASI, चलो खोल दी ना, बड़ी मार दो, इसको इतना देता था, उसको इतना देता था, कहीं जुगाड़ होगा। लेकिन अब तो लेकिन सुनिए, ये दोनों अब चले गए अंदर, लेकिन अभी भी चुनाव आ रहा है, डिमांड बढ़ी रही है, सब छूट जाएगा। जुआ एक तो लगता है इसमें, ये जो छुपुरिया पकड़ाए थे उसको 24 घंटे छूट जाते हैं। वही लैपटॉप मोबाइल जो जब्ती होती है वही नहीं मिलता है, कैश जब्ती हो, किसी पास 2 लाख, किसी पास 5 लाख, 24 घंटे जुआ एक है बस। और ये लोग के पास ज़्यादा पकड़ा है, बहुत कैश पकड़ा है, ट्रांजेक्शन दिखा दिया ना पूरा मोबाइल में। किनके पास बहुत पकड़ा है? चंद्रभूषण और मोबाइल में दिखा दिया। मोबाइल सबसे बड़ा बीमारी तो मोबाइल है। उसकी विशेष पार्षद प्रियंका साहू, इतना मोटा तो चेयर है उसके गले में, जितना वो मोटा मेरी मिसेज पायल पहनती है। 4 उंगली में अंगूठी, ब्रेसलेट,